കൃത്യം 8:55 ആകുമ്പോൾ Good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for the most prestigious Gladiator Trophy 2022. One of the most interesting game of cricket, and especially this cricket is most interesting because Kerala versus Karnataka, and it's one of the most interesting game of cricket, I must say. Underarm Cricket Festival, and this cricket tournament, which is organized by Underarm World WhatsApp Group in this most beautiful venue, Golden Abdul Aziz Cricket Stadium here in Manamguji, Uppala. So once again, on behalf of Underarm World WhatsApp Group, welcome for all cricket lovers and all cricket players for this most prestigious cricket tournament, Gladiator Trophy 2022 Season 2. Powered by Zaman Kalpara. So once again, what a fantastic atmosphere out here in the most beautiful cricket ground. Bright sunny morning out here in this most fantastic cricket stadium. One of the most beautiful and huge cricket ground out here in Uppala. And bright sunshine, the clear sky, all looks like it was a really a fantastic atmosphere out here in the most beautiful cricket ground. And first match of the day, number 1 of this prestigious cricket tournament, John Boys takes on Tatwa Masi Manya will takes on John Boys in this first inaugural match. And for this cricket tournament, we have some fantastic officials, most experienced official for this cricket tournament. Leading from the front, Arish Padil, one who got 25 plus years of experience in Underarm and Overarm cricket, and he will go into leading from the front. Under his leadership, we have Mohan Iyadi, one more experienced umpire, and Sheikh Malali going to be one more umpire for this cricket tournament. 3 excellent and experienced umpire for this cricket tournament. And in commentary box we have one of the most popular, wonderful in the commentator, Star Nawaz, will going to have a mic with me in our national language Hindi, and we have another young talented multi-language commentator Nasir Kanyana, and myself Satish Salyan in English will go into be a commentator. And may I request 2 teams captain, please go for toss immediately. And I request captain of John Boys as well as Tatmasi Manya, captain, please go for toss immediately. We are coming back to the officials. Myself Satish Salyan in English, and it was really a great privilege for me to come here because one of my favorite venue, this cricket ground. As a cricketer, I got experience of playing in this particular cricket ground. Now it's my privilege to have a mic in this most beautiful cricket ground. And more than anything else, we have Bedra Media. They have got a live telecast of this cricket tournament. And everybody knows that's the Bedra Media, one of the best social media we have in a present cricket. Very busy schedules for Bedra Media, and Irfan of Bedra Media leading from the front. Under this leadership, we definitely promise you we will going to get some quality coverage of this cricket tournament. And warm welcome for all cricket lovers, those who are coming here in this most beautiful cricket ground, and those who are like to watch this cricket tournament through YouTube in your mobile. Please subscribe to Bedra Media and you will get a live telecast of this Gladiator Trophy 2022. Thank you very much. So umpires, just explaining the rules and regulation of this cricket tournament. It's very important to know each and every captain of every team to know the rules and regulation of this particular cricket tournament. And we have Arish Padil in the middle. We have Sheikh Malali, Mohan Iyadi, through very good umpires, experienced umpires for this cricket tournament. And here is a tossing ceremony. Firoz Manjeshwar along with
the players, the captains. Is a legend player who got experience of playing for young friends Surua as well. And now is a time for the toss. Two teams captain of John Boys as well as Tatwamasi Manya. Two captains are in the middle. Mohan Iyadi just having a coin and a toss, which is on by captain of John Boys, I think. Yes, he is on the toss, and we have wait for his decision. We can have to tell the decision immediately. And 7 overs side to be played. 2 over going to be a power play, where you can keep only 2 fielders outside the circle as per the rules and regulation of this cricket tournament is concerned. We have players dugout, so that I request all the teams players, please occupy your place in your players dugout. And I request the spectators, please don't occupy that place which is arranged for players. So I request two teams players, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಈಗ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Along with the organizers, the national anthem will go into play now. Before that, the start of the first match, there's the inaugural ceremony, and we hope this tournament certainly will go into be a successful one. Gladiator Trophy 2022, they successfully organized Gladiator Trophy 2021 in Manjeshwar Panchayat cricket ground, and after that successful cricket tournament, they are heading towards the second year, and we hope this tournament will go into be one more successful journey for Underarm World WhatsApp group. Now it's a time for national anthem. I request all the spectators, please stand up for a minute for this national anthem. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತತ್ವ ಮಾಸಿ ಮಾನ್ಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 7 overs match, 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. So please note both the teams captain. 7 overs match, there will be a 2 overs of power play, where you can keep only 2 fielders outside the circle. So all now set for the big tournament, the big day, and what a fantastic atmosphere out here in this most beautiful Golden Abdul Hazi Memorial Cricket Ground here in this most beautiful venue, Uppala. Underarm World WhatsApp group organizing this Gladiator Trophy 2022 under the great leadership of Amza, Manjeshwar, Firoz, Manjeshwar, and all. We can see that they have done a whole hard work to make this possible. More than 250 the members in this Underarm World WhatsApp group. It's been a really fantastic achievement by Underarm World WhatsApp group. They are organizing this most fantastic cricket tournament. They just build a bridge between South Kendra district, Karnataka state, as well as Kasaragod district, the Kerala state, and this is really one of the most prestigious cricket tournament, I must say, Gladiator Trophy 2022. So just coming back to the Pool A, the schedules here. John Boys takes on Tatwamasi Manya, the first match. The second match, BFC Manjeshwar takes on Bichu Boys. Third match, CSC Palivalike takes on last year runners-up NE Posot. Team Kumbala takes on Foodland Osangadi. And last match of the day number 1, New Star Kunjaturu takes on the last match of the first round. Yes, NNS Kasaragod takes on New Star Kunjattur. So all set now for the big moment. And umpires are walking towards the middle here. Umpire Arish Padil along with him Sheikh Malali slowly walking towards middle, and they're taking their respective position. In my left we have a scorer, Shikawat Mugradi. We have a very popular and experienced scorer out here for this most prestigious cricket tournament. And we have already I mentioned Nawaz, Star Nawaz, one of the most popular Hindi commentator out here for this most prestigious cricket tournament. We have Nasir Kanyana, and of course our senior most commentator Abdul Rahman Bekur will going to join later for this wonderful cricket tournament as the commentator. The Gladiator Trophy 2022 and inaugural match. John Boys takes on Tatwamasi Manya.
Welcome back for the first match, the inaugural match of the day number 1 of this most prestigious Gladiator Trophy 2022. All set now for the first over, and first over going to be power play, just like what I already mentioned about the rules and regulation of this cricket tournament. We have two fielders outside the circle, and straight away we have one fielder in the deep mid wicket, standing back in a deep mid wicket, and one at the deep long off. The fielders are in the deep for the first over. Just coming back to the fielder inside the ring, wicketkeeper standing very up to the stumps. There is a short third man and the backstop fielder. They're very close together behind the wicket. We have backup point. We have extra cover point. We have short extra cover. We have mid off, mid on, short square leg. And that was a field set here for the right-hander batsman Bachi. Bachi will going to face his first delivery. Siddiq will going to start his fresh over from goalpost end, bowling right arm around the wicket. The first ball, beautifully bowled right on the morning. First ball itself, the bowler is on target. Siddiq bowled a little bit outside the line of off stump, and Bachi tried to play some big shot on the onside region, misses the line completely, and there is no chance of any run at all. Siddiq with the short run up, 2-3 steps away from umpire, right arm over the wicket, down the leg stump, wicketkeeper behind the stump, fails to collect the ball, but here is the opportunity for the batter to cross over for a single in the form of bye. The first one comes up here for Tatvamasi Manya. They got first run in the form of extra bicycle by umpire, one without loss of any wicket here in over number first in progress. Harish Padil, the main umpire at square leg. We have Sheikh Malali, one more experienced umpire at square leg, and third time in this over, bowler Siddiq bowling right arm round the wicket. This time again, excellent delivery. The batter tried to play the sweep shot, ball little bit pitching outside the line of leg stump, stretching his front foot, tried to get some placement down to fine leg. There is no fielder at all in the fine leg region. There is a square leg, so intention of the batsman to try to play that one in that vacant area, but not quite able to make a contact with the bat. Wicketkeeper did the rest and back to bowler. Here is the next one, right arm on the wicket. This time little bit misjudgment there by the square leg fieldsman. He moving to his right, but ball is just passing towards his right, and before he's run back to fields the ball, the batsman had got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. So the morning, it's not that much of easy for the batter, I must say. In the morning, first 1 hour, the bowlers suddenly will going to dominate in this condition. There is no wind at all. And after 10 or 11 o'clock, we can see that there is a little bit change in the weather condition. There is a huge wind is passing in the middle, so the condition might be a little bit favorable for the batter rather than the bowler. But this time, so far, Siddiq is bowled quite over. 4 deliveries, just 3 runs he conceded, and now is Ranju will going to face next delivery. This time going for the big swing of the bat, missed it completely, but umpire not missing the opportunity to have some morning exercise here. Harish Padil, and signals that was a wide. With the extra, scoreboard moves on to a 5 on the board, 5 without loss of any wicket. Second extra of this over, 1 extra in the form of bye. Now it's from the bowler as doing mistakes, as bowled wide. 5 without loss of any wicket, round the wicket. Again, without coming into the line of the delivery, blind shot. Bachi is attempting for little bit encouragement for the batter, because they knows that this is a power play is on. We can see that only 2 fielders outside the circle. Might be that was the intention of the batter to get some big shot in this power play, but so far Siddiq has been outstanding with this line and not really settling the batsman for the big shot. Bachi looking for some big shots. Siddiq, final time in this over. This time again the dotted delivery. What a fantastic stuff there from Siddiq. The good start has been given, and after winning the toss, elected to field first. And John Boyce started well with the bowling. The quiet over, just 5 runs came from that over of Siddiq, and steady start coming from opening the batter of Tatvamasi Manya. Bachi and Ranju are the 2 batters are in the middle. Try to get some big score on the board. Just coming back to this particular match, John Boyce takes on Tatvamasi Manya. The batting first time is need to be very careful, because you are batting first, and you have to be very
stick with your strategy. Strategy in the sense how many runs definitely they wanted to get, and what kind of bowling department you have got, and what kind of batting strength what your opposition has got. As per that game plan, you have to bat. In the sense, 7 hours, any score around 40 to 45 in the morning, I think is a good score to depend. And just seeing the result earlier and tournaments which I have got a chance to make a commentary, just this is my experience, the 45 to 50 is definitely going to be a good score to depend, and wait and see. From the players dugout end, right arm over the wicket, second over, starts with a big wide, far outside the run of off stamp, and nothing much to do with the delivery, as batter seeing the line of the delivery, and he just left the ball rightly, so wicketkeeper completely beaten, and short tournament fielder before he collects that one, batter has got ample time to collect one run. 1+1, 7 without loss of any wicket. These extras definitely will going to be a big role in this format of a game, 7 overs of any. You have to restrict that wides, the extras, and round the wicket. One more, no change in his line. Misbuilding there by the fielder. The bowler little bit struggling to get his line and length. Second wide, consecutive wide. 1+1 twice in this over. This is a frustration time for the captain of John Boys, because he always the captain is choosing their economical bowler, their wicket taking bowler they are choosing to start with, because a good start is very important for any team. When they are winning the toss, selected to field first, the bowler have to bowl very good line and length without effort from the bat, and bowler conceding 4 runs without bowling a single delivery. Just imagine how difficult it's going to be for the batter to get the boundary from the bat. When you concede that boundary in the form of extra, that means it's going to be a big bonus for the opposition team. 9 without any loss. Safwan balls, went for the big shot, wicketkeeper fails to collect the ball. Aju there in the wicketkeeper behind the stump, missed the ball completely. Frustration for the bowler. Once he got his line and length proper, but wicketkeeper fails to collect the ball, and batter completed a single. Both the batter completed a single in the form of bye. So double figure comes up here, 10 without loss of any wicket. First over is very quiet, 5 runs. Second over is seems to be a little bit advantage for the batting team in the form of extra. They got some runs. Safwan with a short run off, right above the wicket, outside the run of off stump. Wicketkeeper again is not really able to collect the ball. It's not a good thing to see that wicketkeeper behind the stump missing the ball every time when bowler succeeded to beat the bat of the batter, but wicketkeeper fails to collect the ball. Now wicketkeeper changing here, need to be, when you are not having a good time behind the stump, you have to sacrifice your place for another one. Safwan, right on from the wicket, bowls, and again the wicketkeeper fails to collect the ball quite neatly, and the fumble from wicketkeeper behind the stump, and there is no chance of any run at all. Good comeback there by Safwan. Safwan again from the players dugout end, right from the wicket. Bunch for the big shot again, mistiming it. Oh my goodness, there was a chance of golden chance here to make a run out. The first wicket is back in the pavilion. Total misunderstanding between the wicket. Yes and no between two players are costing a big wicket. The wicket of Manchi is back into pavilion. He's a little bit struggling in the middle to get the timing proper, and that was a really frustration and result of frustration and pressure. Ball is definitely in the hands of wicketkeeper behind the stump. That's why this partner is not interested. But batsman Bachi thought that it might be a single there, and might be a little bit fumble from wicketkeeper behind the stump. But he's got a plenty of time to recover and to make the run out. The first wicket is back into pavilion of Tatwamasi Manya. Lost the first wicket at the score of 11. And 11 for the loss of 1 wicket. This is over number 2 in progress. The new batter looks like the left hand batter is came into middle for Tatwamasi.
And Safwan, I think, is a good comeback. And after he is struggling to get his line and land, start with two wides afterwards. He just learning from his mistakes, and he bowled a very tidy line and land. For the left-hander, two fielders are in the deep. One fielder is going back to deep long off. One at deep mid-wicket for the left-hand batsman. That means one protection in the onside, one protection in the offside in the deep. Looking for the reverse sweep, but this time that was as per the rules and regulation of the cricket is concerned. Once the batter tried to play the reverse sweep, the bowler can bowl down the leg stamp. Good thinking there by Safwan. Fantastic comeback after a shackling start in the first beginning. He recovered very quickly. Safwan bowled a very quiet over indeed. Just 6 runs came from that over. Even he bowled two wides in that over. So after completion of over number 2, and John Boyce, after winning the toss, selected to field first. Tatwamasi Manya scored 11 runs. That means the first tour of the power play certainly is going in favor of John Boyce. They conceded just 11 runs at the rate of exactly 5.5 runs per over. Once again, good morning to all cricket lovers. Those who are watching a live telecast through YouTube, Bedra Media, having a live telecast under the great leadership of Irfan. And all I would like to say that good morning and welcome for this Gladiators Trophy 2022. And today the matches for the teams of Kasaragod district, Kerala state, and Yenni Posot. They are the runners of previous Gladiators Trophy 2021. Young Friends Rua becomes the champion in that Gladiators Trophy 2021. That tournament organized at Panchayat Mini Stadium, Manjeshwar. That was a really successful cricket tournament, I must say, on the heart of all cricket lovers, that cricket tournament. And after that successful tournament, an Underarm World WhatsApp group having second year tournament in this most beautiful big cricket ground, Golden Abdulazi Memorial Cricket Ground. The first ball outside the run of off-time full toss, and the batter straight away Ranju picked up a single. Not quite able to take the advantage of full toss because he is not expecting the full toss from bowler Guru there. That's why not able to take any advantage of that one. Just tapping the ball down to short cow point region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. This is over number 3 in progress. Guru operating from goal post end of the wicket. To left-hand batter Ravi will going to take the strike. The leg spinner bowls beautiful. Little correction. It might be that was bowling down the leg stump. Actually, that is a very good delivery for the right-hander batter. As the fact that Ravi is a left-hander, that ball definitely going to be a wide. That's the problem when it's a left and right combination. Bowler has to change their line and length quickly. And what could be a good delivery becomes a wide delivery for the left-hand batter. So again, Guru bowls at this time, one more wide, far outside and off stump, nothing much to do with the delivery. Ranju watching the ball till the last moment, saying that nothing much to do with the delivery, just left the ball into the hands of wicketkeeper. A lot of extras is they conceded. We can see that 4 wide balls conceded and even 4 byes has been conceded. So out of that 15, lot of contribution from the extras. That's the one area what John Boys have to be very, very strict with their line and length. They have to be very careful when conceding that much of extras. When you are going to chase those runs, this excess will going to take a very big role for the result of the match. Outside run of off time, one more wide. Again, Guru struggling to get his line and land. 3rd wide of that over. Might be looking for some pace in his bowling. Try to bowl a quicker one, and then by doing that, he couldn't manage to control his line and length. Again, Guru balls. This time went for the reverse sweep. There's a better delivery, and Ranju looking for a reverse stroke in the negation. Just changing his position to play the reverse stroke, but the line and length is so good in the negation there from Guru, seeing that intention of the batter is going for the reverse sweep. Just changing the line outside the line of off stump, and there is no chance of any run at all. 16 on the board for the loss of 1 wicket. Guru, right arm round the wicket, lovely shot, beautifully driven, lofted off dry down to deep long off, but not more than a single. The exact position situated for
The left-hand bowler, of course, need to have long off and long on for leg spin bowler. We have a deep cover point. Now, left-hand batter is on strike, and straight away the change in field as well. Guru, get ready to bowl to Ravi. Ravi not quite getting hold of that one properly. Just missed time that one. Running hard, looking for two there. But good piece of fielding there by the fielder. Charging into the ball from the deep square leg region. Denying the second form, these two batters. And scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 1 wicket. A very steady slot and slow progress here for Tatmamasi Manya. Understandable because the morning session is not that much of easy for the batter to get some big score. And here is the next one, outside the run of off stamp again, reaching for the delivery, going for the cut shot, but not quite able to get the timing right. Picked up a single down to deep cover point region. With the addition of that single, scoreboard moves on to 19 now. 19 for the loss of 1 wicket. This is the over number last in progress and last delivery of the over number 3. Guru. Again, bowling round the wicket. Went for the reverse sweep, ball is in the air, but out of the reach of the wicketkeeper. Chance of run out in the non-strikers, and bowler fails to collect the throw from the wicketkeeper. Not a good throw actually. The throw is coming in the half volley, and bowler tried to collect the ball in front of that stumps, missed it completely, and batter completed that quick single. As far the run rate is concerned, they're just going over 6 runs per over, 6.33 runs per over. First over it's 5, second over it's 6, and previous over they got 9 runs in that over. Altogether 20 for the loss of 1 wicket. So very interesting to see that how well these two the batters Bachi and Nirvikrishnan, Ranju and Ravi will go into accelerate the run rate. So far I think it's a good going here for John Boys. They got 20 runs in a very good run rate, and wait and see how many runs they will go into score in the remaining 4 overs, and before the next over will go into commence. It's time to change in commentary box as well, and I would like to invite after a long time we are sharing a mic with Star Nawaz. I still remember that last year in the month of March we shared mic that was Gladiator trophy only, and once again I would like to give special thanks to the organizer once they gave a chance to share the mic with Star Nawaz. Welcome Star Nawaz, and good morning for you. बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो स्वागत करते हैं सारे दर्शकों को अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हुए ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022। कर्नाटक और केरला के बीच चलने वाली ये बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जो पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे दर्शक भी, तो आज इस इंतजार की घड़ी टूटने के बाद हम मैदान पर खड़े हैं। शुरुआत के मैच आप देख रहे हैं, जॉन बॉयस और तत्वमासी मान्या के बीच पहले मैच। टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिए थे जॉन बॉयस ने। हालांकि शुरुआत के 3 ओवर पर 20 रन पर विपक्षीय टीम यानी कि तत्वमासी मान्या को संभाल चुके हैं। यहां पर अच्छी खासी गेंदबाजी जरूर देखने को मिले हैं। देखना है कि बाकी बचे 4 ओवर पर अपनी गेंदबाजी किस तरह से दिखा पाएंगे। यहां पर स्वीप करने की कोशिश यहां पर ओवर की शुरुआत वाइड के साथ दिखाए थे, लेकिन उसके बाद धीरे से एक सिंगल रन यहां पर जुड़ाते हुए रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 23 रन पर 23 बाला गेंदबाजी पर दाहिने हाथ राउंड द विकेट से बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए सीधे गेंदबाज की दिशा पर कोई रन के मौका नहीं। जॉन बॉयस अपनी जी जान लगाते हुए इस श्रृंखला में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई ऐसे वैसे क्रिकेट श्रृंखला नहीं है, ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त। और इस बार अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा पर बाएं हाथ के खिलाड़ी, 1 रन तो आसानी से मिलेंगे, लेकिन ना फील्डिंग की सजावट जो है जॉन बॉयस काफी बेहतरीन यहां पर सजाए हैं टॉस जीतने के बाद टीम के कप्तान ने। ये निश्चित रूप से अवश्य बनता है कि ऐसे क्रिकेट श्रृंखला में हर विभाग पर एक अच्छी योजना के साथ फील्डिंग की सजावट करना और बल्लेबाजी भी, दोनों टीमों के कप्तानों की ये जिम्मेदारी बनते हैं कि अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, क्योंकि यहां पर एक बार हारने के बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेंगे। ये नॉकआउट तरीके के मैच है, हर एक जीत के बाद आगे आने वाले कदमों के इंतजार करने होंगे। यहां पर
आज तो आप केरला के 10 बेहतरीन टीमों के बीच मुकाबला यहां पर देखेंगे और शनिवार के दिन होगा कर्नाटक के 8 एक से बढ़कर एक धमाकेदार टीमों के बीच मुकाबला। तो जैसे कि आप जानते हैं केरला विभाग पर एक टीम फाइनल पर पहुंच जाएंगे और उसी तरह कर्नाटक के विभाग पर भी एक टीम फाइनल पर। और इस बीच अच्छे खासी फील्डिंग, एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 26 रन, 26 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 7 ओवर की ये मैच 42 गेंदों के मुकाबला होगा। तो शुरुआत की 4 ओवर पर 26 रन बनाने के बाद अब देखना है कि बचे हुए 18 गेंदों पर 3 ओवर पर तत्ववाची मान्या कितने रन जुड़ा पाते हैं। यहां पर आरंभिक खिलाड़ी बच्ची के निर्गमन के बाद जुड़े ये जोड़ी रंजू और रवि। रंजू वाकई बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी निभा रहे हैं, क्योंकि रंजू ये जानते हैं कि पहली विकेट गिरने के बाद इस साझेदारी को एक ऐसे अंजाम देना होगा। यहां पर 7 ओवर के मैच पर अगर दोनों खिलाड़ियों के बीच यानी कि 2 विकेटों के बीच लगभग 3 ओवर की साझेदारी टिक जाती है, 18 से 20 गेंदों की पार्टनरशिप जब बिल्डअप होते हैं मैदान पर, तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी की टीम के लिए ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। रनों की संख्या जुड़ने के साथों साथ विकेटों को रुका कर रन धारण को अच्छे खासे बरकरार रखना, यह निश्चित रूप से अच्छी बात। तो अब देखना है कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बने हैं। 5वें ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज सिद्दीक। दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सिद्दीक। अच्छे गेंदबाज जायंट बॉयज के, और इस बार फ्लिक करने की कोशिश यहां पर अंपायर के साथ अपील जरूर किए थे विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेग बाइक की इशारा सुनाए और इस लेग बाइक के साथ 1 रन जुड़ते हुए रनों की संख्या पहुंचे 27 पर 27। सिद्दीक फिर तैयार। बार बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर लगभग 4 से 5 कदमों के इस्तेमाल करते हैं और इस बार स्विच करने की कोशिश यहां पर उल्टे हाथ खेलने की कोशिश की है, लेकिन गेंद तो सीधे विकेट कीपर के हाथ पर सुरक्षित। बेहतरीन बेहतरीन काम निभाते हुए विकेट के पीछे विकेट कीपर द्वारा जान बॉयज के। सिद्दीक फिर तैयार, बिंदी गेंदों के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाते हुए मन्ननगुड़ी ये मैदान। और इस बार भी अच्छी थी गेंद, कोई खराबी नहीं गेंद पर। स्लिप की जगह से एक सिंगल रन चुराए। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन स्टॉप यहां पर निश्चित रूप से काबिले तारीफ। अपने आप को हवा में तैराते हुए लंबी छलांग लगाकर सिद्दीक ने उस गेंद को रोक दिए। ये अच्छी प्रगति है जब कोई टीम के फील्डिंग की प्रदर्शन इस तरह से हो। वाकई बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाज ने उस गेंद को रोके, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। सिद्दीक अपनी ओवर की 5वीं गेंद को लेकर और इस बार खेलने की कोशिश जरूर की है। शॉर्ट थर्डमैन की दिशा पर गेंद को रोकने पर सफल फील्डर द्वारा यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। 7 ओवर की यह मैच 42 गेंदों के मुकाबला होगा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन टीम आज खेलने के लिए यहां पर तैयार खड़े हैं इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 के सीजन 2 पर। सिद्दीक अपने ओवर की आखिरी गेंद, अपनी हमेशा की शैली की तरह यह आखिरी बार, और इस बार भी उछालने के प्रयास बनाए। अच्छी फील्डिंग यहां पर 30 गजों के दायरे के अंदर ही गेंद को रोकने पर सफल बने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 31 रन, 31 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। यह अच्छी रनधारण है इस मैदान के लिए, क्योंकि खुले मैदान हर एक खिलाड़ी को अपनी हुनर दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इससे बेहतर मैदान बिल्कुल नहीं मिलेंगे अंडरआर्म क्रिकेट पर।
हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि इस मैदान पर अगर आप अपने आप को बेहतरीन दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आपके भविष्य बन जाएंगे, क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर हर एक खिलाड़ियों के सपना होते हैं आईपीएल जैसे क्रिकेट खेलना, बिग बैश जैसे क्रिकेट खेलना, उसी तरह अंडरआर्म क्रिकेट पर यकीन मानो कि इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर खेलने के लिए तरस रहे हैं क्रिकेट के खिलाड़ियां। तो ऐसे में यहां पर कोई खिलाड़ी अगर अपने आप को बेहतरीन दिखाते हैं, चाहे वो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, फील्डिंग के रूप पर हो, विकेट कीपर के रूप पर हो, किसी भी रूप पर अगर आप अपने आप को यहां पर बेहतरीन दिखाते हैं तो यूट्यूब चैनल के जरिए बेद्रा मीडिया तैयार खड़े हैं आपको खुलेआम दिखाने के लिए पूरे देश विदेशों पर। तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को 100% लगाइए मैदान पर, क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है। हर बार नहीं मिलते ऐसे क्रिकेट श्रृंखला, साल में एक बार एक नए योजना के साथ, एक नए पुरस्कार के साथ तैयार खड़े रहते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए। ये दूसरी बार ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 के नाम पर तैयार किए हैं इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला को। तो 5 ओवर पर 31 रन बनने के बाद छठे ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज बाला अपने स्पेल के दूसरी ओवर को लेकर, और बात स्लोवर डिलीवरी कॉट बिहाइंड की अपील भी अंपायर से, लेकिन अंपायर शेख मलली बिल्कुल उत्सुक नहीं थे इस अपील को मान्यता देने के लिए। कोई खराबी नहीं नजर आए गेंद पर। स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर आप देख सकते हैं हरीश पटेल, जो दक्षिण कन्नड़ जिला के मशहूर रेफरियों में माने जाते हैं। बाला फिर तैयार, और 12 अच्छी स्ट्रोक, बाएं हाथ के खिलाड़ी 1 रन तो आसानी से प्राप्त हुए, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं जब तक कि बाला उस गेंद को सीधे स्ट्राइक पर पहुंचा है। क्या शानदार रन आउट खेले होंगे यहां पर। बाला जैसे ही गेंद हाथ पर मिले सीधे निशाना लगाए स्ट्राइक पर, और गेंद तो सीधे जाकर विकेट के गिल्ले उड़ा चुके हैं, और इसी के साथों साथ बाएं हाथ के खिलाड़ी रवि को वापस जाने होंगे डगआउट पर। ये दूसरे विकेट, सेकंड डिसमिसल ऑफ तत्वमाशी मान्या। छठे ओवर पर शुरुआत के विकेट बच्ची के रूप पर हमने देखे थे। बच्ची बिना कोई रन बनाए 0 रन पर अपने विकेट गवाकर वापस गए थे, और उसके बाद जुड़े ये जोड़ी रवि और रंजू के जोड़ी निश्चित रूप से बिल्कुल कोई झिझक नहीं नजर आए। 5 ओवर तक अपनी बल्लेबाजी को इतनी बेहतरीन रखे, इतनी शानदार रखे थे, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। हर ओवर पर 6 से भी बढ़कर रन धारण प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला के अहमियत के अनुसार बल्लेबाजी निभाए थे रवि और रंजू ने। तो अब देखना होगा कि रवि के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी जुड़े हैं पवन, और बाहर अच्छी गेंद डॉटेड डिलीवरी। बाला वाकई जबरदस्त गेंदबाजी के साथ चमक रहे हैं जान बॉयज के बाला, जान डाल रहे हैं इस मैच पर बाला अपनी गेंदबाजी में। और इस बार भी अच्छी गेंद सीधे पैरों पर टकराए। वाकई इस पिच के धनात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए, इस पिच की हर एक अच्छी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी निभा रहे हैं यहां पर बाला। क्या शानदार गेंदबाजी कहने होंगे। 7 ओवर जैसे मैचों पर अगर कोई गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हो तो निश्चित रूप से कोई चिंता वाली बात नहीं होगी फील्डिंग वाली टीम को। और इस बार भी ऑप्शन से थोड़ी बाहर निकलकर खेलने की कोशिश बनाए, लेग स्लिप की जगह पर गेंद, और इस बार ओवर थ्रो भी नजर आए, लेकिन रन के लिए बिल्कुल मौका नहीं दिए। केवल मात्र 1 रन यहां पर प्राप्त होंगे। 34 रन कुल मिलाकर 34 आखिरी गेंद बचे हैं इस ओवर के। केवल मात्र 3 रन इस ओवर पर खर्च किए हैं 5 गेंदों पर। 5 गेंदों पर केवल 3 रन खर्च किए हैं यहां पर बाला ने। तो आप अनुमान लगाइए कि आखिरी मौके पर, जिसे डेथ ओवर कहते हैं, आखिरी मौके पर ज्यादा से ज्यादा दर्शक क्या है कि बल्लेबाजों के ऊपर फोकस डालते हैं कि बड़े से बड़े रन निकल आएंगे, आखिरी मौके पर लंबे चौड़े स्ट्रोक निकल आएंगे। लेकिन ये देखिए गेंदबाज अपनी हुनर को किस तरह से पेश कर रहे हैं मैदान में। और इस बार लेग स्टंप से बाहर, ये पहली वाइड इस ओवर के, लेग स्टंप से बाहर। अतिरिक्त खाता पर 1 रन जुटने के बाद रन संख्या बने हैं कुल मिलाकर 35 रन 35। बाला फिर तैयार, और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी धीमे गति के साथ, और इस बार रन आउट की खतरा। और जी हां, तीसरे विकेट यहां पर पवन रन आउट होकर वापस जा रहे हैं डगआउट पर। बाला वाकई क्या जबरदस्त, क्या शानदार ओवर को यहां पर पेश किए हैं। केवल 4 रन के साथ अपने ओवर को दिखाए हैं। छठे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 35 रन 35 आउट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। तो आखिरी वाली 6 गेंद बाकी, 7वीं ओवर के 6 गेंद यहां पर बाकी बचे हैं। तो देखना है कि इस 6 गेंदों पर
तत्वमाशी मान्या कितने रन बना पाते हैं जान बॉयज के खिलाफ। और इस मैच के बाद होगा अगले मैच बीएफसी मंजेश्वर और बिच्चू बॉयज, तो दोनों टीम तैयार हो जाएगा अगली मैच के लिए। उसी तरह उसके बाद होगा तीसरी मैच सीएससी पैवलिकी और एनी पोसोड। चौथे मैच होगा टीम कुंबड़ा और फुडलैंड होसंगडी। पांचवें मैच न्यू स्टार कुंजतूर और एसएनएनएस कासरगोड। तो सभी टीम टाइम के अनुसार, समय के अनुसार मैदान पर मौजूद हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सजावट के साथ, अच्छे नियमों के साथ संगठक इस क्रिकेट श्रृंखला को यहां पर पेश किए हैं। 6 ओवर पर 35। मुश्ताक तैयार आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो देखना है कि आखिरी ओवर पर मुश्ताक अपनी गेंदबाजी किस तरह से दिखा पाएंगे। और बल्लेबाजी पर 3 विकेट खोने के बाद नए खिलाड़ी प्रवीण रंजू के साथ जुड़ते हुए अब बल्लेबाजी निभाने होंगे। तो प्रवीण स्ट्राइक लेंगे इस बार। मुश्ताक वाइट ओवर द विकेट से गेंदबाज, लेफ्ट एम राउंड द विकेट से, और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश। यहां पर 1 रन अवश्य प्राप्त होंगे। एक सिंगल रन यहां पर। ये 7वीं ओवर के मैच आप देख रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी चौके या छक्के, बाउंड्री या सिक्सर अब तक बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाए हैं यहां पर। तो देखना है कि किस बल्लेबाज के बल्ले से निकल आएंगे वो शानदार सबसे पहला चौका। मुश्ताक फिर तैयार। अच्छी गेंद यहां पर सीधे सीधे खेले गेंदबाज की दिशा में, रोकने की कोशिश जरूर बनाए अपने पैरों के जरिए, लेकिन ना छोटी सी अंतरा रह गए गेंदबाज की पैर और गेंद के बीच। तो यहां पर भी एक सिंगल रन मिलेंगे। लगातार 2 गेंदों पर 2 रन बनने के बाद रन संख्या बने हैं 37 पर 37, 3 विकेटों के नुकसान के बाद। मुश्ताक बाएं हाथ राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए अच्छी शैली के साथ मुश्ताक, और बाहर स्वीप कर दिए गेंद को फाइन लेग की दिशा में अच्छे खासी फील्डिंग के साथ वापस करते हुए। जान बॉयज वाकई ही आज मैदान पर तो एक ऐसे सुंदर नजारे के साथ दिख रहे हैं। अच्छे जर्सी और उससे भी बेहतर फील्डिंग की सजावट, चाहे वो विकेट कीपिंग की बात हो, हर दिशा पर अपने आप को बेहतरीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर जान बॉयज। दूसरी तरफ तत्वमाशी मान्या, और इस बार कदमों के इस्तेमाल यहां पर आगे निकलते हुए खेलने की कोशिश, और यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। लगातार 4 गेंदों पर 4 सिंगल रन, 39 रन बने रन संख्या, 39 इज द टोटल। आखिरी वाली 2 गेंद बाकी। क्या इस 2 गेंद पर एक चौका लगा सकते हैं तत्वमाशी मान्या? अब तक तो अपनी इनिंग्स पर एक चौका बिल्कुल नहीं दाखिल नहीं हो पाए। और इस बार गेंद को फिर लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेले, दौड़ते हुए फील्डर गेंद के बाद, जब तक के फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। 2 रन इस बार समाप्त। दुगने रन के यहां पर असर पड़े हैं स्कोरबोर्ड पर। तो इस दुगने रन के बाद 41 गेंदों पर 41 बने हैं। 41 इज द टोटल फ्रॉम 41 बॉल्स। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। तत्वमाशी मान्या भले ही अपनी बल्लेबाजी पर चौके या छक्के नहीं दिखा पाए हो, लेकिन रन धारण जो है हर एक ओवर पर, हर गेंद पर रन बनाने की साथों साथ अपनी काबिलियत, अपनी हुनर को जो बल्लेबाजी पर अब तक जो बरकरार रखे हैं तत्वमाशी मान्या ने, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन दिखाए हैं अपने बल्लेबाजी में। मुश्ताक आखिरी बार बाएं हाथ के गेंदबाज, 2 बार जमीन को टपकाने के बाद ये आखिरी गेंद ऑप्शन से थोड़ी बाहर थे, और ये देखिए कितनी चालाकीपन विकेट कीपर के। बिंदी गेंद के साथ स्टंप आउट के करार भी मिले, तो 41 रन पर अपनी इनिंग्स समाप्त किए हैं। वाकई ही इनिंग्स के आखिरी गेंद कितने शानदार इस्तेमाल किए। वाइड के लिए देख रहे थे बल्लेबाज भी, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद अंदरूनी यानी कि इन स्विंग वाले गेंद के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ पर मिले, और इसी के साथ 41 रन पर अपनी इनिंग्स समाप्त करते हुए तत्वमाशी मान्या 42 रन के लक्ष्य दिए हैं यहां पर। 42 इज द टारगेट फ्रॉम 42 बॉल्स। 42 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं यहां पर जान बॉयज को। तो देखना यह है कि 7 ओवर पर इस 42 गेंदों पर 42 रन की मांग को क्या जान बॉयज पूरा कर पाएंगे यहां पर, या तत्वमाशी मान्या जिस तरह से हर गेंद पर रन बनाने के साथों साथ 42 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं, तो देखने वाले दर्शकों को अपनी गेंदबाजी की झलक दिखाकर, अच्छी खासी गेंदबाजी दिखाकर जान बॉयज को इस 42 रन बनाने से रोक पाएंगे यहां पर, यह देखने वाली बात है।
ग्लैडिएटर ट्रॉफी आप देख रहे हैं सीजन 2। पिछले बार हम शामिल थे इस क्रिकेट श्रृंखला में ग्लैडिएटर ट्रॉफी में, जो मंजेश्वर के पंचायत मैदान पर इस मैच को देखे थे हमने, ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 1। इस बार मंडनकुशी के इस मैदान, वाकई क्रिकेट के लिए बनाए हुए ये मैदान है। यहां पर कोई टीम अगर नहीं दिखा पाते हैं अपने हुनर को तो निश्चित रूप से दूसरे मौका नहीं मिलेंगे, क्योंकि गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, टीम हो, इस मैदान पर अपने आप को बेहतरीन दिखाते हैं तो निश्चित रूप से ट्रॉफी भी उनके लिए हकदार बनेंगे। तो देखना है कि इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर आखिरकार कौन होंगे वो फाइनलिस्ट, जो केरला विभाग के फाइनलिस्ट कौन होंगे, और शनिवार को चलने वाले कर्नाटक के जो 8 टीमों के बीच मैच होगा उनमें से फाइनल पहुंचने वाली टीम कौन से होंगे, ये इंतजार करते हुए दर्शकों को शनिवार ही पता चलेंगे। तो तब तक हम इंतजार जरूर करेंगे। तो यहां पर सतीश हनुमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार। सतीश जी, तत्वमाशी मान्या बिना कोई चौके के साथ, बिना कोई छक्के के साथ 41 रन बनाकर 42 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। आरंभिक विकेट खोने के बाद रंजू और रवि की जो पार्टनरशिप थे, शुरुआत की ओवर से लेकर छठे ओवर तक अच्छे खासे रन धारण के साथ रन बना रहे थे, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद भी रन धारण पर कोई असर नहीं पड़े यहां पर, यानी कि कोई कमी नहीं महसूस हो पाए। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस मैदान पर आप देख रहे हैं यहां पर गेंदबाजी किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से रन रोके जाते हैं, तो हमसे बेहतर आप जानते हैं इस मैदान पर। तो आपको क्या लगता है कि 42 रन गेंदों पर 42 रन की इस मांग को क्या पूरा कर पाएंगे जॉन बॉयस यहां पर? Well, it's a very good question, Nawaz, because just like you're mentioning about am I having experience of having a commentator in the last 3-4 years in this particular cricket ground. This is a good score in the morning session, Nawaz. 42 to get from 7 overs, 6 runs per hour is the required run rate. Just look at the scorecard. And the big contribution is from the extras. They considered 11 to 12 extras. Even though getting that much of extra, just imagine how difficult it's difficult for the batter to bat naturally. Because if you bowl very good line and length, I think this is a competitive total. Under this morning session, it's competitive total. If the bowlers bowls good line and length, and the fielders definitely they have to pull their socks in the fielding department, they can fight with this total. I think it's a competitive total. And for that, I think the bowlers of bowlers of Tatmamasi Manya have to bowl just like what opposition is did. They need to bowl the good line and length, not to give any width for the batsman to go for the big shot. Just looking at the nature of the ball, Nawaz, this is not that much hard enough to get some big score. It's very difficult to get the boundaries and sixes. You're just mentioning about there is no boundaries, there is no sixes. That means 42, certainly it's a competitive total. If the bowlers bowl good line and the fielders field well, they can fight with this total. जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने कि अगर गेंदबाज अपनी बिल्कुल न्यूनता को बाहर रखते हुए गेंदबाजी यहां पर निभाते हैं तो ये 42 रन भी भारी पड़ेंगे यहां पर। तो इससे पहले मैच शुरुआत हो तो हम माइक्रोफोन पर बुलाना चाहेंगे नासिर कन्याना को, जो बहुभाषा वीक्षक विवरणकार है। नासिर जी आइए, स्वागत है इस श्रृंखला में आपको। 42 गेंदों पर 42 रन के लक्ष्य है, तो अगली आवाज होंगे नासिर कन्याना के। Thank you so much, Satish Salyan, Mangalore, and Star Nawaz. പ്രിയമുള്ളവർ, ആവശ്യമായ ടൂർണമെന്റിന്റെ മനോഹരമായ ദിഗകൾക്ക് ആദ്യ പന്തത്തിന്റെ നേരെ ഇവിടെ നീങ്ങപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുബന്ധിച്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വശത്ത് മുസ്തഫ മിയപ്പദവാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ആബി പി സി റോഡ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാനായി മുസ്തഫ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ആബി ബി സി റോഡ് എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ഇരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റേഡിയം മണ്ണങ്കുഴിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റാണിത്. രണ്ടാമത്തെ രീതിയുടെ മുസ്തഫ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. നേരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മുസ്തഫ മിയപ്പദവ് അദ്ദേഹം പിന്മാറുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കവേ ഏകദേശം 42 ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച മത്സരം തത്വമസി മാന്യ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ബോയ്സ് ഇരു ടീമുകളും ശക്തരായി കൊണ്ടിരിക്കവേ 41 റൺസിൽ കഴിഞ്ഞ ഇന്നിംഗ്സിലൂടെ നേടിയ
ടീമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇവിടെ 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. 7 ഓവറുകളിലൂടെ ഈ മനോഹരമായ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം രണ്ടാം വർഷത്തെ അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി എന്ന മനോഹരമായ മത്സരത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരമാണിത്. തത്വമസി, മണ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ജാൻ ബോയ്സ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി BFC മഞ്ചേശ്വർ, അതുപോലെ തന്നെ ബിജു ബോയ്സ്. ഇരു ടീമിന്റെ പ്ലെയർമാർ ദയവ് ചെയ്ത് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ബിജു ബോയ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ BFC മഞ്ചേശ്വര. ഇവിടെ മത്സരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ പവർ പ്ലേയുടെ അവധിയാണ്. 2 ഓവറിന്റെ പവർ പ്ലേയുള്ള ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ ഓവറിലെ 3 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 4ാമത്തെ പന്തമായ BC റോഡ് എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ. മറുവശത്ത് റജാക്ക് മുട്ടം, FC മുട്ടത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥി. റസാഖ് മുട്ടം നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ BC റോഡ് എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാനായി കത്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ സന്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4ാമത്തെ പന്തുമായി നേരെ BC റോഡിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക്. 4ാമത്തെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ശ്രമം ഇവിടെ പക്ഷേ 1 റൺസുകളും നേടിയെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആകുന്നു. ആദ്യത്തെ 4 പന്ത് പിന്നിടവേ സ്കോർ നില വെറും 3 റൺസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കേണ്ട മത്സരമാണിത്. അഭിഷേകരമായ ടൂർണമെന്റിന്റെ 4ാമത്തെ പന്ത്. BC റോഡ് മികച്ച ഷോട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നീക്കത്തിൽ അത്ഭുതമായ രീതിയിലുള്ള ഫീൽഡിംഗ് ശൈലി. ഇതോടൊപ്പം 2 റൺസുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരു കൂട്ടുകെട്ടുകൾ. വിക്കറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മികച്ച നീക്കം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ 2 റൺസ് നേടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതായത് ആദ്യ ഓവറിലെ 5 പന്ത് പിന്നിട്ടപ്പോൾ സ്കോർ നില ഏകദേശം 5 റൺസുകൾ മാത്രം. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഇന്നിംഗ്സ് നമ്പർ 2 ഇവിടെ BC റോഡ് അദ്ദേഹം ബാറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാനായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവസാന പന്തമായി സന്തു. സന്തുവിന്റെ പന്തിനെ ഉയർത്തി അടിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഫീൽഡിംഗ് ശൈലിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫീൽഡർ. ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിനെ ഉയർത്തിയടിച്ച BC റോഡ് മികച്ച രീതി തന്നെ ആയിരുന്നു ഫീൽഡിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ. ഇതോടൊപ്പം ഓവർ നമ്പർ 1 അവസാനിക്കുന്നു. പവർ പ്ലേയുടെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കവേ സ്കോർ നില വെറും 6 റൺസുകൾ മാത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി BFC മഞ്ചേശ്വര, അതുപോലെ തന്നെ ബിജു ബോയ്സ് ഇരു ടീമിന്റെ പ്ലെയർമാർ ദയവ് ചെയ്ത് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റ് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലാതെ കടൽ കടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ മത്സരം ബെദ്ര മീഡിയയിലൂടെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കവേ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് മത്സരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രേമികൾക്ക്, ഗ്ലാഡിയേറ്ററിന്റെ പ്രേമികൾക്ക് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2022 ഉജ്ജ്വലമായ ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വാഗതങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. 1ാം സമ്മാനക്കാർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയും 2ാം സമ്മാനക്കാർക്ക് 50,000 രൂപയും സമ്മാനിക്കുന്ന, കൂടാതെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം ദിവസമാണിന്ന്. 3ാം തീയതിയായ ഇന്ന് കേരള ഫുള്ളിന്റെ മികച്ച 10 ടീമുകൾ അംഗത്തട്ടിയിലെത്തുന്ന മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണ് ഇവിടെ. സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ BC റോഡ്, ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ റഞ്ജു ശിവാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പന്തുമായി BC റോഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ പവർ പ്ലേയുടെ അവധിയാണ്. വെറും 3 ഫീൽഡേഴ്സ്ക്ക് മാത്രമേ 30 യാർഡിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കാനുള്ള അവസരം. ഇവിടെ BC റോഡ് അദ്ദേഹം ആദ്യ പന്തിന് വേണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ആദ്യ പന്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത പോലെ ഇവിടെ മികച്ച രീതി അമ്പയറുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സൂചന നീങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലുള്ള അനുകൂല്യമുണ്ടാകാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2ാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആകുന്നു. സ്കോർ നില വെറും 6 റൺസുകൾ മാത്രം. ഏകദേശം 36 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇനിയുള്ള 36 പന്തിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളത്. മികച്ച രീതി ഇവിടെ സ്കോറിലേക്ക് ഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 1 റൺസുകൾക്ക് ശേഷം 2ാമത്തെ റൺസിലേക്കുള്ള നീക്കം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ഇരു കൂട്ടുകെട്ടുകൾ. BC റോഡും റജാക്ക് മുട്ടം എന്ന അതിസമർത്ഥരായ വീര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഐഹിത്യ പെരുമകൾ നിറഞ്ഞ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മികച്ച അണ്ടർആം താരങ്ങളാണ് BC റോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റജാക്ക് മുട്ടം.
രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ 2 പന്ത് പിന്നിടവേ ആദ്യ പന്ത് ടോട്ടൽ ഡെലിവറി ആയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പന്ത് 2 റൺസുകൾ സ്ക്വയർ ലെഗ് ഭാഗത്തിലൂടെ കടത്തിയ ആ ഒരു ആപ്പിയുടെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ പന്തെറിയാൻ വേണ്ടി രഞ്ജു ശിവാജി അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ആപ്പി BC റോഡ് മികച്ച രീതി. പക്ഷേ മിഡ് ഓൺ, മിഡ് ഓഫ്, മിഡ് വിക്കറ്റ്, സ്ക്വയർ ലെഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വാർഡ് ഷോർട്ട് ലെഗ് തുടങ്ങിയ പൊസിഷനുകളിൽ 30 യാർഡിന്റെ അകത്തുള്ള ഫീൽഡേഴ്സ്മാരുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം തീർത്തും മനോഹരമാണ്. പവർ പ്ലേയുടെ ഒരു നീക്കം. സൈനപ്പ് BFC മഞ്ചേശ്വർ അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ചു ബോയ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 4ാമത്തെ ഓവറിന് മുമ്പായി സൈനപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 5ാമത്തെ ഓവർ ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ സൈനപ്പിന് അവസരമുണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2ാമത്തെ ഓവറിലെ 2 പന്ത് പിന്നിടവേ ആപ്പി BC റോഡ് അദ്ദേഹം സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച രീതികൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന രീതി സ്ക്വയർ ലെഗ് ഭാഗത്തിൽ ഫീൽഡറിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. 1 റൺസുകൾ നേടിയെടുക്കവേ റജാക്ക് മുട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ. ആദ്യത്തെ 3 പന്ത് പിന്നിടവേ 0-2-1 എന്ന നിലക്ക് കാണപ്പെടുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ വെറും 9 റൺസുകൾ മാത്രം. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച 2ാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റ്. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തുന്ന വമ്പരായ താരങ്ങൾ ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാന്ത്രിക കെട്ടയേക്കാനെത്തിയ മത്സരമാണ് അണ്ടർആം വേൾഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി. ഒരു പക്ഷത്ത് സതീഷ് സാലിയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ നവാസ്, അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കർ തുടങ്ങിയ കമന്റേറ്റർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അമ്പയർ പാനലിൽ ഇവിടെ ഹരീഷ് പടീൽ, ഷേഖ് മലളി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രീതികൾ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ മികച്ച രീതിയോ ഔട്ട് എന്ന സൂചന. വിക്കറ്റ് നമ്പർ 2. റജാക്ക് മുട്ടം പിന്മാറുകയാണ്. ആദ്യ വിക്കറ്റ് മുസ്തഫ മിയപ്പദം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റിന് ശേഷം ഇവിടെ റജാക്ക് മുട്ടം എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ഓണ്ടൻ പ്ലെയർ, ടീമിന്റെ 3ാമത്തെ പ്ലെയർ ഇവിടെ പിന്മാറുന്ന നീക്കമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെക്കോട്ടിലേക്ക് പിന്മാറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലെ 2ാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ മികച്ച പന്ത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ 4 പന്തുകൾ. അതായത് 4 പന്തിൽ വെറും 3 റൺസ് മാത്രമേ നൽകിയ രഞ്ജു ശിവാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം തീർത്തും ഇവിടെ മനോഹരമാണ്. ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റേഡിയം മണ്ണൻകുഴിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റ് അച്ചു ACC അദ്ദേഹമാണ് അച്ചു ACC അദ്ദേഹമാണ് 4ാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനായി ഇവിടെ എത്തിയത്. ജാനു ബോയ്സ് ബാറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ രഞ്ജു ശിവാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബൗളിംഗ് ശൈലി തീർത്തും മനോഹരമാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 4 പന്തുകൾ വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഏകദേശം 80 മുതൽ 90 kph വേഗത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് തമ്പറന്ന് പോകും. ആദ്യത്തെ 4 പന്തിന് ശേഷമുള്ള 5ാമത്തെ പന്തുമായി റഞ്ജു നേരെ അച്ചു ACCയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇവിടെ റൺഔട്ടിനുള്ള സാധ്യത, പക്ഷേ റൺസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ 2ാമത്തെ ഓവറിലെ 5ാമത്തെ പന്ത് വൈഡ് എന്ന സൂചനമായി അമ്പയർ നൽകുമ്പോൾ വൈഡ് +1 2 റൺസുകൾ നേടിയെടുക്കവേ സ്കോർ നില ഏകദേശം 11 റൺസുകളാണ്. 42 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റ് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2022 ആദ്യ ദിവസത്തിലെ ആദ്യ മത്സരമാണ്. ജോൺ ബോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ തത്വമസി മാന്യ. BFC മഞ്ചേശ്വര ബീച്ചു ബോയ്സ് ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ദയവ് ചെയ്ത് വേദിയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനോഹരമായ രീതി അവസാന പന്തിനെ നീക്കാനുള്ള സാധ്യത, പക്ഷേ 1 റൺസുകൾ നേടിയെടുക്കവേ ലെഗ് ബൈസ് എന്ന നീക്കമാണ് അമ്പയർ ഷെയ്ഖ് മലളി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് 2ാമത്തെ ഓവറിൽ ഏകദേശം 5 പന്ത് പിന്നിടവേ സ്കോർ നില 12 റൺസുകൾ. ബീച്ചു ബോയ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തുമായി റഞ്ജു ശിവാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അച്ചു ACC എന്ന അതിസമർത്ഥനായ ബാറ്റ്സ്മാനിലേക്ക് നീക്കം ബാക്ക്വേർഡ് ഷോട്ടിലേക്കിലൂടെ നീക്കുന്ന പന്ത് 1 റൺസുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അവസരം. ഇതോടൊപ്പം ഓവർ നമ്പർ 2 അവസാനിക്കുന്നു. പവർ പ്ലേയുടെ അവധി അവസാനിക്കവേ സ്കോർ നില ഏകദേശം 13 റൺസുകൾ, അതായത് 6.5 എന്ന നിലക്ക് റൺ റേറ്റ് കാണപ്പെടുകയാണ് മികച്ച 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. After the completion of first 2 overs, 13 is the total scoreboard and 6.5 is the current run rate and lots of big 2 wickets. One of the historical cricket festival of Underarm, the season 2 Underarm World WhatsApp group proudly presenting Gladiator Trophy 2022 powered by Saman Kalpara, one of the biggest tournament. In this tournament playing of interstate of Kerala, 10 teams and Karnataka's 8 teams. So last 5 overs remaining, 30 balls remaining here, and 13 is the total, and I think 29 run needed to victory in 30 balls. The look at that scoreboard, 30 balls remaining and they need 29 runs. Now he's a new bowler, Pradi, and the batsman now Achu ACC and RPP Sirodi. So both are well players in Kasaragod district. So now only for 5 overs, like 30 balls remaining and 29 run needed to victory. So after that power play, in first of all in 2 power plays time, only in 13 runs, 6.5 is the current run rate. After the completion of 2 overs and lots of big 2 wickets. So now Achu ACC waiting for the ball, the very good right hand batsman in the striking area, and Pradi is a bowler. Pradi to Achu, the first delivery of the third over. Look at that bowling style of Pradi. This time lovely ball, just hit the ball here in the mid off side, and wonderful running between the wicket, and they're rotating the strike once again, and 2 runs completed. And after the completion of 2.1 balls and scoreboard directly jumping to 15 runs, and they needed 27 runs in 29 balls. The look at that batsman styles of one of Achu ACC, one of the hard hitter of Underarm cricket, and another one RBB Sirod is a non-striker. So look at that second spell of the ball, second spell of the over. Send the the ball once again, the same position. Oh, look at that fielding style, wonderful in the mid side, and a very good running between the wicket for that partners, and 1 runs completed of the second delivery of the third over. Now RBB Sirod is a striker batsman. RBB is one of the danger player in Underarm cricket, especially Kasaragod district and neighbor district in Dakshina Karnataka. And now RBB is one of the very good right hand batsman. He also waiting for the ball now. Look at that bowling style for Pradi. Pradi to RBB Road. Now 10th spell of the over. This time lovely one. They strip the ball here, and slowly running between the wicket, and 1 run completed. So 3 balls, a very good bowling style. First of all 2 runs, and after that 2 balls, single. So now in 3 balls he gave it totally 4 runs. The both partners are discussing in the middle of the crease what we'll be doing for the next time. You are Achu ACC, a very good right hand batsman, and RBB Road is a non-striker. Now once again, now Pradi to Achu. Now 4th spell of the over for the tied over. So once again save the ball. Oh, what a good piece of ball for Pradi. A dot and delivery here. No any decision from the side of the official. And 4 deliveries completed. 42 is a big victory target in this innings. But now scoreboard showing only for 17 runs. And the last 2 balls remaining. Pradi to Achu. Some lovely ball once again. Oh, absolutely they're doing very well in back-to-back 2 balls. No contact with bat and ball. The last previous 2 balls, that's a dot and delivery. Pradi. Now last spell of the over. Pradi to Achu ACC once again. One of the very good right hand batsman Achu Adka or Achu ACC. Also waiting for the last delivery of the third over. Now just in the 17 runs. Look at that final delivery. Some lovely man. What a good shot here, and backward shot like this time. And 1 bounce and directly in the fielder, and 1 run completed. And over number 3 completed here, and 18 is the total. 6.00 is the current run rate, and lots of big 2 wickets. So anyway, I like to inviting for the next commentary box one of the
famous commentator in Dakshina Karnataka in national language Hindi, and one of the senior member of Dakshina Kannada district and district commentators association. I'd like to invite Mr. Star Nawaz to next 4 hours, and thank you so much. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗಾಗಿ ಟಗೌಟ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. तो शुरुआत के 3 ओवर पर 18 रन बनने के बाद अब बचे हुए 24 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत. 24 बॉल 20 रन 4 रन टू विन दिस मैच. बल्लेबाजी पर आप देख रहे हैं अभी और अच्छू, गेंदबाजी पर रंजू, और बाहर काफी कलात्मक शैली के साथ गेंद को सीधे मिड ऑन की दिशा पर गेंद को पुश करते हुए एक सिंगल रन चुरा कर रहा है, क्योंकि जरूरत भी इसी तरह के रन के है. हर गेंद पर रन बनाने की जरूरत है यहां पर जान बॉयज को. तो ऐसे में बिना कोई विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी दिखाते हुए हर गेंद पर अगर सिंगल रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होंगे. तो इसी तरह के अकलमंदी की बल्लेबाजी यहां पर दिखाना होगा, समझदारी की बल्लेबाजी यहां पर दिखाना होगा. एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की जरूरत है यहां पर जान बॉयज को. शुरुआत के 2 विकेट मुस्तफा और रजाक के रूप पर गिरने के बाद अभी और अच्छू की जो साझेदारी है यहां पर, अगर आने वाले 12 गेंदों तक ये विकेट के जो पार्टनरशिप है, इस विकेट की जो साझेदारी है, अगर बरकरार रहते हैं तो निश्चित रूप से जीत काफी नजदीक होंगे जान बॉयज के लिए. गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर नजर आए बल्लेबाज को. तो गेंद की दिशा को मद्देनजर रखते हुए छेड़ने के प्रयास बिल्कुल नहीं बनाए यहां पर बल्लेबाज ने. अभी बीसी रोड एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है, और इस बार गेंद को फिर मोड़ने की कोशिश, विकेट कीपर को हराने के बाद गेंद पीछे दौड़े, और इस बार भी शेख मलली वाइड के करार दिए. गेंदबाज को सजा सुनाई यहां पर, क्योंकि गलत रेखा पर अपनी गेंदबाजी दिखाए थे. लाइन और लेंथ की खराबी पर यहां पर दिखाते हुए तत्वमाशी मान्या यह समझना होगा यहां पर, अगर आपको इस मैच पर बरकरार रहना है, ग्लैडिएटर ट्रॉफी के फाइनल पर पहुंचने के सपना अपने दिल पर छुपा के रखने हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी गेंदबाजी पर ध्यान रखना होगा. हर एक कमजोरीपन को यहां पर मिटाना होगा अपनी गेंदबाजी में. यह अगली गेंद, और इस बार सुंदर तरीके से निश्चित रूप से कलात्मक शैली के साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ जान बॉयज जिस तरीके से गेंदबाजी निभाए थे, बिना कोई चौका देते हुए, हर एक ओवर भी एक से बढ़कर एक शानदार ओवर के साथ, खास करते हुए बाला अपनी गेंदबाजी, अपनी 2 ओवर की गेंदबाजी पर जिस तरह के चालाकीपन दिखाए थे गेंदबाजी में, अब तो देखिए बल्लेबाजी पर कितने अच्छे बल्लेबाजी दिखा रहे हैं यहां पर. और इस बार भी यहां पर गलत दिशा, यहां पर रंजू बल्लेबाजी पर तो आपने अच्छे खासे निभाए थे, लेकिन गेंदबाजी जब हर एक गेंद पर रन की जरूरत हो तो ऐसे में आपके हाथों से इस तरह की गलती माफी के लायक नहीं होंगे दोस्त. और इस बार ये देखिए बुलेट स्ट्रोक, और इस श्रृंखला के सबसे पहला शानदार छक्का. कितनी शानदार रफ्तार के छक्का यहां पर. अभी बीसी रोड निश्चित रूप से रोकने वाली कोई भी बात वहां पर नहीं बने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर उस गेंद को बेचे, इतने रफ्तार से गेंद पर फील्डर तो देखते रह गए, क्योंकि फ्लैटेड तरीके से गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के अंदर घुस चुके थे. और इस बार देखिए गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, गेंद के पीछे दौड़ते हुए फील्डर, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे. इस बार भी आबी को मिले 2 रन यहां पर. अभी बीसी रोड, क्या शानदार बल्लेबाजी यहां पर, निश्चित रूप से काबिले तारीफ. अगर इस मैदान पर अपनी काबिलियत को इस तरह से दिखाते हैं अभी, तो इनके लिए कोई सवाल नहीं होंगे यहां पर. और यहां पर खतरा बन सकते थे. यहां पर अच्छू अपनी क्रीज तोड़ते हुए आगे निकल चुके थे, लेकिन अभी
इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए रन की कोई भी वहां पर गुंजाइश नहीं बनाए, कोई भी आशा नहीं दिखाए रन के लिए। और इस बार भी ऑप्शन से बाहर रंजू बहुत ही महंगी साबित होते हुए यहां पर वाइडों के साथ, छक्के के साथ। और इस बार सीधे कवर्स की दिशा पर उछाले हवा में गेंद और इस बार नहीं बचे यहां पर। अभी बीसी रोड कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं एक अच्छी इनिंग्स रचाने के बाद, अपनी टीम को जीत के नजदीक खड़े करते हुए। 42 गेंदों पर 42 रन की जरूरत है जीतने के लिए जायंट बॉयज को। तो ऐसे में 4 ओवर पर 24 रन की जरूरत थी इस ओवर की शुरुआत पर। तो रंजू की गेंदबाजी पर, रंजू की कमजोरीपन, गेंदबाजी पर जो कमजोरीपन उन्होंने दिखाए हैं, वो कमजोरीपन के बाद एक छक्के भी लगाए हैं। तो इस छक्के के बाद रन संख्या कुल मिलाकर चलान लगाते हुए 33 पर पहुंचे हैं। 33 इज द टोटल। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बन चुके हैं। तो ऐसे में अब जरूरत है 3 ओवर पर 9 रन के। 18 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत। तो 4 ओवर समाप्त होते ही अगले मैच के जो साइन अप है, जो हस्ताक्षर प्रक्रिया है, वो खत्म हो चुके हैं। ये संगठकों के निर्धार है, इस क्रिकेट श्रृंखला के नियम है। जो अगले मैच खेलने वाले टीम, उससे पहले वाले मैच के 4 ओवर से पहले ही अपने हस्ताक्षर प्रक्रिया को यहां पर पूरा करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो जितने हस्ताक्षर यहां पर दाखिल होते हैं उसी खिलाड़ियों को खेलने के मौका मिलेंगे। और इस बार गेंद को घुमाए, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए और ये रहा शानदार चौका। अच्छू इस चौके के साथ अपनी टीम की जीत को पक्के करने के प्रयास यहां पर। अब तक तो रन संख्या यहां पर 37 पर पहुंचे हैं। 37 इज द टोटल। केवल मात्र 5 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। और इस बार सुंदर गेंद और उससे भी बढ़कर कलात्मक शैली के साथ, क्योंकि आचू ये जानते थे कि आसानी से गेंद जरूर थे, लेकिन अगर इस गेंद को ऊंचे शॉट लगाने की प्रयास करें तो कैच आउट होने की संभावना बन सकते थे। और इस बार भी थोड़ी सी कलात्मक शैली के साथ आखिरी मौके तक गेंद को इंतजार करने के बाद गेंद को रोकने के प्रयास बनाए, लेकिन गेंद सीधे पैरों पर टकराने के बाद अंपायर ने कहा कि ये लेग बाय है, यहां पर बल्लेबाज को रन नहीं मिलेंगे। 38 रन कुल मिलाकर 38 इज द टोटल। गेंदबाज फिर तैयार और बार गेंद को फिर मिड विकेट क्षेत्र पर उछाले हवा में गेंद और इस बार रोकने पाया। और इसी के साथों साथ जान बॉयज अपनी जीत यहां पर दाखिल कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, अभिनंदन करते हैं जान बॉयज को। और उसी तरह तत्वमाशी मान्या इस श्रृंखला में भाग लिए, अपने हुनर दिखाने के लिए, इस श्रृंखला पर भाग लेने के लिए हम धन्यवाद कहते हैं ग्लैडिएटर की तरफ से। तो इस 42 रन को 4.3 ओवर पर समाप्त कर चुके हैं यहां पर जान बॉयज। एक अच्छी जीत के साथ जान बॉयज अगले मैच के लिए यहां पर तैयार हो जाएंगे। तो अगला मैच होगा इस मैदान में बीएफसी मंजेश्वर और बिच्छू बॉयज। बिच्छू बॉयज और बीएफसी मंजेश्वर। तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए बेशक अपनी बल्लेबाजी में एक शानदार छक्के लगाकर जान बॉयज की जीत पर अहम भूमिका निभाने वाले अभी बीसी रोड मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए आपके नाम यहां पर दाखिल हो चुके हैं। तो तुरंत आप सीधे उस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। फिरोज मंजेश्वर इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को प्रदान करेंगे। अयाज बिल्ली पदव इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को स्पॉन्सर किए हैं। हम धन्यवाद कहते हैं अयाज जी आपको, आपके प्रोत्साहन के लिए। जिस तरह से आप इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, ग्लैडिएटर ट्रॉफी के साथ मैन ऑफ द मैच पुरस्कार देते हुए आप जिस तरह से प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसी तरह बने रहिएगा, लगे रहिएगा ग्लैडिएटर ट्रॉफी के साथ। तो अभिनंदन करते हैं आबी बीसी रोड को जो मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पर भाजन हुए हैं। और उसी तरह फिरोज मंजेश्वर तैयार खड़े हैं इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान करने के लिए। तो हम कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि उस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के जो दृश्य है वो अपने कैमरा पर कैद करते हुए टीवी पर दिखाएं।
तो अगले मैच शुरुआत होने से पहले माइक्रोफोन पर भी हम बदलावन करते हैं। सतीश हनुमान मैंगलोर वापस आएंगे अपनी आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरण के साथ। तो अगला मैच होगा बीएफसी मंजेश्वर और बिच्छू बॉयज कासरगोड परिसर के दो ऐसे बलाढ्य टीम। पिछले कई सालों से ये दोनों टीम कई सारे पुरस्कारों के साथ अपने आप को दिखाए हैं। तो दर्शकों को हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं मत जाइएगा मोबाइल छोड़कर, जो बेद्रा मीडिया आपके लिए यहां के हर एक कारनामा को अपने कैमरा पर कैद करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगले मैच होगा 6 ओवर के मैच, 4 गेंदबाज होंगे, 6 ओवर्स मैच। एक अच्छे मैच की शुरुआत से पहले सतीश हनुमान आपके सामने। Hello, mic. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello. Hello, mic check. Check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Mic check. So thank you very much, Star Nawaz. Coming back to this match number 2 of this day number 1 of most prestigious Gladiator Trophy 2022. And quite unfortunately, disappointment. The first match of the day number 1, the inaugural match, ended with the one-sided and comprehensive victory for John Boys. And they're entering into the second round of this most prestigious Gladiator Trophy 2022. And already I just mentioned about 42 definitely it's going to be depending total if you bowl good line and length, and because of the opposition team they considered a lot of extras, and they pays the penalty for that. Line and length is not up to the mark and they paid the penalty for that. Now it's going to be one more good match. Bitch Boys, and they takes on BFC. It looks like BFC captain, after winning the toss, no hesitation in his mind, they elected to field first. But just seeing the result of previous match, the batting first team has lost the match. The fielding first team, those are chased down. They won the match, and because of that, BFC BFC captain, after winning the toss, they elected to field first. The condition looks to be very same here. The wind is very constant in this most beautiful cricket ground, the huge ground actually. So one of the most fantastic cricket ground, I must say, in Kasaragod district. You can't find the bigger ground than this. Just like Star Nawaz is mentioning about, each and every player has got a golden opportunity to showcase their talent, because this is a huge ground. When you are getting a huge ground, it's very easy for the batters to find the gap. Just like Nawaz is mentioning about, you can play your natural game, stroke making. You can place the ball here and convert single into two by placing the ball. So a lot of opportunity. The cricket is not all about hitting a big shots like boundaries and sixes, but even if you get a ground like this, you can get a single, you can rotate the strike, you can play a big innings. And that's what we are mentioning about. When playing in this particular cricket ground, definitely going to be a privilege for any player to come and perform, and especially in this particular cricket tournament, the prestigious cricket tournament like Gladiators Trophy 2022. And just already mentioned, they are the one. They really built a bridge between Karnataka and Kerala players. The bridge in the sense, the relationship bridge, the friendship bridge, and of course the bridge between the two talents of two districts, South Kent districts, and of course Kasaragod district.
So just little bit correction, and I would like to mention that that's a number of over. Little bit changes in the number of overs of the matches. Here on Oxford, organizer decided to play a 6 over side to play, and because of shortage of time, and I request all cricket teams please cooperate with the organizers, because just seeing that match is a little bit started not in time, so that they decided to reduce from 7 to 6 overs. And first ball of the over number 1, right on the money, but appeal for leg before wicket. Ball is certainly pitching outside the line of leg stump. Once the ball pitched outside the line of leg stump, even the ball is going to hit the midland of stump, but certainly the decision is going in favor of the batter. So that first ball actually is a ball, a very good line and land, tidy line and land, and batter couldn't manage to take any advantage of that one. Rafiq is off the strike, and one more opener batter. The next ball, little bit misjudgment there from Ammi, seeing that line of the delivery outside the line of off time, but it's well within the reach of the batter, so that he just misjudged that one, and there is no chance of any run at all. Round the wicket he bowls, beautifully bowled, excellent delivery indeed. Quicker one, beaten by the face, inside edge of the bat, hitting his legs, and before that square leg fielder comes into picture, the batter has got ample time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 2 on the board without loss of any wickets. Bitchy boys, one of the favorite in this cricket ground. They're playing with their home condition outside the line of off time. Went for the big shot again, misfield there by the bowler on his follow throw. Stoppable one, but might be the fielder, the bowler on his follow through. Little bit late to react to that the fielding, and ball just missing his hand. The batter has got a single run. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Deep mid wicket, deep or long off. The 2 fielders are in the deep in the power play. Mid off, mid on inside the ring. There is short cover point, backward point shot, third man, and backstop fielder. This time appeal for like before wicket. This time very confident the bowler. But once again I just mentioning about whenever you're operating around the wicket, all the opportunity that ball is pitching outside the line of leg stump, might be that ball little bit fractionally that ball just outside the line of leg stump, that ball pitched, and batter is survived. But it's a good line actually, very good bowling from bowler Ansar in this over. Is not giving any fit for the batter. This time lofted that one right in the gap towards the deep long on boundary. It's going to be just inside the fence. Excellent fielding there by the fielder deep long on, saving some runs for his team. That was a lovely looking on drive. Perfect cricketing stroke in the power play overs. Just up and over. Lofted over the infield. Got the placement right, and even the better fielding there by the fielder. Just chasing the ball, just like cat chasing a mouse, and just winning the race against the ball, and they save some runs for his team. And before that they completed couple of runs. So after completion of over number 1, it's 6 without loss of any wicket. Steady start from these 2 opener batter. Just we have already mentioned about how difficult it's going to be for the batters to get some big shot, but the batters of Jan Boys, they got some big shot. They got 1-2 sixes in that previous match. That means if the batter able to hit the ball with the timing, with the power, they can clear the ground boundary line. So far the BFC captain looks little bit comfortable, seeing that first over is bowled by Ansar is a quiet one. Just 6 runs is conceded. Not really bother about that 6 runs, especially in the 6-over format of the games. When you are bowling in the power play, 6 runs is not a big run in the power play over, and wait to see how well these 2 batters will go into bat in the 2nd over of the power play. Little bit bowler name please. 2 jersey number, the same number they got. Bowler name please. Bowler name. Umpire bowler name. Okay. Namit, because same jersey number for 2 players. That was a confusion here. Namit of BFC, right arm over the wicket. Outside run of off stamp, but fielder there in the back foot point. Comfortable catch. Tried to cut that one, but this time batter away from his body. Tried to play that one over the infield, but didn't got that much of time what he was looking for. As the fact that he's played that one away from his bat,
Not really good thinking, not a good piece of batting performance here for the batter. Just reaching for the delivery without any timing. Got a top edge and backward point fielder makes no mistake at all. The first wicket is back into pavilion of Bichu boys. They lost the wicket of Ammi, who scored just 1 run after facing 3 deliveries. They lost their first wicket and very important breakthrough. Their former bowler Namit has got a good start from his bowling. Just to start what he wanted. So new batter Jabir, one more excellent performer from the bat. Very busy customer, tremendous striker of the ball, who got the ability of playing a big innings. Took his own time to settle down. Once he settled down, he is very useful player, Jabir. And the right position for him, number 3 batters, always coming in a good number. There's a number 3. It's a very important batting number for good players. Lofted that one, lack of placement, down to deep long on. One more wicket is back into pavilion. Back to back 2 wickets. Nimit is strikes. It is first over. The first 2 deliveries, the wicket taking deliveries. That means he's on hat-trick. Just like I mentioned about the short selection is going to be key in this particular cricket ground. Only 2 fielders outside the circle, mind you, and you choosing one of them means it was a lack of presence of mind, I must say. This is not a good cricketing stroke. You need to see that where the fielder is. Of course, you are playing a power play over. Of course, your team is needed some big shot, but short selection is very key. Unfortunately, having such a big ground here, and out of that 2 fielders, you're choosing one fielder. And that's all happening, isn't it? Sometimes it's very difficult to say the mindset of the batter because of the line of the delivery may be encouraging the batter to play such kind of cricketing stroke. And that means the bowler bowling as for his field. That's so important for a bowler to need to bowl as per your field. You know exactly the fielder is a deep long on and the line you have to bowl that around midland off stump. And you can get some wickets. So he's on hat-trick now. Wait to see, can he able to pick the first hat-trick of this tournament? Namit bowls. That one outside the line of off-stump, too far in the relegation. So that he just missed out the opportunity of hat-trick. White call by umpire. One more addition to total scoreboard moves on to 8 on the board. 7 on the board, correction for the loss of 2 wicket. Namit bowls. Drives that one, lovely looking drive there from Zabir, correction down to short mid-off region. And before that, short extra off fielder to come across to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Scoreboard moving after a long time. The first run came from that over. And second run, in fact, one is from the wide, now one from the bat. Altogether, scoreboard is 8 on the board for the loss of 2 wickets. So far, Namit has been outstanding in his bowling. Right arm over the wicket, short on our balls. Nicely played that one. Nice looking drive off the toes in the negation, covering his stump. And Salam, the new batter, got a single down to short mid-on. That's the way you need to build your partnership. Once you have to settle down in the middle, once you're high in, you can play your natural cricketing strokes. But this is a 6-over format of game, not a matter of time for the batter to think. And again, Namit bowls, went for the reverse break, the reverse stroke in the relegation, switch it, attempted by Zabi in the relegation, one of his favorite one, but this time ball is outside the line of leg stump. Good thinking there by bowler, just changing the line, seeing the intention of the batter, and there is no chance of any run. Again, one more wide. This is the second wide of this over, just excluding that wides in this over. So far it was a very good over. That's why it's so important for each and every bowler. The discipline is very important. But this time 2 wides already conceded by Namit. Right arm over the wicket. Balls down the leg stump. A little bit ball is dripping down the leg stump. Went for the big shot. Lucky for the bowler that batter just missed the opportunity to freeze his arm. And just a single for the batter. Scoreboard moves on to 11 on the board. Warm welcome to Ravi Uppala. One more a popular and experienced umpire just came here in our commentary box. On behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, we would like to give a special welcome for Ravi Uppala. So once again, coming back to this over, it's a quiet over. It's a very good over indeed. First over, it's 6 on the board. After completion of over number 2, it's 11. That means 5 runs and 2 wickets, and that means it was excellent stuff there from Namit. Not only in the form of economically, but even the wicket taking over as well. Just putting the pressure onto the batters after picking up 2 wickets in 2 consecutive deliveries. Now, the fielding position is a little bit changing.
quite understandable. After that power play, we can see that so many bodies out there in the deep, and I want to see that one at deep extra cover, deep long off, and deep long on, and deep mid wicket, and deep backward square leg are the fielders in the deep inside the ring, cover point and backward point on almost in a backward point, cover point coming into backward point. One at gully, one at short third man, one at short fine leg, and a deep mid wicket. No ball call by umpire straight away, and they're coming back for the second as well. Now the question is why it's no ball. The Mohan Ayad is saying that behind the popping crease there is a 3 fielders. That was not allowed as per the rules and regulation of the cricket is concerned. So this is the presence of mind we are talking about. Even bowler, captain, the wicket keeper is the man who need to see where the fielder is. He is the one who can see the field set quite easily. So its job is to see that where the fielder is. This is really not a good to see. You are playing a big tournament like Gladiator Trophy. Still you are not know what the rules and regulation is. That was really unfortunate because this is a free hit delivery. And in this delivery, if the batter able to take a full advantage of that one, that will going to affect the result of the match. That's very important. So here is Ansar bowling right arm from the wicket, free hit delivery, just like I'm talking about. Just like I'm talking about how costly it's going to be. One poor decision, one absence of mind, and no ball has been given. All in sudden, the batsman Zabi knows that this is the one delivery. I have to take a full advantage of that one. And with the full hand, he taken the advantage and clearing the ground down to deep wicket for a maximum. So because of that 6 score, jumped into 20 now. What a great hit there from Zabi. Just shuffled across the line of the delivery and got that one right from the middle of the bat. Most importantly, he picked up a line and line very quickly. Shuffled across the line of the delivery with the full face of the bat. He knows exactly the direction of the wind towards the onside region, and with the direction of the wind, he is clearing the big ground. He got a big 6 and score jumped into 20 on the board. Unfortunately for Ansar. Right arm around the wicket, balls beautifully bowled. This time almost forcing the batsman onto the back foot. But at the last moment up, he's got his outside edge of the bat ball running down to short third man region. And before that short third man region to fields that one, batter has got ample time to complete the single. Productive over is progressing here. For Bichu boys, they're looking towards some big score here. This is just a third over in progress. They got already 21 valuable runs in the board. Again, that was a really sensible batting there from Salam, seeing that his partner Zabi is playing very well. His job is to pick the single and rotate the strike. Rotation of strike is so important in cricket. Whether you're playing a 6-over format of a game, whether you're playing a big format of a games, but rotation of strike is so important in cricket. And the scoreboard moves on to 22 on the board for the loss of 2 wicket. Very good partnership is building up here. Once again, look at the placement and they're running hard, running hard. That was a sensible batting there from Zabi. He know exactly where the fielder is. Know exactly the fielder is in a deep in extra cover. Once you soft end comes into play, it's very difficult for fielder to come across because a huge ground. I already mentioned in this particular cricket, you can convert single into 2, 2 into 3, and that was really required. That was a presence of mind, sensible batting there from Zabi. Scoreboard was on to 24 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Productive over is in progress. Right arm from the wicket again. Zabi make the placement. This time he's hit that one powerfully. So that ball went very quickly to deep extra cover, and before that extra cover fielder to come across and fields the ball, and the batter has got ample time to complete the single. With that single, quarter century coming up here, 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Here is again now Ansar balls. Salam this time nice looking on drive, off drive, straight drive. One of the most delightful stroke to watch in underarm cricket. Not an easy stroke to play in the book. Just wide off a bowler on his follow through and place the ball down to mid off and retain the strike for the next over. Completion of over number 3. Which boys are looking very commanding position as far as run rate is concerned. Even they lost 2 wickets, quick wickets, but these 2 batters are really batted as per the condition required. Not only they kept the wickets in hand, and at the same time they're accelerating the run rate quite beautifully. So 26 on the board, and just under 9 runs per over run rate progressing here, and certainly the lot of hard work required here for BFC. Lot of cricketing action in South Kendra districts as well. The test match of underarm cricket is going on in UCGK ground, the big semi-final. Top ranking Vishal Kodikal takes on one more top ranking young friends who are in the first semi-final. That was a 30-over format of game. You can't find anywhere that kind of format of games, 30 overs.
That was one of the most wonderful game of cricket to watch. And unfortunately, I'm just missing that semi-final, big semi-final. And that was definitely going to be the opportunity for the players show their full talent, because 30 overs format of the games always just like a test matches of underarm cricket. Not so easy to play all 30 overs for 30 overs, because some kind of patience is required, the temperament, the technique, the dedication, everything is tested in that particular format of the games. And only top teams now came into big four places, number 1, number 2, number 3, number 4, because in the afternoon, and Friends Kuttar takes on KFC Kodikal in the second semi-final. That's the news all about in UCG cricket ground. Coming back to in this cricket ground, one more fantastic cricket ground, Janab Golden Abdul Khader Memorial Cricket Ground here in Uppala. First ball, the leg spinner is introduced, and the first ball itself is right on the money as he bowls outside the run of off stamp, and batter not interested to take any kind of stroke, left that one. Here is the next one, slower one, beautifully bowled, just testing the temperament of the batsman with that line and length, because so confusion, isn't it? Looks like the bowler is bowling a leg spinner, it's action, but I think he bowled little off spin delivery. Just watching his bowling action, he's operating round the wicket, look at that one. Is bowling off cutter, the beautiful delivery, absolutely magnificent. That kind of restriction required for BFC after considering so many runs in the 3 overs. This is the 1 over they wanted to restrict, and so far is Ajji just playing with the temperament of the batsman. 3 dotted deliveries and 4 time in this over bowling from the player's dugout and balls. This time right behind the line of the delivery off the back foot. Quickly realizing Salam, I already played 3 dotted deliveries. Now my time is to take the single and give the strike to my partner Zabi, and wait and see how Zabi will going to take this man. So far it's a quiet over, excellent over. 4 deliveries, just a single run. And Zabir once again back on strike. He is looking pretty good in the middle, and after hitting 1-6, he looks so confident in the middle, because that was a responsibility, isn't it? He is the captain of the side, you know exactly the kind of innings is required for his team. And now Azi, right arm round the wicket to Zabi. Zabi looking for the expansive drive, not quite getting hold of that one properly. He wanted to play that one down to extra coverage, and because of mistiming, ball is not really coming to the bat. He bowled a slower one, just I already mentioned about it's not an easy when you're bowling a slower one. Batter have to wait for the ball to coming to his bat, and his last time in this over, bowling right arm round the wicket to Salam. Salam drives that one again, lack of placement, short mid off fielder fields the ball. Just a couple of runs, wonderful performance here for Mazi. Absolutely perfect over, especially for BFC. They have to restrict the run rate of their opposition, and Azi bowls a very good over here. And after completion of over number 4, and scoreboard is at 29 on the board for the loss of 2 wicket. And before the next over will go into commence, once again I would like to invite Star Nawaz to take over the microphone. And Star Nawaz so far has been outstanding, isn't it? 29 and good start. 2 overs, 2 wickets fell very quickly, but these 2 batters in the middle, they batted sensibly. Of course, the previous over is the quiet over, but not much bothered about that, because they got some good run rate they maintained. What do you think? How many runs they will going to score in the remaining 3 overs? Having settled batsmen like Zabi in the middle, Salam in the middle, I think any score 50 plus is going to be a very good total to depend. जी बिल्कुल सही अनुमान लगाया सतीश जी आपने, क्योंकि शुरुआत के 4 ओवर पर जिस तरह से 29 रन बने हैं, आरंभिक 2 विकेट गंवाने के बाद जाफिर और सलाम की जोड़ी जो है जिस तरह से ये रन चुरा रहे हैं विपक्षी गेंदबाजों से, ये वाकई ही काबिल तारीफ। पिछली ओवर पर थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिले हैं अजी की गेंदबाजी में। उससे पहले जो 3 ओवर थे, उन तीनों ओवर पर जिस तरह से जाफिर और सलाम ने अपनी बल्ला की कमाल की दिखाए हैं बल्लेबाजी में, ये निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर लगे। अगर इसी तरह अगर अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं बिना विकेट खोए, तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने कहा कि ये पार्टनरशिप जो है गोल्डन पार्टनरशिप बनेंगे बल्लेबाजी के टीम के लिए। और इस बार सलाम अपने विकेट को यहां पर गवा चुके हैं, खुदकुशी के रो पर जानबूझकर अपने विकेट को गवा चुके हैं यहां पर, क्योंकि खेलने के बाद वापस आने की कोई भी चतुराई यहां पर नहीं दिखाई सलाम द्वारा। हालांकि
ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले ओवर पर लगातार बिंदी गेंद बनाने के बाद जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो क्रीज पर जो दिखाते हैं बल्लेबाज, उस कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम रह गए यहाँ पर सलाम के। तो इस वजह से अपने आप को आउट होना ही बेहतर समझे यहाँ पर सलाम। तो इस प्रकार सलाम अपनी विकेट गवाकर वापस जा रहे हैं टगआउट पर तीसरे विकेट के रो पर। तो अब देखना है कि बचे हुए 17 गेंद, 11 गेंद, माफ कीजिएगा 11 गेंद बचे हैं, क्योंकि ये 6 ओवर की मैच है, 6 ओवर्स मैच है। तो ऐसे में इस 11 गेंदों पर अब दिखाना होगा बिच्छू बॉयज अपनी बल्लेबाजी की कमालगी को। बिच्छू, आप जानते हैं मतलब क्या है बिच्छू के, अगर एक बार काट लेते हैं तो उसकी जहरीलीपन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर आप विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ वार करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, तो ऐसे रन चुराना होगा, ऐसे रन भी इकट्ठा करना होगा जो पहुंचने पाए विपक्षी टीम। और इस बार अच्छी थी गेंद, खड़े रुके गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज शिवा द्वारा, परिसर के एक बेहतरीन गेंदबाजों में माने जाते हैं। बीएससी मंजेश्वर के एक भरोसेमंद गेंदबाज है, पिछले 15-16 सालों से बीएससी के साथ अपनी योगदान निभाते हुए कई सारे पुरस्कार पाए हैं और अपनी टीम को भी पुरस्कार दिलाए हैं। तो ऐसे में ये वो और देखना होगा शिवा। और बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश यहां पर भी 22 के इशारा अंपायर से। पिछले ओवर अजीज के हाथ पर इस्तेमाल होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि बीएससी मंजेश्वर जो खोए हुए विश्वास को वापस पाए हैं गेंदबाजी पर। जिस तरह से जाबिर रन चुरा रहे थे छक्के के साथ, तो उनकी विश्वास को और इस बार काफी ऊंचाई, और यहां पर नो बॉल के इशारा अंपायर से। शेख मलली इस ऊंचाई को बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट की गेंदबाजी पर एक ऊंचाई के लिए एक हद सीमित किए जाते हैं, और यहां पर तो शिवा की गेंदबाजी काफी ऊंचाई पर नजर आए अंपायर को, और तुरंत अंपायर ने कहा कि यह गलत गेंद है। तो यहां पर मौका मिलेंगे फ्री हिट के जाबिर के लिए। और इस बार भी ऊंचे के लिए हवा में गेंद, ये फ्री हिट की गेंद, और जब तक के फील्डर उस गेंद को कैच के रूप लेने के बाद वापस करे 2 रन के मौका मिलेंगे। पिछली बार मिले हुए फ्री हिट की मौके की भरपूर फायदा उठाते जाबिर अपनी बल्लेबाजी में छक्के के साथ अंजाम दिखाए थे, और इस बार भी कोशिश जरूर की है उसी तरह के शॉट के, लेकिन हालांकि सीधे फील्डर के हाथ पर। और इस बार देखिए गेंद को घुमाए उल्टे हाथ के साथ, गेंद सीमा रेखा की तरफ आगे बढ़ते हुए ये रहा शानदार ग्लैडिएटर चौका। पिछली बार फ्री हिट पर छक्के निकल आए थे जाबिर की बल्ले से, और ये देखिए चौका यहां पर। तो ये साफ साफ ये नजर आते हैं कि इस मैदान पर मंडनपुरी के ये मैदान पर अगर कोई खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी को, अपनी हुनर को, अपनी काबिलियत को इस तरह से दिखाते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छे खिलाड़ी है, इस बात पर कोई शक नहीं होगा। शिवा फिर तैयार, और इस बार भी अच्छी थी गेंद, विकेट के पीछे बेहतरीन फील्डिंग के साथ गेंद को वापस कर दिए, और थोड़ी सी भी चूक हो जाती वहां पर फील्डर के हाथों पर तो निश्चित रूप से गेंद सीधी सीमा रेखा की तरफ निकल जाते। तो ऐसे में ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 40 रन। हर ओवर पर 8 रन के आधार पर, 8 पर ओवर, 8 रन के आधार पर रन संख्या अब तक जुड़े हैं। तो शुरुआत की 3 विकेट गंवाने के बाद 5 ओवर पर 40 रन अब तक बने हैं। एक तरफ खड़े हैं जाबिर जो टिक चुके हैं मैदान में, इस मैच पे तो टिक चुके हैं, हर एक गेंदबाज की गेंदों को इस तरह से निभा रहे हैं, हर एक गेंदबाज की सवाल को जवाब अपनी बल्ले से काफी नाजुकी के साथ, अपने अनुभव के अनुसार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार गए हैं चम्मू अरिमला। ये नाम आप जाने होंगे, केरला परिसर पर ही नहीं बल्कि मैंगलोर परिसर पर भी, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला पर भी ये नाम बहुत ही मशहूर हो चुके हैं चम्मू अरिमला। जब ये बल्ला लेकर मैदान पर उतर आते हैं तो इनकी बल्ले से चौके और छक्के की निरीक्षण जो है ये बहुत ही बड़ी मात्रा पर दर्शक देखते हैं। तो ऐसे में ये 2 कमाल की बल्लेबाजों की जोड़ी जो है, अब देखना है कि आखिरी वाली 6 गेंदों पर क्या 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर इस श्रृंखला के पहला अर्धशतक दाखिल कर पाएंगे यहां पर बिच्छू बॉयज, ये देखना बाकी। यहां पर अजी की गेंदबाजी के बाद शिवा की शुरुआत काफी अच्छे लगे थे शिवा की गेंदबाजी के, लेकिन आखिरी मौके पर थोड़ी सी महंगी साबित होने के बाद रन संख्या 40 बने हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। नमित तैयार, झुकने के बाद 2 बार जमीन को टपकाने के बाद राइट ओवर द विकेट से, और इस बार लंबी स्ट्रोक लगाने की कोशिश यहां पर।
एक सिंगल रन 22 के ऊपर मिलेंगे। तो जाबिर नॉन स्ट्राइक पर पहुंचते ही अब स्ट्राइक लेंगे चम्मुआरी मड़ा। 5 गेंद बाकी, रनों की संख्या बने हैं 41 रन। 41 इज द टोटल। ये 6 ओवर के मैच है। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 आप देख रहे हैं। सीजन 1 पर एंग सुरवा चैंपियन बने थे और एनई पोसोट रनर्स के रूप पर आपको देखने को मिले थे पिछले साल। तो इस बार देखेंगे कि कौन बनेंगे दो फाइनल। और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश यहां पर नमित आखिरी ओवर की जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए पहली गेंद भी बिंदी गेंद बनाए थे। 22 के ऊपर एक सिंगल रन प्राप्त किए थे बिच्छू बॉयज ने। तो दूसरी गेंद यहां पर डॉटेड करने के साथ, बिंदी गेंद बनाने के साथ अपनी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ जो है ये बेहतरीन दिखाते हुए यहां पर नमित तीसरी बार झुकने के बाद छोटे कदमों के साथ ये अगली गेंद। और इस बार भी अच्छी गेंद, कोई खराबी नहीं गेंद पर। विकेट कीपर की कमजोरीपन से मिले यहां पर भी एक सिंगल रन। 3 गेंदों पर केवल मात्र 1 रन यहां पर खर्च किए हैं नमित। 42 रन, 42 इज द टोटल। ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 आप देख रहे हैं। आज के दिन पूरे केरला परिसर के टीमों के बीच होगा मुकाबला। और इस बार भी शानदार गेंद और यहां पर रन आउट के मौका गंवाए गेंदबाज ने। 4 गेंद लगातार एक से बढ़कर एक बेहतरीन गेंद। रन संख्या अब तक स्कोरबोर्ड पर केवल 42 रन। इस ओवर पर केवल मात्र 1 रन दाखिल हुए हैं 4 गेंदों पर। नमित, वाह भाई वाह, क्या शानदार गेंदबाजी दिखाई आपने। ये अगली गेंद और इस बार भी यहां पर डॉटेड और गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ पर और इसी के साथ ये रन आउट। वाकई क्या जबरदस्त गेंदबाजी दिखा रहे हैं नमित यहां पर। बीएससी मंजेश्वर नमित अपनी पहली ओवर के शुरुआत की 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट हासिल किए थे। 2 सफलता उन्होंने पाए थे। और इस ओवर पर भी देखिए लगातार डॉटेड डिलीवरी के साथ जो टिके हुए बल्लेबाजों को विफल कर रहे हैं। ये विशेषता है नमित की गेंदबाजी के। अगर कोई नए बल्लेबाज हो, क्रीज पर आने के बाद जब नए गेंदबाज को टिकने के लिए 1-2 गेंदों के आवश्यकता जरूर लगते हैं, लेकिन यहां पर जाबिर टिक चुके थे क्रीज पर और दूसरी तरफ चम्मू और इमल आते। तो ऐसे 2 बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ियों को क्रीज पर बिंदी गेंद के साथ विफल करना यह निश्चित रूप से कोई आसान बात नहीं है। ये एक अच्छी गेंदबाजों के पास ही इतने अच्छे बेहतरीन लक्षण, आपने क्वालिटी आप देख सकते हैं गेंदबाजी में। और इस बार भी घुमाने की कोशिश और इस बार भी स्टंप आउट। क्या शानदार गेंदबाजी। ओवर की यहां पर समाप्ति। केवल मात्र 1 रन, वो भी 22 के रूप पर। केवल मात्र 1 रन, वो भी 22 के रूप पर आखिरी ओवर पर। आप अनुमान लगाइए कि ऐसे छोटे ओवरों के मैचों पर, 6 ओवर की मैच पर आखिरी ओवर पर ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज पिट जाते हैं बल्लेबाजों के हाथों से। तो ऐसे में कोई अगर गेंदबाज अपनी आखिरी ओवर पर बिना कोई बल्ले के जरिए रन देते हुए केवल 22 के जरिए 1 रन देकर 2 सफलता अपनी टीम के लिए पा रहे हो, तो निश्चित रूप से क्यों ना करें तारीफ हम उनके। काबिले तारीफ। 2 ओवर पर केवल 5 रन, 3 विकेट हासिल किए हैं नमित अपनी गेंदबाजी में। तो निर्धारित 6 ओवर के बल्लेबाजी के बाद रन संख्या 42 रन बनाकर 43 रन के लक्ष्य यहां पर आ गए हैं। मोड ट्विस्ट आ गए हैं, क्योंकि सतीश जी अनुमान लगा रहे थे जब 5 ओवर पर रनों की संख्या बने 40 रन, तो छठे ओवर पर हम भी छोटे से अनुमान यहां पर लगा रहे थे कि काश यहां पर रनों की संख्या 50 हो जाते थे। लेकिन आखिरी ओवर पर नमित ने जो कारोबार दिखाए, जो चालाकीपन दिखाए, जिस तरह से हम कर्नाटक के गेंदबाज यंग के अश्विन राज की गेंदबाजी पर देखते हैं आखिरी मौके पर, वाकई जबरदस्त। हम कहते हैं कि ये केरला के अश्विन राज है ये नमित। तो ऐसे में आप देखने वाली बात यह है कि ये 36 गेंदों पर बिच्छू बॉयज 43 रन बनाने पर क्या रोक पाएंगे। यहां पर 43 इज द टारगेट। 43 रन बनाने पर रोक पाएंगे बीएससी को। यह देखने वाली बात है कि बल्लेबाजी अब किस तरह से होंगे बीएससी मंजेश्वर के, गेंदबाजी अब किस तरह से होंगे यहां पर बिच्छू बॉयज के। इन सारे विद्यमान को लेकर आएंगे सतीश हनुमान। So thank you very much.
Star Nobaz, and before coming back to your Vinantiskoltideve. So please cooperate with the organizers. CSC Pavilike and Niposo. This is the first call for you to come and report here without wasting a time. We need to you need to come and sign the official chart as soon as possible. So the 43 is a target, just like Star Nawaz is mentioning about. Once there's a partnership is building up between Zabi and Salam. Looks like they will going to get 50 plus runs on the board. But just like what is mentioning about the bowling of Namit has been outstanding. That 2 overs really put some break. Really put some break on the run rate of their opposition, and they managed to restrict them for just 41 runs and 42 going to be target. And straight away coming back to that required run rate, 7 runs per over, the required run rate for BFC Manjeshwar if they wanted to win the match. 7 runs per over is not a big ask, I must say. Now his condition looks to be pretty good after that morning session. First 1 hour belongs to the bowling side, but after that we can see that the batters are started to bat very freely. Ball is very nicely coming to the bat, no problem whatsoever. And I think if Bichu boys wanted to win the match, they need to bowl very well. They need to restrict some extras, need not bowl that wides and no balls. If you're able to put some break on the run extras, they can defend this total. And so far I think his matches looks to be one the boys. It's anybody's game. Mohan Ayadi as signaling towards our scorer, and our scorer for this cricket tournament, Shikafat Mugradi, and so far has been outstanding in our commentary box. Very friendly nature, very decent, and very good friendly atmosphere out here in this cricket in the commentary box as well, along with the technicians of Bedra Media. So far it's been outstanding day for cricket, and bright sunny morning. Now slowly the breeze is coming to the middle, the wind is passing. That means a little bit encouragement for the batters, and the bowler has to be very careful, and they need to deal with the breeze. They need to deal with some direction of the wind. And now Chemi is going to bowl the first over from the players dugout, and Shiva will go into face his first delivery. So 42 is a target, 7 runs per over is the required run rate. Deep long on and deep back square like the fielders are in the deep in the first over. First chance here, the run out, directed required, but not quick enough there from wicketkeeper behind the stump to come across to field the ball and returns the ball quickly to the non-strikers, and Shiva completed his first run. So first run comes up here. The risky run has been taken there by the 2 batters in the middle, 1 without loss of any wicket, 6 over format of the games. I request all the players, please mention your jersey number in front of your name. This time across the line. This is not a good shot selection. Aziz in the relegation tried to play across the line of the delivery. Aziz bowled very well. The 1 over is considered just 3 runs, and now he's facing the third delivery of the over. Right arm over the wicket balls, wide outside the line of Tampa. Batter just watching the ball till the last moment, seeing the line of the delivery, just getting his bat away from the line of the delivery, rightly so. Wide call by umpire Mohan Ayadi, and scoreboard moves on to 2 on the board. This time outside line of off stamp, tried to open the face of the bat, gave the direction to us to short third man region. Quite deliberately he's edging it down to short third man region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board for the loss, without loss of any wicket in the over number first in progress. Chemi, right arm from the wicket, he ball to Shiva. Shiva this time try to cut that one again, but he's not really moving his front foot. When you are playing where he was standing and try to reach the pitch of the delivery away from him, and very difficult to reach the pitch of the delivery. Quicker one there from Chami, beats the bat of Shiva. This time far outside enough off stump. On more addition rule, just I mentioned earlier, you have to restrict these extras. The wides and no balls is very important for the bowler. The discipline is so important if they wanted to win the match, because they're not depending a big total, they're depending on the 41 42 for the opposition. The discipline is very important here for the bowler. So 1 more addition, scoreboard moves on to 5 on the board. Chammi bowling to Aziz, very experienced campaigner for the side of BFC Manjeshwar. This time across the line, swinging his bat right in the gap. Deep mid wicket fielder is there. I don't think he will going to reach there in a full. After 2 balls he's collected, and the batter has got ample time to complete that couple of runs. Not quite intended. He tried to hit the across the line of the delivery.
And fortunately for Aziz, that ball traveled between deep square leg and mid wicket. And before that, long on fielder to run across. They got ample time to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 7 on the board. And what the run rate they required in the beginning, they got 7 already on the board. This time again across the line after delivery, tried to hit that one down to square leg region, didn't got that much of timing. And before that, square leg fielder to run in front and fields the ball. Just a single for the batter. So 8 runs coming from that first over. After completion of over number 8, chasing 42 to win the match. A very good start for BFC. Manjeshwar, both the opener has got a good start, steady start, and 8 on the board. It's coming back to the equations. 6 overs formidable games. If you deduct 8 runs from 42, that means they have to get another 34 runs to win the match in remaining 30 deliveries. So equation looks to be a little bit favorable for chasing team, but cricket, everybody knows that it's an unpredictable game. You can't say anything in cricket. So second over we're going to start from the goalpost end. Zabir, the captain of the side, came into ball because you know exactly the breakthrough is very important. Economical ball is very important here if his team wanted to win the match. Zabir batted well. Now he had to contribute from the ball. Right now, over the wicket balls are lovely collection behind the stump. Very neat collection, I must say. It's not so easy for the wicketkeeper when you are gathering the ball around the legs of a batsman. It's a very difficult one. And the wicketkeeper behind the stump done a fantastic job. And he collects the ball in a fraction, completes the job, but back foot of Aziz inside the line so that no damage done. But very good work from wicketkeeper behind the stump. Dotted deliveries to start with. Aziz knows that how important here he need to bowl some economical over. And first step is he won the first step by bowling a dotted delivery. And wait and see how well he's going to continue. Strong breezes continues here in the ground there. Now I think in front of a wicket, that's the direction of the wind. So Aziz bowling with the direction of the wind. Right arm. Just a lovely shot. I think the ball definitely will be winning the race here. The fielder, oh my God, the fielder is very quick in the negation. Excellent chasing there from the fielder at square leg. Once it looks like he beats the infield, Aziz, looks like it's going to be a boundary, but fielder at the square leg quickly running. Very athletic work from that fielder at square leg, running very quickly down to deep backward square leg. And before he going to collect that one down to deep square leg region, the batsman has got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to double figure 10 on the board without loss of any wicket. Zabir bowls again across the line of the delivery, swinging his bat. Aziz is so good in across the line. Very confident whenever playing across the line of the delivery, just shuffled across and reaching to the pitch of the delivery. Even the ball is outside the line of off stump, but he able to get a single down to mid wicket. With the addition of that single, scoreboard moves on to 11 on the board without loss of any wicket. Zabi, right up over the wicket, ball to Shiva. Shiva going for the cut shot in the negation outside. Of the chance of run out in the non-striker end. This is an unfortunate dismissal here for Aziz without seeing his partner. And Shiva almost looking for the cut shot. He got a bat onto that. Ball went very quickly to the short third man. Whenever the batter is going for the cut shot, very difficult for him to recover. And in that time, I think Aziz is going for the single. And it's too late because Shiva is not responding for that. And rightly so, but the ball went very quickly to the short third man region. And unfortunately, Aziz is looking pretty good in the middle, but is back into pavilion. So completion, really one for the first wicket is back into pavilion. The partnership of 11 runs comes to an end. Aziz back into pavilion. This is the right time for Bichu boys to bowl some good overs to restrict the opposition not to get their 42 runs. So next match is going to be one more good match. CSC Paiviliki takes on any Posot. I request all the players of both the teams, please go for the photo session in a players dugout. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ CSC ಪೈವಿಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ನಿ ಪೊಸತ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ.
Lovely looking try there from Shiva, but didn't got enough timing in that shot. Picked up a single down to backward point region, and with that single scoreboard moves on to 12 on the board. Exactly 30 required now to win the match. This is the over number second in progress. So far, Zabi is bowled a very quiet over, and quiet over in the sense the 4 runs conceded in that 4 deliveries of the over number second and last over of the power play. Zabi, right arm over the wicket. So Sandesh this time again nicely bowled there by Zabi. Much required dotted delivery. So over number 2 completed, a completion of over number 2, little bit correction, 2 completed. It's a 12 on the board for the loss of 1 wicket. Run rate is now just coming exactly 6 runs per over. The run rate required in the beginning is 7 runs per over. Now it becomes little bit tougher now, and now 30 required from 24 deliveries. 24 deliveries and 30 runs required for the victory, and now 7.5 runs per hour is run rate for required run rate for BFC Manjeshwar to win the match. 7.5 runs. Just look at that, how quickly the things are changing here. 1 good over coming in favor of a fielding team. All in sudden you can see that the asking run rate is just going increasing from 7 to 7.5 runs per over, and wait and see how well the BFC will go to chase these 30 runs in remaining 24 deliveries. For the latecomers, I would like to remind you this is match number 2 of day number 1 of this prestigious Gladiator Trophy 2022, and proudly organized by Underarm World WhatsApp group in this most popular and historical cricket ground, and Golden Abdul Aziz Memorial Cricket Ground here in Uppala, one of the most historical cricket ground, a beautiful venue. And after their successful season 1 Gladiators Trophy 2021, young friend Sorua from South Kent district becomes the champion. N.E. Posot become the runners up, and N.E. Posot will going to start their journey in this season 2 by playing against CSC Paivilike. CSC Paivilike is a very good team. They got some good players in the side, so we're expecting some good battle between these two teams when CSC Paivilike takes on N.E. Posot. I request the fielding team, please make it fast, please don't waste the time, and under 25 minutes you have to complete your 6 overs, and the 4 minutes definitely going to be a grace time added to that. That means within 30 minutes you have to complete your 6 overs, so that organizer can able to complete the matches in a scheduled time. The 3rd over, and improvisation straight away there from the batter. He picked up a single. Shiva picked up a single. Shiva came as an opener for the side, and so far he's been very cool and calm in the middle. Know exactly the kind of the batting required in the middle. 7.5 runs per hour is the required run rate. 29 required, 23 balls remaining. Chami bowls. This time half-hearted push. Ball is in the air for a while, but quite deliberately chipped that one by Sandesh, and just checking the stroke in the last moment in irrigation, and with that single scoreboard moves on to 14 on the board. 14 for the loss of 1 wicket. 14 on the board, and 42 runs is the target, and 26 runs required for the victory. 28 runs required for the victory. Outside enough of time. Beautifully bowled there by Chammi. That's the kind of deliveries certainly will put some pressure onto the batters. Each and every dot ball, the batter started to feel the pressure, and that's what the thing they need to do, Bichi boys. This time swept that one right in the gap down to square leg region, but not more than a single. Fielder from deep square leg very quickly moving to his front, and the batter have to settle for the single. Runs are coming in the form of singles here. Now 15 on the board, 15 for the loss of 1 wicket. So far it was an equal battle is on. It's going to be anybody's game, but needed some big shot in the middle. Again Sandesh picked up a single, not confident looking off dry, checking the stroke in the last moment once again. Opening the face of the batter and steering that one to short third man region for an easy single. 16 on the board. So far Chammi bowled a very tidy line and length in the middle. Shiva
Pushing the ball in front of a bowler and chance of run out there, but he's not quite able to collect the ball in the irrigation. Tried to tap the ball of his right hand to make the run out, but he missed the ball completely from his hand. But it's a very good over, quite over indeed. And the Bitchy boys are rightly back into this game. Very strong comeback here from the bowlers. So after completion of over number 3, chasing 42 to win the match, BFC Manjeshwar struggling, searching for the right track. They are 17 for the loss of 1 wicket. And straight away, and Star Nawaz coming back to the equation. If you deduct 17 from 42, that means they have to get another 25 runs to win the match, and overs remaining 18. And 8.33 runs per over is required run rate. And all in sudden 2 quite over, which is bowled by Zabi, and then 1 by Chammi. And that's the kind of over which is needed for Bitchy boys. Nothing much bothered about the wickets in hand, the chasing team. But in limited over matches, I think there's not that much of importance for the wickets in hand. But you need to catch the required run rate. That's very important. Now it becomes a little bit difficult, isn't it? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत की 3 ओवर पर भले ही 17 रन बने हो, यहाँ पर अभी भी 25 रन पीछे खड़े हैं 18 गेंदों पर। तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं कह सकते इस मैदान के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 ओवर महंगी मिल जाए बीएससी को, 1 ओवर अगर महंगी मिल जाए तो करीबी मामला हो सकते हैं इस मैच में। शुरुआत पर 42 रन 7 ओवर पर जिस तरह से केवल 4.3 ओवर पर वो उस मैच को समाप्त किए थे यहां पर जान बॉयज ने, तो ऐसे में बिच्छू बॉयज अपनी बल्लेबाजी पर शुरुआत की 5 ओवर पर जो कमाल की दिखाए थे, लेकिन आखिरी ओवर पर नमित की जो गेंदबाजी थे उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैच पे ट्विस्ट किसी भी समय आ सकते हैं यहां पर। तो यहां पर देखना है कि शिवा और संदेश की जोड़ी क्या कर पाते हैं। यहां पर 18 गेंदों पर 25 रन, एक बड़ी शॉट मैच को पूरी से बदल सकते हैं इस मैदान में। और बार गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर खेले, हवा में थे गेंद, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करें, यहां पर बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। शिवा के विकेट यहां पर दावे पर गिर गए और बिच्छू बॉयज वाकई एक सही आक्रमण के साथ एक सही विकेट के शिकार यहां पर किए हैं, क्योंकि शिवा जब तक क्रीज पर टिके रहते हैं तब तक के लिए खतरा बिल्कुल सामने खड़े रुकते थे बिच्छू बॉयज के लिए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि एक बड़ी सी मछली को अपनी जाल पर फंसाए हैं यहां पर बीएससी के खिलाफ बिच्छू बॉयज ने। तो 43 रन के इस लक्ष्य को पीछे करते हुए देखना है कि 17 रन बनने के बाद शुरुआत के 3 ओवर पर 26 रन पीछे खड़े हैं। 25 नहीं 26 रन की जरूरत है जीतने के लिए। तो ऐसे में अंडरआर्म क्रिकेट में तो हम कई सारे मैचों को हमने देखे हैं, कभी कभी आखिरी वाली 3 ओवर पर 10-12 रन भी मुश्किल हो जाते हैं और कभी कभी आखिरी वाली 3 ओवर पर 40 रन भी आसान बने हैं। तो ऐसे में मन्नकुड़ी के ये मैदान इतिहास बना पाएंगे यहां पर, क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त, ये कोई ऐसे वैसे क्रिकेट श्रृंखला नहीं है, ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है। यहां पर अगर आप दाखला बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं, तो कई सालों तक आपके नाम यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, आप देखते ही रह जाएंगे यूट्यूब पर। और इस बार ये बिंदी गेंद, डॉटेड डिलीवरी, जाबिर बल्लेबाजी पर तो कमाल की बल्लेबाजी दिखाए है जाबिर ने। इस श्रृंखला के पहला छक्का निकल आए थे आभी की बल्ले से और दूसरे छक्का जाबिर की बल्ले से निकल आए थे। और यहां देखिए गेंदबाजी पर भी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाते हुए जाबिर, एक अच्छी ऑलराउंडर के नाम पर अपने आप को दिखाते हुए जाबिर दाहिने हाथों पर द विकेट, बार बार जमीन को टपकाने के बाद ये राउंड द विकेट। और इस बार भी अच्छी थी गेंद, कोई खराबी नहीं गेंद पर। इस तरह की गेंदबाजी हो तो निश्चित रूप से बिच्छू बॉयज से बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं होंगे बिच्छू बॉयज के लिए। जब तक किसी टीम के पास एक अच्छी गेंदबाजी दिखाई देते हैं, एक अच्छी फील्डिंग आपको देखने को मिलते हैं, तब तक उनकी जीत के निरीक्षा भी गलत नहीं होंगे। और इस बार भी अच्छी गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर। The captain of NE Posot and the captain of CSC Paivalike, both teams captains are please report to the mic stand as soon as possible. अल्ताफ लगातार बिंदी गेंद के साथ अपने आप को दिखाते हुए, और इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से
बल्लेबाज बिल्कुल उत्सुक नहीं थे रन भागने के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक लेना चाहते थे। लगातार गेंद डॉटेड बनाने के बाद अगली ओवर की पूरी इस्तेमाल जो है इस्तेमाल करने की जो सोच लगाने के साथों साथ पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर रन भागने की कोई भी प्रयास नहीं बनाए। ओवर की समाप्ति 18 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। तो पिछली ओवर पर जाबिर ने केवल मात्र 1 रन, वो भी शुरुआत की गेंद पर खर्च किए थे। शुरुआत की गेंद पर केवल मात्र 1 रन खर्च करने के बाद लगातार 5 गेंद डॉटेड डिलीवरी बनाकर इस मैदान पर एक अच्छी गेंदबाजों के नाम पर अपने आप को जुड़ाए हैं। जिस तरह से नमित पिछले मैच पर अपने आप को दिखाए थे, तत्ववाची मान्या के गेंदबाज नमित अपनी 2 ओवर की स्पेल पर केवल 5 रन खर्च करते हुए 3 विकेट 3 सफलता पाए थे नमित ने। और यहां पर देखिए जाबिर क्या शानदार गेंदबाजी दिखाए, केवल मात्र 1 रन पिछली ओवर पर। तो अब बचे हैं यहां पर 12 गेंद बचे हैं। अब जरूरत है 12 गेंदों पर 24 रन के, 25 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर। हर ओवर पर 12.50 के रन धारण, 12.50 पर ओवर। तो हर ओवर पर एक एक छक्का यहां पर मजबूरन दिखाना होंगे, अवश्य दिखाना होंगे बीएससी मंजेश्वर को। और इस मैदान में आप नामुमकिन नजर से बिल्कुल मत देखिए बीएससी मंजेश्वर को। किसी भी समय अल्ताफ हो यहां पर संदेश, इन दोनों खिलाड़ियों की बल्ले से किसी भी समय एक धमाकेदार बल्लेबाजी निकल आ सकते हैं। तो देखेंगे कि यहां पर क्या हो सकते हैं। फारूक गेंदबाजी पर, वाइटम राउंड से पहली गेंद, और इस बार गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेले। 1 रन तो आसानी से मिले, दूसरे रन के लिए सोच लगा रहे हैं जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाया। और अगर पहली कोशिश पर उस गेंद को उठाकर बेल्स तक पहुंचाया होता विकेट कीपर, तो निश्चित रूप से ये अंपायर को सोचने वाली बात बन जाती। यहां पर नजदीकी मामला हो सकते थे बल्लेबाज के लिए। तो यहां पर मिले दुगने रन, 20 रन बने रनों की संख्या। अब 23 रनों की जरूरत है 11 गेंदों में। 11 बॉल 23 रन टू विन दिस मैच। फारूक फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से दूसरी गेंद, और इस बार लक्ष्य की दिशा पर थे। ये आसानी सी गेंद थी, अगर इस गेंद के फायदा उठाया होता, इस गेंद को अगर इस्तेमाल किया होता बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से एक फायदा वाली बात बन जाती बल्लेबाजी के टीम के लिए, बीएससी के लिए। तो 10 गेंदों पर 23 रन, बड़े बड़े शॉटों की जरूरत है यहां पर। और इस बार गेंद को फिर एक बार खेले शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाए। केवल मात्र 1 रन प्राप्त होंगे यहां पर। अब तो एक रन के साथ जीत तक पहुंचना बहुत ही कष्ट वाली बात बनेंगे बीएससी मंजेश्वर को। चौके और छक्के के साथ अपनी बल्लेबाजी दिखाना होगा, विस्फोटक तरीके से अपने बल्लेबाजी दिखाना होगा यहां पर। फारूक फिर तैयार, और अच्छी गेंद यहां पर। बिच्छू बॉयज, वाकई जिस तरह से बिच्छू के शरीर पर जहरीलेपन रहते हैं, वाकई अब नजर आ रहे हैं कि इनकी बल्लेबाजी पर कितने बेहतरीन बल्लेबाजी आपने देखे हैं। और गेंदबाजी पर भी देखिए वो जहरीलेपन जो विपक्षीय बल्लेबाजों को कड़वा लग रहे हैं मैदान में। और इस बार लक्ष्य से बाहर, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। इसी तरह के रन के स्वागत करना होगा बीएससी को। विपक्षीय गेंदबाजों की न्यूनता ही यहां पर फायदा बन सकते हैं बीएससी मंजेश्वर के लिए। फारूक, और इस बार भी खेलने की कोशिश जरूर बनाए, लेकिन पैरों से टकराने के बाद गेंद सीधे मिड ऑफ की दिशा पर। यहां पर भी एक लेग बाई के जरिए मिलेंगे एक सिंगल रन। तो धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 23 पर पहुंचे हैं। अब 20 रनों की जरूरत है आखिरी गेंद इस ओवर के। और इस बार भी स्क्वायर लेग की दिशा पर खेलना चाहते थे, लेकिन एक सिंगल रन यहां पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 24 रन, 24 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। आखिरी ओवर पर 19 रनों की जरूरत, आखिरी ओवर पर 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 3 ऐसे धमाकेदार ग्लैडिएटर छक्का लगाने होंगे जीतने के लिए। और इसके अलावा अगर आप जीत को देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अजूबे के रूप पर, मिराकल के रूप पर यहां पर कुछ गेंदबाजों की कमजोरी पर आपको यहां पर जीतने की तरफ आगे ले जा सकते हैं बीएससी मंजेश्वर को। तो देखेंगे कि यहां पर गेंदबाज क्या कर सकते हैं और बल्लेबाज,
क्योंकि आजकल के खिलाड़ियों के ऊपर हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करते। पुराने दिनों में अगर आप अपनी याददाश्त को 15-20 साल पीछे लेके जाते हैं तो उन दिनों पर बल्लेबाजी पर शुरुआत की अगर 4-5 विकेट गिर जाए तो बल्लेबाजी की आशा टूट जाते थे। लेकिन आजकल के हर टीम के हर एक खिलाड़ी, चाहे वो 10वीं क्रमांक के हो या 11वां क्रमांक के, हर एक खिलाड़ी के पास छक्के लगाने की अहमियत खड़े रहते हैं, सिक्सर लगाने की काबिलियत रखते हैं आजकल के हर एक खिलाड़ियां। तो ऐसे में हम नजरअंदाज कैसे करें इस मैच को। लेग बाय के जरिए एक सिंगल रन, 5 गेंद बाकी, 18 रन की जरूरत है 5 गेंदों पर। 5 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। सुनील दाहिने हाथ ओवर द विकेट से सुनील फिर तैयार, और अच्छी थी गेंद। यहां पर भी क्या शानदार गेंदबाजी। यहां पर बिच्छू बॉयज बल्लेबाजी पर तो कमाल की बल्लेबाजी दिखाने के बाद गेंदबाजी पर भी हर एक ओवर शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी गेंदबाजी इन्होंने किए हैं, एक से बढ़कर एक शानदार गेंदबाजी दिखाए हैं। बिल्कुल किसी भी ओवर पर 6 से बढ़कर रन बिल्कुल नहीं छोड़े हैं विपक्षीय टीम के लिए, यानी कि बीएससी मंजेश्वर के लिए। अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग की प्रदर्शन हो, विकेट कीपिंग हो, हर तरह से एक परिपूर्ण क्रिकेट की पेशकश यहां पर दिखा रहे हैं बिच्छू बॉयज। तो देखना है कि आखिरकार आज होने वाले हर एक मुकाबले के बाद फाइनल पर विराजमान होने वाले टीम कौन से होंगे। पिछली बार तो एनी पोसोट फाइनल पर विराजमान हुए थे केरला विभाग पर, और यहां पर भी एक सिंगल रन। जीतने की उम्मीद काफी दूर नजर आते हुए बीएससी मंजेश्वर के लिए, क्योंकि उनकी शारीरिक भाषा पर भी ऐसे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं कि वो जीत के कोई कोशिश कर रहे हैं। और इस बार भी यहां पर सिंगल रन। तो 2 गेंद बाकी, रन संख्या अब तक बने हैं 27 रन, 27। 16 रनों की जरूरत है आखिरी वाली 2 गेंदों पर, और इस बार लक्ष्य स्टंप से बाहर। 28 is the total. 15 more runs to win this match from 2 balls. सुनील फिर तैयार, और इस बार केवल बात एक हाथ पर अपनी बल्लेबाजी दिखाते हुए, जिस तरह से हार्दिक पांड्या अपने बल्लेबाजी पर दिखाते हैं। आखिरी मौके पर जब गेंद लक्ष्य से और ऊंचाई पर निकल जाते हैं तो केवल मात्र अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल करते थे, और इसी के साथ बाउल्ड आउट हुए और ओवर की भी समाप्ति। तो इसके साथ मैच जीत चुके हैं बिच्छू बॉयज। अभिनंदन करते हैं हम, कंग्रेचुलेशंस बिच्छू बॉयज अगले राउंड के लिए। और उसी तरह बीएफसी मंजेश्वरा इस श्रृंखला पर भाग लेकर अपने प्रोत्साहन देने के लिए इस श्रृंखला के साथ हम धन्यवाद कहते हैं आपके लिए। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए हम बुलाना चाहेंगे जाबिर। बेहतरीन बल्लेबाजी और उससे भी बढ़कर गेंदबाजी, अपने शानदार ऑलराउंडिंग प्रदर्शन के लिए जाबिर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पर भाजन हुए हैं। और इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं हसन पेरला जी। हसन पेरला इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को प्रदान करेंगे जाबिर के लिए। जाबिर रवरे ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹಸನ್ ಪೆರ್ಲಾ ರವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜು ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪೊಸೋಟ್. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಬಿರ್ ರವರಿಗೆ ಹಸನ್ ಪೆರ್ಲಾ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಾಬಿರ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಸನ್ ಪೆರ್ಲಾ ರವರೇ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೈವಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ 18th ಈಗಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 11th ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್.
22-23 interstate cricket matches venue GHSS Paivalike Nagar. ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 18th ಈಗಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022-23 ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಈಗಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿರಮಿರಿಸುವಂತಹ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 10 ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ 9,999 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ CSC ಪೈವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ನಿ ಪೊಸೋಟ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಿರಮಿರಿಸುವಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎನ್ನಿ ಫೋಸೋಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಮಾನ್ ಕಲ್ಪರ ಈ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಮಾನ್ ಕಲ್ಪರ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಮಾನ್ ಕಲ್ಪರವರೇ. So thank you very much, Star Nawaz and Enni Posot being the runners-up of the edition 1 of Gladiator Trophy 2021. Lot of expectation from Enni Posot. They started their journey in this season 2 of this Gladiator Trophy 2022. And after winning the toss, they elected to field first. Here is the first ball, right arm over the wicket, and first ball little bit down the leg stump, and batters tried to hit that one. Shamshed down to square leg region, missed it completely. Wicketkeeper Imtiaz did the rest, and there is no chance of any run. Vijay, right arm over the wicket, he bowls beautifully bowled, excellent delivery indeed. This time he is operated from around the wicket, and the targeting on midline off stump in the irrigation, forcing Shamshed, the very quality left-hand batter, onto the back foot in the irrigation, and there is no chance of any run. Two fantastic deliveries to start with Vijay. Third time in this over, having deep long on in the fielder in the deep, and the deep long off for the fielders are in the deep in the offside region, outside run of off time, opening the blade of the bat, steering it down to short third man region, and they got ample time to complete the single because the fielder standing in the edge of the circle, so that ample time for the batter to cross over for a single. Shamshed is off the mark with a single. Shamshed is a very, very valuable player, a very quality left-hand batter for CSC Paivalke. Vijay changing the angle, coming over the wicket because right-hander batter is on strike now. Satar rise that one, lofted that one, not quite getting the placement right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement, I must say. This is the what really disaster for the batter. After hitting the ball right from the middle of the bat, but you're choosing one of the fielder outside the circle. Deep long off is situated for
Sattar in that occasion. Almost it was a tempted delivery in the off volley, inviting the batter to go for the big shot, taking the invitation. Sattar looking for the big shot, but the placement I already mentioned is going to be very key in this particular cricket ground. He's choosing one fielder out there in the deep long off, and straight away Vijay is picked up a very important breakthrough here. That's all happening when you are not having a run in the board. All in sudden, the batter, something is going in the mind. The butterfly in the stomach of the batter try to break the shackle in the occasion, but not quite able to get the placement right. And Sattar, quite unfortunately, is back into pavilion, caught at deep long off of the bowling of Vijay. Good start there for any Posot through Vijay. Fantastic start. Just a single run he conceded in 4 deliveries, and he picked up a valuable wicket of Sattar. Samshid back on strike now. Strikes are rotated. They're looking for the big swing of the bat in the down the leg stamp. Wicket keeper fails to collect the ball. Chance of run out in. The strikers in, and they're going for the extra run as well in the form of overthrow, and they got that right quite easily in the end. 2 runs in the occasion. Samshid has got outside edge of the bat. Ball running down to short third man. The fielder trying for the run out. If it is a direct hit, I think is all over. And wicketkeeper Imtiaz not quite able to collect the ball because it was a little bit in front of him. That ball bounced, and they got opportunity to cross off for a couple of runs in that occasion. Lucky couple, I must say. With that couple of runs, scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Vijay bowling with a short run up as umpire Harish Patel. Right arm balls beautifully driven there by Shamshid, one of his favorite shot down to deep long on, and before the fielder from deep long on to return the ball, again ample time for the batter to complete the singles. Completion of over number 1, and it looks like CSC Paivilike has got some shackling start in the first over. They got only 4 runs on the board, and they lost a big wicket of Sattar. So that kind of start which is required for the depending little bit connection, the runners of Gladiator Trophy Season 1. What a fantastic cricket tournament is organized by Underarm World WhatsApp group in this most beautiful venue. Of course, thanks to the great leadership of Amza of Punjab, Firoz of Kunjatur, Irshad of Kunjatur, and Riaz brothers of Asangade. All have done a hard work to make this possible. Of course, if we are seeing only 2 days of cricket, but I think more than 2 months of efforts is required to make this possible. That's once again thanks to all the members of Underarm World WhatsApp group. Just I heard that more than 260 members in this Underarm World WhatsApp group. In a quick time, they managed to build their group, and that group is really growing very well and making some good positive move. And the positive move, the result here is that they are already organized Gladiators Trophy Season 1 successfully in the Panchayat Mini Stadium in Manjeshwar in the last year. Now they are inching towards a second successful cricket tournament in this most beautiful Golden Abdul Azim Memorial Cricket Ground here in Uppala. What a fantastic condition out here. The hot sunshine. Now after that winter season till month of January there was a cold weather condition, but after that the month of February is just started now, and we can see that little bit feel with the feeling of having a hot temperature, 31 plus degrees Celsius recorded in this most beautiful venue. And as we are having a strong breeze in the middle, I think not that much of difficulty here for the players as well as for the umpires, even for the spectators. Spectators has got a good number today in day number 1. And we're expecting some more crowds in incoming matches as well for the day number 1. So Saturday is a big day for the cricket. The top 8 teams from South Kent district clashing for the title of this most prestigious Gladiator Trophy 2022. Meanwhile, Vicky brought into attack. Left arm, balls outside and off stamp, quicker one. This time Shamshid looking for the off drive, mistimed that one, not quite intended. Try to drive that one on the offside region, but ball went towards the mid on. With that single scoreboard moves on to 5 on the board without for the loss of 1 wicket. We are not having there's a good angle because commentary box is situated in the square angle, so that very difficult for us to find the kind of line and deliveries, line and length ball by the bowlers. If it is in a straight angle, we can explain the kind of line and length ball by the bowler. So Vicky changing his angle, now coming around the wicket. It's a left-hand bowler, so that it was going to be around the wicket. Deep long on, the fielder situated, and one at a deep long off for the right-hander batter Jalal. Jalal is a new batter.
facing left arm round the wicket. Swept that one quite nicely down to fine leg region before the short fine leg fielder run across towards his left hand. Going for the second. Chance of run on Imtiaz hits the stump. He's well short of his crease. He's gone. Jalal is gone in the relegation. Total misunderstanding between the wicket. There was a little bit hesitation for the second run. Of course, they completed the first run very quickly. They're turning out for the second run. Jalal has got a little bit doubt in the mind that he can able to reach or not. That's why he got some jerk while he was running towards the danger end. And because of that jerk, I think he's finding himself short of his crease. And Imtiaz, once again, what a fantastic wicketkeeper he's been. He's quickly realizing that the throw is a little bit wide. Running across, collects the ball, hitting the stumps directly in the striker's end. And Jalal is well short of his crease. The second wicket is back into pavilion of CSC Paivilike. 8 for the loss of 8 for the loss, 8 for the loss, correction, 6 for the loss of 2 wickets in the over number 2 in progress. What a fantastic live coverage from Bedra Media under the great leadership of Irfan and cameraman, the technicians, all are doing a fantastic job. We can see in the big screen there is a quality coverage of this cricket tournament. Left arm bowls. This ball is in the air and out of the reach of that mid of extra cover fielder, trying his level best to reach that one in the occasion. All that the supporters of CSC Pavilion, they got heart in their mouth when the new batsman chipped that one in the air towards the extra cover region. But quite fortunately for him, that ball is just landing short of him. And they got a single in the relegation. So with that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 2 in progress. A lot of responsibility now for Samshed. He's a very, very experienced and a fantastic performer from the bat. And now he wanted to play some responsible innings for his team. Vicky, left arm. Over the wicket, lovely shot, beautifully driven, powerfully driven down to deep long off all along the ground. But not more than a single. The bowler bowling as for his field. He kept one fielder in the deep long off, so that is targeting around outside the line of off stump. The line and length is so good in the relegation. So just a single for Samshed. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board. Very hard to combine the runs. Runs are coming very in the form of singles in the between, because that the line and length ball by the both the opening bowlers are very difficult for the batter to find the gap. So new batter, Manchu. One more experienced and talented batter for the side of CSC Pavilike, and now takes this very young talented Vicky. Left arm around the wicket he balls. This time outside another off stump, beautifully bowled. Little bit excitement behind the stump. Imtiaz, one of the perfect pair of hands behind the stump, collects the ball in a fraction. He is just jumping, but not a best done. Ball is just away from the bat of Manchu then. And so far it's been outstanding bowling performance from Vicky. Just 8 on the board for the loss of 1 wicket. Again, with a short run of Vicky. Past umpire Mohan Yadi. Mohan Yadi, one more popular umpire in South Kendra district, but even experienced umpire. Last 3-4 years, Arish Padil, Mohan Yadi done a lot of job in this particular cricket ground. And they become a very popular and successful 2 pairs out here in the middle. Outside of off time, one more good over is completed. Completion of over number 2. Searching for the right track. CSC Pavilike are a little bit struggling in the middle. And they got only 8 runs on the board for the loss of 2 wickets. Not only struggling with the run rate, I must say, they lost 2 wickets as well. So that a very good start now for Yenni Posot in this season 2 of Gladiator Trophy 2022. Coming back to the news, just we have a news from UCG cricket ground, Urva cricket ground. 30 overs format of RRPI memorable UFC trophy, 45th UFC trophy. The first semi-final is going on. Young Friends Urva takes on Vishal Kodikal. Just a news came from UCG is that Young Friends Urva required 89 runs to win the match in stipulated 30 overs against Vishal Kodikal to have the place in the final. And in 30 overs format of games, if you see that 88 is not a big target to chase down, but it's going to be very big, especially against the bowling department of Vishal Kodikal. They got a fantastic bowling department. Twice they are the champion, once they become the runners of the last year. So it's going to be a very good match for the spectators in the UCG cricket ground to see who will going to be the finalist of this RRPI Memorial Trophy 2022. Coming back to this Gladiators Trophy, Underarm World WhatsApp group
proudly organizing this cricket tournament in this most prestigious and historical cricket ground, Golden Abdulaziz Memorial Cricket Ground here in Uppala. Chami, one more popular name, very talented all-rounder for the side of Any Posot has been introduced. He is a kind of a player who got a lot of fans behind him, not only in South Kent, not only in Kasaragod district, but even in South Kent districts as well. He knowing for his beginnings, and now he tried to come here to bowl some good over for his team. And he bowls round the wicket with a different bowling action in the irrigation as he tried to ball, give some flight on the ball, but ball is just going down the leg stump. Batter Samshid swinging his bat, but not quite reached, did not quite reach there, and ball missed the wicketkeeper's hand as well. So 1+1, 2 more to the total scoreboard, moves on to 8 on the board, of 10 on the board, correction, 10 on the board for the loss of 2 wicket. So he's changing his bowling as Chami. In the previous, I watched him in the last season. He's bowling all along the carpet and bending a lot when he was delivering the ball to see that he wanted to bowl some along the carpet. But here, he's bowling with a short run-up and he's giving some flight for his bowling. That's again, he's not quite able to get his line and length. Again, the second wide of this over. 2 extras now conceded, and scoreboard moves on to 12 on the board for CIC Paivilike. 11 on the board. Correction, 11. This time, top edge. Chance here for the fielder to take the catch. And that was unfortunate dismissal here for Manchu. Tried to work that one against the turn of the delivery. When you try to look at that one replay, as the Chami is flighting the ball, this was like a tear. That was a hittable delivery, I must say. Ball is short pitch down the leg stump. Instead of his flicking the ball, if he looked for some slog sweep shot, he can hit the ball at somewhere in the deep mid wicket and deep backward square leg. As the bowler batter tried to flick that one off his legs against the turn of the delivery, he got a top edge and he pays the penalty for that. And Chami strikes in this over. The first fair delivery of this over. 2 delivery bowled a wide one, and second one he got a lucky wicket. And the third wicket is back into pavilion of CSC Pavilike. They're 11 on the board for the loss of 3 wicket. New batter, the walking towards the middle to join Shamshid. Quite unfortunately, Shamshid is not getting any kind of support from other end. Wickets are tumbling in front of him, and every time it looks like once the partnership is started to build up, and Any Posot able to break the partnership. That's why it's very hard to combine some runs, especially in this over. They got 3 runs in 1 ball, but they lost the wicket. Chami bowling with a short run up, right arm around the wicket this time. Lovely shot, beautifully driven right in the gap towards the deep backward square leg region. They run for a single. Protection has been given down at deep backward square leg, so that batter have to settle for the single. Not a deep backward square leg. Between deep backward square leg and deep mid wicket, one fielder is situated. So fine leg inside the ring for left hand batter. Now it's a right-hander batter is on strike now. Ishak Manchampadi, one more excellent cricketer, technically very sound player who can be very useful in this condition, and that was really required. The Shamshid and this Ishak have to play responsible innings for his team, and wait and see how Ishak will going to contribute here. Very popular name, Ishak, and wait and see how we'll going to face one more popular name, Chami. Right arm around the wicket, he bows down the leg stump. Lack of footwork in the irrigation, because he's not really moving his front foot in the irrigation. Try to flick that on off his legs where he was standing, and ball missed it completely, his bat, and there is no chance of any run. Score station at 12 on the board for the loss of 3 wicket. Chami. Pass umpire Arish Padil. Oh, beautifully bowled. That was a really confusing line. When you pitch the line in that area, that was a good length spot, and batsman has definitely got in a 2 mind whether go for the front foot or back foot. Now, I think Ishak tried to push that one off in the offside region, stretching his front foot, but not quite reached to the pitch of the delivery. Completely beaten. Nicely bowled there by Chami. This time again, ball him, clean him up. Chami has got a big wicket here. He got the second wicket in this over. Altogether, it's an outstanding stuff there from Chami in this over. He started very nervously. He bowled 2 wide deliveries. After that, he bounced back very strongly with some excellent deliveries. And
The problem continues here for CSC Pavilike. They lost their fourth wicket in the occasion. And look at that delivery. I want to see that one in the replay. As a Chami bowling round the wicket. Slight Lekater, and Lekater in the sense that was deviating too much. The batter has thought that it might be delivery can hit down to mid-wicket region, and just to try to play that one against the turn of the delivery. Missed it completely. Then ball is just passing between his bat and pad. It's a stump, and wicket number 4 is back into pavilion. What a great performance there from Chammi. He picked up 2 big wickets in this over. And the CSC Pavilike, unfortunately, they hard to combine some runs. At the same time, very hard to combine the partnership, which is more important. And they missed it completely. Shafi of CSC came into middle now. Little bit under pressure situation here for the batter of CSC Pavilike as a Chammi bowling with the short run up. Again, appeal for leg before wicket, pitching outside the line of leg stump. That's very, very important here. As a Chammi bowler leg cutter, of course, but ball pitched outside the line of leg stump. Certainly it's going to hit the middle stump, but the fact that ball is pitching outside the line of leg stump, so that the decision going in favor of a batter. They got a 1 single in that over. Fantastic over there from Chammi. 3 very good overs bowled there by the 3 bowlers of Enni Posot, and they able to put some pressure onto the batsman. 12 for the loss of 3 wickets. So next match, Team Kumbala takes on Foodland Osangadi, the 4th match of the day, number 1 of this most prestigious Gladiator Trophy 2022 season 13. 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13ಕ್ಕೆ 4. So half of the over is completed. Still they got another half of the over. That means 3 overs remaining. 18 possible deliveries remaining, excluding wides and no ball. And wait and see how CSC Pavilike will going to recover here. Quick recovery is required here for the CSC Pavilike, because they lost 3 overs. Not only they lost some runs, they lost 4 wickets as well. The run rate is just 4 runs per over, not a healthy run rate. And they have to improve the run rate. At the same time, they need to keep the wickets in hand. That's why it's going to be very, very important. There's 3 overs for CSC Pavilike. The batter, along with Samshid, and this man Shafi, have to play a very important role if they wanted to get some big score. So from the goalpost end, Vijay Mada bowled very well the first over. Now is bowling over the wicket, right arm over the wicket. Beautifully bowled, excellent line in the negation, outside the line of off stump. Outside the run of off time, going for the off drive, missed it completely. Ball just came along the carpets. That's why very difficult for the batter to hit the ball. Right up over the wicket. Again the same line. This time our batter is dragging the ball from outside the run of off stump, and hit that one down to mid-wicket region before the fielder from the wideish long on to run across to field the ball. The batter has got ample time to complete that couple of runs. That kind of a brave and gutsy batting required here for the batters of CSC Pavilike. They have to get some runs badly, and they got couple now. The batter has got a couple runs. Scoreboard moves on to 15 on the board for the loss of 4 wickets. This time lovely shot, beautifully driven down to deep backward square like this. Oh, misfield! Oh my goodness, can you believe this? This was a sloppy fielding out there by the deep backward square leg. What could be a certain single? Because of that, fielder is not really bending in the right time. Look at that stroke outside the run of left hand. Lovely shot. Ball is went like a bullet. And look at the fielder. That was not a good effort, I must say. Ball is just passing between 2 hands. That's I must say that the fielder then the deep backward square leg not really bending in a time. And that 4 important runs came here for CSC Pavilike, because this is a welcome boundary for Pavilike. They're not really having a big score on the board, good score on the board, and that boundary will give a lot of confidence for the batter. And scoreboard moves on to 19 now for the loss of 4 wicket. Again across the line of little bit swinging his bat. This time too clever. Vijay seeing that the batter is so strong on the onside region, so that is not really bowling to his strength. Ball outside the line of off stump too far, so that very difficult for the batter to drag the ball from outside the line of off stump. Missed it completely. Wicket keeper behind the stump. Imtiaz did the rest, and there is no chance of any run at all. 19 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Here is Vijay, right arm over the wicket. This time lovely shot, beautifully driven right in the gap towards the deep mid wicket. One ball over the row for 4 as glorious shot there from
The batter Shafi just breaking the shackle in the right time. The one side dried up. Now he's just talking with his bat. Look at the stroke, that one. Absolutely magnificent stroke there from Shafi. Nothing wrong with the line of the delivery. Almost hit that one outside the line of off stump. You know exactly where the fielder is. The fielder is on deep backwards curler. One fielder has a wideish long on. There is no mid wicket at all. Now mid wicket is situated, but he's choosing that quite a clever piece of batting there from Shafi, and scoreboard moves on to 23 on the board. Just like I'm mentioning about some brave and gutsy batting required in the middle, and this man Shafi is just taking the responsibility of that, and so far he's been outstanding in this over, and Vijay looks to be very expensive in his second over. Vijay bowling with a short run up, right arm over the wicket. Shafi went for the reverse sweep. Wicketkeeper Imtiaz missed it completely from his hand. Wait for the umpire signal. No signal. That means it's from the bat of Shafi. So that very difficult for wicketkeeper to gather the ball. The expensive over, productive over coming in favor of CSC 5 wicket. They're rightly back into this game in this productive over, because run rate little bit improving. Before they are 4 runs per over, and now they got now 6 runs per over. That means they got 12 valuable runs in that particular over of Vijay, and because of that productive over, now looks like little bit that run rate is improving, but they have to play very well in the remaining 2 overs. 12 possible deliveries remaining, excluding wides and no balls, and wait and see how many runs they will go into score in this 2 overs. Having Shamshed is a batter who has came to the middle as an opener for the side, is batting on 7 out of 8 deliveries, but most impressive to see Shafi's batting, and he got 12 valuable runs out of 7 deliveries with the help of 2 boundaries, and much required boundaries which came from the bat of Shafi. Now he is retained the strike for the over number 5, and I want to see the fielding set here for Shafi. One fielder in the deep backward square leg, one fielder and deep mid wicket. Now deep long on is there, that short mid wicket going back to deep mid wicket. There is no protection in the deep long off, it is up in the circle, but one fielder situated in the deep extra cover. That means one protection, only one protection has been given in the offside region, that is a deep extra cover, and all 3 protection has been given in the onside region. One at deep square leg, Karthik Pujari at deep backward square leg, one at deep mid wicket, deep long on, and deep extra cover. Inside the ring, short fine leg, short third man, and that was almost in a gully region. One at short extra cover, and mid of long off coming inside the ring. Might be it is something suggestion coming from the deep long off. I request the fielding team to make it pass. Please don't waste the time. We are having important of each and every minutes here, because they have to complete 9 matches a day. That's why so important. The cooperation is much required from our fielding team to bowl. They complete their 6 overs quota. So Imtiaz brought into attack. First ball right on the money, and Shafi went for the reverse stroke. Not a bad idea to play the reverse stroke against the flighted delivery of Imtiaz, but this time is too early into the strokes, missed it completely, and there is no chance of any run. Imtiaz is a different kind of bowler who can turn the ball both way with this excellent bowling action. This time beautifully bowled. That was a really good piece of bowling there from Imtiaz. Very experienced campaigner. Imtiaz got experience of more than 25 to 30 years in underarm cricket, and still it's very impressive to see that he's maintaining his fitness. He's been outstanding, Imtiaz, the great cricketer, and now bowling the 3rd time in this over. Right arm over the wicket, balls to Shafi this time. Oh, caught and ball, chance in the negation. Valiant effort there from a bowler on his follow throw, but not quite able to hold the catch. Ball is hitting his palm of his hand, and the ball just deflecting from after hitting his palm, but he's not quite able to hold that one. Look at that one in replay. That was might be the Imtiaz looking for a little bit diving to his right to take the catch. By doing that, I think he just removes the ice from his ball and hitting the ground very hard, so that might be feeling a little bit pain here, and hitting his knee. I think he's got a lot of pain, and just he wanted to try to dive to his right to take the catch. And the batter just survived from that cotton ball from Imtiaz. 25 comes up here for CSC Pavilike. 25 for the loss of 4 wicket. Imtiaz little bit change in field then, mid off coming into short mid wicket mid on region in that occasion. That was a huge gap. Oh my goodness, the left hand batter is on a strike. That means now deep backward square leg, deep mid wicket, deep wideish long on,
long on. 1, 2, 3, 4 fielders onside, in the onside, in the outside the circle, and only one fielder outside the circle in the offside region for Samshed. Imtiaz. Balls looking for the big shot, missed it completely. It's outside edge of the bat. Little correction. It's from deflected from his legs. No contact with the bat in the negation as Samshed shuffled across the line of the delivery, turn of the delivery, looking for the big swing of the bat. Missed it completely, and there is a possibility of a single. So far, it's been a really great over from Imtiaz. Just 2 runs he conceded in 4 deliveries, but job is not yet over. Job is not yet over there for Imtiaz. You have to bowl another 2 good deliveries because Shafi is back on strike, who looking pretty good in the middle. He's in a good nick. The previous over he picked up a 2 boundaries, so that a lot of fielding adjustment is going on in the middle. So once again I request the fielding team to not waste the time, as Imtiaz asking that mid-off fielder to come a little bit closer to the batter, not to stand in the edge of the circle. And here is Imtiaz bowling with a short run up. Pass umpire Arish Patel. Right arm over the wicket to Shafi. Shafi distant across the line of the delivery, swinging his bat. Good thinking by the bowler, but not really, I must say, because that ball is moving far away from the batter outside the line of off stamp. Try to beat the batter, and that by doing that, his bowler wide outside the line of off stamp. But 27 for the loss of 4 wickets. Imtiaz. Right arm over the wicket. This time not quite able to time that one properly. Again, Shafi tried to play across the line, swinging his bat. Didn't got that much of timing what he's looking for. Just a single for the batter. 28 for the loss of 4 wicket. Last delivery remaining in this over. The over number 5 in progress. That means 7 deliveries remaining in the innings of CSC Pavulike. And Shamshed is back on strike. He's out of the strike for a long time. Now he's came into bat the final time. Imtiaz bowling round the wicket. Went for the big shot, missed it completely. Good over there from Imtiaz. Once again he's justifying why he's the key player for the team. And just 4 runs is conceded in that over. After completion of over number 5, it's 28 for the loss of 4 wicket. So I requested Team Kumbala. I think Foodland or Sangadi, there all the players are reported here. So I requested Team Kumbala. Some players are not reported yet. This is the last over for you, because before the end of this over you have to complete the signatures as well as the formalities of toss as well. Please cooperate with the organizers. 28 for the loss of 4 wicket. 28ಕ್ಕೆ 4, 5 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 28. Four runs in the last over. 4 runs in the last over. Thank you, Shamshed. So there will be confusion, and our scorer is too good here. And Shikafat Mugrodi has been outstanding. And this is not an easy job, I must say. The scoring is one of the most difficult job in commentary box, because you need to have concentration each and every ball. And so far he's done a great job here in the middle. So 28 for the loss of 4 wicket, and last over going to start from the goalpost and right arm around over the wicket, and first ball is down the leg stump going further away. The gifted run here for CIC Pavulike. They needed some runs. They're not really bothered about how the runs are coming, but they wanted some runs, and they got extra run now. 30 for the loss of 4 wicket. Giri brought it to attack. One more fantastic all-rounder, Giri. Usually he represents sometime SNNC Kasargod. He and Karthik usually represent SNNC Kasargod. The twice they came into South Canara district, the SNNC, they won a prestigious Sri Devi Trophy earlier of this season. Now Giri bowls. Just a lovely shot, but I think Karthik will not going to reach there. And oh, fantastic piece of fielding there by the fielder. Not a Karthik here, but a square leg fielder. Vicky there in the short square leg, deep square leg region. Done a fantastic job saving this couple of runs. Excellent athletic work done by the fielder. He's a very young, and he got 18 jersey number, and he got 18 years as well. And that was a jersey number of Virat Kohli, the Indian former captain. And just like Virat Kohli, that the kind of commitment from that young
the fielder there done a great job to save some runs for his team. Very athletic indeed in the deep. And scoreboard moves on to 32 for the loss of 4 wickets. Here is Giri. Went for the reverse sweep. Clever work there from Imtiaz, but not too that much of clever enough to get the result there, because Samshid is clever than the wicket keeper. He know exactly not to lift his back leg, even though he went for the reverse sweep, but missed the line completely, and Giri bowled the dotted one. 32 for the loss of 4 wicket. Here is again Giri. Balls this time. Lovely shot, but not enough to beat the fielder in the deep backward square leg. That's the end of Shamshid's marathon innings, I must say. That is a long time in the middle, but not really getting the big strokes in his books. And at last he tried to get some big shot, badly required for his team, but he's not really getting the distance what he was looking for. He got the elevation, but didn't got the distance what he's looking for. And deep backward square leg. Vijay Mada takes a wonderful catch down in the square leg region, and the winnings of Shamshid comes to an end. 32 for the loss of 5 wicket. The partnership is just broken. Very good partnership between Shafi and then Shamshid, but unfortunately Shamshid is out for 9 after facing 13 deliveries. He got 9 valuable runs. Three balls remaining in their innings. Shafi is back on strike. Badly required Shafi to back on strike because his team is not didn't got that much of runs on the board. Needed them some big stroke in the last 3 deliveries. So far, Giri is not giving an opportunity for the batter to go for the big shot. 4th time in this over. Right arm over the wicket. Shafi across the line of the swinging his bat, but again a good line, very tidy line there from Giri. Seeing the intention of the batter is going for a big shot on the onside region. He bowled outside the line of off stump, and very difficult for the batter to drag that one from outside the line of off stump. And he picked up a single down to fine leg. 33 for the loss of 5 wicket. Last 2 delivery remaining, and Farooq is back on strike. The new batter came into middle, and not too much delivery left in this over. 2 to go. This time, not too much delivery remaining, but it was too much enough for him to clear the fence. Look at the stroke that one there from Farooq. Absolutely one of the best stroke I've seen in this day number 1. Look at the line. It was just coming into the bat and across the line of the delivery, stretching his front foot with the full face of the bat. He just clearing the ground into the spectators out here in the deep mid-wicket region, and he got a very important 6 for his team, and score jumped into 39 on the board for the loss of 5 wickets. So what a good comeback, and that was a kind of reply required from the batter in the middle order. Last delivery remaining. Improvisation down to find again. They're running hard. They're looking for a second. Need to be because of the last delivery. Here comes a throw, and batter complete that couple of runs. Wonderful running between the wicket in the occasion, and they completed that couple of runs as well. And what a great finish for this final over from Farooq. He got 8 runs in 2 deliveries at the strike rate of exactly 400. This is a kind of the batting required in the end, and at last they managed to get some competitive total now. CSC Pavilike. Now they completed their 6 overs quota. They scored 41 valuable runs, and they set a target of 42 to win the match for runners-up of previous year, the season 1 of Gladiator. So any pursuit have to get 42 runs to win the match, and Starna was very interesting to see that. The first match, it's a 42 is a target. Second match is a 43 is a target. Now it's a third one. Once again, 42 is a target. That means it's very difficult to get past the 45 or 50 to get past for the batting past team. And what do you think? What may be the big reason here? The batters are really struggling to get runs on the board. Now over to Starnavas to continue the commentary, and more than anything else, Sarnawaz, and a lot of responsibility and expectation for any pursuit, isn't it? Because they are the runners-up. So that when you are become the successful in the edition 1, then a lot of expectation behind you. That's why it's very important for them to handle the pressure, handle the expectation of their followers, the fans. Is very important. And by doing that, chasing 42, I think they need to bat very well.
ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ 6 ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೇವಲ 26 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್. ವಿದಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. And to make this cricket tournament successful one, I think its cooperation is much required from each and every teams. Please send your extra players towards the commentary box as well, and at the same time please complete your 6-hour quota within 30 minutes so that organizer can finish their matches in a scheduled time. So it's over to Star Nawaz for the further explanation of the match. I think it's going to be a more interesting game of cricket is coming up in our next session of the 6 overs, which is the innings of NE Posod. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हुए ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 आप देख रहे हैं। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप जो है लगभग 260 सदस्यों से बड़े एक ऐसे भरपूर दाखला वाले ग्रुप है जो पिछले 3 सालों से इस ग्रुप के साथ अपनी सेवा देते हुए, पिछली बार आपने देखे हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी जो देश विदेशों पर माने गए हैं, प्रशंसा पाए हैं पिछली बार, तो इस बार भी एक नए रूप के साथ, एक नए उत्साह के साथ ग्लैडिएटर ट्रॉफी आपके सामने पेश किए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और इस श्रृंखला को बनाने के लिए जो इनके पीछे जो शक्तियां हैं, निश्चित रूप से हम नाम लेना चाहेंगे उन शक्तियों को, जो पिछली बार भी उस सक्सेस के, उस कामयाबी के पीछे अपने योगदान बड़ी मात्रा पर दिए थे हारिस वैयप्सी। उसी तरह हमजा पंजा हर बार, पिछली बार भी और इस बार भी, जब से इस क्रिकेट श्रृंखला के दिनांक तय हुए थे, निर्धारित हुए थे, तब से लेकर उस क्रिकेट श्रृंखला तक अपनी दिन रात के मेहनत सजाते हैं हमजा पंजा। उसी तरह हारिस वैयप्सी, हमने कहा कि हर बार हर तरह की योजना के लिए अपने आप को सामने खड़े रुकाते हैं इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर। हम निश्चित रूप से धन्यवाद कहते हैं हारिस वैयप जी आपको। और उसी तरह फिरोज मंजेश्वर, जो आप जानते हैं कासरगोड अंडरआर्म क्रिकेट देखे हुए एक ऐसे खिलाड़ी जो महारथियों में माने जाते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडरों में माने जाते हैं फिरोज मंजेश्वर, जो इस क्रिकेट श्रृंखला के पीछे अपनी दिन रात के मेहनत सजा रहे हैं। हम निश्चित रूप से सलाम करते हैं फिरोज जी आपकी इस मेहनत के लिए, और दर्शकों को जिस तरह से आप पेश किए हैं इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी को, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ। और उसी तरह कौसर, रियाज, इरशाद जी, इस्माइल, जासिर जैसे महारथियां इस क्रिकेट श्रृंखला के पीछे अपनी दिन रात के मेहनत सजा रहे हैं। हम निश्चित रूप से आप लोगों के प्रोत्साहन को निरीक्षण कर रहे हैं, इन सारी शक्तियां भी, क्योंकि आपके प्रोत्साहन की वजह से ही ये श्रृंखला कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैच की तरफ रोशनी डालते हैं। एनई पोसोट और सीएससी पैवली के टॉस जीतने के बाद एनई पोसोट शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिए हैं। हालांकि आज के लगातार 3 मैचों पर भी टॉस जीतने के बाद तीनों टीमों ने गेंदबाजी करने का निर्धार लिए थे। शुरुआत की मैच पर जान बॉयज हो, दूसरी मैच पर बिच्छू बॉयज, और ये तीसरी मैच पर एनई पोसोट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत की मैच पर 7 ओवर पर 41 रन बनाकर 42 के लक्ष्य दिए थे, दूसरी मैच पर 42 बनाकर 43 के लक्ष्य, और ये तीसरी मैच पर मिले हैं 42 रन के लक्ष्य। तो ऐसे में एनई पोसोट शुरुआत की अपनी गेंदबाजी पर विपक्षीय टीम सीएससी पैवलिके को 41 रन बनाकर 42 रन के लक्ष्य देने के बाद अब देखना है कि अपनी बल्लेबाजी पर उस लक्ष्य को पीछे करने के जो सवाल यहां पर लिए हैं एनई पोसोट, क्योंकि इनकी अहमियत वाली बात है, इनके लिए ये काबिलियत वाली बात है। पिछली बार फाइनलिस्ट बने थे एनई पोसोट, और दूसरी तरफ हम सीएससी पैवलिके को छोटी नजर से बिल्कुल नहीं देख सकते इस श्रृंखला में,
क्योंकि सीएससी पाइवली के अपनी बल्लेबाजी पर आखिरी मौके पर जिस तरह से शाफी और फारूक की बल्लेबाजी, शाफी जो शुरुआत के 4 विकेट खोने के बाद 5वीं विकेट की साझेदारी पर जिस तरह से अपने बल्लेबाजी दिखाए थे, 2 चौके उनकी बल्लेबाजी पर शामिल थे, बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाकर नाबाद होकर 15 रन के योगदान दिए थे शाफी ने अपने बल्लेबाजी में सीएससी के लिए। और आखिरी 2 गेंद जब बचे हुए थे तब फारूक की बल्ले से निकली हुई वो रफ्तार वाले छक्के जो है, मैं कहूंगा कि वो जीत वाले छक्के बन सकते हैं सीएससी पाइवली के को। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि चम्मी जैसे महारथियों के साथ सेवा लेते हुए, चम्मी जैसे खिलाड़ियों की सेवा लेते हुए एनी पोसोट क्या पिछली बार की तरह इस बार भी फाइनलिस्ट के रूप पर अपने आप को दिखा पाएंगे, या सीएससी पाइवली के उनकी उस सपने को यहां पर दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे इस मैदान में। तो शुरुआत पर सफलता प्राप्त किए हैं और इस बार जोरदार अपील अंपायर से, लेकिन अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं नजर आए। मोहन यज्ञाडी दक्षिण कन्नड़ जिला के मशहूर रेफरी और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं हरीश पटेल। ये संगठकों के एक ऐसे महान विशेषता है जो इस श्रृंखला में रेफरी हो, वीक्षक विवरणकार हो या इस श्रृंखला के हर एक व्यवस्था जो है इतनी बेहतरीन सजावट किए हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन सजावट के साथ दर्शकों को एक इस साल के बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पेश किए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने। गेंदबाज फिर तैयार, शमशीद एक सिंगल रन यहां पर प्राप्त होंगे और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर जुड़े हैं 3 रन। ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, KL 14 AA0113 ಅದೇ ರೀತಿ KL 14U 7234। ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆ ವಾಹನ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ। योगीश और चम्मी की जोड़ी, स्ट्राइक पर खड़े हैं चम्मी, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं योगीश। और इस बार अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन समय ने यहां पर मौका नहीं बना पाया और ये देखिए यहां पर फंबल। ओह माय गुडनेस, योगेश के विकेट यहां पर खतरे पर गिर सकते थे। चम्मी और योगेश के तालमेल पर कमी नजर आई यहां पर। योगेश शुरुआत के दिनों पर गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा पर अपनी भूमिका निभाते थे, अपनी योगदान देते थे। अब लगातार 3 साल के बाद बल्ला उठाकर मैदान पर उतर चुके हैं यहां पर योगेश द्वारा। तो ऐसे में इनके ऊपर जो निरीक्षा है पिछले दिनों पर गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा पर अपने योगदान जिस तरह से निभाते थे, जिस तरह से ये दर्शकों को मनोरंजन करते थे, क्या आज भी 3 साल बाद एनी पोसोट के किरदार निभाते हुए क्या दोबारा अपनी काबिलियत को यहां पर साबित कर पाएंगे योगेश? और दूसरी तरफ है चम्मी, जो आजकल एनी पोसोट को हर एक पुरस्कार जब आप पुरस्कार मिलते हुए आपने देखे हैं, तो उन पुरस्कार पर चम्मी की योगदान हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि चम्मी जिस तरह से योजना बनाते हैं, जिस तरह से अपनी टीम की जीत के लिए प्लानिंग बनाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर, क्योंकि हमने बहुत ही सारे मैचों में देखे हैं, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग की सजावट पर जिस तरह से चम्मी अपनी खिलाड़ियों को विश्वास पर लेते हैं, बहुत ही सुंदर नजारा पेश करते हैं मैदान पर चम्मी। तो ऐसे में 6 ओवर पर ये 42 रन के लक्ष्य को किस तरह से यहां पर स्वीकार पाएंगे? शुरुआत की ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 5 रन, केवल मात्र 5 रन। शमशीद की गेंदबाजी पर सफलता पाए हैं यहां पर सीएससी पाइवली के। हम इसलिए कहते हैं क्रिकेट को अनिश्चितताओं के खेल है क्रिकेट। किसी भी कितने भी बड़े टीम हो, कितने भी ऊंचे दर्जा के टीम हो, लेकिन हर बार मैदान पर शुरुआत से ही अपने हुनर को दिखाना पड़ते हैं मैदान पर। उनकी पिछले दिनों की रैंकिंग की वजह से, उनकी पिछले दिनों की जीत की वजह से इस बार कोई मायने नहीं रखते मैदान पर। अगर इस बार जीत हासिल करने हैं तो इस बार आपको अपने पसीना छुटाकर दिखाना होगा मैदान में। और इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद, ऑप्शन से बाहर गेंद। हरीश पटेल अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा कि यह गलत गेंद है यहां पर। और बात यह है कि इस बार इस गलत गेंद के साथ 1+1 दुगने रन मिलेंगे यहां पर एनी पोसोट को। सीएससी पाइवली के ध्यान देना होगा ऐसे गलतियों पर।
क्योंकि जब आप 6 ओवर पर 42 रन के लक्ष्य देते हैं और विपक्षीय टीम के रूप पर पिछले बार के फाइनलिस्ट खड़े हैं, तो ऐसे में आपकी गेंदबाजी की हर एक योजना जो है, हर एक योजना इतने करारापन से दिखाना होगा आपको, बिल्कुल न्यूनता से दूर रुकना होगा, गलतियों से दूर रुकते हुए अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी दिखाना होगा यहां पर सीएससी को। सुंदर तरीके से यहां पर योगेश, वाकई ये काबिलियत खिलाड़ी है। पिछले दिनों पर जिस तरह से गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा पर अपने बल्लेबाजी दिखाते थे, क्योंकि मैंगलोर के ऊंचे दर्जा के टीम माने जाते हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा को, अगर उन टीम पर खेलने के मौका मिलते हैं तो उन खिलाड़ियों की सक्षमता को हम बिल्कुल नहीं सवाल कर सकते। वो सक्षमता रहने की वजह से ही उन्हें मौका मिलते हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा जैसे टीम पर। और इस बार भी आप सबसे बाहर, यहां पर दूसरी ओवर पर मंसूर यहां पर समझना होगा हालात को, परिस्थिति को समझते हुए गेंदबाजी निभाना होगा, क्योंकि ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए संगठकों ने जो पिच यहां पर तैयार किए हैं इस मैदान में, ये वाकई बेहतरीन पिच है, बेहतरीन क्वालिटी वाले पिच यहां पर तैयार किए हैं गेंदबाजों के लिए। ये पिच यहां पर तैयार किए हैं, लेकिन यहां पर देखिए मंचू अपने हाथों के संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं मैदान पर। वरदान के रूप पर रन बटोर रहे हैं विपक्षीय टीम को। वापस आना होगा अपनी लाइन और लेंथ के साथ मंचू जी आपको। यानी पोसोट खड़े हैं आपके खिलाफ बल्लेबाजी पर, हर एक कमजोरीपन के फायदा उठा पाएंगे यहां पर एनी पोसोट। और इस बार सीधे सीधे गेंदबाज की दिशा पर दौड़ते हुए फील्डर गेंद के पास, लेकिन इससे पहले ही दोनों खिलाड़ी अपने क्षेत्र बदल चुके हैं। योगेश और चम्मी द्वारा शुरुआत के विकेट कार्तिक के रूप पर गिरने के बाद जुड़े ये जोड़ी दूसरे विकेट के साझेदारी पर एक रन आउट के मौका अवश्य मिले हैं योगेश को। देखना है कि योगेश क्या इस मौके को यहां पर फायदे के रूप पर बदल पाएंगे यहां पर। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर थर्ड मैन शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पर गेंद को खेले, फील्डर होने के बावजूद भी रन चुराने पर बिल्कुल पीछे नहीं हटे। यहां पर भी एक सिंगल रन अवश्य प्राप्त होंगे और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या पहुंचे 12 रन पर। 42 इज द टारगेट, 42 इज द टारगेट। 42 रन के लक्ष्य 6 ओवर पर निर्धारित, 6 ओवर पर हर ओवर पर 7 रन के आधार पर रन चुराने होंगे। शुरुआत के ओवर पर केवल 5 रन खर्च किए थे शमशीद ने। और इस बार चम्मी खेले जरूर, लेकिन मौका नहीं बना पाए, सीधे सीधे गेंदबाज की दिशा पर खेले। डॉटेड डिलीवरी, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले के ये आखिरी गेंद। 2 गेंद बाकी, माफ कीजिएगा 2 गेंद बाकी। और इस बार गेंद को उछाले पैर की जड़ों से चम्मी, गेंद सीधे सीमा रेखा पर जाकर टिप्पा खाते हुए। वाकई वहां पर तो सीमा रेखा से धूल उड़ चुके थे, तो ऐसे में इस बात को अपने करीबी नजर से देखते हुए अंपायर ने कहा कि ये निर्दिष्ट रूप पर ये छक्का होंगे, ग्लैडिएटर सिक्सर होंगे यहां पर चम्मी के लिए। हमने शुरुआत पर ही कहा था सीएससी पाईवालिके के गेंदबाजों को कि आप नजरअंदाज मत कीजिए एनी पोसोट को, जितनी आप अपनी गेंदबाजी पर करारापन दिखाएंगे उतने ही बेहतर होगा आपके लिए। मौका देते ही उस मौके की फायदा उठा पाएंगे ये दोनों खिलाड़ियां। और इस बार ऑप्शन की दिशा पर कॉट बिहाइंड के मौका थे यहां पर विकेट कीपर को, लेकिन गवाते हुए बल्ले के जरिए एक सिंगल रन प्राप्त होंगे चम्मी के लिए। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 19 रन, 19 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। पहली ओवर पर केवल 5 रन बनने के समय कहीं ना कहीं दर्शकों के नजर जो है, उनकी सोच जो है, ऐसे सोच लिया होगा शायद कि शुरुआत की ओवर पर केवल 5 रन बने हैं, तो ऐसे में पिछली बार के जो फाइनलिस्ट है इस बार फिसल जाएंगे यहां पर। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं के खेल है। दूसरी ओवर पर देखिए जिस तरह से निखर कर आए हैं यहां पर, उभल कर आए हैं रनों की संख्या यहां पर एनी पोसोट के। रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन, इस ओवर पर 14 रन चुराए हैं यहां पर मंचू के ओवर पर। चम्मी के एक शानदार छक्का और उसके साथों साथ कुछ वाइडों के साथ जो वरदान के रूप पर रन मिले हैं उनकी फायदा भी उठा पाए हैं यहां पर। 2 ओवर पर 19 रन बनने के बाद अब 23 रनों की जरूरत है जीतने के लिए 4 ओवर पर। 24 गेंदों पर 23 रन, 24 बॉल 23 रन टू विन दिस मैच। तो 2 ऐसे ओवर दिखाना होगा सीएससी पाईवालिके को जहां पर विकेटों के शिकार हो, बिंदी गेंद ज्यादा नजर आए हो, ऐसे ओवर को यहां पर दिखाना होगा। जिस तरह से शुरुआत की ओवर शमशीद के हाथ पर इस्तेमाल हुए थे,
वरना जीत को रोकना मुश्किल हो जाएंगे एन्नी पोसोट से आपको। तो तीसरी ओवर पर गेंदबाजी पर परिवर्तन, शमशीद को वापस लाए हैं गेंदबाजी के लिए। ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, KL 14880113 ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ KL 14U7234 ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ, ಈ ಎರಡು ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ। शमशीद शुरुआत के गेंद डॉटेड डिलीवरी, पहली ओवर की तरह इस ओवर पर भी दबाव डालने की प्रयास यहां पर चम्मी स्ट्राइक पर, और इस बार उछाले पैर की जड़ों से फिर एक बार पहली टिप्पे के बाद गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर गेंदबाज के हाथ पर वापस करे। 2 रन के मौका यहां पर आसानी के साथ प्राप्त होते हुए चम्मी वाकई ही विस्फोटक मनोभाव के बल्लेबाज है। हर बार चाहे वो किसी भी तरह के गेंदबाज हो, चाहे वो ऑफ कटर हो, लेग कटर हो, लेग स्पिन गेंदबाज हो, तेज गति के गेंदबाज हो या धीमे गति के गेंदबाज, अपनी बल्लेबाजी की जो रूप है उसको बिल्कुल बदलाव नहीं करते चम्मी, चाहे वो किसी भी तरह के मैदान हो, आदि चांद की आकृति के मैदान हो या पूरे मैदान। चम्मी अपनी बल्लेबाजी को हमेशा एक ही तरफ दिखाते हैं, करो या मरो के तरफ दिखाते हैं, डू और डाई की तरह दिखाते हैं मैदान में, और ज्यादा से ज्यादा बार सफलता पाए हैं चम्मी अपनी बल्लेबाजी में। और इस बार समझदारी के साथ गेंद को सीधे शॉर्ट कवर्स की दिशा पर पुश करते हुए एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदले। ये अच्छे खिलाड़ियों के लक्षण बनते हैं, जब एक अच्छे शॉट, बड़े शॉट गिरने के बाद अगली गेंद पर तुरंत मौका ढूंढते हुए गैप बनाकर एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलना, यह निश्चित रूप से जिस तरह से राहुल द्रविड़ करते थे भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, रोहित शर्मा करते हैं, रविंद्र जडेजा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और आज यहां पर अंडरआर्म क्रिकेट पर देखिए चम्मी जैसे खिलाड़ियां समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार गेंद को सीधे फाइन लेग की रास्ता दिखाए, गेंद लंबी दौड़ के साथ सीमा रेखे की तरफ, लेकिन फील्डर को उस गेंद को रुकाने की बात पर मुमकिन नहीं हो पाए। वहां पर निश्चित रूप से क्या तारीफ करें यहां पर चम्मी और योगेश की बल्लेबाजी को। एक तरफ केरला इस कासरगोड परिसर के शान मान सम्मान कहलाने वाले चम्मी, दूसरी तरफ है गोरी यंग बॉयज जैसे बड़े से बड़े टीम पर अपने योगदान निभाने वाले योगेश। 3 साल बाद बल्ला उठाकर मैदान पर आए हैं, तो बिल्कुल नहीं नजर आते कि योगेश 3 साल के बाद मैदान पर आए हैं। इसे कहते हैं सक्षम खिलाड़ियां, चाहे वो कितने भी समय बाद हो, बल्ला लेकर मैदान पर उतर आते ही उनकी शरीर पर क्रिकेट नाम के जिन जो है, ये जिन प्रवेश कर जाते हैं, वो अपने आप रोटेट हो जाते हैं मैदान में। तो इस 4 रन के बाद रनों की संख्या लंबी छलांग लेते हुए 26 पर पहुंचे, रन संख्या 26 इज द टोटल। और इस बार रिवर्स स्वीप के साथ एक सिंगल रन, 27 रन बने, रन संख्या 42 रन के लक्ष्य है, तो ऐसे में 15 रन अभी भी बाकी जीतने के लिए। एन्नी पोसोट पिछले बार के फाइनलिस्ट, ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 1 के फाइनलिस्ट बने थे एन्नी पोसोट, और इस बार भी उछाले हवा में लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर की सर के ऊपर से खेलते हुए जब तक कि फील्डर उस गेंद के पास पहुंचे। इस बार भी मिलेंगे 2 रन यहां पर बिना कोई झिझक के साथ। चम्मी अपने हुनर के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए। तो ऐसे में ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 29 रन। पहली ओवर पर बने केवल मात्र 5 रन, दूसरी ओवर पर रन बने थे 14 रन, और तीसरी ओवर पर बने 10 रन। कुल मिलाकर 29 रन बन चुके हैं। अब केवल 13 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 18 गेंद बाकी, 18 गेंद अभी भी बाकी। ग्लैडिएटर ट्रॉफी आप देख रहे हैं, और इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला को पेश किए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप लगभग 260 सदस्यों से भरे एक भरपूर एक फौज है ये अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। लगातार ये दूसरी साल पर कामयाबी के साथ देश विदेशों पर प्रशंसा पाते हुए ग्लैडिएटर ट्रॉफी दिखा रहे हैं। हारिस वैयपसी,
फिरोज मंजेश्वरा, हमजा पंजा, कौसर, रियाज, इरशाद, इस्माइल, जासिर जैसे महारथियों के दिन रात के परिश्रमों के अंजाम आप देख रहे हैं इस ट्रॉफी के साथ, इस श्रृंखला के साथ, ग्लैडिएटर ट्रॉफी के नाम पर। क्या खूबसूरत क्रिकेट श्रृंखला यहां पर सजाए हैं संगठकों ने, वाकई निश्चित रूप से, वो भी दो राज्यों के बीच। एक तरफ केरला राज्य के 10 टीमें, दूसरी तरफ है कर्नाटक के 8 टीम। तो दोनों विभाग पर एक एक टीम फाइनल पर विराजमान होंगे और शनिवार के दिन शाम को होगा वो धमाकेदार फाइनल मैच जो कर्नाटक और केरला के बीच क्रिकेट के प्यार को बढ़ाते हुए अंडरआर्म क्रिकेट पर एक ऐसे इतिहास बनाए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने, वाकई काबिले तारीफ। गेंदबाजी पर परिवर्तन लाए हैं यहां पर सीएससी पाईवाली के नवाज को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे नवाज, और इस बार ऑफ स्टंप की दिशा पर खेलने की कोशिश, बाहर किनारा लगने के बाद दूसरी स्लिप की जगह पर गेंद, हर बार भी काफी विश्वास के साथ रन चुराते हुए एनी पोसोट। एक तरफ तो चम्मी अपनी विस्फोटक मनोभाव की बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए, दूसरी तरफ योगीश अपनी हुनर के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। 3 साल के बाद मैदान पर उतर आए हैं योगेश, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि दिन रात तालीम ले रहे हैं। हर एक गेंद के जवाब काफी नाजुकी के साथ देते हुए, इस बार वाइड बॉल के इशारा अंपायर से स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद की दिशा को समझते हुए अंपायर ने कहा कि यह गलत गेंद है। नवाज फिर तैयार, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, पिछली बार लेग स्टंप से बाहर और इस बार रहे ऑफ स्टंप से बाहर। लाइन और लन की कमी पर यहां पर दिखाते हुए गेंदबाजी पर नवाज द्वारा वापस आना होगा अपनी लाइन और लन के साथ, और इस बार सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर गेंद को पुश करती है, और इस बार भी गेंद निकल गए 4 रन पर। शुरुआत की मैच पर जब 42 रन बने थे, 41 रन बनाकर 42 रन के लक्ष्य दिए थे, तो ऐसे में बिल्कुल उस 41 रन पर एक भी चौका नहीं शामिल हो सके थे। लेकिन उसके बाद देखिए यहां पर कितने चौके, कितने छक्के देखने को मिल रहे हैं मैदान में। इस 4 रन के बाद रन संख्या पहुंचे हैं 37 पर, 37 इज द टोटल। अब केवल 5 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए एनी पोसोट, विश्वास के साथ। पिछली बार जब जिस तरह से फाइनलिस्ट बने थे एनी पोसोट, और इस बार भी उसी विश्वास के साथ शुरुआत करते हुए पहली मैच, टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार जो लिए थे एनी पोसोट के कप्तान ने, सही निर्धार यहां पर माने गए हैं, क्योंकि इससे पहली वाली दोनों मैचों पर भी उन टीमों के कप्तान ने भी शुरुआत पर गेंदबाजी किए थे। और इस बार भी वाइड बॉल यहां पर, सिवाय पहली ओवर के बाकी सारे की सारे गेंदबाजी काफी न्यूनता के साथ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और इस बार देखिए कितनी सुंदरता के साथ योगेश द्वारा 1 रन तो आसानी से चुरा लिए, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन शम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी खतरे को दावत देना, अपनी विकेट को खतरे पर गिराना, ये अच्छी बात नहीं होंगे। रनों की संख्या काफी कम यहाँ पर जरूरत है, केवल 3 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। और इस बार भी मिलेंगे सिंगल रन, पॉइंट की दिशा पर गेंद को खेलते हुए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 40 रन। 40 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, केवल मात्र 1 विकेट के नुकसान के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी कार्तिक, जो बिना रन बनाए 0 रन बनाकर वापस जा चुके थे। तो इसके मतलब आप जान सकते हैं कि अब तक जितने भी रन बने हैं यहां पर 40 रन, ये इन दोनों खिलाड़ियों की ये पार्टनरशिप है, ये साझेदारी है। तो तालियां अवश्य बनना चाहिए अपनी दिल और दिमाग के साथ, क्योंकि छोटी ओवरों के मैचों पर, 6 ओवरों के जब मैच मैदान पर चलते हैं, तो 40 रन के पार्टनरशिप बिल्डअप करना, साझेदारी से जाना, ये निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये अनुभवी खिलाड़ियां हैं चम्मी और योगेश। 40 रन के साझेदारी, और इस बार ऑप्शन से बाहर। जो रन एनी पोसोट बल्लेबाजी पर बनाना चाहते हैं और उन्हें बनाने की जरूरत है, उस रन को वरदान के रूप पर वाइडों के साथ दे रहे हैं यहां पर। और इस बार कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं चम्मी, दूसरे विकेट।
इस 41 रन की साझेदारी टूट चुके हैं। शुरुआत की विकेट कार्तिक 0 रन पर आउट होने के बाद जो साझेदारी यहां पर टिकी थी 41 रन के, वो भी टूट चुके हैं। लेकिन जीत के लिए तो केवल मात्र 2 रनों की जरूरत है। यहां पर 36 गेंदों पर 42 रन के लक्ष्य दिए थे। 41 बने हैं, एकमात्र रन, मैच बराबर हो चुके हैं, टाई हो चुके हैं मैच। तो ऐसे में आखिरी वाली रन की जरूरत है, जीत के रन की जरूरत है। यहां पर चम्मी आउट होने से पहले अपनी बल्ले से एक शानदार छक्का लगाकर कुल मिलाकर अपनी रनों की संख्या 18 रन के योगदान दिए हैं चम्मी अपनी टीम के लिए। 18 रन, 18 रन के योगदान दिए हैं। बाएं हाथ के खिलाड़ी लत्तू, नए खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी है एनी पोसोट के, कासरगोड परिसर के महारथियों में माने जाते हैं लत्तू को। और इस बार स्वीप करने की कोशिश की है, लेकिन डॉटेड डिलीवरी। केवल मात्र 1 रन की जरूरत है, केवल सिंगल रनों की जरूरत है जीतने के लिए एनी पोसोट को। शरीफ और इस बार लेग बाई के जरिए एक सिंगल रन प्राप्त करते ही जीत हासिल कर चुके हैं एनी पोसोट। अभिनंदन करते हैं हम एनी पोसोट को अपनी पहली जीत के लिए। और उसी तरह इस क्रिकेट श्रृंखला पर भाग लेकर हमारे साथ प्रोत्साहन करने के लिए CSC पाई बालिका को भी हम संगठकों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए चम्मी के नाम यहां पर संगठकों ने तय किए हैं। चम्मी मैन ऑफ द मैच ऑफ लास्ट मैच। तो चम्मी सीधे उस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान करने वाले स्टेज पर जाए। और इस मैन ऑफ द मैच को स्पॉन्सर किए हैं फारूक टिप्पू गली। और फारूक टिप्पू गली इस एक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को स्पॉन्सर किए हैं। हम उन्हें भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप जैसे स्पॉन्सरों की वजह से ही इस क्रिकेट श्रृंखला के रौनक बढ़े हैं, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऐसे क्रिकेट श्रृंखला। तो इसे का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को प्रदान करेंगे कलील न्यू बॉयज। चम्मी के लिए इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को प्रदान करेंगे। और इसके बाद होगा अगले मैच टीम कुंबला और फुटलैंड होसंगड़ी। दोनों टीम तैयार खड़े हैं अगले मैच के लिए। और इस मैच की शुरुआत से पहले हम माइक्रोफोन ओवर करते हैं सतीश हनुमान को, जो आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार हैं और इस परिसर के जाने माने वीक्षक विवरणकार हैं। आइए सतीश जी, स्वागत है आपको। Thank you very much, Star Nawaz. So, the match number 4 will going to start between Team Kumla versus Foodland Osangadi. News here is that captain of team Foodland Osangadi, Team Kumla captain won the toss and they elected to field first. The match number 4 of this day number 1 of prestigious Gladiator Trophy 2022. Meanwhile, I request the fielding team, please complete your 6 overs quota within 30 minutes. Please note the captain of Team Kumla, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ 6 ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And
both the teams, please note, Foodland Osangadi as well as Team Kumla, kindly request you to complete your 6 overs quota within 30 minutes, stipulated 30 minutes. Actually, it's 4.5 minutes per hour. That means 27 or 26 minutes for 6 hours. And the 4 minutes definitely it's going to be a grace time. And you have to complete that 6 hours within 30 minutes so that we can complete the today's match before the dark in the evening. So interesting game of cricket is coming up here, and interesting game of cricket in Urva cricket ground as well. Chasing 89 to win the match. Young Friends Urva struggling. They're 64 for the loss of 6 wicket. 25 runs required for the victory for Young Friends Urva. That is in the UCG 30 over format game. So here is the first over going to start here, and Nasaf will going to start. First ball, little bit down the leg stump, and straight away batter Badru picked up a single. Badru is a very good cricketer and very stylish right-hander batsman as well. So experienced campaigner, and he's off the mark straight away with the single. And with that single, Foodland Osangadi, they are off the mark. They started their journey, and wait and see how well these two experienced batters will going to lay the foundation, which is very important. Dawood, one more very experienced campaigner, and playing in a home condition, and he facing next to the right arm over the wicket. And Nasaf this time is knowing for his quick bowling. He's a very talented economical bowler, and who can confuse the batter with his face variation in his bowling as well. And Nasaf once again right arm over the wicket bowls. To Dawood, a well for leg before wicket, very confident in the negation, but ball looks like the bowler is coming right in front of umpire, so that's is very difficult for umpire to judge the leg before wicket. And that's straight away Harish Patel asking now Nasaf to not to come in front of me. That is the protected area, and that's why it's no signal is given. That means it's from the bat. 2 without loss of any wicket. A strong breeze out here in the middle. We can see that bails are off. That shows the direction of the wind. The huge wind passing here and towards the commentary box. And Badru will face the next delivery. Drives that one, but lack of placement. Straight to the hands of short extra cover. Nothing wrong with the stroke. Lovely looking drive there from Badru, but he couldn't manage to get the placement right as a short extra cover fielder fields the ball, and there is no chance of any run at all. Nasaf again. Right arm over the wicket to Badru. Badru once again looking for the big drive. This time he's not getting that much of timing he's looking for. That's why its ball went very slowly to that short extra cover region, so that it gave a time for Badru to rotate the strike. And with that rotation of strike, scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of without loss of any wicket. After a long time, I'm watching Badru is in action in the cricketing field and representing his home team Osangadi. Dawood went for the off drive, inside edge of the bat, wicketkeeper behind the stump, shying at the stump. Pradeep in the negation, missed the stumps completely. If it is a direct, I think it's a close call. Little bit of work here for the square leg umpire. Ball misses the stumps, batter survived. So completion of a very tidy over there from Nasaf. His ball very good line and length, just preventing the batsman from the big shot. Completion of first over, it's 4 on the board without loss of any wicket. So far, is the batting first team is struggling in this particular day number 1. The batting second team is on all 3 matches. That's why it's so important here for team Litigation Foodland Osangadi to get some good score. Even 40 plus runs is very difficult to depend in this condition, and they need to very careful. They're setting a target for the opposition. They have to get 50 plus runs badly if they wanted to win the match. So now from the players dugout end, it's going to be the new ball, Manju Naika, the one more very young talented bowler. Manju Naika has been introduced to bowl his first over, and the second over of the power play. And in the power play we can see 2 bodies out there in the deep, one at deep extra cover, one at deep backward square leg. The 2 fielders standing to prevent the boundaries and sixes. Here is Manju Naik. Now little bit change in field and short for fine leg fielder going towards a gully region. That means that there is no fine leg inside the ring. And very interesting field set here of the bowling of Manju. Right arm over the wicket to Dawood. Dawood went for the reverse sweep. That's why one fielder is situated straight away
The good thinking in the point of view of captain is concerned, seeing the strong point of Dawood is a very good reverse sweeper of the ball. He is a very good switch hitter of the ball, so that he kept one fielder in the backward point to prevent that switch hit from Dawood. Alright, a moment wickety balls. This time again down the leg stump. Wicket keeper again Pradeep fails to collect the ball by call by umpire. It's very difficult. I think it's not an easy for a wicket keeper behind the stump. Whenever the ball is down the leg stump, it's not an easy job because the batter is coming right across the line of the delivery. So very difficult to judge to see the line of the delivery. That's why whenever the ball is down the legs and wicket keeper fails to collect the ball, and that's what's happening in the previous delivery by call by umpire. Manju Naik balls to Bedra. This time pick that one, slower one, go over the infield, down to deep long of boundary, and a good work there by the fielder, just running back, chasing the ball, and just a couple of yards inside the boundary line, the fielder able to pull the ball and collects the ball, and batter Badruddin has got ample time to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 5 on the board for the without loss of any wicket in the over number second in progress. Manju balls beautifully balled, quicker one compared to last previous 3 deliveries. This is a much quicker delivery there from Manju there. That's why the batter Badru not quite able to meet the line of the delivery, missed the bat completely, and there is no chance of any run at all. Score stationed at 7 without loss of any wicket. So far Manju has bowled very tidy line. Right over the wicket he balls again, a good one, nicely bowled. It was a little bit hurried out to the batter in the negation. Sharp incoming delivery. Badru just covering his stump and pushes that one down to short mid-on region for a easy single. With a single, scoreboard moves on to 8 on the board. Captain not really bothered about that single. They know exactly they have to prevent the boundaries, and a big shot like 6s in this power play over. And so far his Manju Naik has been outstanding. Went for the reverse sweep again. That's the second time Dawood trying for the same stroke reverse sweep, and he missed it completely. Quite over. 2 magnificent over there for team Kumula. After completion of over number 2, searching for the right track, they are struggling. Foodland Osangadi, the managed to score just 8 runs, and they are just having 4 runs per over, the run rate. I think the first over, 2 overs, which belongs to the fielding team. Very good toss to win here for captain of team Kumbla. Immediately the captain elected to field first, and 2 opening bowlers are really justifying the decision of their captain. For the latecomers, you're watching match number 4 of this day, number 1 of this prestigious Gladiator Trophy 2022, proudly organized by Underarm World WhatsApp group. That was really fantastic to see that just within 3 years, these groups are really winning the heart of cricket lovers. It's not so easy to organize the cricket tournament for the players of these 2 states and 2 districts of our neighboring state as well. And they organized such a wonderful cricket tournament in the name of Gladiator Trophy 2022. Meanwhile, Nasaf continues from the goalpost, and he's been very impressive in his first over, very quiet and tidy over. And now outside the line of off time, wicketkeeper behind the stump missed the ball, and the batter completed a single. 9 without loss of any wicket. Nasaf 4 runs in his first over, and now he's bowling a second over of his quota. Right above the wicket is a Dawood, lofted, and he not clearing the boundary line. The fielder and the deep backward square leg just moving to his left to take the catch, not really having enough timing in that shot, I must say. Just went with the stroke. We get that one. Not power in the shot. And the deep backward square leg fielder making no mistake at all in that occasion. Takes a very good judgment catch accuracy. Almost he was in the edge of that boundary line. You have to judge the line as well before he taking the catch, and that was a fantastic catch taken there by the just number 4 Manju, and the wicket number first is back into pavilion of Osangadi. They are really struggling to get some runs in. Again, the disciplined bowling performance by the bowlers of team Kumbla. 9 for the loss of 1 wicket. Partnership of 9 runs is just broken as Dawood tried to break the shackle. Quite understandable because they didn't got enough runs on the board. They have to get some big strokes, but it's very difficult, isn't it? In the power play, you can play some big shot, but after the power play, we can see that there's so many bodies out there in the deep. We have deep backward score, like we have deep mid wicket, you have deep long on. There is an onside field outside the circle. In the upside, there is a deep long off and deep extra cover. So we're having a lot of fielders in the deep after that power play, so that Dawood finding one fielder at a deep backward square, like tried to hit the big shot, but missed it completely.
This time again, quicker one there for Nasaf. Because of that, is a quicker one. Badru completely missed out, deflected from his legs. One more addition to total leg by call by umpire Arish Padil. Scoreboard moves on to double figure 10. Very hard combined 10 runs, I must say, against a strong bowling department of Team Kumbla. And now the new batter Ansar is came into middle. One more very good striker of the ball, Ansar Kaza. Went for the big shot, not quite able to get the timing. Ansar Kaza, who represents KFC Kodikal so many times in South Kent district, one of the well-ranking team. And now he's representing his home team. Foodland, little bit correction, yes, Foodland Osangadi. A single-handed stroke, nicely driven down to deep backward square. A lot of work here for the fielder in the deep, and before that fielder of fine leg to run across towards the deep backward square leg region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. Good work there from Manju Naik there in the deep fine leg region. You have to run across very quickly to stop that boundary. And single-handed stroke there from Nisar. He just lost his grip over his bottom hand, and he picked up a couple of runs. Again, looking for the big shot. Again, ball went in the right placement, and the running between the wicket is not good in that occasion. Even throw is not good at all. That's why Ansar completed a couple of runs. Once it looks like Ansar Kaza is settled for a single. He thought only single is possible there, but his partner Badru, realizing there is a possibility of a second run, and he's calling his partner. That time I think Ansar is not ready to take the second run, but seeing the throw is not quick enough from the deep fielder, they completed a couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket in over number 3 completed. So thank you to the subscriber of Bedra Media. That 7,000 subscribers. 70,000. I just missed out 10 here. 70,000 subscribers for Bedra Media. It was outstanding achievement, I must say. The Bedra Media, the last 5 years of journey in cricketing field as a YouTube channel, live telecast YouTube channel, done a great job. That's only because of if you have a great leadership like Irfan, who is leading from the front. It's all happening when you are dedicated 100% to your work. The result certainly in front of you. The 70,000 is a massive one, I must say, for Bedra Media, and hope they will going to continue their journey, successful journey in coming year as well. So congratulations and thank you very much on behalf of Irfan, all the subscribers, those who are supported Bedra Media to make this possible. So 3 overs completed, 14 for the loss of 1 wicket. Now 3 overs remaining. A lot of hard work required from the batters of Osangadi. They have to accelerate the run rate in remaining 3 overs. Right arm around the wicket. Badru, that lovely shot, beautifully driven, inside out cricketing stroke, down to extra cover, but not quite able to beat the extra cover fielder. Badru wants to second here, but Ansar once again not interested. The Ansar is not interested for second run, and that's why they have to settle for the single. Maybe Badru is saying that the throw is not coming very quickly from the deep because the fielder have to throw against the direction of the wind. So that definitely will give you a lot of time for the batter to complete the couple of runs here. But here his answer is satisfied with a single. 15 for the loss of 1 wicket. Improvisation. That was a misjudgment there from the fielder at backward point region. The backward point fielder, you can see that when the batter is going for the premeditated sweep shot, he's just moving to his wrong end. He thought that the ball is coming to his left hand side, but ball went towards his wrong end. That was the right hand side. And Nasaf, after moving to his right, quickly moving to his left, and the batter has to satisfy with a single. 16 for the loss of 1 wicket. Sanat. Right around the wicket to Badru, across the line of the leg, swinging his bat, finds the gap. The fieldsman there in the deep need to run across a little bit towards his left to stop that ball. And before that, fielder will go in to collect that one. The batter has got plenty of time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 18 for the loss of 1 wicket. Very, very hot atmosphere. It's not an easy job to tackle with this hot temperature here in this most beautiful venue. And here is again right arm Sanat balls. Again Badru wanted to hit the ball towards the mid wicket, not quite able to get the timing behind that stroke. Picked up a single anyhow. Strikes are rotated, runs are coming. 19 for the loss of 1 wicket. Still there are very hard to combine the big shots like bounties and sixes yet to combine. This is over number 4 in progress. Ansar Kaza, tremendous striker of the ball. This time ball is in there just over the infield.
Ansaf going back, running back, and underarm throw. That was a quick throw from that fielder. Ansaf, they're going for the third as well. This time chance of run out. Again, oh, that was a backhand throw. That might be a very close. Now that's why umpire asking for the third umpire. Will it going to be out or not out? I think whenever it's going to be a direct, it's always going to be a 90% of chances of getting the result in favor of fielding team. But here we have to see umpire, third umpire Mohan AID have to clarify. Umpire Mohan AID, third umpire have to clarify whether it is out or not out. It's a close one, I must say. That's why the Squalak umpire, and quite rightly so, Sheikh Malali not taking any risk in that occasion because it's a close one. It's going to be a very, very close one. Touch and go, and wait and see whether the batter is in or not. That's what we need to see. And the very good game of cricket is going on here. All the technicians of Bedra Media is trying their level best to get the best result. Not an easy job, I will tell you, because in present cricket, technologies in international cricket, the technology is advanced too much. But in limited availability of the technology, we have to judge. I think the batsman short of his crease. I think it's a short of crease and it's going to be out. The decision coming from umpire. Yes, he's out. Just short of a crease. Just an inches, I must say. When the bails are off, his bat is a little bit outside the crease. Because as for the present rules and regulation of the cricket is concerned, on the line, if the batter have got on the line, it was out. You need to cross the line. That was the present rules and regulation. That's why the batter is. That was the present rules and regulation. Now 21 on the board, 21 for the loss of 2 wickets. Once again, hats up to the third umpire Mohan Ayadi as well as the technicians of Bedra Media. Done a great job. It's not an easy job, I must say. With the limited availability of the technology, they able to give a better decision here. And wicket number 3 is completed. So here is a little bit of time here to announce those who are backing up this cricket tournament. We'd like to give special thanks to those who are giving some compliments here. Sameem Kalpara, Ismail of Good Luck, Achu of Running Star, Amir of New Boys, and Jesse of Good Luck, Habib of BSC. They're all sending the best compliment for the success of this wonderful cricket tournament in name of Gladiator Trophy 2022. That was really required, isn't it? The cooperation is much required for success of any big tournament. Once again, we'd like to give special thanks to those who are really cooperated heartily for the success of this cricket tournament. Meanwhile, the next delivery wide outside the run of off time. No hesitation in the mind of the umpire Sheikh Malali to signal the wide. So with that, extra scoreboard moves on to 22 on the board for the loss of 2 wicket. Sanat. Right arm over the wicket to Badru. Badru came as opener for the side. Facing next delivery. Lofted that one. Didn't got enough bat out to that. Long off fielder takes a catch. It's so difficult to beat the fielder, I must say. Against the direction of the wind as Badru wanted to go for the big shot. But he's choosing long off fielder in that occasion. And the innings of Badru comes in and is a huge wicket. This is a huge wicket for Team Kumla. What an outstanding bowling performance here from Team Kumla. 22 for the loss of 3 wicket. Meanwhile, the last match of round 1 of this Pool A, New Star Kunjattur takes on SNNS Kasaragod. SNNS Kasaragod will go to take on New Star Kunjatturu, and this is the last match of the round 1 of the Pool A. So that I request all the players of both the teams, please report here immediately to sign the official chart, and you have to complete your signatures as well as tossing ceremony formalities before that the first 3 overs of the next innings. ದಯಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಹಾಗೂ SNNS ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ
ಈ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು as well as SNNS Kasaragod. One more good match is coming up after this. So Badru is back into pavilion. Two new batter in the middle, Khalil and Ashik, the two new batter in the middle. Next ball, right arm over the wicket, opening the face of the bat, giving the direction by opening the face of the bat down to short, third man division for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. A very slow cricket is going on here. There's no boundaries, there's no sixes, but we can see that a disciplined bowling performance by Kumla. This time, lofted that one right in the gap, throws a deep in wicket and long chase here field. I don't think we'll go to win the race. The ball winning the race against the fieldsman. Welcome boundary coming up here for Woodland Osangadi. What a great shot that one from the batter. Look at that stroke, absolutely delightful to watch. Just the timing is a perfection. So welcome back after that traditional break. We are back into this game now. 27 for the loss of 3 wicket. What a fantastic atmosphere out here in this most beautiful venue. And two very good teams are clashing here to have the place in the next round of this prestigious Gladiator trophy. So far, I think it's a very good toss to win for Team Kumla. And just breaking the shackle in the previous delivery. Magnificent stroke coming from the bat of Khalil. And he got a very important boundary from his bat. 27 for the loss of 3 wickets. This time Khalil tried to hit one more big shot in the relegation, but this time line is outside and off time, so that he managed to pick the single down to short mid-on region. And with that single, scoreboard moves on to 28 for the loss of 3 wicket. The over number 5 in progress. Just only one boundary so far in the innings of Foodland Osangadi. That shows that the bowling, the performance of the bowlers of Team Kumla so far have been outstanding. Now, Ashik will go into face. Outside and off time, beautifully bowled there by Masood. And again, he's just testing the temperament of the batsman, bowling that line outside and off time. Of course, the width is offered, but the ball is having a very good face in the negation, so that completely missed out, and there is no chance of any run. 28 for the loss of 3 wickets. Right up over the wicket again. Oh, this is a big wide. A good piece of collection from the fielder in the negation, trying for, I think, Nandu Kumla there in the short fine leg region to run across and fields the ball. Try to stop the single in the negation. So one more addition to total. White plus 1, 2 more to the total. Scoreboard moves on to 30 now. 30 for the loss of 3 wickets. The over number 5 in progress. The run rate just under 5 runs per over. Just 5 runs per over, in fact. Went for the big shot, beautifully bowled, and wicket keeper behind the stump. Pradeep did the rest, and there's no chance of any run.
Good comeback. Therefore, Masood in the relegation, keeping the line very tight in the relegation. Khalil is a man who got one boundary in that over. He completely fails to make a contact with the bat. Final time in this over. Bowling. This time lofted and not quite enough to beat the infield, and mid-outfield adjusted 2 steps going back and takes a catch, and Khalil is back into pavilion. Once again he tried to go over the top. Look at that when the replay shuffled across the line of the delivery, just reaching to the pitch of the delivery, but didn't got that much of elevation he's looking for. Timing is not perfection, and mid-outfielder takes a catch. The wicket number 4 is back into pavilion. So what a fantastic game of cricket is going on here, and as like Gladiator Trophy, one more big tournament is coming up, and Crescent Arts and Sports Club Paivilike will going to organize one more fantastic cricket tournament. 18th Eagle Trophy, 11th Underarm Day-Night Cricket Tournament will be organized in coming days. And the venue will be of GHHS Paivilike Nagar. The big tournament, I think it's a big cash prize of 1 lakh and second cash prize of rupees 60,000. And this tournament, once again, just building the bridge between Kerala and Karnataka. 10 teams from Kerala and 10 teams from Karnataka will go into clash for this prestigious 18th Eagle Trophy. The interested team can enroll their name by paying 9,999 rupees and enroll your name very quickly, because only 20 teams has got opportunity to make a take a competition in this cricket tournament. Meanwhile, the last and final over is in progress. And 30 for the loss of 4 wicket, 6 over in 31 for the loss of 4 wicket, and last over is in progress. 30 little correction. Lofted, right in the gap, towards the long off. They're hunting hard, looking for the second. In comes the throw, but they're satisfied with a single. Directed once again, got the opportunity to come back for the second with that couple of runs. Scoreboard was on 32 for the loss of 4 wicket. Badly required some runs here because they didn't got that much of enough runs on the board. Foodland. Osangadi have to get some runs in the final over. Otherwise, very difficult to get some big score here. And so far, the Shiva is bowling second time in this third time is right arm round the wicket. He bowls beautifully bowled. One more dotted delivery. The very good piece of bowling, good line, tidy line and length, and just number 2 in the relegation. Ashik not really able to hit the ball. He's not really coming to the line in the relegation. Shuffled across the line up there. Tried to hit the big shot and missed it completely. 4th time in this over. Right arm over the wicket. Again, not quite getting hold of that one properly. Just a single. The captain will not going to bother about this single. The captain of Team Kumla. 32 for the loss of 4 wicket. 33 correction. Now, 5th time in this over. So far, it's a quiet over. There from Shiva. Right arm round the wicket. Bowls this time again. Right for the big shot. Got an inside edge of the bat. Beats a fine leg. Looking for the second. And before the fielder run across to field that one, they got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 35 for the loss of 4 wicket in the over number. Last and final delivery of the innings of Sangad is coming up. Ashik is on strike. Last delivery. Needed some big shot. Oh, dotted delivery. What a fantastic over there from the bowler in the relegation. Shiva completes a fantastic final over. So, after completion of over number 6, 35 is the total score. 36 going to be a target. Once again, the low scoring game is progressing here. 6 runs per over is the required run rate for Team Kumla to win the match. And what a fantastic game of cricket. And before the innings of Team Kumla will go into comments, it's time to change in commentary box, and it's time to ask Star Nawaz to take the microphone. And Star Nawaz, what a fantastic cricket tournament. Gladiator Trophy 2022. After that successful season 1, they're heading towards a season 2 in this most beautiful venue. And it's right that cricket is an exciting game that encourages the leadership, the friendship,
and teamwork, which brings together people from different places, the culture and religion, especially the played with the true spirit of cricket. I think the cricket always going to be the winner, and I think the Gladiator trophy is a perfect example of that true cricket. They're once again just building the bridge between the bridge of friendship, bridge of relationship, and a bridge of religion as well. I think hats off to Gladiators Underarm World WhatsApp group by making this possible. The second successful Gladiators Trophy 2022. जी बिल्कुल मैं सहमत हूं सतीश जी आपकी बातों से कि ग्लैडिएटर ट्रॉफी इस श्रृंखला को जिस तरह से जिन योजना के साथ यहाँ पर बनाए गए हैं और इसके पीछे जो ग्रुप खड़े हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप, एक से बढ़कर एक महारथियां, लगभग 260 सदस्यों से भरे ये अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप, इनकी काबिलियत, इनकी सक्षमता को साफ साफ देख सकते हैं दर्शक भी। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने सीजन 1 बनाए, ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 1 बनाए, तो जितने एक्साइटमेंट थे लोगों के, कर्नाटक के हो या केरला के, ये दोनों राज्यों के दर्शकों के जो एक्साइटमेंट थे, वो क्रिकेट देखने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप की ताकत क्या है। तो पिछली बार ट्रेलर दिखाए, इस बार सिनेमा दिखा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों पर आपको क्लाइमैक्स भी दिखाएंगे ये अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और इन अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे जो शक्तियां हैं, जो इस क्रिकेट श्रृंखला के कामयाबी के लिए अपनी दिन रात की मेहनत सजाकर आज दर्शकों को ऐसे एक धमाकेदार क्रिकेट श्रृंखला यहां पर सामने किए हैं, यहां पर सामने लाकर खड़े किए हैं इस मन्ननगुड़ी मैदान पर। हारिस वैयप्सी, हम बार बार नाम लेना चाहेंगे उस महामूर्ति के, क्योंकि उनकी वजह से ही इस क्रिकेट श्रृंखला कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखे उनकी योगदान, उनकी भूमिका जो थे ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर, यह निश्चित रूप से भूलने वाली बात नहीं है हारिस वैयप्सी के। कल नहीं परसों के दिन जो कर्नाटक के टीमों के बीच यहां पर मैच होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हारिस जी यहां पर मौजूद होंगे। और उसी तरह फिरोज मंजेश्वरा, जो इस क्रिकेट श्रृंखला के पीछे जितने वो अपनी योजना बना रहे हैं, पिछले कई महीनों से हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर भी हैं, हम जानते हैं कि वो पिछले 2 महीनों से जितने मेहनत, जितने प्लानिंग इस क्रिकेट श्रृंखला के लिए बना रहे थे। हालांकि वो एक क्रिकेटर भी है, एक जाने माने क्रिकेटर है, पिछले 2 दशकों से, पिछले 20 सालों से इस केरला और कर्नाटक दोनों राज्यों पर क्रिकेट खेलने के अनुभव रखते हैं, और एंगफ्रेंड सुरवा जैसे बड़े बड़े महारथियों के साथ खेलने के अनुभव रखते हैं, और एनएम जप्पू मैंगलोर जैसे टीमों पर भी अपनी योगदान निभाए हैं। फिरोज मंजेश्वरा इस क्रिकेट श्रृंखला के पीछे वाकई की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह हमजा पंजा इन सारे तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेते हुए, जिस तरह से हमजा हर एक व्यवस्था के बारे में जितनी जानकारी वो रखते हैं और जितने रखना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। उसी तरह कौसर जी, रियाज हो, इरशाद जी, इस्माइल, जासिर जैसे महारथियों के सहयोग के साथ इस क्रिकेट श्रृंखला को आप देख रहे हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 के नाम पर। तो शुरुआत के 3 मैच के बाद चौथे मैच आप मैदान पर देख रहे हैं टीम कुंबला और फुडलैंड होसंगड़ी के बीच। शुरुआत पर टॉस जीतने के पश्चात गेंदबाजी करने का निर्धार लेने के बाद टीम कुंबला विपक्षीय टीम को केवल 35 रन पर यहां पर रोके हैं। 36 गेंदों पर 36 रन के लक्ष्य, 36 फ्रॉम 36 बॉल्स। हमेशा छोटे लक्ष्य बड़े से संघर्ष दिखाते हैं मैदान में, ये बार बार साबित हो चुके हैं अंडरआर्म क्रिकेट पर। तो ऐसे में यहां पर अब देखना होगा क्या टीम कुंबला अपने गेंदबाजी में तो फुडलैंड के लिए केवल 35 रन खर्च किए हैं, और इस 36 रन बनाने के लिए यहां पर कामयाब हो पाएंगे, या यहां पर फुडलैंड होसंगड़ी बल्लेबाजी पर वैफल्यता दिखाने के बाद गेंदबाजी पर अपनी हुनर दिखाकर, अपनी कमाल दिखाकर क्या इस मैच को बचा पाएंगे अपने हाथ पर। पहली गेंद डॉटेड बनने के बाद दूसरी गेंद शॉर्ट मिड विकेट के एरिया पर गेंद को फुश करते हुए बल्लेबाज गिरी और प्रदीप की जोड़ी। गिरीश इनिंग्स के दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे हैं, और अब स्ट्राइक ले रहे हैं प्रदीप। कासरगोड परिसर के अग्र क्रमांक के बल्लेबाजों में माने जाते हैं इस प्रदीप को। इनके बारे में अगर कहते चले गए तो लंबी समय यहां पर लग जाएंगे, क्योंकि प्रदीप अपने 21 साल के क्रिकेट पर
पिछले 20-21 सालों से क्रिकेट के साथ जितने अनुभव इन्होंने लिए हैं प्रदीप ने, वाकई वो लंबी सफर जो है बहुत ही सुंदर सफर रहा है प्रदीप के। तो यहां पर देखना है कि 36 गेंदों पर 36 रन बनाने की इस सवाल को किस तरह से स्वीकारेंगे प्रदीप और गिरी द्वारा। गेंदबाजी पर खड़े हैं रऊफ अपनी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से ये अगली गेंद, और बार गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा पर पुश कर दिए प्रदीप। अनुभव के अनुसार आखिरी मौके तक गेंद को इंतजार करने के बाद गेंद को हल्के हाथ से पुश कर दिए मिड विकेट एरिया पर। गुड लेंथ वाली गेंद थे, टिप्पा आने के बाद गेंद थोड़ी सी ऊंचाई के साथ मिले थे प्रदीप को। अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते बहुत ही समझदारी के साथ इस गेंद को सीधे मिड विकेट एरिया पर गेंद को पुश कर दिए और इस सिंगल रन के साथ रनों की संख्या बने 2 रन। रऊ फिर तैयार और इस बार केवल मात्र एक्शन के साथ रोक दिए हो जाते हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी आप देखते हैं कि लंबी दौड़ लगाने के बाद गेंदबाज अपने हाथों से गेंद बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो ऐसे में अंपायर इस गेंद को डिलिबरेट कहते हैं, यानी कि यहां पर कोई संभावना कोई घटना घटी नहीं है, इस बात की सूचना के मतलब बनते हैं। और इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ वाली गेंद, सीधे गेंद को विकेट के नजदीक गेंद को टिप्पा खिलाए, यॉर्कर जैसे गेंद यहां पर दिखाए। रऊफ आवश्यकता है इस तरह की गेंदबाजी की। निश्चित रूप से यहां पर टीम कुंबला के खिलाफ फुडलैंड होसंगड़ी को जरूरत है इस तरह की लाइन और लेंथ की गेंदबाजी दिखाने की, क्योंकि आपने अपनी बल्लेबाजी पर केवल 35 बनाकर 36 रन के लक्ष्य दिए हैं। तो ऐसे मौके में इस तरह के डॉटेड डिलीवरी, विपक्षीय बल्लेबाजों को फंसाने वाली गेंदबाजी की जरूरत आवश्यकता है यहां पर होसंगड़ी को। रो फिर तैयार, ये अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट से, और इस बार लोअर फुल टच के ऊपर गेंद को सीधे फाइनल की रास्ता दिखा है। पावर प्ले के फायदा उठाते हुए यहां पर प्रदीप, हमने शुरुआत पर ही कहा था कि प्रदीप एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी है जो मौके मिलते ही चौके लगा देते हैं, और यहां पर भी देखिए जो मौका मिले और लगा दिए ऐसे एक धमाकेदार ग्लैडिएटर चौका। पावर प्ले पर जिस तरह की सजावट यहां पर फील्डिंग पर दिखाए हैं टीम कुंबला के खिलाफ फुडलैंड होसंगड़ी, अब तो कमजोरी रह गए फील्डिंग की सजावट पर, क्योंकि गेंदबाजों को यहां पर गेंदबाजी की यहां पर हम कहने होंगे कि पिछली गेंद जिस तरह से उन्होंने दिखाए हैं बहुत ही आसानी से गेंद थे, और बार सुंदर तरीके की गेंद, और इस गेंद पर पुश करने की कोशिश पर अपनी विकेट गंवा बैठे प्रदीप के विकेट यहां पर गिरता हुआ। टीम कुंबला अपनी पहली विकेट प्रदीप के ऊपर गंवाते हुए नजर आ रहे हैं मैदान में। शुरुआत की ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर वो 5वीं गेंद पर चौके को रोक दिया होता, वो गेंद पर उस चौके को रोक दिया होता, तो निश्चित रूप से शुरुआत की ओवर पर जो रन जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी को जरूरत थे, आपकी टीम को जरूरत थे शुरुआत की ओवर पर जितने कम रनों पर रोकने की जरूरत थे, निश्चित रूप से उस जरूरत के साथ आप टिक सकते थे। लेकिन फिर भी अब तो समय गुजारा नहीं है दोस्त, क्योंकि क्रिकेट पर आखिरी मौके तक, इनिंग्स के आखिरी गेंद तक हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी गेंदबाज के हाथों पर जादू निकल आ सकते हैं मैदान में। कई बार हमने देखे हैं ईशाम जैसे गेंदबाज, कर्नाटक के मैंगलोर के ईशाम जैसे गेंदबाज, अश्विन राज जैसे गेंदबाज, शरण जैसे गेंदबाज, चेतन जैसे गेंदबाज, जुबैर जैसे गेंदबाजों के हाथों पर ये कमाल के हमने देखे हैं अंडरआर्म क्रिकेट पर। और उसी तरह अगर केरला परिसर पर हमने कहे तो यही प्रदी हो, योगीश शारिंग जैसे ऑलराउंडर, फिरोज मंजेश्वर, करीम लकी स्टार जैसे खिलाड़ियां अपने हुनर को ऐसे मौके में दिखाए थे जब अपनी टीम दबाव पर रहते हैं, जब अपनी टीम को एक ऐसे प्रदर्शन के, ऐसे परफॉर्मेंस की जरूरत होते हैं, तब आप अगर आप दिखाते हैं ऐसे परफॉर्मेंस, तब जाकर आपके नाम रोशन हो जाएंगे मैदान पे और यूट्यूब चैनल पे भी। क्योंकि आजकल जितने आप अच्छे दिखाएंगे, पुराने दिनों जैसे नहीं है दोस्त। पुराने दिनों पर केवल मैदान के लिए सीमित होते थे उनकी प्रदर्शन, लेकिन आजकल आपके हर एक अच्छी गेंदबाजी, हर एक अच्छी बल्लेबाजी, हर एक अच्छी फील्डिंग हो, कैच हो, जो भी नजारे हो, बेद्रा मीडिया जैसे मीडिया अपने कैमरामैन के जरिए तैयार रहते हैं आपको कैमरा पर कैद करते हुए देश विदेशों पर दिखाने के लिए।
तो क्या इतिहास बनाने के लिए आप इस मैच पर इस रन को रोक पाएंगे? यहां पर फुटलैंड होसंगड़ी, और इस बार ये रहा क्लीन बाउंड। इसे कहते हैं वापसाती, इसे कहते हैं वापसाती। ये देखिए रिप्ले में आप किस तरह से पिछली गेंद पर उस खिलाड़ी के विकेट को यहां पर लपक चुके हैं गेंदबाज नीतेश। बहुत ही बेहतरीन गेंद, टिप्पा खिलाने के बाद गेंद को थोड़ी सी उछाल के साथ आउटर स्विंगर के साथ गेंद को दिखाए। हालांकि बल्लेबाज उस टिप्पे के बाद गेंद को समझ नहीं पाए, सीधे जाकर गेंद गिल्लियों पर टक्कर खाए, और इसी के साथों साथ ये रहा दूसरे झटका। यहां पर प्रदीप के निर्गमन के बाद गिरी की भी यहां पर पारी आई है टकआउट पर निकलने की। तो ऐसे में आरंभिक जोड़ी को वापस भेज चुके हैं यहां पर फुटलैंड होसंगड़ी। जरूरत है ऐसे गेंदबाजी की। हम हमेशा कहते हैं छोटी लक्ष्य को आप नजरअंदाज मत कीजिए। किसी एक गेंदबाज की चालाकीपन मैच की जीत की वजह बन सकते हैं, जीत वाली ओवर बन सकते हैं किसी एक गेंदबाज की ओवर। तो क्या यहां पर नीतेश के ओवर, क्या यहां पर नीतेश के ओवर इस मैच के रौनक बन सकते हैं इस मैदान में? पिछली ओवर के आखिरी गेंद पर प्रदीप के विकेट यहां पर छुड़ाए थे फुटलैंड होसंगड़ी, और इस ओवर के पहली गेंद पर ही यहां पर गिरी के विकेट। और इस बार भी अच्छी गेंद, डॉटेड डिलीवरी, वाकई ये बहुत ही बेहतरीन वापसाती। 36 गेंदों पर 36 रन के लक्ष्य देने के बाद शुरुआत की ओवर पर 8 रन बना चुके थे, लेकिन यहां पर देखिए प्रदीप ने संभाले, यहां पर नीतेश ने संभाले, और ये रहा पुरस्कार। यहां पर एलबीडब्ल्यू के शिकार बने नए खिलाड़ी यहां पर अनिल, यहां पर तीसरे विकेट के रूप पर वापस लौट रहे हैं डगआउट पर। इसे कहते हैं क्रिकेट। हम इसलिए बार बार घंटी बजाकर आपसे कहते हैं कि मोबाइल से हटकर कहीं मत जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि 35 रन बनाए हैं यूं ही बन जाएंगे 36 गेंदों पर 36 रन। लेकिन ये मन्नंकुजी मैदान है और ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त। ये कोई ऐसे वैसे क्रिकेट श्रृंखला नहीं है, ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला है ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022। यहां पर हर एक विकेट, हर एक कारनामा यादगार बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। हमेशा आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब चैनल के जरिए। बेद्रा मीडिया इस सेवा पर खड़े हैं जो अंडरआर्म ही नहीं बल्कि आजकल तो हर तरह के क्रिकेट पर अपनी सीधे प्रसारण के साथ मशहूर हो चुके हैं बेद्रा मीडिया। अभी अभी आपको सतीश हनुमान ने बताया कि 70,000 सब्सक्राइबर, यह कोई मामूली सी बात नहीं है। एक छोटी सी मोबाइल से शुरुआत करते हुए एक मीडिया 70,000 सब्सक्राइबर को पाते हैं, तो उनकी कारनामा, उनकी काबिलियत को आप अंदाज लगा सकते हैं। नीतेश, और इस बार ऑप्शन से थोड़ी बाहर गेंद, इस बार थोड़ी सी बाहर थे गेंद, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। लेकिन पिछले तीनों गेंदों पर जो लाइन और लाइन दिखाए हैं गेंदबाज नीतेश ने, और इस वाइड तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं मानेंगे दर्शक भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 गेंद दिखाए। और ये रहा वापसाती फिर एक बार, कॉट बिहाइंड के अपील अंपायर से, लेकिन अंपायर को विश्वास नहीं नजर आए। और कहीं ना कहीं माइक की जो साउंड जो है ये थोड़ी सी दुविधा बन जाते हैं अंपायरों के लिए। जब ऑन फील्ड ग्राउंड माइक की व्यवस्था होते हैं मैदान में, तो ऐसे मौके में हमारी शब्दों की आवाज जो है वो बल्ले से गेंद टकराने की आवाज अंपायर तक पहुंचने में थोड़ी सी दुविधा बन जाते हैं। और इस बात के लिए हम माफी चाहते हैं अंपायरों से अगर उस समय ऐसे कुछ शब्दों की वजह से समस्या हो। नीतेश फिर तैयार। नीतेश, क्या विश्वास दिलाए हैं दर्शकों को आपने, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी। मोहन को याद दिला रहे हैं गोरियन बॉयज के गिरगिट मोहन, जो उर्वाकी मैदान पर अपने हाथों की कमालगी दिखाते थे इसी तरह की शैली के साथ गेंदबाजी करते हुए। और आज देखिए नीतेश, वाकई आपके नाम हमारे दिमाग पर चिपक चुके हैं नीतेश जी। और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश पर आए, विकेट कीपर के हाथ पर मौके खड़े थे। नीतीश थोड़ी सी निराशा के साथ विकेट कीपर को कहा कि काश आप इस गेंद को उठा लिया होता। ओवर की समाप्ति, ऐसे एक धमाकेदार, एक जादू भरी ओवर की समाप्ति यहां पर फुटलैंड होसंगड़ी
हमने शुरुआत पर ही अनुमान लगाए थे कि अगर एक अच्छी ओवर यहां पर निकल आए तो निश्चित रूप से यहां पर मैच पर वापसी ला सकते हैं फुडलैंड होसंगडी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब रन संख्या बने हैं केवल मात्र 10 रन, केवल मात्र 10 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहली ओवर पर बने थे 8 रन, इस ओवर पर केवल 2 रन खर्च करते हुए 2 ऐसे धमाकेदार विकेट, बेहतरीन विकेट सफलता के रूप पर पाए हैं नितेश ने। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये ओवर जो है इस मैच के रौनक वाले ओवर थे, बिल्कुल कोई शक नहीं है नितेश जी इस ओवर के बारे में। अब 26 रन बाकी 4 ओवर पर, 24 गेंदों पर 26 रन। दर्शक क्या अनुमान लगाएंगे इस मैच के ऊपर आप? क्या फुडलैंड होसंगडी की गेंदबाजी पर विश्वास रखेंगे या टीम कुंबला के बल्लेबाजी पर? क्योंकि ये मन्नंगुड़ी के मैदान कभी कभी 6 ओवर पर 60 रन भी आसान बना देते हैं और कभी कभी 6 ओवर पर 20 रन भी मुश्किल। खुले आसमान, मैदान की चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, खड़ी धूप के बीच चल रहा है ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 आप देख रहे हैं। पहले सीजन पर एंकरिन सुरवा चैंपियन बने थे और रनर्स के रूप पर देखे थे एनी पोसोट जो पिछले मैच के विजेता बने, तीसरी मैच के विजेता बने थे सीएससी पाइबली के खिलाफ। तो इस बार देखना है कि कर्नाटक विभाग पर कौन होंगे फाइनलिस्ट और केरला विभाग पर कौन होंगे फाइनलिस्ट। हरीश और इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर गेंद। कृष्णा गेंदबाजी पर। कृष्णा जी जिस तरह से पिछली ओवर पर नितेश ने जो रौनक लाए हैं इस मैच पर, आपको समझना होगा अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि एक एक वाइड, एक एक रन जो है वाइड के रूप पर या आपकी गलती की वजह से निकलने वाली एक एक रन वो आपकी टीम के हार के रन बन सकते हैं, याद रखिएगा। कृष्णा फिर तैयार और इस बार फुश कर दिए गेंद को अंसर कजा। दाऊद दौड़ते हुए गेंद के पास, केवल मात्र 1 रन मिल पाए हरीश के लिए। दूसरी तरफ मंजू खड़े हैं जो अब तक रन नहीं बना पाए हैं, अपने खाता नहीं खुले हैं अब तक। 3 विकेट खोने के बाद चौथे विकेट की साझेदारी मंजू और हरीश। कृष्णा फिर तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट से मंजू के लिए स्वीप कर दिए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन तो आसानी से मिले, फील्डर गेंद को उठाकर वापस कर दिए गेंदबाज के हाथ पर, लेकिन मंजू जो छोटी उम्र के एक प्रतिभान्वित खिलाड़ी है, 4 नंबर के जर्सी के साथ टीम कुंबला के किरदार निभा रहे हैं मंजू। और यहां पर तो हर एक खिलाड़ी के पास ऐसे एक सुनहरा मौका है अपने आप को बेहतरीन दिखाने के, क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है। यहां पर जितने आप अच्छे दिखाएंगे उतने ही रौनक बनेंगे आपके भविष्य क्रिकेट में। 1 रन चुरा लिए और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। इस बार दूसरे रन भी समाप्त। यहां पर शुरुआत की ओवर पर 8 रन चुराने के बाद दूसरी ओवर पर एक ऐसे विश्वास दिलाए हैं नितेश अपनी गेंदबाजी में, लेकिन तीसरी ओवर पर टीम कुंबला धीरे धीरे से फिर वापस ला रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। एक वाइड के रूप पर 1 रन मिले और पिछली गेंद पर ये दुगने रन भी। कृष्णा फिर तैयार, चौथी गेंद अपनी ओवर के। हरीश खड़े हैं स्ट्राइक पर और इस बार भी स्वीप करने की कोशिश, लेकिन पैरों पर टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथ पर मिले। लेग बाई की इशारा अंपायर हरीश पटेल से। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप शेख मलली को देख सकते हैं और तीसरी अंपायर के रूप पर मोहन येगाडी, काफी मशहूर कर्नाटक ही नहीं बल्कि गोवा, तमिलनाडु, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों पर भी रेफरी की जिम्मेदारी निभाए हैं इन महामूर्तियों ने। और इस बार स्वीप कर दिए मंजू और ये रहा फंबल। यहां पर मिसफील्ड के फायदा उठाते हुए दूसरे रन भी समाप्त कर चुके हैं फुडलैंड होसंगडी। आपने अपने बल्लेबाजी पर 35 रन बनाए हैं, तो ऐसे में एक एक रन चाहे वो वाइड के रूप पर हो, मिसफील्ड के रूप पर हो, बिल्कुल ये मानने वाली बात नहीं होंगे।
जितने आप डॉटेड बनाएंगे, जितने रन को आप रोकने की प्रयास करेंगे, उतने ही बेहतर होगा आपकी जीत के लिए। वरना टीम कुंबला योजना के अनुसार इस मैच को जीतने की पूरे कोशिश करेंगे। यहां पर कृष्णा अपनी ओवर की आखिरी गेंद, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, 18 रन बने हैं रन संख्या। अब 19 गेंदों पर जरूरत है 18 रन के। 19 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। कृष्णा फिर तैयार और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश। एलबीडब्ल्यू के जोरदार अपील भी यहां पर हुए विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल ऐसे कोई खतरा नहीं थे बल्लेबाज के लिए। गेंद विकेट को छोड़ते हुए निकलने वाले थे। तो ऐसे में ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 19 रन, 19 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। अब बचे हुए 18 गेंदों पर रनों की जरूरत है 17 रन के। 18 गेंदों पर 17 रन, 3 ओवर पर 17 रन। तो आप भी सोच रहे होंगे कि काश एक ऐसे ओवर यहां पर दोबारा यहां पर दिखाए जिस तरह से नितेश ने दिखाए थे, क्योंकि यहां पर भी जरूरत उसी तरह की एक गेंदबाजी की है। फुटलैंड होसंगड़ी को छोटे रन बनाने के बाद अपनी गेंदबाजी पर भी विश्वास रख सकते हैं फुटलैंड होसंगड़ी। जी बिल्कुल सही निर्धार है यहां पर टीम के कप्तान के। फुटलैंड होसंगड़ी के कप्तान वापस लाए हैं नितेश को। जिस तरह से दूसरी ओवर पर नितेश ने कमाल दिखाए थे, केवल 2 रन के साथ अपनी तो अब देखना है कि नितेश क्या पिछले ओवर की तरह इस ओवर पर भी उसी तरह के कमाल दिखा पाएंगे। यहां पर 18 गेंदों पर 17 रन की जरूरत है। अगर इस ओवर पर 3 से 4 रन खर्च करते हुए नितेश अपने ओवर को संभालते हैं यहां पर, तो निश्चित रूप से रौनक आ जाएंगे मैच पर। एक संघर्ष वाली मैच देखने को मिलेंगे दर्शकों को। नितेश तैयार, स्ट्राइक पर खड़े हैं मंजू और इस बार गेंद को उछाले लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हवा में गेंद, और ये रहा नितेश के कमाल के गेंद। यहां पर मंजू के विकेट यहां पर कैच आउट के रूप पर पाए हैं नितेश। 17 गेंदों पर 17, 7 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च करते हुए नितेश ने कमाए हैं 3 विकेट। 7 गेंद 2 रन और 3 सफलता यहां पर प्राप्त किए हैं नितेश अपनी गेंदबाजी में। वाह भाई वाह। इससे पहले तो कई सालों से अश्विन राज जैसे गेंदबाजों के हम प्रशंसा करते थे, उनकी गेंदबाजी की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, और आज हम दावे के साथ और आने वाले दिनों पर कर्नाटक के हर एक मैदान पर हम मिसाल के तौर पे कह सकते हैं नितेश की गेंदबाजी को। 7 गेंदों पर 2 रन 3 विकेट। अब 17 गेंदों पर 17 रन। अक्सर हम माइक्रोफोन पर बार बार कहते हैं कि 17 पे खतरा बन सकते हैं। वाकई ही यहां पर खतरे नजर आ रहे हैं टीम कुंबला के लिए। नए खिलाड़ी सतीश, मंजू के निर्गमन के बाद हरीश के साथ जुड़ रहे हैं सतीश। 4 विकेट खोने के बाद रन संख्या बने हैं 19 रन। अब 17 गेंदों पर 17 रन नितेश, और इस बार रिवर्स स्वीप के साथ गेंद को खेले थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन तो भागते हुए, लेकिन 2 रन भी यहां पर समाप्त। इस श्रृंखला के ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं बहुभाषा वीक्षक विवरणकार, जो मल्टी लैंग्वेज वीक्षक विवरणकार कहलाते हैं, और काफी अनुभवी स्पोर्ट्स के अलग अलग तरीके में, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, अलग अलग तरीके में, अलग अलग रूप में माहिर कहलाने वाले दिवाकर उप्पल जी इस क्रिकेट श्रृंखला पर हमारे साथ जुड़े हैं। हम स्वागत करते हैं दिवाकर जी आपको ग्लैडिएटर ट्रॉफी की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से। आपकी आगमन से इस स्टेज के रौनक बढ़े हैं। हम काफी उम्मीद करते हैं आपसे, काफी कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि पिछले कई दशकों से आपने लगातार, ये 3 दशकों से ऐसे क्रिकेट के साथ, ऐसे स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमें सीखने वाली बात बहुत कुछ होंगे आपसे। तो हम वापस आते हैं मैदान पर नितेश की प्रशंसा करने के लिए। नितेश
अपने विकेट के शिकार के नंबर बनाए हैं चौथे नंबर पर। 8 गेंदों पर 4 रन खर्च करते हुए 4 विकेट। इक्कीस रन कुल मिलाकर 21, 3 more balls to go। 3 गेंद अभी भी बाकी। पहली गेंद पर आपने विकेट चुराए कैच आउट के रूप पर, दूसरी गेंद पर दुगने रन बने और तीसरी गेंद पर मिले हैं विकेट। नितेश फिर तैयार, ये अगली गेंद और इस बार सुंदर तरीके से, वाकई सुंदर तरीके से गेंद को सीधे शॉर्ट मिड विकेट एरिया पर खेलते हुए 1 रन चुराए। भले ही इस शॉट को 1 रन मिले हो, लेकिन जितनी सुंदरता के साथ वो रन चुराए हैं, हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल इस बात को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि नितेश की उस गेंद की घुमावट को टिप्पा खिलाने के बाद जिस तरह से स्विंगिंग करते हैं अपनी गेंदबाजी पर नितेश द्वारा, उसे समझते हुए जिस तरह से, जितनी शैली के साथ मोहम्मद अजरुद्दीन जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नंदू। और इस बार ये रहा सतीश की बारी। पिछली गेंद पर नंदू ने वो कमाल की शैली दिखाए थे और इस बार दिखाए हैं यहां पर सतीश ने। और हालांकि मैं दर्शकों को कह दूं कि सतीश के जन्मदिन है आज, टीम कुंबला के ये खिलाड़ी के जन्मदिन है आज। हम ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं सतीश जी आपको, आपकी आने वाले दिन जो है आपकी उम्मीद के साथ जुड़े हुए हो, बरकत के साथ हो। नितेश, ये अगली गेंद और इस बार सुंदर गेंद यहां पर। क्या शानदार ओवर यहां पर, 2 ओवर के स्पेल जो है, पिछली बार एक ऐसे धमाकेदार ओवर हमने देखे थे गेंदबाजी पर। इस बार तो नितेश की गेंदबाजी हमने देखे यहां पर। पहली ओवर पर केवल मात्र 1 रन और ये दूसरी ओवर पर 4 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर पर 5 रन 4 विकेट। 2 ओवर 5 रन 4 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 23 रन। अब जरूरत है 12 गेंदों पर 13 रन के, और इस ओवर की शुरुआत से ही हमने अनुमान लगाया था और ये उम्मीद यहां पर दर्शकों को हमने पेश किया था कि काश इस ओवर पर 3 से 4 रन हो तो आखिरी वाली 2 ओवर होगा रौनक वाली ओवर। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि अब यहां पर वुडलैंड होसंगडी के कप्तान किसे चुनेंगे गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजों को मद्देनजर रखते हुए नंदू और सतीश क्रीज पर खड़े हैं, तो इन खिलाड़ियों के धनात्मक और ऋणात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बल्लेबाजों की कुछ शैलियां बनते हैं मैदान में, कुछ एरिया बनते हैं खेलने की तरीका, कुछ खिलाड़ियां ऑफसाइड के फेवर बनते हैं, कुछ खिलाड़ियां ऑनसाइड के फेवर बनते हैं, कुछ खिलाड़ियां ग्राउंडेड शॉट के साथ रन चुराते हैं, और कुछ खिलाड़ियां आजकल के जो जादू वाले बल्लेबाजी है, बल्ला को आड़ा घुमाकर रिवर्स स्वीप के साथ रन चुराते हैं। तो इन तमाम बातों पर ध्यान लगाना होगा अब टीम के कप्तान को, फील्डिंग वाले टीम के कप्तान को, कि किसे उतारना है गेंदबाजी पर, और गेंदबाज को यह सोचना है कि किस तरह से गेंदबाजी करना होगा ऐसे दबाव की परिस्थिति पर। 12 गेंदों पर 13 रन। कहीं मत जाइएगा दर्शक, अपनी मोबाइल पर अगर चार्ज खत्म हो रहे हो तो लगा दीजिएगा चार्जर के पिन, क्योंकि ये मैच दोबारा अगर देखना है तो आपको टेलीकास्ट जरूर मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन लाइव देखने की मजा कुछ और है दोस्तों। 12 गेंदों पर 13 रन गेंदबाजी पर लाए हैं, गेंदबाजी के लिए गफूर को लाए हैं। अब देखना है कि गफूर क्या अपनी टीम के कप्तान के विश्वास पर खड़े उतर पाएंगे। यहां पर 12 गेंदों पर 13 रन, 12 बॉल 13 रन टू विन दिस मैच। सतीश खड़े हैं जो जन्मदिन के खिलाड़ी हैं, आज उनके जन्मदिन है। अगर आप इस मैच को जिताते हैं तो मानिए आपको जन्मदिन के तोहफा मिल गए। गफूर जूनियर अश्विन कहलाते हैं इस परिसर पर, और इस बार फुल टच वाले गेंद और उछाल दिए गेंद को, और गेंद सीधे गए सीमा रेखे की बाहर। ग्लैडिएटर धनधनातन छक्का, ये रहा जन्मदिन वाली छक्का। निश्चित रूप से ये तोहफे होंगे आपके लिए, और YouTube के चैनल बेद्रा मीडिया के जरिए आप बार बार देख सकते हैं इस छक्के को। आप 12 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है, तब सतीश के बल्ले से निकल आई। ये देखिए कितने सुंदर छक्का,
जूनियर अश्विन कहलाने वाले गफूर सीधे फुल टच के रूप पर खुल कर दिए थे, मौका दिए थे सतीश को, और सतीश इस मौके के भरपूर फायदा उठाते हुए उस गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर रास्ता दिखाए और अपने जन्मदिन पर तोहफे के रूप पर पाए एक शानदार छक्का। अब 11 गेंदों पर 7 रन, 11 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त, हर बार एक नए रौनक के साथ क्रिकेट श्रृंखला को लाते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। 260 सदस्यों से बड़ा अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिकेट के प्रेमियों के लिए एक ऐसे धमाकेदार क्रिकेट श्रृंखला लाए हैं। पिछले बार के कामयाबी के बाद, ट्रेलर दिखाने के बाद अब सिनेमा दिखाने लगे हैं। आने वाले दिनों पर आपको क्लाइमैक्स भी दिखेंगे और वो होगा अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर सबसे बेहतर क्रिकेट श्रृंखला। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी और यहां पर खतरा, और नंदू बच गए यहां पर। 10 गेंदों पर अब जरूरत है 7 रन के। ये देखिए पिछले 4 ओवर पर जो एक्साइटमेंट, जो रौनक, जो उत्साह यहां पर मेंटेन होते हुए देखे थे दर्शक ने, वो एक छक्के ने पानी फेर दिए हैं उस कोशिश पर। और इस बार सतीश, इस बार भी लोअर फुल टच के ऊपर मिले गेंद, 2 रन लेने से बिल्कुल नहीं रोक पाए। और इस 2 रन के साथों साथ टीम कुंबला मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 31 रन, 31। अब 5 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए, 9 गेंद बाकी, 9 गेंदों पर 5 रन। और इस बार भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन इस बार मौका नहीं बना पाए सतीश द्वारा। बाउंड्री लाइन के करीबों करीब फील्डर खड़े थे, थोड़ी सी पावर की कमी रह गई, जगह बनाने पर थोड़े से चूके यहां पर सतीश द्वारा, ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा नजर आए और फील्डर उस गेंद को लपकते हुए पेविलियन के रास्ता दिखाए सतीश को। अब 8 गेंदों पर 5 रन, 8 गेंदों पर 5 रन। मैं याद दिला दूं दर्शकों को, पैराडाइज प्रीमियर लीग जो अंडरआर्म क्रिकेट पर फ्लडलाइट के रूप पर सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला खेलाए थे, फाल्कन रॉयल्स के किरदार निभाते हुए अश्विन राज, 2 ओवर पर 5 रन की जरूरत थे विपक्षीय टीम को, और आखिरी ओवर पर 2 रन की जरूरत थे, तब अश्विन राज वो कमाल दिखाए थे। हैट्रिक विकेट लेते हुए इस मैच को जिता दिए थे अपनी टीम के लिए। हकीम फाल्कन के मालिकत्व पर फाल्कन रॉयल्स उस मैच पर खेलते हुए चैंपियन बने थे। तो अब यहां पर देखना है कि गफूर अपने ओवर पर जो गलतियां किए हैं फुल टच के रूप पर देते हुए, और इस बार अच्छी गेंद, ये अच्छी वापस आती है यहां पर, डॉटेड डिलीवरी। तीसरी अंपायर की मदद ले रहे हैं शेख मलली, स्टंप आउट के मजबूत अपील कर रहे थे अंपायर से। तो आप देखेंगे कि क्या नंदू खतरे से बाहर है या नंदू के विकेट सुरक्षित होगा यहां पर। तीसरी अंपायर अपनी बारीकी नजर से देखने के बाद ये नॉट आउट, सुरक्षित रहे यहां पर नंदू। तो अब 7 गेंदों पर 5 रन, 7 गेंदों पर 5 रन। अगर ये आखिरी गेंद डॉटेड बनाते हैं, बिंदी गेंद बनाते हैं, ये आखिरी गेंद गफूर, अगर आप जूनियर अश्विन कहलाते हैं तो ये साबित करना होगा इस मैदान पे कि आप जूनियर अश्विन जैसे गेंदबाजी करते हैं। आखिरी गेंद अगर आप डॉटेड करते हैं या विकेट के शिकार करते हैं तो आखिरी ओवर पर 5 रन, ये कोई नजरअंदाज वाली बात नहीं होंगे, दोनों टीमों को बन सकते हैं और नहीं भी। गफूर 7 गेंदों पर 5 रन, नंदू रहा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी शिवा, और इस बार भी उछालने की कोशिश यहां पर, और ये रहा शिवा के विकेट खतरे में, और इसी के साथ ये रहा रन आउट। तो अब रोमांचन बाकी बचे हैं आखिरी ओवर के लिए, 6 गेंदों पर 5 रन। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट पर आप नाजों की नजर मत डालिए। 2 ओवर पर 13 रन की जरूरत है। पहली गेंद पर वो छक्के लगते ही कहीं ना कहीं ऐसे दर्शकों को लग रहा था कि ये इसी ओवर पर मैच फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन गफूर अपनी गेंदबाजी पर वापसाती लाए, अपनी लाइन और लेंथ पर सुधारन दिखाए और बचाए हैं आखिरी ओवर पर 5 रन। आखिरी ओवर के लिए 5 रन बचाए हैं। तो अब देखना है कि यहां पर फुडलैंड होसंगडी
किस गेंदबाज को उतारेंगे इस आखिरी ओवर के इस इम्तिहान के लिए? किस गेंदबाज के पास होगा वो जिगर जो आखिरी ओवर पर 5 रन को रोक दे? यहां पर टीम कुंबला और फुटलैंड होसंगडी। आखिरी ओवर पर 5 रन। सतीश जी, आप देख रहे हैं मैच को, शुरुआत पर आपने अनुमान लगाया कि 36 गेंदों पर 36 रन। क्या नवाज जी बन पाएंगे? क्या गेंदबाजी पर करारा गेंदबाजी दिखा पाएंगे? यहां पर क्या करना होगा? यहां पर इन तमाम बातों को पिछले 5 ओवर के पूरी कारनामा आपने देखे हैं, तो आपको क्या लगते हैं कि ये आखिरी ओवर पर 5 रन को रोकने के प्रयास क्या कर पाएंगे यहां पर फुटलैंड होसंगडी, या टीम कुंबला पूरा कर पाएंगे इस मैच को? Exactly, Nawaz brother. Just talking about the cricket is an unpredictable game, isn't it? And just like what always I am mentioning in cricket, you cannot underestimate the low total. The small leakage can sink a big ship, and might be the little bit underestimation from Kumla, the batters. They're chasing only 36 to win the match. But this is a cricket, isn't it? And getting 5 runs in 6 ball, I think it's not easy. Getting 10 runs in 6 ball, it's easy because batter is an aggressive frame of mind. The only way you need to get some big shot. But getting 5 runs in 6 ball is definitely going to be a difficult one, because one dotted ball will going to change the complexion of the match, Nawaz brother. And something, the butterfly in the stomach in the batters, it's not so easy, because we have to see the which ball will go into ball that last over. Handling the pressure is so important, Nawaz brother. Handling the pressure in the sense the bowler has to handle the pressure, the batter has to handle the pressure, and more than anyone else, I think even fielder need to handle the pressure. This is a good game of cricket. That's the kind of cricket that spectators wanted to see. जी बिल्कुल बिल्कुल, जो दबाव को परिस्थिति को संभालना जानते हैं वही सिकंदर बनते हैं मैदान में। आप सही कहा, क्योंकि अब यहां पर मैं फुटलैंड होसंगडी के कप्तान को भी मैं निश्चित रूप से मैं मानना चाहूंगा, क्योंकि जो निर्धार उन्होंने लिए हैं, दाऊद के हाथ पर गेंद सौंपे है। इसी दाऊद ने पिछली बार मुजंगाव ट्रॉफी पर आखिरी ओवर पर 6 रनों की जरूरत, 4 रनों की जरूरत थे आखिरी ओवर पर, तब इनकी गेंदबाजी पर रोकते हुए अपनी टीम को सेमीफाइनल पर विराजमान किए थे दाऊद ने। तो क्या दाऊद दोबारा इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर फुटलैंड होसंगडी के किरदार निभाते हुए क्या ऐसे कमाल दोबारा दिखा पाएंगे इस मैदान में? पहली गेंद, और इस बार गेंद को उछाले हवा में, गेंद और सीधे कैच आउट। पहली गेंद पर यह रहा विकेट। अब 5 गेंदों पर जरूरत है 5 रन के। दाऊद क्या पिछली बार की तरह इस बार भी कमाल दिखा पाएंगे आप? ये देखिए रिप्ले पर, अगर थोड़ी सी और शक्ति के इस्तेमाल किया होता है यहां पर बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से गेंद सीधे सीमारे का पार कर जाते हैं, लेकिन सही जगह पर फील्डर की सजावट किए थे दाऊद ने। 8 विकेट अब तक गिर चुके हैं यहां पर। पांच गेंदों पर अब जरूरत है 5 रन के, और गौर देने वाली बात यह है कि 8 विकेट गिर चुके हैं यहां पर टीम कुंबला के। अगर 2 विकेट और लेते हैं तो पूरे तमाम 10 विकेट खत्म हो जाएंगे टीम कुंबला के। 5 गेंदों पर 5 रन, अगर और 1 विकेट यहां पर लेते हैं दाऊद, तो टीम कुंबला 90% दबाव में गिर जाएंगे इस मैच पर, क्योंकि आखिरी विकेट पर 1-1 रन बनाना भी तलवार को पार करने से कम नहीं होगा मैदान में। दाऊद फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से पहली गेंद पर विकेट के साथ अपने विश्वास को दुगने करते हुए और देखने वाले दर्शकों के विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं दाऊद यहां पर। यह अगली गेंद, 5 गेंदों पर 5 रन, और इस बार गेंद को इंतजार करने के बाद आखिरी मौके पर गेंद को सीधे पॉपिंग क्रीज की जगह पर गेंद को खेले, जहां पर एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए नए खिलाड़ी नसफ मसूद अब स्ट्राइक लेंगे। 4 गेंदों पर 4 रन। अब तो यहां पर फुटलैंड होसंगडी को जरूरत है विकेट शिकार करने के। एक विकेट जो है, एक विकेट जीत के कदम आगे बढ़ाएंगे, जीत के नजदीक लेके जाएंगे यहां पर होसंगडी को। फुटलैंड होसंगडी 4 गेंदों पर 4 रन बनाने से रोकना होगा टीम कुंबला को। दाऊद फिर तैयार, लेग स्पिन के मांत्रिक गेंदबाज, और इस बार गेंद को फिर हवा में खेले,
कोई फील्डर नहीं थे जहां पर गेंद टिप्पा खाए जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। यहां पर तो 2 रन के मौका मिले टीम कुंबला को, और ये 2 रन तो ग्लूकोज की तरह मिले हैं टीम कुंबला के लिए। और इस 2 रन के साथों साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 34 रन, 34। अगर मैच टाई हो जाते हैं, मैच अगर दोनों टीम, ध्यान दीजिएगा, मैच अगर बराबर टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर होगा, निर्धार करेंगे विजेता को। सुपर ओवर के साथ विजेता को निर्धार करेंगे, ये संगठकों के निर्धार है। दाऊद फिर तैयार, 3 गेंदों पर 2 रन, 3 गेंदों पर 2 रन। और इस बार क्या शानदार गेंद, यहां पर ये रहा क्लीन बाउंड। आखिरी विकेट बाकी, 9 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। निश्चित रूप से कितने सुंदर मैच देखने को मिल रहे हैं। छोटे लक्ष्य के मैच हमेशा हम कहते हैं कि बड़े संघर्ष के साथ देखने को मिलते हैं मैदान में। ये बार बार हमें मिसाल के तौर पे देखने को मिले हैं बहुत ही सारे मैदानों में। और आज यहां पर देखिए ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर भी ये इतिहास बन रहे हैं। यहां पे बेद्रा मीडिया जो ऑनलाइन सीधा प्रसारण दिखाते हुए इस मैच के फेसबुक के जरिए 1000 से भी बढ़कर लोग इस मैच को देख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं ऑनलाइन व्यूअर्स 1265। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी के महत्व क्या है, विशेषता क्या है। इंतजार कर रहे थे दर्शक भी कि कब निकल आते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप अगर प्रस्तुत करते हैं तो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। 2 गेंदों पर 2 रन और आखिरी विकेट, 2 गेंदों पर 2 रन, टीम कुंबला और फुटलैंड होसंगडी। ये अगली गेंद, और बार गेंद को सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर खेले, फील्डर के हाथ पर गेंद, 1 रन तो आसानी से मिले। मैच तो अब टाई हो चुके हैं बराबर। अब आखिरी गेंद पर आखिरी रन, आखिरी गेंद पर आखिरी रन। स्ट्राइक पर खड़े हैं नसाफ। नसाफ एक ऐसे खिलाड़ी है जो इतिहास बनाए हैं अंडरआर्म क्रिकेट पर। आखिरी 3 गेंद पर जब 18 रन की जरूरत है तो 3 लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाए थे नसाफ। यहां पर तो आखिरी गेंद पर एक सिंगल रन बनाने की जरूरत है अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, केवल एक सिंगल रन की जरूरत। दाऊद के हाथ पर गेंद, फील्डिंग पर भी परिवर्तन किए, नजदीक लाए गए हैं फील्डर को कि आखिरी रन को किस तरह से रोके जाए। क्या यहां पर मिलेंगे एक सुपर ओवर, और इस बार रहा ऊंचे गेंद। ये नो बॉल के इशारे के साथों साथ टीम कुंबला इस मैच को 1 विकेट से जीत चुके हैं। अभिनंदन करते हैं टीम कुंबला को, और ऐसे एक धमाकेदार संघर्ष वाली मैच दिखाने के लिए हम धन्यवाद कहते हैं फुटलैंड होसंगडी को।
ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ സതീഷ് സിക്സ് അടിച്ച മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ 12-13 ആകുമ്പോ അതൊരു സിക്സ് അടിച്ചിട്ട് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് കുറെ കഷ്ടമാകുന്നുണ്ടായി നസഫ് ജഡ്ഡോര് വരുമ്പോ 5 വിക്കറ്റ് 4.5 economy ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಆ ವಿಜಯವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುಡ್ಲಕ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ಕೈಲಾರಿ ಇವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಕೈಲಾರಿ ರವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುಡ್ಲಕ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ನಿ ಪೊಸೋಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎನ್ನಿ ಪೊಸೋಟ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಂಜು ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ್ ರವರಿಗೆ ನಾವು ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. So thank you very much, my colleague presenter, one of the popular commentator of South Canara, Mr. Star Nivas, and welcome back to the mega event Gladiator Trophy 2022. Here is the first innings of the particular match in progress. Sai Namana versus New Star Kunjatur, which is the last match of double N S Kasarigod. Okay, they. Yes, Kasarigod on the toss and elected to ball first. Here's the first over in progress. A brilliant delivery line of the middle stump and always played well to the cover region. Fielder is presented there. Brilliant piece of fielding and returned to the keepers, Unni Krishnan Kimbala. So one more added to the total. Two opening pairs are there for New Star Kunjatur after lost the toss and put into bat first. They are Shafiq along with Nazir. Scorecard jump now on 3-4 no loss. It is once again a next delivery. Bowler of the side of Kasarigod Therma. It is once again around the wicket. Oh, beautiful delivery and well played straight to the long on region. One bounce to the fielder. Oh, that is opportunity. That is a big opportunity to get the wicket. As opportunity for the bowler to make the run out. So lucky. Bowler is not able to carry the ball. That's why lucky couple of runs to the opening batsman Shafiq and Nazir. Nazir Cherigoli and Shafiq Echen.
They were the opening pair for the side of a New Star Kunjattur. Popular cricketers playing since 15 years in cricket field. And it is once again Dharma from Kasaragod. Beautiful delivery, get on the pad. I think waiting for the decision of umpire. It should be leg by, yes it is. One more to the extra and one more to the total. Very first over in progress. New Star Kunjattur, they scored 6-4 without loss. Both the right-handed batsmen. Now Shafiq back to the striking end. Dharma. Beautiful delivery and well played to the cover and extra coverage. And Sidhu is there. Well fielded by Sidhu. Every fielder of Kasaragod, they performing absolutely well in the earlier. So after the completion of 1 over, 7-4, no loss. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ബെദ്ര മീഡിയയിൽ നേരിട്ടുള്ള സംപ്രേക്ഷണത്തിലാണ് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2022. കഴിഞ്ഞ വർഷം മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2ാം വർഷം മണ്ണുകുഴിയിൽ, അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ഹാരിസ് കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ കുമ്പളയിൽ ഡേ നൈറ്റിലായി ഈ മത്സരം 3ാം സീസൺ അരങ്ങിൽ വരും എന്ന പ്രത്യേക അറിയിപ്പോടുകൂടി കമന്ററി ബോക്സിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബേക്കൂർ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ക്രിക്കറ്റിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ ഭാഷയുടെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബേക്കൂർ വീണ്ടും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം പകുതി 2ാമത്തെ ഓവർ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാർക്ക്, സംഘാടക സമിതിക്ക്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് അരുൺ DJ. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 2ാമത്തെ ഓവർ ആരംഭിക്കുന്നു. അച്ചു ആദ്യത്തെ പന്തിനെ തന്നെ അടിക്കുകയാണ് മിഡ് ഓഫിലേക്ക്. നിരന്തരമായ പ്രത്യേകതകൾ, ഒരു ഭാഗത്ത് കേരള ടീമുകൾ, മറുഭാഗത്ത് കർണാടക ടീമുകൾ. അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ് കടലോര കർണാടകയിലെ അണ്ടറാമിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ മത്സരിക്കുന്ന ദിനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് അരങ്ങേറിയ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2ാം സീസണിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മണ്ണുകുഴി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വിപുലീകരിച്ച ഈ ഒരു മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. അമ്പയർ മോഹൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, വൈഡെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. സൗജന്യമായി റൺ കാണുകയാണ്. 1,00,000-ൽ പരം സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ജേതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബ്രാൻഡ് സ്പോർട്സ് സീതാങ്കുളിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ഓർഡർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സമ്മാനമാണ് ജേതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ആ ഒരു മികച്ച ട്രോഫി ഇപ്രാവശ്യം ആർക്ക് സ്വന്തം എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരം കാണുവാൻ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അജുവിന്റെ അടുത്ത പന്ത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ആദ്യ റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ അടുത്ത പന്തുമായി ഓഫ്റ്റമിൽ നിന്ന് വളരെ പുറത്തേക്ക് പോയ പന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതിരോധിച്ചു, പക്ഷേ കയ്യിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടയിൽ വൈഡുകൾ. അജുവിലൂടെ നിരവധി വൈഡുകൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ 2ാമത്തെ ഓവർ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ബെദ്ര മീഡിയയിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹാരിത ചാർത്തിയ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2022. ഉച്ച സമയമാണ്. ഏകദേശം 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടയിൽ അടിക്കുന്ന പന്ത് ലോങ് ഓഫിന്റെ ഇടയിലൂടെ കിടക്കാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ കാസർഗോഡിന്റെ പ്രതിഭാശാലികളായ ഫീൽഡർമാരുടെ മികച്ച പ്രതിരോധം അവിടെ 2 റൺസ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അണ്ടറാമിന്റെ മാസ്മരിക മത്സരം, പ്രിയമുള്ളവരെ, 1700 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച ക്രിക്കറ്റ്. ഷഫീഖ സ്ട്രൈക്കിൽ, നസീർ നോൺ സ്ട്രൈക്കിൽ, വീണ്ടും ഷഫീഖ്. എച്ചിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി ഓപ്പണറായി റോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ടീം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നസീർ ചെറുകോളിയൊപ്പം ഷഫീഖ. സ്കോർ നില 13. ഇതിനിടയിൽ ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമം, പന്ത് കാലിൽ തട്ടുന്നു, അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ കാല് കോലിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലായിരുന്നു. ആ LBW അപ്പീൽ നിരസിക്കുകയാണ് മോഹൻ. സ്കോർ നില ഇപ്പോഴും 13 തന്നെ. 2ാമത്തെ ഓവറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ അടുത്ത പന്തുമായി ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു, ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിൽ പന്ത് ബൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ഓഫിൽ നിന്നും വന്നു ഫീൽഡ് ചെയ്യവേ ഇതിനിടയിൽ 2 റൺ ഓടുകയാണ്.
മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട്, ഒരു മികച്ച ഫൗണ്ടേഷൻ അടിത്തറ പാകുകയാണ് ന്യൂ സ്റ്റാർ കുഞ്ചത്തൂരിന് വേണ്ടി. SNNS കാസർഗോഡ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ടോസ് വിജയിച്ച ശേഷം ഫീൽഡിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിശ്ചിത 6 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമാണ്. അണ്ടർആമിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂർണമെന്റ്. ഇതിനിടയിൽ ശരവേഗത്തിൽ പന്തിനടിക്കുന്ന ഓൺ സൈഡിൽ, ഇതിനിടയിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം, ബൗണ്ടറി കടക്കുകയാണ്. ഇത് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ബൗണ്ടറി ഷഫീഖിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും പിറക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഓവർ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓൺ സൈഡിൽ ആ പവർ പ്ലേയുടെ നിയമത്തിന്റെ ആ അവസാന പന്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ലാഭമെടുത്തുകൊണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉയർത്തിയടിച്ച പന്ത് ശരവേഗത്തിൽ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ ഇത് മികച്ച ഒരു ബൗണ്ടറി ആകുന്നു. ഓവർ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നില 19 നോളോസ്. അത്ഭുതകരമായ തുടക്കം. കഴിഞ്ഞ 36 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യത്തിന് കുംബ്ലെ ടീം എടുക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം 40-45 സ്കോർ ചെയ്താൽ എതിരാളിക്ക് ഒരു വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നു. കാസർഗോഡ് ടീമിൽ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ മികച്ച യുവ പ്രതിഭകളൊപ്പം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഉണ്ണിയടക്കമുള്ള കളിക്കാർ കാസർഗോഡ് ടീമിൽ ഞങ്ങൾ കാണാം. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲೆಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಮತಗಳ ಸಂಗಮ ಬೀಡಾದಂತಹ ಗಡಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರಾಫಿ 2023ರ ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕುಂಜತ್ತೂರು ನಡುವೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಯಾ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್. ಶಫೀಕ್ ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 19ಕ್ಕೆ ನೋಲೋಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಫೀಕ್ ರವರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 12 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಅವರು. ಈ ನಡುವೆ ಧರ್ಮ ಹೊಸ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಫ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಏನೋ ಲೆಂತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಗಳಿಕೆ 20ಕ್ಕೆ 21ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 21. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಶಫೀಕ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಂತಹ ದಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏಕ ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಈ ನಡುವೆ ಧರ್ಮ ಬಲವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಅಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು. 24 ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 24ಕ್ಕೂ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ. ಓಹೋ, ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಸನಿಹ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುವಂತಹ ದಿನ, ನಡುವೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಅಂಕಣ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಮೈದಾನ ಮಣ್ಣಂಗುಳಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಲ್ಲ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ, ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಟ. ನಜೀರ್ ಸೆರಗೋಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮ. ಶಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಪರಿಣಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಫಲತೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
25ಕ್ಕೆ 3। जिस प्रकार पहला 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बनी है, आखिर गेंद पर विकेट का पतन जो शफीक के द्वारा, यानी शफीक उछाल कर खेलना चाहा, काफी देर तक हवा में रही गेंद और अंतिम क्षणों में कैच लपका लिया है। और जब तक ये चौथा ओवर की शुरुआत किया जाए, आंखों देखा हाल सुनाने में परिवर्तन लाना चाहूंगा कि कासरगोड जिले की सबसे अनुभव राष्ट्रभाषा के कमेंटेटर मेरे साथ है अब्दुल रहमान बेकोर। धन्यवाद दिवाकर मंगलपाड़ी। अब तक आपको के हाल सुना रहे थे, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह है ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 अंडरआर्म श्रृंखलाओं के सबसे बढ़िया क्रिकेट प्रतियोगिता। यहां पर आज के दिन शुरुआत हुए हैं। केरला की 10 टीम यहां पर खेल रही है पहली राउंड के आखिरी मैच, यानी कि आज के सुबह के वक्त में शुरुआत हुए 9 बजे में। अब तो 5वें मैच है, 10 टीम आज के दिन में खेल रही है। 3 ओवर संपन्न हो चुके हैं आखिरी मैच की पहली इनिंग्स में, यानी कि आखिरी मैच पहली राउंड के आखिरी मैच। 25 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो आखिरी ओवर के आखिरी गेंद में आउट हुए थे शफीक उपला, बहुत अच्छे योगदान दिए इन्होंने अपनी टीम के लिए। न्यू स्टार कुंजतुर के लिए बहुत खूबसूरत शुरुआत ही दिया गया। 13 रन बनाकर आउट हुए शफीक उपला और उनके जगह पर हकीम यापदाओ अब नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। जब तक गेंदबाजी में परिवर्तन आ गई है, हिंदुस्तानी स्कूलन से उन्नी कृष्णन कुंबला को योगदान दिया गया। सबसे अच्छे टीम के बीच में मुकाबला जारी है। पहली गेंद उन्नी ओवर द विकेट्स। अंपायर ने दोनों हाथ हवा पर फैला रही है। हरीश पटेल वाइड के इशारा किए हैं। पहली गेंद पर जो वाइड के रूप में 1 रन जोड़ा गया है, रन संख्या बढ़ते हुए 26। फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, उल्टा बल्ले में कोशिश किए थे, पूरी तरह घूमकर खड़े हुए थे। लेग स्टंप पर गेंद आए थे, पूरी तरह पराजित हुए। कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं। 26 अभी भी स्कोर खाते पर। फिर एक बार उन्नी कृष्णन कुंबला ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए। हकीम बहुत खूबसूरती के साथ कलाएं के उपयोग किए हैं। लोंगोन इलाके पर खेलकर 1 रन अपने खाता खोल चुके हैं। अपने खाते पर 1 रन जोड़ा गया है और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। फिर एक बार उन्नी कृष्णन 2 नजीर ने बहुत अच्छी तरह अंतिम क्षण तक गेंद को इंतजार किए। जो पड़ने के बाद जो गेंद उठ रही थी तब इन्होंने ड्राइव किए लॉन्ग ऑफ में 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 28 ऑन द बॉल, 28 रन। फिर एक बार उन्नी। हकीम के लिए बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने छोड़ते हुए इस गेंद को। बल्ले के बारी हिस्सा लगे हैं मेरे ख्याल में, इस वजह से कोई इशारा नहीं दिए अंपायर ने। जी हाँ, बल्ले के बारी हिस्सा लगकर जो गेंद गए थे विकेट कीपर के पीछे की तरफ ही 1 रन और जोड़ा गया है हकीम के खाते पर। हकीम 2 रन बनाकर खेलते हुए उन्नी। फिर एक बार और इस गेंद हवा पर उठाकर खेला है, कोई फील्डर तैनात नहीं थे। फील्डर ने आकर गेंद को उठाए, थ्रो किए, तब तक 2 रन के लिए अवसर मिले हैं यहां पर और इस 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 31 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंद अभी भी बचे हैं चौथी ओवर के। शुरुआत बहुत अच्छे मिले हैं शफीक और नजीर के बीच में साझेदारी जा रही थी, बहुत खूबसूरत साझेदारी। और इस गेंद को उल्टा खेलने की कोशिश में पूरी तरह पराजित हुए। हल्के से अपील भी किया गया था विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने लेग बाई की इशारा किया। तब तक ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर 32 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र विकेट गवा दिया गया है शफीक उपला, उन्होंने आउट होकर पब्लिक को पास लौट चुके थे। शानदार शुरुआत दिया गया है इन्होंने। बहुत बड़े प्रतियोगिता जारी है ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2। बहुत बड़े बड़े टीम यहां पर आज के दिन में खेल रही है। केरला के 10 टीम यहां पर आज के दिन खेलने वाले हैं। आज शाम तक कौन सी टीम फाइनल पर पहुंच जाएंगी जो आज शाम तक पता चलेंगी। और परसों के दिन जो 3 तारीख को शनिवार के दिन शुरुआत होंगे दक्षिण कर्नाटक की बहुत बड़े बड़े टीम के बीच में मुकाबला।
5 तारीख को, क्षमा कीजिए, 5 तारीख को जो योगदान देंगे कर्नाटक की बहुत बड़े बड़े टीम के रूप में यहां पर खेला जाएंगे। अब तो 5-6 ओवर के रूप में योगदान देने के लिए नए गेंदबाज अजय को लाए गए हैं। बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी है। 19 के ओवर के बाद जो बायार के कंबर ओडेन से जो गेंदबाजी के लिए शुरुआत ही करना चाहते हैं अजय, बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी को योगदान दिया गया है। सामने खड़े हैं नजीर चिरगोली, आरंभिक बल्लेबाज। और इस गेंद को खेलना चाहा और हल्के से अपील भी किया थे। इसके मतलब यह है कि जो पैड पर लगे हैं लेग बाई का इशारा दिया गया और इस लेग बाई की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 33 ऑन द बोर्ड, यानी कि 33 रन। फिर एक बार अजय दूर वाले चौसे अंपायर को क्रॉस करते हुए 2-3 कदमों के सहारे के लेकर इन्होंने गेंद फेंक रही है ओवर द विकेट। और इस गेंद को स्वीप करना चाहा, अंपायर ने इशारा कर रही है वाइड के साथ और 1 रन जोड़ा जाएंगे। स्कोर खाते पर 34 on the board. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ബിച്ചു ബോയ്സ് എന്നീ പസോട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. फिर एक बार अजय ने गेंद फेंके गए थे जो विकेट कीपर के गलती की वजह से 1 रन मिले हैं। बाई का इशारा कर दिया गए थे। 35 ऑन द बोर्ड। अजय फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद लेग स्टंप पर पकाने के बाद जो अंपायर ने करे कि वाइड है। शेख मलाली मैन अंपायर के रूप में खड़े हैं, स्क्वायर लेग पर दिख रही हैं। स्क्वायर लेग पर मोहन नैयाली बहुत अच्छे अंपायरिंग पैनल बनाए यहां पर ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए सीजन 2 और आने वाली सीजन 3 यहां पर जो तैयारी की है अभी कुंबला के मैदान पर डे नाइट मैच के योजना कर रही है, तैयारी भी की है। ऐसे खबर सुने हैं खुशखबरी। फिर एक बार आ जाए अच्छी गेंद लेग स्टंप पर पकाने के बाद विकेट कीपर की तरफ कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए अजय लाजवाब गेंदबाजी की प्रदर्शन करते हुए। नमना नुसरत चौकी की तरफ से गेंदबाज है 5 ओवर के और इस गेंद को खेला गया है मिड ऑफ में। फील्डर तैनात है, तब तक फील्डर की तरफ पहुंचने से पहले 1 रन के लिए अवसर मिले हैं नजीर को। 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 37 ऑन द बोर्ड। 37 ऑन द बोर्ड। अजय फिर एक बार हकीमिया पदाव के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं ओवर द विकेट। अच्छी गेंद मिड विकेट पर खेला गया है। काफी लंबे खड़े हुए हैं फील्डर। 1 रन तेजी के साथ दौड़े हैं। दूसरे रन के लिए आसानी के साथ अवसर मिले हैं और इसी के साथ 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 39 पर पहुंच चुके हैं, 39 पर। अजय की गेंदबाजी जारी है। 5 ओवर की प्रगति पर 5 गेंदें फेंक चुके हैं अजय। फिर एक बार अजय टू हकीमिया पदाओ 2 रन हासिल करने के बाद और इस गेंद को कट करना चाहते थे, ऑप्शन के बिल्कुल बाहर से छोड़ दिया गया। अंतिम के क्षण पर वाइड के इशारा भी किए, महंगी साबित होते हुए इस ओवर। अजय फिर एक बार हकीमिया पदों के लिए और इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट पर। फील्डर तैनात है, तेजी के साथ फील्डर ने आए उठाए तो रोके, तब तक 1 रन पर संतुष्ट हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर 41 ऑन द बोर्ड। ये तो आज के दिन में सबसे बड़े स्कोर बनाए थे 42 3 बार बनाए गए थे। अब तो 41 रन बन गई है सिर्फ 5 ओवर में। अभी 1 ओवर बचे भी हैं और मेरे ख्याल में इस मैच में तो सबसे लंबे स्कोर यहां पर बन जाएंगे। बल्लेबाज तो रिटायर्ड हट हुए हैं मेरे ख्याल में। साली को लाया जा रही है नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत खूबसूरत जो अनुभवी खिलाड़ी है, रहने वाले अडका की रहने वाले, जो हमेशा न्यू स्टार कुंजतूर में खेलने वाले खिलाड़ी में।
बहुत बड़े नामदार खिलाड़ी, यादगार टूर्नामेंट पर यहां पर प्रीतम आखिरी ओवर के रूप में अपनी जवाबदारी ली है गेंदबाजी की। हिंदुस्तानी स्कूल से गेंदबाजी के लिए योगदान मिले हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी स्कूल से स्ट्राइक पर मौजूद है हकीम मियां पताओ। नजीर ने जो रिटायर्ड हट हुए थे, जो हट गए थे खेल से, आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, इन्होंने वापस किए हैं मैदान से। अब नए खिलाड़ी को अवसर मिले हैं, साली अडका को योगदान दिया गया है। पहली गेंद लेकर प्रीतम ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए हकीम के लिए। हकीम उल्टा बल्ले में खेला गया है, गली इलाके पर गेंद तेज रफ्तार से जाते हुए फील्डर ने तेजी के साथ आए, उठाए, थ्रो किए, तब तक के 2 रन दूसरे रन के लिए आउट। हकीम आउट। मैजिकल थ्रो किए हैं उन्नी कृष्णन ने, काफी वाइड थ्रो आए थे, उस गेंद को उठाए और स्टंप को गिरा दिए हैं, बेल्स को गिरा दिया गया है। हकीम को वापस लौटने की रास्ता बता दिया गया है। दूसरी विकेट के पतन। रियाज आए हैं, रियाज कुजतुर सबसे नामदार खिलाड़ियों से एक है, यानी कि अंडरआर्म क्रिकेट के लेजेंड जाना जाती हैं जो खेलने वाली खिलाड़ियों के बीच में। इनको योगदान मिले हैं, वाइस कैप्टन है टीम के न्यू स्टार कुंजतुर की, कप्तान जो नजीर रिटायर्ड हट होकर पवेलियन को पास लौट गए थे। अब तो प्रीतम ओवर द विकेट। रियाज बहुत खूबसूरती के साथ कलाएं के उपयोग किए हैं, अगर डायरेक्ट हिट होते तो यहां पर रियाज को बहुत मुश्किल स्थिति बन जाते थे, ऐसे नहीं हुए। 1 रन के लिए यहां पर अवसर मिले। इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 43 ऑन द बोर्ड, सबसे बड़े स्कोर यहां पर बना लिया गया। ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 के सबसे ज्यादा रन यहां पर बनाने वाली टीम बन गई है न्यू स्टार कुंजतुर, 43। अब तो प्रीतम सबसे अच्छे गेंदबाजों के लाइनअप वाली जो टीम है, नमना नुसरत चौकी का सरगोर, और इन टीम के जो खेल जा रही है न्यू स्टार कुंजतुर की तरफ। टॉस जीते पश्चात पहली क्षेत्र रक्षा कर रही है, आखिरी ओवर जा रही है पहली इनिंग्स की, अराउंड द विकेट। और साली ने इस गेंद को कट कर दिया गया है। कोई बड़े शॉट के लिए उम्मीद नहीं कि इन्होंने जो 1-1 रन बटोरना चाहते हैं, जानता है कि सबसे अच्छे स्कोर यहां पर बन गई है, तब आने वाली गेंदों में 1-1 रन बटोरते जाऊं, जो सामने वाली टीम के ऊपर संकट डाल दूं। ये तो बहुत अच्छी योजना है इनकी। फिर एक बार बिच्चू बॉयस मत्सरार्थियों मत सैन्य वेंडी एत्तिचेरुगा अब विकेट प्रीतम, और इस गेंद को भी खेला गया है मिड विकेट पर। फिर एक बार इस बार तो सही निशाने पर टकराए, रियाज को पास लौट दिया गया बाहर। पिछले बार भी ऐसे मौका थे लेकिन लगे नहीं थे निशाने पर, इस बार तो निशाने पर लगे। आउट हुए रियाज, तीसरे विकेट के पतन, रियाज कुंजतुर आउट। फरवेज कुंजतुर नए बल्लेबाज के रूप में आ रही है। आखिरी ओवर के 2 गेंदे बचे हैं, जो स्ट्राइक एंड पर साली अडका है, नॉन स्ट्राइक एंड पर इनके जगह जो फरवेज कुंजतुर बहुत बड़े खिलाड़ी, ऑलराउंडर हैं। इनको कुछ महीनों के बाद जो मैदान पर दिख रही है, इनको ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर रहते हैं। जो कभी कभी टाइम मिलते हैं तो खेलने के आते हैं, खेलने के लिए बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलते हैं इन्होंने। अब तो 5वें बार प्रीतम कासरगोड इस बार अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। साली इस गेंद को घुमाना चाहते थे, बड़े शॉट के लिए उम्मीद किए, लेकिन अंपायर के हाथ खुल गई, वाइड और बाय। 2 रन यहां पर लॉटरी की खाते पर जोड़ा जाएंगे। इस 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 46 ऑन द बोर्ड। बिच्चू बॉयस मत्सरार्थियों सैन्य वेंडी एत्तिचेरुगा फिर एक बार 5वीं गेंद लेकर, और इस गेंद को खेलना चाहा
ऑप्शन के बाहर थे, कट कर दिया गया है। पहली स्लिप पर फिर लेते इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन, 47 रन। बहुत खूबसूरत प्रतियोगिता ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2। पहली दिन केरला की पुल जारी है, पहली राउंड के आखिरी मैच की पहली इनिंग्स, और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहा, अपील और इसी के साथ आउट। चौथे विकेट के पतन यहां पर हुए हैं और इसी के साथ इनिंग्स भी संपन्न हो चुके हैं। 48 इज द विक्ट्री टारगेट, 48 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। आने वाले मैच के लिए जो बिच्छू बाइस और अन्नी पुसोट के सारे खिलाड़ियों आकर हस्ताक्षर किया जाए। आज शाम तक पता चलेगा कि ग्लैडिएटर ट्रॉफी की पहली दिन के जो केरला पुल में कौन फाइनल पर प्रवेश करने वाली टीम है, जो दक्षिण कर्नाटक की टीम के साथ लड़ाई करने के लिए कौन तैयारी होंगे, आज के शाम पर पता चलेंगे। अब आज के दिन 5वें मैच आने की पहली राउंड के आखिरी मैच, दूसरी राउंड की शुरुआत अब होने वाले हैं। जो नवाज ने कह रही थी कि जो कोई छोटे मोटे जो क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता जा रही है। അതേപോലെ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വം കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. റാക്കിബ് സൗദി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി അണ്ടറാം വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പർ കൂടിയാണ്, കമ്മിറ്റി ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. अब तो 5 ओवर के पांचवें मैच के पहले इनिंग संपन्न हो चुके हैं। दूसरी इनिंग्स के लिए आपके सामने दक्षिण कर्नाटक की प्रमुख कमेंटेटर, अंग्रेजी कमेंटेटर मेरे खास दोस्त सतीश मैंगलोर स्वागत करना चाहता हूं। Thank you very much, Janab Abdul Rahman Bekur, sir. So good afternoon, cricket lovers. And the first time watching that the high-scoring game, and the last 4 matches, it was a low-scoring game. No one team is able to cross 45 plus runs. And the first, the batting team scored that much of runs in the morning, and till afternoon, it looks like it was one of the best first innings score. 47 is the total score, and 48 to win the match for SNNS Kasaragod. So after winning the toss, selected to field first, SNNS Kasaragod able to prevent the opposition for just 47 runs, and 48 is going to be a target. New star Kunjaturu, of course, leading from the front. Riaz is always a key player for the side, who got experience of playing for Young Fensurwa for a long time. And he is the one who wanted to give good start from his bowling. But as far as SNNS Kasaragod is concerned, needed some very good start. A positive start is badly required from the opening batters of SNNS Kasaragod. They need to get some good start. Absolutely, Riaz is a very good partner of Firoz Manjeshwar. The both are played for Young Fensurwa. Of course, Firoz Manjeshwar, everybody knows that, who contributed a lot in Underarm cricket in South Kerala district as well, representing high-ranking teams like Young Fensurwa, NM Cricketers Mangalore. And very good to see that till now he is maintaining his fitness. In the last cricket tournament, which is held at UCGK ground, the UFC trophy, the above 40, the Masters trophy, he represented Young Fensurwa, and Young Fensurwa becomes the runners of that of Masters trophy. And Firoz is the one who is the reason for the runners up because of his all-round performance from the bowling, from the batting. If contributed, and Young Fensurwa become the runners up in the last week. UFC trophy, the Masters trophy, which is held at UCGK ground. The first ball, and Riaz balls, and the batsman well forward in the relegation with the full face of the bat. Didn't got that much of timing in the relegation, but able to pick the single down to short cow point region.
And first run comes up here for SNNS. So I request the two teams captain, please report here for the toss. The captain of NE Posut as well as the Bichu Boys captain, please report here immediately. So Unikrishnan is off the mark with his first delivery itself. Is flicks that one of his legs down to short deep mid wicket region for an easy single. Both the opener batter they got 1 run each, 2 without loss of no wicket. Long way to go. 48 runs required from 36 deliveries. Now 46 runs required from 34 deliveries. Riaz with the short run up. And bowling from the goal post end. Right arm over the wicket bounce. This ball is in there, but out of the reach of that short cow point fielder. Once again, the batter couldn't manage to get the timing behind that extra cover drive. He just able to pick the single. Preetu is a very good striker of the ball. Everybody knows that the potential of him, who can very, very dangerous in the power play overs. Got the ability of hitting a big shots. I watching him playing for NNS. That was a tournament which is held at UCG cricket ground. He is the one responsible for his team in the final. He won in the last week. NNS become the runners-off. And he becomes the best batsman award in that tournament which is held at Kuluru. And again, he is the man who is looking for in this particular match. He had to talk with his bat if they wanted to win the match. So far, Riaz handling the pressure in the first over. And the quiet over. This time, lofted, not quite getting hold of that one properly. And easy catch here for Shafiq. Down at short extra cover. Just 2-3 steps is going back and takes a very good position to take the catch. His intention of Pritham is to clear the ground, clear the infield. And just elevation what he's looking for. And that is not able to do that, so and we're not really getting the distance in that occasion. And unfortunately, the danger man departs. Pritham is back into pavilion. We are talking about the Jacks Trophy 2022, which is held at Kuluru. And in that particular tournament, Pritham, who played a magnificent innings, and he became the man of the series, I think. So best batsman award he won. And unfortunately, in this particular match, when some contribution is required from the bat, he is unfortunately is out very cheaply. Out for 2, and replacing him is a new batter, slowly walking towards the middle. And now all up to Unikrishnan, tremendous striker of the ball, one who can clear the ground quite easily. Is knowing for big hitting system across the line of the delivery, swinging his bat but not able to beat the infield. The short square leg fielder immediately moving towards left and fields the ball. Tidy over there from Riaz. Once again he is showing his excellency, showing his experience in this particular over. Not an easy job to come and bowl, especially in the afternoon. After 11 or 12 o'clock, this down might be a little bit favorable for the batting side rather than the bowlers. But handling the pressure, so important for the bowler. And Riaz just bowled a magnificent over. Just 5 runs came from that over, and he picked a very huge wicket of Pritham. So chasing 48 to win the match, only 5 runs came for SNNS. That means they have to get another 43 runs in remaining 30 deliveries. So just like we already always mentioning about the punctuality is very important. Time conscious is very important, and once again I request the fielding team to finish your 6 overs within 30 minutes, stipulated 30 minutes. I think is too much, the 30 minutes. Each and every over you have to finish within 4.5 minutes, and that's so important for organizer to finish this match within a time, and otherwise it's very definitely it's going to be difficult to organize, and we have to reduce the number of overs for the semi-finals, and of course it's not a good sign reducing the over, and for that the cooperation is much required from all the teams. They have to complete their 6 overs very quickly. From the players dugout end, second over will going to start. The second over of the power play, Abhi bowls. Unikrishnan once again looking for the big shot, but not quite able to get the timing behind the shot in the occasion, putting some extra effort and to hit a big shot in the occasion. Unikrishnan is a mighty striker of the ball, one who believe with this muscle power
but this time I think it's a very difficult, that ball, the line and length is very difficult for Unnikrishnan to get the elevation he's looking for. The intention of Unnikrishnan to clear the infield, the mid off in the circle, the only we can see the fielder in the deep mid wicket and deep long on. That's why he wanted to play that one in that area. This time, across the line of the delivery, swinging his bat, but ball is pitching outside the line of leg stump, so that no question of leg before wicket. And one more addition to total in the form of leg by. Trying and trying, but the batters of yes NNS are not really getting the big strokes in this power play overs. So far it's a very quiet going here. 6 for the loss of 1 wicket, so 1.2 over in progress. Again, Ali, right arm round the wicket. Improvisation beats the infield. But very good stop there by the fielder on his, of course, instead of he stops the ball from the hands, he's just using his legs to stop the speed of that reverse sweep there from the batter. And Jojo picked up a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 8 for the loss of 1 wicket. Very hot, sunny afternoon out here in this most beautiful venue. Golden Abdulaziz Memorial Cricket Ground here in Uppala, one of the most historical cricket ground, and it was really always going to be a privilege for each and every players to come and perform in this beautiful venue. This time again went for the big shot. Jojo missed it completely. Jojo is a kind of batter who loves to play some big shot, but here is a bowler is not really settling the batter for the big shot. Again that was a quicker one, almost targeting around the midline leg of the batter. When you are operating from the round the wicket, it's very difficult for the batter to get the hit. This time again, loud field work behind the stump in the negation. More than the confident, looks like a little bit excitement behind the wicket here from the wicket keeper behind the stump. Very good collection. In the fraction is going up in the negation, but bowler is not really confident in the negation. He's not appealing. Only wicket keeper going up and asking for caught behind. Here is the right arm. Full toss delivery, top edge, and again the ball is just falling short of that short third man region. And Nazir Chirugoli down at short third man region. He's not really able to take the catch because just falling short of him. Very difficult to take the catch. One more quiet over. So after completion of over number 2, searching for the right track. Yes, NNS are really struggling in the middle in the form of run rate. They won in 9 for the loss of 1 wicket. Just look at the equation in the big screen here. And 24 balls remaining. They have to get another 39 runs to win this match. The asking run rates is really going to be a little bit difficult. 9.75 runs per over is the required run rate. Now onwards for yes NNS. Badly required one big over. One the big over in the sense the 15 to 20 runs badly required in a quick time, because this is a 6 hours format of the games. Very little time for the batters to catch this required run rate. And wait and see, having Unnikrishnan in the middle, having Jojo in the middle, I think it was new star captain not really going to relax here. You know exactly the potential of these two batters. They know exactly the kind of the technique these two batters has got. They can get some big shot. They can hit some big shot. And wait and see how Unnikrishnan and Jojo will going to contribute to here. Unnikrishnan, everybody knows that he is the one who representing one of the top team in the South Kent district, Gori Young Boys. And last 10 to 15 years, he's been a regular player for Gori Young Boys. And now he's representing his home team. And especially in the particular cricket ground, he really played some memorable innings. And once again, the situation, the condition asked Unnikrishnan to play some responsible innings for his team. Wait and see how well these two batters will going to contribute. Riaz continues. Right arm over the wicket, nice looking drive, but not quite able to get the placement right as a short extra fielder fields the ball. One more addition to Jojo. Rotate the strike here and double figure. Very hard 10 runs came here. The 10 runs came in just 13 deliveries. But asking run rate is now really going to be a big headache here for the battle. Riaz. This time again, Unnikrishnan tried to play the reverse sweep. Fortunately for him, when the wicketkeeper uprooted the stumps, that time I think Unnikrishnan inside the crease. After completing the job, I think he went outside the crease. That's why he's surprised. A good decision coming from umpire Mohan Ayadi at square leg. Really good decision, I must say.
because in the naked eye we can see that batter is out of the crease, but the job is completed by wicketkeeper when the back leg of Unnikrishnan inside the crease. When he is gone out, then is the wicketkeeper completed their job. That's why the Unnikrishnan is survived. But Riaz has been really giving some testing time here for the batter. Oh, lovely shot! This time it's going to be. Oh my goodness! The trying ends up the tall fielder and deep backward square leg trying his level best to save the six, but ball is just having his fingertip of that fieldsman that went over the deeper square leg boundary for maximum. Look at that on a replay. That was a really big blow there coming from the bat of Unnikrishnan. Look at the try. Absolutely, it was a terrific attempt from fielder in the deep backward square leg. He's a tall fielder there in the deep backward square leg. Still, that ball managed to defeat that fielder's hand. Welcome six came from the bat of Unnikrishnan. Once again, one more. Will it going to be a no? Is it? No. Just inside the fence, the fielder takes a catch. Unnikrishnan tried to repeat that stroke in that occasion, but did Sam? He didn't got that much of distance. What he was looking for, the elevation he got, but look at the distance what he was looking for. But deep backward square leg field had done a fantastic job, just moving across towards his left, and that was really a perfect judgment coming from that fielder in the deep backward square leg region. And Unnikrishnan is back into pavilion. It's going to be a big blow for NNS Kasaragod. Excellent comeback there from Riaz. After the punishment came from the bat of Unnikrishnan. Once again, the same punishment came from the very next delivery. But this time, Riaz ball little bit away from Unnikrishnan's bat. That's why he didn't got that much of distance what he was looking for. And he's back into pavilion. 16 for the loss of 2 wicket. Aju is a new batter. Just walking towards the middle. Just having examination of the ball. And Riaz, a successful bowler. The 7 runs conceded in these 4 deliveries, and he picked up a valuable wicket of Unnikrishnan. This time again, appeal for leg before wicket, chance of run out as well, but both occasions batters survived. Umpire signals a leg by, loud appeal from wicketkeeper behind the stump, and umpire, the might be the ball is little bit going down the leg stump, so that the benefit of doubt is given to the batter. 17 for the loss of 2 wicket. Vichy Boys takes on runner-up of Gladiator Trophy Season 1, Yenni Posot. They will go into play their second round match. It's going to be a very good match. And this time the new batter, Aju, opening the blade of the bat, running it down the third man region. Successful over there from Riaz, even though a little bit expensive, but he's bounced back very well with the wicket-taking delivery. And 2 overs completed after completion of over number 3. In fact, scoreboard is 18 for the loss of 2 wicket and 3 overs remaining. Just coming back to the equation, 3 overs in the sense 18 balls remaining, and they have to get 30 runs to win this match. And before the next over will going to commence, it's time to ask Star Nawaz to take over the microphone. And welcome back, Star Nawaz, and good afternoon to you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 के पहले दिन के पहली राउंड के ये आखिरी मैच है न्यू स्टार कुंजतूर और एसएनएनएस कासरगोड। तो टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार यहां पर लिए हैं। एसएनएनएस कासरगोड तो शुरुआत की बल्लेबाजी पर न्यू स्टार कुंजतूर
47 रन बनाकर 48 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। 48 इज द टारगेट। शुरुआत के 3 ओवर पर 18 रन बने थे। इस ओवर पर इस वाइड के साथ कुल मिलाकर रन संख्या बने हैं 20 रन। 48 रन के लक्ष्य है, तो ऐसे में लंबी लंबी स्ट्रोकों की तलाश जरूर है एसएनएस कासरगोड को। और इस बार ये रहा चौका। नजीर गेंदबाजी पर न्यू स्टार कुंजतूर रियाज के हाथों से गेंदबाजी शुरुआत किए थे, तो पहली ओवर पर रियाज केवल 5 रन खर्च करते हुए 1 विकेट की सफलता भी पाए थे रियाज ने। और उसके बाद अली गेंदबाजी निभाए। तीसरी ओवर फिर रियाज के हाथों पर होने के बाद जो शुरुआत के 3 ओवर पर जिस तरह की गेंदबाजी निरीक्षक कर रहे थे न्यू स्टार कुंजतूर, वाकई ही उस निरीक्षक के साथ खड़े उतर पाए हैं टीम के कप्तान हो या बाकी सदस्य भी। तो अब देखना है कि बचे हुए गेंदों पर जितने रनों की संख्या की जरूरत है जीतने के लिए, क्या यहां पर बना पाएंगे एसएनएस कासरगोड। नजीर फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से, और इस बार उल्टे हाथ के साथ गेंद को सीधे थर्ड मैन की रास्ता दिखाए। 1 रन तो आसानी से बने जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर विकेट कीपर के हाथों पर सौंप दे। 2 रन के मौका यहां पर बने हैं। बहुत ही रफ्तार के साथ 2 रन चुराए हैं दोनों खिलाड़ियों ने, जोजो और अज्जू। तो देखना है कि जोजो, जितने सुंदर इनके नाम है, जितने योयो इनके नाम है, क्या अपनी बल्लेबाजी पर ये योयो दिखा सकते हैं अपनी बल्लेबाजी में। जोजो लंबी स्ट्रोकिंग के लिए माहिर है, चौके और चौके यूं ही दिखा देते हैं। तो ऐसे में यहां पर जरूरत है उस तरह की बल्लेबाजी की, विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी दिखाने की आवश्यकता है यहां पर एसएनएस कासरगोड को, क्योंकि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में खर्च किए हैं 47 रन। 48 रन बनाने की योजना बनाना होगा अपनी बल्लेबाजी में। तो अब तक 26 रन बने हैं, रन संख्या 26 इज द टोटल। तो बेल्स पर थोड़ी सी समस्या हो रहे थे, तो एम्पायर इसलिए बेल्स बदल रहे हैं। तो 26 रन बनने के बाद अब 22 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 22 मोर रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम 14 बॉल 15 बॉल्स। 15 गेंदों पर अब 22 रनों की जरूरत। बिल्कुल नामुमकिन मत सोचिएगा इस रन को, क्योंकि ये मैदान, मन्नंगुड़ी के ये मैदान हमेशा देखने वाले दर्शकों के दिल और दिमाग को बदल लिए है, रौनक के साथ दिखाए हैं इस मैदान में मैच को। जिस तरीके से पिछली बार आपने मैच को देखे हैं, 36 गेंदों पर 36 रन बनाने के लिए जितने प्रयास उठाने पड़े थे टीम कुंबला को, अपनी 9 विकेट गंवाने के बाद वो रन बने थे। और इस बार भी गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर खेले, और इस बार भी मिलेंगे यहां पर दुगने रन। एसएनएस कासरगोड, नुसरत चौकी और साई नमना के संगम, महासंगम दिख रहे हैं एसएनएस कासरगोड पर। तो यहां पर देखना है कि क्या न्यू स्टार कुंजतूर के पूरी योजना को पलट सकेंगे यहां पर एसएनएस। 48 रन के लक्ष्य है, 48 इज द टारगेट। नजीर अपनी ओवर की 5वीं गेंद को लेकर तैयार। वाइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार भी उल्टे हाथ खेले, और फील्डर से फिसलने के बाद गेंद सीमारे की तरफ आगे बढ़ते हुए। अब यहां पर देखना होगा कि किस तरह से गेंद को रोके हैं फील्डर, और गेंद को उठाने से पहले यहां पर 2 रन तो आसानी से यहां पर 3 रन बन चुके हैं। 3 रन यहां पर पूरा हो चुके हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है एसएनएस के लिए। इस ओवर पर जिस तरह से निकल कर आए हैं, जिस तरह से फिनिक्स पक्षी निकल कर आते हैं, वाकई ही जबरदस्त।
इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट को आप नाजों की नजर से मत देखिए। किसी एक बल्लेबाज की बल्ले से निकलने वाली आवाज और गेंदबाजों के हाथों से निकलने वाली एक एक अच्छी गेंद मैच की रिजल्ट फलितांश को पलट सकते हैं दोस्त। तो अब यहां पर इस 3 रन के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 31 रन 31। और इस बार भी गेंद को उल्टे हाथ के साथ गेंद को खेले, जहां पर कोई फील्डर नहीं थे। जब तक कि फील्डर उस गेंद के पास पहुंच जाए, इस बार भी मिलेंगे दुगने रन। इस ओवर के हर एक गेंद पर भी दुगने तिगने रन चुराने पर सफल बने हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन। अब देखिए मैच की कहानी किस तरह से पलट रहे हैं मैदान में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 33 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन थे स्कोरबोर्ड पर। अब 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। 12 गेंदों पर 15 रन। जो रौनक निकल चुके थे एसएनएनएस की बल्लेबाजी में, अब वापस आकर दर्शकों के रोंगटे खड़े करने पर तुले हैं दोनों टीम। न्यू स्टार कुंजतूर सोच पर पड़ गए हैं कि किस तरह से अपनी झाल फंसाए इस मैच को बचाने के लिए। गेंदबाजी पर अब योजना बनाना होगा कप्तान को। न्यू स्टार के कर्तव्य बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये योजना बनाना। कौन सी बल्लेबाज टिके रहते हैं बल्लेबाजी में, उन बल्लेबाजों की क्षमता के अनुसार गेंदबाजों को इस्तेमाल करना होगा न्यू स्टार कुंजतूर। यहां पर 12 गेंदों पर 15 रन। पिछली ओवर तो महंगी साबित हो चुके हैं एसएनएनएस के लिए यहां पर न्यू स्टार कुंजतूर के गेंदबाज नजीर द्वारा। तो अब यहां पर देखना है कि 5वीं ओवर किसके हाथ पर इस्तेमाल होंगे। और बल्लेबाजी पर उन्नी कृष्णन जैसे महारथी के निर्गमन के बाद जोजो और अज्जू की जोड़ी। हमने इससे पहले यह कहा था कि क्या जोजो अपनी बल्लेबाजी यो यो करके दिखा पाएंगे यहां पर। बारह गेंदों पर 15 रन। यहां पर न्यू स्टार कुंजतूर अपनी कमजोरी की तरफ ध्यान देना होगा। वाइड बॉल हो, नो बॉल, मिस फील्डिंग, एक्स्ट्रा रन जो है, जो विपक्षीय टीम को वरदान की तरफ, वरदान के रूप पर निकलने वाली रनों की संख्या जो है उस पर ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि उसी रन आपकी हार की रन बन सकते हैं। याद रखिएगा, कई बार हमने देखे हैं, हमने बार बार यह साबित करते हुए बताया है कि गेंदबाजों की हाथों पर निकलने वाली कमजोरीपन ही विपक्षी टीम के वरदान, विपक्षी टीम के हथियार बनते हैं। गेंदबाजी पर अब लाए हैं इजाज को। क्या इजाज जोजो को विफल कर पाएंगे? यहां पर जोजो स्ट्राइक पर, अज्जू खड़े हैं नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी पर इजाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और इस बार गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर पंच कर दिए। 30 गजों के दायरे के करीबो करीब उस गेंद को रोकते हुए वापस कर दिए विकेट कीपर के हाथ पर। और इस सिंगल रन बनते ही रनों की संख्या कुल मिलाकर बने 34 रन। 34, 14 more runs to win this match from 11 balls। 11 गेंदों पर 14 रन। देखने वाले दर्शकों के नजरें अब उल्टा होने लगे हैं मैदान में। शुरुआत पर तो न्यू स्टार कुंजतूर 48 रन की लक्ष्य देते ही कहीं ना कहीं ये सोच लिया होगा कि आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे गेंदबाज खड़े हैं न्यू स्टार के पास। लेकिन यहां पर जब से जोजो और अज्जू खड़े हैं क्रीज पर, निश्चित रूप से बल्लेबाजी पर जोजो अपने योयोपन दिखाने लगे हैं बल्लेबाजी में। लगातार 2 गेंदों पर बने 2 रन। अब 10 गेंदों पर जरूरत है 13 रन की। 10 बॉल 13। एजाज तैयार। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। शेख मलली अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा कि यह गलत गेंद है। हमने इस ओवर की शुरुआत में ही कहा कि इस तरह की गलतियों से बचना होगा, आपको दूर रुकना होगा अगर आप जीत चाहते हैं। और इस बार गेंद को फिर खेले स्लिप की जगह में, सेकंड स्लिप की जगह पर गेंद को फील्ड करते हुए वापस कर दिए विकेट कीपर के हाथ पर। तो इस बार सिंगल रन मिलते ही रन संख्या भी आगे बढ़े 37 पर 37। 11 रनों की जरूरत है, बाकी बचे 9 गेंदों पर। 9 बॉल 11, 9-11, 9-2-11। सुने होंगे आप ये इस बात को। क्या यहां पर 9-2-11 बन पाएंगे इस मैदान में? एसएनएनएस का सरगोट। और इस बार ये अच्छी गेंद, डॉटेड डिलीवरी, बिंदी गेंद की जरूरत है यहां पर न्यू स्टार कुंजतूर को। इस तरह के बिंदी गेंद
डॉटेड डिलीवरी की जरूरत है, विकेट की शिकार करने की जरूरत है, क्योंकि ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप आपके लिए दीवार बनकर खड़े हैं। तोड़ने की कोशिश करना होगा न्यू स्टार आपको। और इस बार सुंदर तरीके से वाकई जो एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए 38 पर पहुंचे रन संख्या। अब 7 गेंदों पर जरूरत है 10 रन के। 7 बॉल 10 रन। पिछले मैच पर 12 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है, तब बर्थडे बॉय सतीश ने छक्का लगाकर विपक्षीय टीम से, टीम को मिला के सतीश ने उस विपक्षीय टीम से जीत को वापस ला दिए थे फुटलैंड ओसंगड़ी के खिलाफ। तो यहां पर SNNS कासरगोड, अगर आप न्यू स्टार से इस जीत को वापस खींचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक शॉट अच्छी दिखाना होगा। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, और उससे भी बढ़कर विकेट कीपिंग। यहां पर बेहतरीन जिम्मेदारी निभाते हुए विकेट कीपर द्वारा। ओवर की समाप्ति, आखिरी ओवर बाकी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 38 रन। 38 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 6 गेंदों पर 10 रन की दरार। क्या न्यू स्टार कुंजतूर रोक पाएंगे इस 10 रन बनाने से, या यहां पर SNNS कासरगोड, नुसरत चौकी और साई नमना के समागम जो है, क्या यहां पर इस समागम एक भरपूर मजबूत पकड़ के साथ दिखा पाएंगे इस मैदान में। पिछली बार ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 1 पर फाइनलिस्ट बने थे एन्नी पोसोट। क्या इस पर बदलावन होगा इस साल में? क्या इस साल बदलावन हो सकते हैं? और यहां पर एक मोबाइल मिले हैं स्टेज पर। ये किसी के मोबाइल हो तो तुरंत आकर ले जाइएगा। फिंगरप्रिंट्स के लॉक लगा हुए हैं इसमें। एक ATM कार्ड भी इसके अंदर छुपे हैं, इस पोच के अंदर। छह गेंदों पर रन की जरूरत है 10 रन की। 6 बॉल 10 रन। जो खड़े हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं अज्जू। अब यहां पर देखना है कि ग्लैडिएटर ट्रॉफी के इस मैच पर, क्योंकि यहां पर हर एक मैच करो या मरो वाले मैच होंगे, डू और डाई वाले मैच। एक बार हारने के बाद फिर दोबारा मौका बिल्कुल नहीं होंगे इस श्रृंखला पर। और इस श्रृंखला पर भाग लेने वाले हर एक टीम की सपना यह है कि हम फाइनलिस्ट बने, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्लैडिएटर ट्रॉफी कितनी विशेषता के साथ भरे हैं। गेंदबाजी पर खड़े हैं आखिरी ओवर फेंकने के लिए शफीक। पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, यहां पर एक सिंगल रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 5 गेंदों पर अब बचे हैं 9 रन। 5 गेंदों पर 9 रन। एक चौका मौका बना सकते हैं इस मैच में। एक अच्छी स्ट्रोक, एक लंबी स्ट्रोक अगली मैच की टिकट आपको दिला सकते हैं। और एक बिंदी गेंद, एक डॉटेड डिलीवरी न्यू स्टार कुंजतूर को आगे बढ़ा पाएंगे इस श्रृंखला में। शफीक बार बार फील्डिंग पर परिवर्तन दिखाते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर छोटी सी चूक हो जाए, एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए फील्डिंग पर, तो निश्चित रूप से इस जीत को रोकना बिल्कुल मुमकिन वाली बात नहीं बनेंगे। यहां पर 5 गेंदों पर 9 रन। जो खड़े हैं नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर खड़े हैं अज्जू। पूरे के पूरे कैमरा के फोकस आपके सामने। हजारों दर्शक देख रहे हैं लाइव बेद्रा मीडिया के जरिए आपको। क्या यहां पर आप अपने आप को बेहतरीन साबित कर पाएंगे इस मैदान में? शफीक तैयार, और इस बार भी उल्टे हाथ के साथ गेंद को खेले। 1 रन तो दौड़कर पूरा किए हैं, और यहां पर 2 रन भी यहां पर पूरा हो चुके हैं। और इस 2 रन के साथों साथ रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 41 रन, 41 इज द टोटल। 2 विकेटों के नुकसान के बाद 8 विकेट अभी भी सुरक्षित हाथों पर। विकेटों की कोई चिंता नहीं है यहां पर SNNS कासरगोड के लिए। चिंता इस बात की है कि किस तरह से बनाए 7 रन 4 गेंदों में। 4 गेंदों पर 7 रन बनाने की योजना। एक लंबी स्ट्रोक मैच के पूरे फलितांश को पलट देंगे यहां पे। शफीक डॉटेड डिलीवरी के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाने की मजबूरी खड़े हैं उनके साथ।
न्यू स्टार कुंजतूर ब्लडी टीमों में माने जाते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर। इस समय इस तरह की गलती माफी के लायक नहीं होगा दोस्त। ऐसे समय पर वाइड जैसे गलतियां माफी के लायक नहीं होंगे। जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने दर्शक न्यू स्टार कुंजतूर को सपोर्ट करते हुए इस मैच को देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप विलन बनेंगे उनकी नजरों में। शफीक फिर तैयार, और इस बार भी गेंद को उल्टे हाथ खेले, शॉर्ट बैट्समैन की दिशा पर गेंद को रोक दिए गए। 1 रन मिलेंगे यहां पर। 43 रन संख्या, 43 इज द टोटल। 5 रनों की जरूरत है बचे हुए 3 गेंदों पर। 3 गेंदों पर 5 रन। मैच अगर टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर निर्धार करेंगे विजेता को। अब तक तो सुपर ओवर के नौबत नहीं आए हैं इस श्रृंखला में। 3 गेंदों पर 5 रन। जो आपको बार बार हम कह रहे हैं, यो यो बनने की जरूरत है क्रिकेट में। यहां पे 3 गेंद 5 रन, और बार गेंद को ऑफसाइड की दिशा में पुश कर दिए। 1 रन तो दौड़कर पूरा किया, और दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए सीधे निशाने विकेट पर, और तीसरी अंपायर की मदद लेते हुए मोहन यारी। तो अब तीसरी अंपायर हरीश पटेल खड़े हैं टीवी के सामने। अब वो तय करेंगे कि वहां पर क्या घटना घटी थी, क्या सुरक्षित क्रीज पर पहुंच पाए हैं या नहीं। निशाने तो सीधे लगे थे, गेंद जब बेल्स को उड़ा रहे थे तो ऐसे समय बल्ला क्रीज के अंदर टिक चुके हैं या नहीं, इस बात के निर्धार यहां पर लेना होगा तीसरी अंपायर हरीश पटेल को। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धार होगा यह निर्धार, क्योंकि बहुत ही संघर्ष वाले मैच है। नॉट आउट के करार अंपायर से, तो सुरक्षित रहे यहां पर बल्लेबाज। और यहां पर इस सुरक्षित 2 रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 45 रन। 45 इज द टोटल। 2 गेंदों पर अब जरूरत है 3 रन की। 2 गेंदों पर 3 रन मानना होगा यहां पर जोजो और अज्जू के। जोजो और अज्जू के जोड़ी जो कमाल यहां पर दिखा रहे हैं, मानना होगा उनकी संयम को। जिस तरह से वो रन चुरा रहे हैं, जिस तरह से गैप के साथ रन चुराने की प्रयास वो करते हैं, वाकई खूबसूरत। अगर बचे हुए 2 गेंदों पर इस 3 रन को बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, एसएनएनएस को अगले राउंड तक पहुंचा पाते हैं यहां पर जोजो और अज्जू, तो निश्चित रूप से अंडरआर्म क्रिकेट पर आपके नाम रोशन हो जाएंगे। याद रखेंगे सालों तक आपको लोग, क्योंकि जिस तरह से आप शुरुआत के 2 विकेट गिरने के बाद तीसरी विकेट की साझेदारी निभाए हैं, वाकई आपके सफर बहुत ही खूबसूरत रहा इस मैच में। 2 गेंदों पर 3 रन। शफीक रहा गेंदबाजी पर। अज्जू स्ट्राइक पर, और इस बार भी ये देखिए कितनी गंभीरता के साथ हर एक गेंद के ऊपर अपनी नजर किस तरह से वो मिलाते हैं। हर एक गेंद को करीब आने तक इंतजार करने के बाद गेंद को जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, वाकई अंडरआर्म क्रिकेट में तो इस तरह की बल्लेबाजी की हमेशा कदर किया जाते हैं, प्रशंसा किए जाते हैं। तो यहां पर अब आखिरी गेंद पर जरूरत है 2 रन की। आखिरी ओवर पर, आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत। क्या ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 पर पहली बार सुपर ओवर देखने के मौका मिलेंगे दर्शकों को? 1 रन बनाते हैं तो सुपर ओवर होगा यहां पे। अगर 2 रन बनाते हैं तो जीत होगा एसएनएनएस के। अगर बिना कोई रन बनाए बिंदी गेंद बनाते हैं इस गेंद को, तो जीत के जश्न होगा न्यू स्टार कुंजतूर के पास। शफीक स्ट्राइक पर, शफीक गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर खड़े हैं जोजो। जितने फैशन आपके नाम हैं, वाकई यहां पर आप जोजो यो करते हुए दिखाना होगा आखिरी गेंद पर। आखिरी गेंद पर 2 रन। अब तो गेंदबाजों के नैया को छैया करते हुए दिखाना होगा अपनी बल्लेबाजी में जोजो। आखिरी गेंद 2 रन। शफीक तैयार, जोजो, और इस बार भी गेंद को घुमाए। 1 रन तो यहां पर बन चुके हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए, और यहां पर ये दूसरे रन पूरा नहीं हो पाए। रन आउट के रूप पर अपने विकेट गंवाए। मैच टाई पर बदल लिए हैं। अब होगा यहां पर एक सुपर ओवर। सुपर ओवर होगा यहां पर। तैयार हो जाइएगा एसएनएनएस के कप्तान और न्यू स्टार कुंजतूर के कप्तान।
बिना देरी किए हुए बेवजह वक्त की बर्बादी न करे, शुरुआत से ही यहां पर समय के बहुत ही अभाव महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत दोनों टीमों के कप्तान इस सुपर ओवर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम के साथ, संगठकों के साथ तुरंत जुड़ जाए, अंपायर के साथ जुड़ जाए। क्या जबरदस्त मैच, क्या संघर्ष वाली मैच देखने को मिले हैं दर्शकों को, वाकई जबरदस्त। तो अब यहां पर होगा एक धमाकेदार सुपर ओवर, इंतजार कीजिएगा कुछ ही पलों में आपके सामने इस सुपर ओवर के साथ ग्लैडिएटर ट्रॉफी। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 आप देख रहे हैं। और इस कामयाब क्रिकेट श्रृंखला के पीछे खड़े रुके जो महारथियां हैं, हम उनके नाम निश्चित रूप से बार बार लेना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहिए कि इतने बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला के पीछे किन किन व्यक्तियों के परिश्रम है। यहां पर हारिस वाईएफसी पिछली बार भी अपने योगदान बड़ी मात्रा पर दिए थे हारिस वाईएफसी ने। हमजा पंजा, फिरोज मंजेश्वरा जो अंडरआर्म क्रिकेट के जाने पहचाने से नाम है, इस श्रृंखला के पीछे अपने दिन रात के मेहनत से जा रहे हैं, हमजा पंजा हो या फिरोज मंजेश्वरा। उसी तरह कौसर, रियाज, इरशाद आज सुबह से ही पिछली बार भी और इस बार भी इस श्रृंखला के पीछे हर एक योजना के साथ, हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए, हर व्यवस्था के ऊपर नजर डालते हुए इस क्रिकेट श्रृंखला के साथ जुड़े हैं इरशाद जी। उसी तरह इस्माइल, जासिर जैसे महारथियां, अच्छू रनिंग स्टार जैसे महारथियां, हबीब बेकूर जैसे अनुभवी क्रिकेट के अभिमानियां इस श्रृंखला के पीछे अपने योगदान निभा रहे हैं। तो पहली बार आपने मंजेश्वर के पंचायत के मैदान पर देखे थे, वो ट्रेलर थे अंडरआर्म क्रिकेट के प्रेमियों के लिए। तो इस बार मन्ननगुड़ी मैदान पर आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों पर अगली बार होगा फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले एक धमाकेदार क्रिकेट श्रृंखला कुंबला पर। निश्चित रूप से हम आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे और वो होगा केरला परिसर के सबसे बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला। और इस सुपर ओवर शुरुआत होने से पहले माइक्रोफोन पर भी हम बदलावन करते हैं। SNNS ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಟೈ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಆಡಿದಂತಹ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬೌಂಡರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸತೀಶ್ ರವರು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ. So thank you very much, Star Nawaz. What an excitement game of cricket is going on here. Now super overs comes into play. First ball itself as Unnikistan clearing the man out in the mid wicket region. What a great start for the super over.
It's been outstanding hitting there for Unnikrishnan. He's knowing for that. He's a powerful striker of the ball. Look at that one. He's just muscles that one. Absolutely nothing wrong with the line of the delivery. Look at the way he picked that line and land. Almost drags the ball from outside the line of off-step hand, clearing that fielder in the deep mid-wicket region. Great start here for SNNS. And here is Riaz. Right arm over the wicket. Unnikrishnan went for the reverse sweep. Quick work behind the stump. Excellent work. But once again, he's not really going to get the result here because Unnikrishnan is backward still inside the line. And there is no damage done. Riaz, good comeback after he conceded 6 in the first delivery. Immediately, very next delivery, bowled a dotted delivery. Third time in this over. This time Unnikrishnan went for the slog sweep shot in the negation. Not quite getting control over that stroke, but able to pick the single down to short fine leg. That's very important in the power play overs. He has to convert each and every ball into scoring one. He got a single, 7 on the board in the 3 delivery completed. 4th time in this over. Right arm over the wicket. This time went for the big shot. Bowler's back drive. Chance of run out. First wicket is back into pavilion. As per the rules and regulation of the power play is concerned, I think is a batting team will going to lose 2 wickets. That will become the all out. So it's a very important here for the incoming batsman because if he becomes out for the next ball, then it's going to be all out. Even though how many deliveries remaining, I think it's 2 balls remaining in their power play in this super over. I think they have to complete that 2 deliveries. Without losing a wicket, they can get some good scores. 7 on the board. Good comeback there by Riaz after he bowled first delivery as a scoring one, the big one. Then after that he bowled 3 very good deliveries. Now 2 balls remaining. Unnikrishnan back on strike. Expectation is very high. He is a really a powerful striker of the ball. This time again reaching for the delivery, not quite getting the timing, but he picked up a single down to backward point. 8 is the total score. Last ball remaining in this super over as Riaz now get ready bowling to Jojo, the man who is responsible for the tie. He played a very good innings for his team. Now only 1 delivery left for him. And Riaz bowls. Right arm over the wicket. Went for the reverse. Ball is in the air. Out of the reach of wicket keeper. Just a single to end the over number super over. And super over completed here. And in that super over, yes, NNS are scored 9 runs and they set a target of 10 to win the match. I think it's a good comeback. Everybody thought that after Riaz conceded 6 in the first ball, it looks like it's going to be the super over of 12 to 15 runs. Then afterwards, he bowled very well. Just pulling the things back in the favor of fielding team. And very interesting statistics here is that in the first innings, because in the first innings in the sense and the 6 overs format of the game when these both the teams are played, the same 10 runs required in the last over. Now the team is different, chasing, and chasing team is now, I think, New Star Kunjaturu and Nawaz is very interesting game of cricket. And the previous innings, I think SNNS managed to score 1 in 9 and match is tied. Will it going to be another super over? जी बिल्कुल सतीश जी, क्योंकि दोनों टीम बराबर की टक्कर ले रहे हैं मैदान पर और इस बात को साबित भी किए हैं शुरुआत की इनिंग्स में। 48 रन के लक्ष्य पाने के बाद जितने रन न्यू स्टार कुंजतूर बनाए थे उतने ही रन बनाकर हम भी उनसे कम नहीं हैं, हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस मैच के। इस बात को साबित करने के बाद हम ये सुपर ओवर देख रहे हैं मैदान में। तो शुरुआत पर सुपर ओवर पर बल्लेबाजी निभाने के बाद रन बनाए हैं कुल मिलाकर 9 रन। 10 रन की जरूरत है 6 गेंदों पर। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि यहां पर पिछली बार 6 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी एसएनएनएस कासरगोड को, आखिरी ओवर पर 10 रन की जरूरत थी जीतने के लिए। तो अब यहां पर उल्टे यहां पर गिरे हैं न्यू स्टार कुंजतूर के यहां पर आंगन पर ये गेंद कि 6 गेंदों पर 10 रन बनाने हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर केवल मात्र 2 विकेट होंगे हाथों पर। अगर 2 विकेट गिर जाते हैं तो ऑल आउट माने जाते हैं सुपर ओवर पर। तो क्या एसएनएनएस कासरगोड मिले हुए इस मौके की फायदा उठा पाएंगे? यहां पर पहली बार तो लड्डू दोनों के जबान पर नहीं गिरे थे, यानी कि मानो की जमीन पर भी नहीं गिरे, एक पेपर के ऊपर गिरे थे लड्डू, मिट्टी नहीं लगी थी उस लड्डू को। किसकी जबान पर होगा वो मीठे वाले लड्डू?
क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है, यहां की हर एक जीत भी इतने विशेषता मायने रखते हैं इस मैदान में और इस क्रिकेट श्रृंखला में। गेंदबाजी पर लाए हैं गेंदबाज धर्मा को लाए हैं गेंदबाजी पर। एसएनएनएस के कप्तान काफी सोच समझ के बाद ये निर्धार लिए हैं धर्मा को, क्योंकि धर्मा पिछले कई बार एसएनएनएस के किरदार निभाते हुए, चाहे वो साई नमना के योगदान निभाते हुए हो या कोई नुसरत चौकी के किरदार निभाते हुए हो, अपने जिम्मेदारी जो है बाखूबी निभाए हैं धर्मा ने। यहां पर देखना है कि क्या दर्शकों के और टीम के कप्तान के विश्वास पर खड़े उतर पाएंगे यहां पर धर्मा। और दूसरी तरफ न्यू स्टार कुंजतुर, आरंभिक दो खिलाड़ियां मैदान पर उतर आए हैं, शाकिर और नजीर। स्ट्राइक पर खड़े हैं शफीक, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं नजीर। शफीक और नजीर। शफीक इनिंग्स के आखिरी ओवर अपने हाथों पर इस्तेमाल किए थे शफीक ने। अब यहां पर बल्लेबाजी पर दिखाना होगा, जिस तरह से उन्नी कृष्णन इस सुपर ओवर के पहली गेंद पर छक्का लगाकर खतरे के घंटी बजाए थे, क्या यहां पर न्यू स्टार कुंजतुर इस 10 रन को बना पाएंगे 6 गेंदों पर। धर्मा तैयार, 2 3 4 बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर 2 कदम पीछे हटे। पहली गेंद और इस बार गेंद को सीधे ऑफ साइड की दिशा पर खेलते हुए एक ही मात्र सिंगल रन प्राप्त होंगे यहां पर। 5 गेंदों पर 9 रन। पिछली बार भी इसी तरह के नजारे थे, 5 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थे, तब 2 दुगने रन प्राप्त हुए थे, 2 डबल रन मिले थे एसएनएनएस कासरगोड को। क्या यहां पर उसी तरह 2 डबल रन मिल पाएंगे न्यू स्टार कुंजतुर को, या चौका या छक्का निकल आएंगे इनकी बल्लेबाजी में। नजीर स्ट्राइक पर। नजीर कलात्मक शैली के बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। उल्टे हाथ खेलने की कोशिश, उन्नी कृष्णन गेंद के पास। ओ माय गुडनेस, अगर बेल्स पर लगा होता ये गेंद तो ये एक विकेट नहीं बल्कि बचने वाले विकेट आखिरी विकेट होता, क्योंकि सुपर ओवर पर केवल मात्र 2 विकेट के मौका दिए जाते हैं मैदान में। अब 4 गेंदों पर 8 रन, एक लंबी स्ट्रोक मैच को पूरी तरह से बदल सकते हैं इस मैदान में। धर्मा फिर तैयार, अपने ओवर की तीसरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से शफीक के लिए, और इस बार शफीक खेले लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, छोटी सी मिसफील्ड और इस बार मिलेंगे 2 रन। 3 गेंदों पर बने हैं 4 रन, अब 3 गेंदों पर जरूरत है 6 रन की। हर गेंद पर दुगने रन बनाने की मजबूरी, हर गेंद पर 2-2 रन चुराने की जरूरत है जीतने के लिए न्यू स्टार कुंजतुर को। और इसके अलावा अगर जीतना चाहते हैं तो एक लंबी स्ट्रोक के साथ, चौके हो या छक्का। धर्मा फिर तैयार, चौथी गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और इस बार भी गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर खेले। यहां पर भी एक सिंगल रन के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरे रन भी समाप्त। यहां पर 4 गेंदों पर अब तक रन बने हैं 6 रन बने हैं, अब 2 गेंदों पर 4 रन। मैच अगर इस बार भी टाई हो जाते हैं तो आपकी दोनों इनिंग्स पर बाउंड्री लगाने की जितनी संख्या है, यहां पर बाउंड्री की संख्या के आधार पर विजेता को यहां पर घोषित करेंगे। नंबर ऑफ बाउंड्रीज विल बी डिसाइडेड हु इज वन। धर्मा, और इस बार अच्छी गेंद, डॉटेड डिलीवरी। ये रंग लाने वाली गेंद है धर्मा की, निश्चित रूप से ये रंग लाने वाली गेंद थे, डिसाइडेड गेंद थे पिछली गेंद। अगर पिछली गेंद पर 1 या 2 रन भी निकल आते तो निश्चित रूप से न्यू स्टार कुंजतुर इस मैच को जीतने के विश्वास और भी मजबूत कर देते अपने दिल और दिमाग पर। यहां पर देखना है अब आखिरी गेंद पर 4 रन। क्या मैं मिसाल दे दूं आपको, ईशाम आखिरी गेंद पर 5 रन की जरूरत थे, तब छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाए थे। काफी सारे खिलाड़ियों के पास इस तरह के हुनर हमने देखे हैं। एलटी अरशद, सिनान चैलेंज कृष्णापुरा, अक्रम तारपड़ोसकाना, अश्विन राज, ऐसे महारथिया अपनी बल्लेबाजी में अपनी क्रिकेट पर इस तरह के साधना करते हुए दिखाए हैं। और आज मौका कड़े हैं शफीक के पास। शफीक जी, अगर आप आखिरी गेंद पर चौका लगा देते हैं तो इतिहास होगा, इतिहास के पन्नों में इस मंडनगुड़ी के मैदान के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे आपके नाम। धर्मा की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, 4 रन्स टू विन दिस मैच। धर्मा हमेशा की शैली की तरह, यह आखिरी गेंद,
और इस बार गेंद को सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर मोड़े, 1 रन तो आसानी के साथ। दूसरे रन के लिए दौड़, उन्नी कृष्णन गेंद को उठाकर विकेट के पास, और इस बार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रन के हार मानते हुए न्यू स्टार कुंजातुर SNNS कासरगोड। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट को अनिश्चितताओं के खेल है क्रिकेट। किसी भी टीम को किसी भी मौके पर आप छोटी नजर से मत देखिए। 48 रन के लक्ष्य थे, 47 बनाए थे SNNS। टाई होने के बाद सुपर ओवर के मौका मिले, और इस सुपर ओवर पर उन्नी कृष्णन के वो छक्का जो है वाकई ही रंग लाए हैं इस सुपर ओवर पर। तो अब यहां पर तय होने वाली बात यह है कि मैन ऑफ द मैच किसे होगा इस मैच के। ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 48 ರನ್ನಿನ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ತನ್ನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 21 ರನ್ನುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಜೋಜೋ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಾವು ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೋಜೋರವರೇ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಅಚ್ಚು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜೋಜೋರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯವನ್ನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಗಳ ಕಡಿತವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ 6 ಓವರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ. Welcome back for the second round of this prestigious Gladiator Trophy 2022. Bichu Boys takes on Enni Posot. After winning the toss, captain of Enni Posot elected to field first, and umpire Mohan Iyadi signaling towards our scorer. Everything looks to be perfect here to start the first over of the power play. Right arm over the wicket. Chammo will go into face of first delivery. This time a little bit down the leg stamp, tried to turn that one onside region, but ball is going further away down the leg stamp. White signal by umpire. First run comes up here for Bichu Boys. Bichu Boys have to play really very well. They have to perform out of their skin if they wanted to win the match, because Enni Posot, they came into this tournament as a favorite of coming into the finals, and being the runners-up of the Gladiators Trophy Season 1. Certainly the expectation is very high from Enni Posot,
and even they are the one little bit confident team in this Gladiators Trophy season 2. Lovely shot just over the infield towards a deep long walk, and before Karthik run back and fields the ball just inside the boundary line, and ample time for the batter to complete that couple of runs. It was a nice looking off drive there from Niaz, lofted drive, and that was a perfect strokes you need to play, especially in the power play over when the fielder is up in the circle and he's just going over the top and got a couple of runs here. With that couple of runs, scoreboard moves on to 4 on the board. Vijay bowls right up over the wicket. This time tried to make the placement in the negation, but he's not really getting that one from what he wanted to be. He wanted to send that one between bowler and short extra cover, and as he mistimed that one, so that he couldn't manage to beat bowler. Bowler on his follow through fields the ball back to bowling mark. Right arm over the wicket, second wide of this over again. The bowler little bit struggling to get line his line. This is not a right line to ball when the direction of the wind is really encouraging the batter, especially in the onside region. He can get some big shots. The direction of the wind is from the commentary box and towards that, and I think it's going to be a very good opportunity for the batter when it's outside the line of leg step. He can get some big shots. Again, nicely ball. That was a good line to ball as Vijay ball little bit slower one, and batters try to make a little bit direction towards the offside region. Niaz is the occasion, and again not quite able to get what he wanted in the offside region. Score remains on 5 without loss of any wicket. This time again, lovely shot, beautiful played that one down to deep extra cover region, and before once again the extra cover fieldsman going back, and he's not having a good arm throw, good arming this time. He just underarm throw comes into play, but luckily the batsmen are not really interested for the second run. 6 without loss of any wicket. Vijay back to his bowling mark, keeping one fielder in the deep mid wicket, one at deep backward square, like two fielders in the deep in the onside region. Chammi across the line of fielder swinging his bat, but not quite able to get the timing behind that long sweep shot. Missed it completely in that occasion, not from the bat. It's deflected from the leg of Chammu then, and scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. So over number first in progress. Vijay so far he's been outstanding, excluding that 2 wide ball in that over. He's bowled very tight in line and land. Just a 7 runs came from that first over. The last ball is remaining. One more extra fielder is added in the offside region. The mid off is coming a little bit straighter version. There is short extra cover and short cover point and backward point. There is short turn and short fine leg. One at deep backward square leg and deep wideish long on. One at short mid wicket. Chammo is there in the mid wicket. Again improvisation down to square leg region. They're running hard looking for the second single hand pick up and throw. Lovely throw. Absolutely perfect collection and throw coming from that deep square leg fielder. The batter wanted a second in the negation, Chammo, but his partner is not interested. Rightly so. Look at the pick up that one. I want to see in the replay. Charging in from the deep square leg region. Picking up that one in the right hand. And Imtiaz released the ball very quickly to the wicket keeper's hand. Little percussion. The square leg fielder released the ball towards Imtiaz and the wicket keeper completes the job. The first wicket is back into pavilion of Bichu boys. They lost the first wicket at the score of 8, and the first over of the power play is completed. 8 for the loss of 1 wicket. Now 5 overs remaining. Is a very young and talented bowler who did a very good job in the previous match, the left arm bowler,
and wait and see how well he will going to bowl this second over of the power play. And he got one at deep extra cover, one at deep long on, wide long, mid wicket in back at the fielder there in the deep to stop the boundaries and sixes. Here is Vicky with a short run up. Left arm around the wicket he balls. Beautifully balled. Chase the lines of fielder. That's not a good throw, and I will must say this and non-strikers and might be the little bit chance here to make the run out. And the fielder in the short mid wicket just watching that he wanted to make the run out in the strikers end. That really allowed the batter to cross off for a single quite easily in the non-strikers end. So one taken in the first delivery of the over number second, and the scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Zabir into strike now. Zabir is a very good striker of the ball, facing next delivery of Vicky. This time, no, one attempt there from short mid-on region. Diving to his left, try to take the catch. Looks like he's in a good position to take the catch, but the last moment, that ball is just having a palm of his hand. Ball is just slipping out of the hands. Look at the effort from that fielder. Excellent effort. Try to get past that infield in that occasion, and probably if he not able to take the catch, but he's stopping some runs for his team. That's very important. 10 for the loss of 1 wicket, but it's a really very good attempt there from the shorter mid-on fielder. Vicky bowls. This time lofted high up in there. Extra cover fielder there in the right position. Oh my goodness, looks like he's got something in his eyes. Watching the replay, I must say the rays of sun is really hitting his eyes too hard. So, but I am very surprised. Look at that one replay. I want to see how that was a really excellent piece of fielding there. If you look at the fielder, he's never looks like he's in such a good position to take the catch, because when the time is coming, the ball is coming to his hand, Nawaz, that time he's not really having any view of that ball. But adjustment is a very important navigation, and he's kept the eye on the ball till the last moment, and he's managed to hold that catch. It was outstanding fielding there by the extra cover fielder. Takes a catch, and he's just dealing with the rays of sun very well, and he takes a very good catch in the end. It's all happening when you are in cricket. You have to tackle with all these the factors, and that is a part of cricket. The only one good fielder can handle all this pressure. That is a good catch has been taken there by the extra covers. So wicket number 2 is back into pavilion. 10 for the loss of 2 wicket, and Vicky, the successful bowler. Left arm balls outside the line of off stump, too far in the negation. Little bit excitement. After that, he picked up a wicket. Might be looking for one delivery, which is inviting the batsman to go for the big shot in the offside region. By doing that, he's not really bowled at good line. Just lost his concentration over the line as Vicky once again back to his bowling mark. Right arm bowls this time well within the reach of the batsman. That's the line he's looking for. This is so good, very good line to bowl when you're bowling all along the carpet. Even the width is offered. The fact that ball is coming all along the carpet, the batter has got no answer for that particular delivery. Even Sabir is very experienced batter in the middle, but this man, inexperienced Vicky, looking pretty good in this particular over. Again, the ball went for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Picked up a single, so with that single scoreboard moves on to 12 for the loss of 2 wicket. For the next match, I once again would like to call upon all the players of SNNC Kasaragod as well as Team Kumbla. Please report here in commentary box immediately to sign the official chart. This is the first call for both the teams to report here. Please note, please cooperate with the organizer. So far, Vicky is outstanding and a very tidy line and length. He bowled. Now 5th time in this over. Left arm round the wicket he bowls. Beautifully bowled. Excellent. Perfect delivery to finish the over number 2. And 2 overs completed. And after completion of over number 2, it's a 12 for the loss of 2 wicket. And Nawaz just coming back to this man. The young talented Vicky is handling the pressure. It's not easy, isn't it? The tournament, the big tournament like Gladiator trophy, when you're playing against a team like Bichu Boys, handling the pressure. I think this fellow has got a great future in Underarm cricket, isn't it? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसे छोटी उम्र पर विक्की जैसे गेंदबाज को जब ऐसे मौका मिलते हैं ग्लैडिएटर जैसे ट्रॉफी पर खेलने के,
तो निश्चित रूप से उनकी भविष्य जो है तय हो जाते हैं ऐसे मैदानों में। अगर उनकी गेंदबाजी, उनकी प्रदर्शन अच्छे हो तो निश्चित रूप से उनकी दिन बन जाते हैं। ये दिन के अनुसार जितने भी दर्शक उन्हें देखते हैं, जितने भी टीम खेलने वाले या स्पॉन्सर्स या टीम के मालिक उनको देखते हैं, तो अपने आप उनको चुनने में मजबूर हो जाते हैं। जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल को हमने कहा था एमपीएल द्वारा, जब वो एमपीएल पे खेल रहे थे तो उनकी बल्लेबाजी देखते हुए हमने अनुमान लगाया था कि ये तुरंत बहुत ही जल्दी ही ये आईपीएल खेलने वाले हैं, और हमारी बात सच निकले और वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेलते हुए मशहूर हो चुके हैं। हम इस बात को इसलिए कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को छोटी नजर से मत देखिए, एक दिन के उनके प्रदर्शन उनके पूरे भविष्य बन जाते हैं। Exactly, Nawaz. Just like don't judge the book by its cover, you cannot judge by size of the player. Even is a very little master, but has got a potential. Just like you gave a very good example of Devdutt Padikkar when he was represented in a MPL. And by seeing this talent, everybody noticed. And even as so you are in a commentary, I noticed that you are mentioning about this man will definitely go into represent India in the future, and that was really becoming 100% true. And here is the next one, lofted that one, high and handsome. It will go to clear the fence quite easily for the long way. Huge six coming from the blade of the batter, Chemi. Ammi, little bit correction. There was a little bit correction, Chemi and Ammi. But in the end, definitely you will get double MI. And one is the first spelling is a different, A and C. And now I think is Ammi is a man who clearing the ground quite beautifully down to deep mid wicket region. And that's the speciality of the players in Kasaragod districts. Each and every player has got a nickname. And more than their real name, they're knowing for their nickname. They are very famous in their nickname. This time improvisation is looking for, but ball is further going down the leg stump as Vijay just claiming that that the batter has got a bat onto that, but umpire Mohan Ayedi says that there's nothing is involved. The batters just try to play the improvisation stroke. Ball missed the ball, the ball missed the bat completely. So that wide call by umpire. 20 for the loss of 2 wicket. Vijay with a short run up. Pass umpire Bohani at right arm over wicket. Improvisation again. This is one of the best stroke to play whenever the ball is coming along the carpet. I think it's a sweep shot, one must say, and especially in underarm cricket, it's very popular cricketing stroke and a very good technique to get the runs whenever the bowler bowling along the carpet. One more addition. Scoreboard was under 21. Good strategy there from Ammi there after got a 6. Then he just settled for the single and looking for rotation of strike. 21 for the loss of 2 wicket. Vijay. Right arm over the wicket to Chami. Chami across the line of the leg swinging his bat. Didn't got that much of bat onto that, but he able to pick the single down to mid wicket region. His intention to play that one, to hit that one in the air, but as a fact that Vijay bowled that one again outside the line of leg off stump, and he able to pick the single for that. 22 for the loss of 2 wicket. Runs are coming in this over of Vijay for Bichu boys. Once again, just opening the face of the bat, running it down to backward point region for an easy single. That was a clever cricket. After they got a 6, immediately they realized that it's a 6 in the first delivery, then 5 singles in the next remaining 5 overs. It becomes 11 runs in that over. That was a really good game plan from these two batters. Actually, they got some runs, and this time looks to be one more. Looks to be one more. Fielder is underneath it, and he takes a catch. Unbelievable. Even he can't believe his eyes. Chami, he thought that after the ball is left the bat, look at that one. That delivery is outside the line of off and drags that one. It looks like when he got that one right from the middle of the bat, and quite unfortunately the ball is landed. Maybe he was played that one not too much high in the air, and that's why he didn't got that much of elevation. He's looking for just inside the fence. The fielder finished that catch. The wicket number 3 is back into pavilion of Bichu Balls. Sometime it's happenings when you are the time when you're going for the big shot. If there is a huge wind passing, then definitely chances of the ball is getting the distance. When there is no wind, whenever the wind is constant, when you are playing the big shot, then that kind of scenario is we can see that the ball is just landing inside the boundary line and mid wicket fielder completes the catch. 23 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed, and we will see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. It's time to change in commentary box as well. It's over to Star Nawaz and wait and see how much runs they will going to score. Welcome Nawaz.
धन्यवाद सतीश जी। शुरुआत के 3 ओवर पर 23 रन बन चुके हैं बिच्छू बॉयज। और बाहर ये देखिए क्या नजारा देखने को मिले हैं मैदान में। सीधे बल्ले से खेले थे गेंदबाज की दिशा में और गेंद तो सीधे जाके नॉन स्ट्राइक की खिलाड़ी के हाथों पर टकराया और उनके हाथ से बल्ला निकल चुके हैं। बहुत ही रफ्तार के साथ खेले थे खिलाड़ी ने। तो ऐसे में यहां पर एक रन अवश्य प्राप्त होंगे। 24 रन बने हैं रनों की संख्या। एनी पोसोट और बिच्छू बॉयज के बीच चल रहा है यह मैच। पिछले बार के फाइनलिस्ट थे एनी पोसोट और दूसरी तरफ बिच्छू बॉयज। हमेशा अपनी विपक्षीय टीम को सवाल करने वाली टीम है और यहां पर यह रहा शानदार रनआउट। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से लक्ष्य से बाहर निकलने वाली गेंद को देखने के बाद खड़े रुके थे क्रीज पर, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से खिलाड़ी दौड़ चुके थे रन के लिए। तो ऐसे में स्ट्राइक एंड के खिलाड़ी भी रन के लिए रन चुराने की लालच पर पड़ गए, लेकिन विकेट के पीछे खड़े रुके फील्डर तुरंत उस गेंद को उठाकर सीधे निशाना लगाए विकेट पर। और इसी के साथों साथ और एक विकेट रनआउट के रूप पर यह रहा चौथा विकेट। नासिर रन आउट होकर वापस जा रहे हैं 25 रन पर अपने चौथे विकेट गंवाते हुए बिच्छू बॉयज। 6 ओवर के निर्धारित मैच है, 6 ओवर्स मैच। और हम दोबारा दोनों टीमों के कप्तान से और अंपायरों से ये विनती करते हैं कि जितने भी जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके बाद वाली मैच पर कहीं ऐसे नौबत ना आ जाए कि मैच की ओवरों की संख्या पर गढ़त किया जाए, कम किया जाए। नए खिलाड़ी नासिर के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी मूसा। और इस बार भी यहां पर देखिए, इस बार भी रन आउट की खतरा, इस बार भी रन आउट की खतरा यहां पर। पांचवें विकेट के रूप पर अम्मी के विकेट रन आउट के रूप पर गंवा रहे हैं बिच्छू बॉयज। धीरे धीरे से वापस आते लाते हुए एनी पोसोट। शुरुआत के 3 ओवर पर 23 रन खर्च करने के बाद अम्मी की बल्ले से निकली हुई उस रफ्तार को देखने के बाद चम्मी गेंद को उठाकर आए थे गेंदबाजी करने के लिए। और जैसे ही चम्मी की गेंदबाजी शुरुआत हुई, विकेटों के गिरावट देखने को मिल रहे हैं बिच्छू बॉयज के। 2 विकेट लगातार रन आउट के रूप पर। 5वें विकेट के रूप पर अम्मी के निर्गमन के बाद अब देखना है कि मूसा के साथ कौन जुड़ेंगे 6ठे विकेट की साझेदारी पर। रफीक नए खिलाड़ी मूसा के साथ जुड़ते हुए 6ठे विकेट की साझेदारी निभाएंगे। चम्मी फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। और बार अच्छी थी गेंद, गुड लेंथ वाली गेंद। और इस गेंद की ऊंचाई को समझने के बाद थोड़ी सी पीछे हटकर गेंद को सीधे मिड ऑफ की दिशा पर पुश कर दिए, जहां पर बिना कोई खतरे के साथ 1 रन प्राप्त हुए। तो अगला मैच होगा इस मैदान में SNNC कासरगोड और टीम कुंबला। दोनों टीम तैयार हो जाए अगले मैच के लिए। SNNC कासरगोड और टीम कुंबला, ये दोनों टीम अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। चम्मी फिर तैयार और बाहर उल्टे हाथ खेलने की कोशिश, पैरों पर टकराने के बाद पॉपिंग क्रीज की जगह पर गेंद, जहां से गेंद विकेट कीपर उठाने से पहले एक सिंगल रन। और इस सिंगल रन के साथों साथ रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 27 पर 27। 5 विकेटों के नुकसान के बाद चौथी ओवर के प्रगति। खड़े रुके गेंदबाजी करते हैं शमी। और इस बार गेंद को फिर खेले, फाइन लेग की दिशा पर गेंद, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के बाद अच्छे खासी फील्डिंग के साथ वापस कर दिए। आज तो एनी पोसोट जिस तरह से पिछली बार फाइनलिस्ट बने थे, तो इस बार भी अपने आप को फाइनल पर देखने की पूरी तैयारियां, उनकी बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, उनकी पूरी की टीम प्लानिंग जो है उस पर साफ साफ नजर आ रहे हैं दर्शकों को। लेकिन क्रिकेट पर भले ही वो कितने भी बड़े टीम हो, कितने भी ऊंचे दर्जा की टीम हो, कुछ कहना नामुमकिन। यहां पर कभी कभी छोटे टीमों के खिलाफ बड़े बड़े टीम भी फिसल जाते हैं मैदान में। तो यहां पर देखना है कि क्या एनी पोसोट अपनी जीत की रफ्तार को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। यहां पर 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 12 गेंद शेष बचे हैं, 12 मोर बॉल्स टू गो। देखना है कि बचे हुए 12 गेंदों पर बिच्छू बॉयज अपनी बल्ले के जरिए कितने रन चुरा पाते हैं एनी पोसोट की गेंदबाजी पर।
लगभग अगर 12 गेंदों पर 14 से 15 रन भी यहां पर चुराते हैं तो यहां पर इस मैदान के लिए एक अच्छी लक्ष्य होगा। 6 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी के बाद 44-45 रन अच्छे लक्ष्य कहलाएंगे। अगर आपकी गेंदबाजी अच्छे हो, अगर आपकी गेंदबाजी पर कमजोरी हो तो 6 ओवर पर 60 भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे क्रिकेट श्रृंखला में गेंदबाजी के ऊपर ध्यान लगाना, गेंदबाजी पर सुधार लाना ये अवश्य बन जाते हैं, क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त। साल में एक बार जश्न के साथ आते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी। बड़े बड़े महारथिया इस ट्रॉफी के पीछे, इस क्रिकेट श्रृंखला के कामयाबी के पीछे हारिस YFC, फिरोज मंजेश्वरा, हमजा पंजा, कौसर, रियाज, इरशाद, इस्माइल, जासिर जैसे महारथिया अपनी दिन रात के मेहनत सजाए हैं इस श्रृंखला में। इस्माइल पोसोट जैसे महारथिया इस श्रृंखला के कामयाबी के पीछे खड़े रुके हैं। और इस बार ये देखिए कितने लंबी स्ट्रोक यहां पर, धन धनाधन छक्का, ये रहा ग्लैडिएटर छक्का। रफी की बल्ले से ये छक्का निकल आए हैं। पिछली बार तो अम्मी की बल्ले से वो छक्का निकल आए थे, लेकिन इस बार तो वाकई देखने के लायक वाली छक्का। संतोष छक्के गिरने के बाद ये अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, डॉटेड डिलीवरी, हट्टे कट्टे शरीर के रफीक, लंबे शरीर के रफीक, और इस बार गेंद को मोड़े स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर सुरक्षित तैनात है, कोई खतरा नहीं, केवल मात्र 1 रन मिलेंगे रफीक के लिए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 36 रन, 36, 5 विकेटों के नुकसान के बाद ये 5वीं ओवर की प्रगति आप देख रहे हैं। संतोष संतुष्टि के साथ गेंदबाजी करते हुए, भले ही शुरुआत की गेंद पर छक्के से पिटे हो, लेकिन उसके बाद जो लगातार 2 गेंद हमने देखे हैं अच्छी लाइन और लन के साथ वापस आए हैं संतोष द्वारा अपने ओवर की ये अगली गेंद। और इस बार भी स्वीप करने की कोशिश। इस तरह की शैली हम ज्यादा से ज्यादा देखते थे कार्ल हूपर के बल्लेबाजी में, जो वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी थे, क्रिकेट की क्वीन रानी कहलाते थे कार्ल हूपर। और आजकल के अंडरआर्म खिलाड़ियों में बहुत ही सारी शैलियां हमने देखे हैं, एक एक खिलाड़ियां अलग अलग शैलियों के साथ माहिर हो रहे हैं। और इस बार भी गेंद को फिर मोड़े डीप मिड विकेट एरिया पर, 1 रन तो आसानी से बने। और इस बार यहां पर देखिए ये कनेक्शन, क्या खूबसूरत कनेक्शन कहने होंगे यहां पर। खूबसूरत कनेक्शन थे फील्डिंग पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब से फील्डर उस गेंद को उठाकर सीधे थ्रो कर दिए चम्मी के हाथ पर। चम्मी ने तुरंत विकेट कीपर के हाथों पर सौंपते हुए रन आउट करने पर सफल बने हैं। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग नजर आए फील्डिंग द्वारा, ये अच्छी बात है। अगर आपकी टीम के फील्डिंग अच्छे हो तो निश्चित रूप से फलितांश भी आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट के साथ आपकी तरफ आने के लिए तैयार रुकते हैं। छठे विकेट रनआउट के रूप पर खोने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन, 38। गेंदबाज फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से। और इस बार अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद, और इस बार भी देखिए शानदार विकेट कीपिंग यहां पर, जैसे ही
5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद बिच्छू बॉयज अब आखिरी वाली 6 गेंद बाकी, इनिंग्स के आखिरी ओवर यहां पर बाकी। देखना है कि 6 गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे। टीम कुंबला के हस्ताक्षर प्रक्रिया अभी भी यहां पर समाप्त नहीं हो पाए हैं, तो तुरंत अपने हस्ताक्षर प्रक्रिया को पूरा करें। अगर ओवर समाप्त होने से पहले आप अपने हस्ताक्षर को यहां पर दाखिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ियां खेलने के मौका नहीं मिलेंगे। मूसा स्ट्राइक पर और इस बार डॉटेड डिलीवरी, इम्तियाज गेंदबाजी पर। 5 गेंद बाकी, रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद इम्तियाज फिर एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। लगभग 2 से 3 कदमों के इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदबाजी पर इम्तियाज। और इस बार अच्छी गेंद, यहां पर भी रन आउट के खतरा, और जी हां इस बार भी रन आउट। आज तो एन्नी पोसोट एक अलग ही तरीके के नजारा दिखा रहे हैं फील्डिंग की बात पर। जिस तरह से पिछली बार पंचायत के मैदान पर इसी तरह फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी, हर दिशा पर एक परिपूर्ण क्रिकेट दिखाकर अपने आप को फाइनल पर विराजमान किए थे एन्नी पोसोट। और इस बार भी फील्डिंग की बात पर बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं नजर आ रहे हैं एन्नी पोसोट के। बिच्छू बॉयज के खिलाफ मिले हुए हर एक मौके के फायदा उठाकर उनकी विकेट लपकने पर सफल बने हैं। रनआउट के रूप पर कई सारे विकेट गिरते हुए हमने देखे। यहाँ पर 8 विकेट अब तक गिर चुके हैं 38 रन पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। अब 4 गेंद शेष बचे हैं। देखना है कि बिच्छू बॉयज इस बचे हुए 4 गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं और कुल मिलाकर लक्ष्य के रूप पर कितने रनों की संख्या इकट्ठा कर पाते हैं विपक्षीय टीम के लिए। इम्तियाज ऑफ स्पिन गेंदबाज, और इस बार अच्छी गेंद, लगातार तीनों गेंद गुड लेंथ के साथ का ये तीनों गेंद इतने बेहतरीन देखने को मिले हैं। लाइन हो, लेंथ हो, ऊंचाई हो, अगर इस ऊंचाई को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर खिलाड़ियां, अगर समझ सकते हैं तो निश्चित रूप से ये मुकाबला कर सकते हैं इस गेंद के साथ। जी हाँ, ये काम शुरुआत पर आप करना चाहिए था बल्लेबाज। जब भी गुड लेंथ वाली गेंद निकल आते हैं तो कदमों के इस्तेमाल कीजिए, 1-2 कदम आप फुटवर्क के साथ खेलने के प्रयास कीजिए, तब जाकर बल्ले के साथ संपर्क बना सकते हैं आप गेंद पर। खड़े रुके जब आप जितने भी गेंद बल्लेबाजी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज क्या करते हैं कि अपनी गेंद पर टिप्पा खिलाने के बाद घुमावट के साथों साथ थोड़ी सी ऊंचाई दिखा देते हैं गेंदबाजी पर, तब आपको परेशानी दुविधा खड़े होते हैं क्रीज पर कि क्या करें इस गेंद के। इम्तियाज और इस बार भी अच्छी गेंद और एक रन आउट के मौका, सीधे निशाना लगाने की कोशिश, लेकिन ना, एक सिंगल रन यहां पर प्राप्त होंगे और इस सिंगल रन के साथ रनों की संख्या 39 रन। यह एलबीडब्ल्यू के शिकार बने हैं यहां पर। तो आखिरी 2 ओवर पर जिस तरह से विकेट खोए हैं बिच्छू बॉयज, ऐसे लगता है कि बिच्छू के शरीर से वो जहर निकल चुके हैं। इस वजह से सामने वाले को बिच्छू के डरने लग रहे हैं यहाँ पर। जब तक उनके शरीर पर वो जहरीलेपन नजर आते थे तब तक विपक्षीय टीम भी डर जाते थे, और वो डरावनापन जो है वो हमेशा उनके विपक्षीय टीम पर देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए एन्नी पोसो डरा रहे हैं बिच्छू बॉयज को, हर एक विकेट काफी नाजुकी के साथ निकालते हुए। और इस बार भी अच्छी थी गेंद, और इस बार भी देखिए रन आउट की नजारा यहाँ पर, बार बार हर बार भी विकेट के साथ रन आउट के साथ दिखाते हुए। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं अपने पूरे विकेट 10 विकेट समाप्त हो चुके हैं। तो आखिरी गेंद पर वो रन आउट के नजारा नहीं बने थे, 1 रन यहां पर मिलेंगे
और कुल मिलाकर 40 रन बनाकर 41 रन के लक्ष्य होंगे। 41 is the target from 36 balls. बिच्चू बॉयज अपनी गेंदबाजी पर क्या रोक पाएंगे इस 41 रन बनाने से? एन्नी पोसोट जो पिछली बार के फाइनलिस्ट हैं, क्या इस बार भी एन्नी पोसोट इस रन को बनाकर 41 रन बनाकर अपने आप को फाइनल पर विराजमान कर पाएंगे यहां पर? और कल नहीं परसों शनिवार के दिन होगा मैंगलोर परिसर के वो धमाकेदार अग्र क्रमांक के एक से बढ़कर एक शानदार 8 टीमों के बीच होगा मुकाबला इस मैदान में। कर्नाटक के मैंगलोर परिसर के टीमों के बीच एक टीम फाइनल पर विराजमान हो जाएंगे और आज के दिन केरला परिसर के केरला विभाग के इस टीमों के बीच एक टीम निकल आएंगे फाइनल पर। तो देखना है कि कौन से टीम फाइनल पर होंगे। तो अब यहां पर देखेंगे कि इस मैच पर बिच्चू बॉयज के खिलाफ क्या एन्नी पोसोट 41 रन बना पाएंगे? सतीश जी, जिस तरह से आपने शुरुआत के 4 ओवर देखे हैं, अच्छे खासे रन तारन हमें देखने को मिले थे बिच्चू बॉयज के बल्लेबाजी पर, लेकिन आखिरी 2 ओवर पर जिस तरह से विकेट गंवाए, एक से बढ़कर एक रन आउट के रूप पर जिस तरह से विकेट गंवाए हैं, तो उन नाटकीय नजारे को देखने के बाद आपको क्या लगते हैं कि क्या वो उनकी हार की एक समय बन सकते हैं वो आखिरी वाली 2 ओवर? Star Nawaz, so just like you were mentioning about the bounce back from the bowling side, excellent, isn't it? First 4 overs, 3 overs, looks like Bichi boys will going to score some big runs. They will going to build a very big score here, but after that they bounce back very well. Especially the last over, which is bowled by Imtiaz, is outstanding over for Yenni Posad. Now 41 is going to be a target, just over 8 runs per over, 7 runs per over. The requirement in the beginning itself here for Yenni Posad. Being the runners of the Gladiators Trophy Season 1, certainly they wanted to win this match. They wanted to be in the next round of this cricket tournament, and for that they have to bat really very well. First ball, right arm over the wicket as Chammo watching the ball till the last moment, seeing the line of the delivery, which is going far outside the run of off time. Nothing much to do with the delivery, and he's left that one rightly, so white call by umpire. And first run comes up here for Yenni Posot against Bichu Boys. It's a really very interesting match. It's going to be anybody's game. Lovely shot there from Chammo, but not quite able to beat the infield. Looks like Chammo is not really 100% fit in after seeing his running between the wicket. He might be feeling some pain in his right leg. Might be the hamstring injury, the problem here for Chammu to running between the wicket. Chammi running between the wicket is concerned. 2 without loss of any wicket. That brings Karthik into strike now. Karthik, the little master for the side, and he's a busy customer, just like what he's doing here. He's a kind of batter who is not just like the making a big sound, playing a big shot. He's just like deep waters of the calm lakes. Very cool and calm, but very effective. And on the other side, when you're having a explosive batsman like Chammo, you needed one defensive player like Karthik. That was a combination, what you're talking about. Again, Chammo, right Chammo tried to hit the ball. Chance of run out. Just like I'm mentioning about, he's really feeling hard to running between the wicket. This time I think he's almost given up. He's not really, he thought that his innings is over. But the bowler on his follow, look at that one, fields the ball, try to hit the stump. If it is a direct hit, I think Chammi is not in the picture at all. Lucky survive here for Chammi. It's going to be a big wicket, actually, Big Two Boys. They wanted to dismiss this man very quickly, Chammi. Otherwise, it can change the complexion of this match. Right up over the wicket. Karthik, as like what you were talking about, once again dealing with the single, swept that one down to short fine leg region. Appeal for leg before wicket, but I think just a bat is involved in the occasion. No question of leg before wicket. One more addition to total 5 on the board without loss of any wicket. Lot of wishes coming here for the success of this Gladiator Trophy season.
2. What a fantastic cricket tournament. One of the most prestigious cricket tournament, I must say, played in this most beautiful winter. Just like what talking about Chami, just going field and takes the catch. Can you believe this? Everyone thought that when the ball is just left the bat of Chami, it looks like going to be a boundary. But again, against the direction of the wind, that stroke has been played by Chami, and that's why that ball is not travelled very quickly as a batter is expecting. But a fantastic judgment catch taken there by the extra cover fielder running back, and he finished the catch quite beautifully. 5 for the loss of 1 wicket, chasing 41 to win the match. And we are talking about the best wishes of best compliments coming from long way, and I would like to tell the names of our the best compliments which came from Muniz of Famous, Salim of New Star, and best wishes from 10 Guys Ubar, and Razak Sports World Puttur, Amar Akbar Anthony Puttur, one of the successful cricket tournament which is completed last month, Amar Akbar Anthony Trophy Puttur. Thank you very much for all the compliments, because your compliments and word of encouragement is required for the success of any big tournament. So successful over here from bowler Zabi, and first over is in progress. 5 for the loss of 1 wicket. Karthik, as always, is a busy customer, chipping the ball here and there, picking up the single, rotating the strike. So successful over is comes in, and after completion of over number first, chasing 41 to win the match. And runners of Gladiators season 1, they able to get 6 in 1 hour. Just coming back to the equation straight away. 41 is the target, 6 deducted from 41. That means 35 more runs required for the victory in remaining 30 deliveries. Difference between run and ball, exactly the 5. I don't think it's going to be a big difference for the team like any Posot. They got a fantastic batting department, but you cannot underestimate, isn't it? Cricket is game of glorious uncertainty. We can say quite confidently, seeing the result of the previous match when the fielding team depending at 36 runs and they able to tie the match, and that was a last ball victory, 36 runs. That's why I'm talking about last wicket, and they picked up a winning run. That shows even in cricket it's very difficult to say anything. Coming back to this match, it's going to be anybody's game. So far, both the teams are battling hard for the victory. Beachy Boys knows that they are playing in their home condition. A lot of experience playing in this particular cricket ground. Beachy Boys, some players from, of course, they are regularly playing in this cricket ground, so that they know exactly the kind of restriction which is required in this remaining 5 overs. From the far end, it's going to be a Chami. Is a new bowler introduced, bowling second over ball, coming down the track. Wicket keeper behind the stump, just missed the opportunity. Little bit quick work required behind the stump in the dedication, because Karthik just using his feet, little bit coming down the track, try to hit that down to extra cover region, missed it completely, and wicket keeper little bit fumble. And again outside run of off time, nothing much to do with the delivery. Good thinking there by Karthik, seeing the line of the delivery last moment, just left the ball into the hands of wicketkeeper, rightly so. White call by umpire. Scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Chami's ball. Tarsam Karthik looking for reverse sweep. Again, switch it is attempted. Missed the ball completely, but not really missing the opportunity to cross off for a single in the form of leg by. Scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Each and every economical over, the asking run rate is going higher and higher. 7.07 runs per over now required run rate for any Posot to win this match. Karthik and Yogesh are the 2 batters out there in the middle. Wait and see how well they manage to build the partnership. Not only the partnership they have to look for, but they need to catch the required run rate as well. And here is Chami, right arm round the wicket, opening the face of the bat quite nicely, giving the placement down to deep backward point region for an easy single, opening the blade of the bat in that occasion, using the face of the bowler, then guiding that one down to backward point region for an easy single. Strikes are rotating very well in this over. So 3 balls they picked up 3 runs, and scoreboard is 9 for the loss of 1 wicket. Now, backward point fielder is going back, because seeing that Karthik is attempting for switch it, then calling that deep mid-wicket fielder inside the ring, and backward point fielder going back to deep backward point. This time again, chipping the ball right in the gap. They're running hard, but not more than a single in the dedication. The fielder at mid-off quickly run across towards his left, and just a batter have to settle for the single.
So both the batters are dealing with the singles in this particular over. One wide, one dotted delivery, and that means all four deliveries, they got 4 runs. 10 for the loss of 1 wicket. Swept it on right in the gap, but again, little bit deviation on the occasion, because that the batter tried to beat that infield, that short fine leg region. There is no fielder in the deep fine leg region. The intention of the batter to get past that infield, but again the fielder done a good job moving to his left and stopping that ball. Again, this time chance of run out, direct hit required, and they missed the stumps completely. Karthik survived from that run out. All we can see that in this particular over, the tidy line and length there from Chammy. 1-1, that was a wide ball in this over. Otherwise, it's a very good over. Quite over, chasing 41 to win the match, and Enni Posot are 12 for the loss of 1 wicket. Now 4 overs remaining, 24 deliveries remaining, and out of 24 deliveries, they have to get 29 runs. Just news coming from UCG. Everybody knows that the big semi-final is going on in Urva Cricket Ground, the World Cup of Underarm, a test match of Underarm, and young friends Urva, the defending champion, once again they're entering into the finals by defeating their opposition by 3 wickets. Vishal Kodikal, the runners-up of previous, and they are out of the tournament. In the second semi-final, Friends Kutar takes on Kodikal friends KFC Kodikal, and just report last came in, and KFC Kodikal struggling to get runs. They lost 8 wickets for just 43 runs. It was the news last came from UCG Cricket Ground. Very interesting, 63 for the 8 after completion of 20. KFC Kodikal against Friends Kutar. I am saying this because now just I am having a little bit eye on Bedra Media. A lot of the viewers are asking any updates from UCG Cricket Ground. That's why I gave that update for, especially for the viewers of Bedra Media. They are keen to see the result of UCG Cricket Ground. So 29 for the loss, 29 required now, 24 balls here in this most fantastic and prestigious cricket tournament, Gladiator Trophy. 2 teams are there fighting hard for the victory. This time again, Karthik, look at that one. He's a clever, he's a intelligent. Look at that, going for the second run. This is the kind of batting is required. Immediately, it's a soft end comes into play. You know exactly the fielder is in deep. Once you get that, is a strategy, and he completed that single into 2. And now was once again this kind of strategy, technique, I think only you can see from Karthik. He is a very specialist in this. And so many times I'm watching when he was represented SNNC, Sai Namana, Kasargod, when he was represented the tournament Sridhar Trophy 2021. He is the one who is the key for the success of SNNC. And in the Jacks Trophy also, he is coming as opener for the side, and a similar kind of strategy is implementing whenever the chasing runs like just over 6 runs per over. Is a very useful cricketer to see. So one more delivery from the far end, and again Karthik so good in it. How important it's going to be. Rotation of strike, and Karthik is not really missing any deliveries. Is converting each and every delivery as a scoring one. It makes so easy when you choose chasing a total. 26 required from 22 balls. 15 on the board. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Which boys badly required 1 good over, the economical over. Again opening the face of the bat, giving the direction. Bates and field, good piece of fielding there by the short third man region. I think Sunil, the fieldsman there in the short third man, quickly moving to his right, not really allow the ball to get past that infield, so that batter have to settle for the singles. Runs are really coming in the form of singles. That is a good strategy. Isn't it? Whenever you need run rate required is 7 runs per over, if you're able to rotate the strike, you will get some extras in the form of wides, so that they can catch the run rate. That was a really good game plan from these 2 batters. Again, Karthik, nice looking drive. Nice looking drive again. They're coming back to second. This time they got a couple of runs. Outstanding batting display here from both the players. It's not easy, I will tell you. They have to handle this kind of temperature, 31 degrees Celsius temperature, running hard in the middle is not that much of easy. Karthik and then Yogesh, the 2 batters are really running hard between the wicket. There is no hesitation at all. Both the batters has got a very good communication and understanding, and that's why slowly they are tightening the grip over this match. Again, wicketkeeper this time fails to make a contact with the, fails to make a good collection behind the stump. Frustration for the bowler
One more addition to total. Altogether, everything is going in favor of N.E. Posot. 19 for the loss of 1 wicket. Slowly looks like these two batters are in the middle. They are really playing as per the condition required and slowly taking a match away from the opposition. Badly required 1 wicket here for Bichu boys. They wanted to win the match. Again, nicely turns that one down to square leg region. They're running hard. This time fielder is very quick. Karthik is keen to come back for the second, but his partner Yogesh is not interested. Rightly so. So 3 overs completed. After completion of over number 3, chasing 41 to win the match. 20 for the loss of 1 wicket. Now, straight away coming back to the equation, Nawaz. 21 required, 18 balls remaining, and I think chasing team little bit upper hand because they got 9 wickets in hand and both the batters are settled down. That means Bichu boys have to do something special in remaining 3 overs. जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने कि शुरुआत के 3 ओवर पर 20 रन बनने के बाद बाकी बचे 18 गेंदों पर अब 21 रनों की जरूरत है। तो ये दोनों खिलाड़ियां मैदान पर टिक चुके हैं, हर एक गेंदबाज की गेंदों को, उनकी गेंदबाजी की हर एक धनात्मक अंशों को समझ चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे में बचे हुए 18 गेंदों पर 21 रन बनाना ये मुश्किल वाली बात नहीं होंगे एन.ई. पोसोट के बल्लेबाजों के लिए। तो अब यहाँ पर बिच्चू बॉयज अगर इस मैच पर अपनी नियंत्रण पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस साझेदारी को तोड़ना होगा। जिस तरह से पहली इनिंग्स पर बिच्चू बॉयज के आखिरी वाली 5 विकेट जिस तरह से खोए थे, 5 से 6 विकेट रन आउट के रूप पर, उसी तरह यहां पर विकेटों के शिकार के साथ बिंदी गेंद बनाकर, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट पर हम ये देखते हैं कि छोटी ओवरों के मैचों पर जितने विकेट गिरते हैं वहां पर एक डॉटेड डिलीवरी भी मिल जाते हैं। उसके साथों साथ नए खिलाड़ी जब क्रीज पर आकर टिकने के लिए 1-2 गेंदों की वहां पर इस्तेमाल जरूर करते हैं गेंदबाजों को समझने के लिए। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये साझेदारी जो है ये बहुत ही मायने रखेंगे एन.ई. पोसोट के लिए। योगेश और कार्तिक की जोड़ी। योगेश जो 3 साल के बाद मैदान पर उतर आकर अपनी काबिलियत को, अपनी सक्षमता को परीक्षा कर रहे थे और पिछले मैच पर तो योगेश ने यह साबित किया है, भले ही 10 साल छोड़कर मैदान पर आ जाए लेकिन अपनी शारीरिक भाषा पर कोई बदलाव नहीं होंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कोई बदलाव नहीं होंगे। हम वही क्रिकेट खेलेंगे जो पिछले दिनों पर हम खेलते थे। और दूसरी तरफ है छोटी उम्र के ये कार्तिक। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो गुड्डू थे, अभिलाष जो थे मैंगलोर परिसर के, इसी तरह के, इसी मूर्ति, इसी साइज के साथ देखने को मिलते थे और उनकी बल्ले से भी इतने बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिले हैं। यहां पर कार्तिक शुरुआत से लेकर अब तक हम नोटिस कर रहे हैं हर गेंद के जवाब बहुत ही नाजुक की नजर से। ये देखिए उनकी सुंदरता, उनकी बल्लेबाजी की ये खासियत देखिए, गेंद की दिशा को समझते हुए जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होते उन जगह को चुनते हुए एक एक सिंगल रन, उनकी दिल और दिमाग पर कोई दुगने रन, चौके हो या छक्के की बिल्कुल कोई आशा नहीं नजर आते। केवल सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए अपनी साथीदार को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक सौंप रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है कार्तिक जी आपके लिए। और इस बार ऑन साइड की दिशा पर एक सिंगल रन और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या भी आगे बढ़ते हुए 23 रन 23। अब 18 रन पीछे खड़े हैं 15 गेंदों पर। 15 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। हर गेंद पर रन बनाने के साथों साथ विपक्षी गेंदबाजों के हाथों से 1-2 रन उनकी कमजोरी की वजह से छुड़ाना होगा यहां पर एन.ई. पोसोट को। बिचू और इस बार पुश कर दिए गेंद को अपने ही अंदाज में, ज्यादा पावर बिल्कुल नहीं लगाए क्योंकि वो जानते थे। और यहां पर देखिए कार्तिक की विकेट, जी नहीं, योगेश के विकेट यहां पर खतरे पर गिरे। हल्के हाथ से पुश कर दिए थे कार्तिक का एक सिंगल रन के चाहत के साथ, क्योंकि ज्यादा पावर अगर लगा देते तो कैच आउट होने की संभावना बन सकते थे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये खुले मैदान है, पूरे मैदान है, यहां पर बल्लेबाज अपनी दिमाग को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह यहां पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बिना अंदाज के साथ फील्डरों के स्थानमान को बिना देखे हुए बल्लेबाजी करते हैं तो वहां पर फलितांश अच्छे नहीं होंगे। तो यहां पर दूसरे रन भागने की कोशिश पर योगेश अपने विकेट गंवा चुके हैं। 24 रन पर 2 विकेट अब तक गंवा चुके हैं एन.ई. पोसोट।
शुरुआत के विकेट चम्मी के रो पर जो कैच आउट होकर वापस गए थे और दूसरे विकेट योगेश के रो पर। गेंदबाज फिर तैयार, पिच्चू बॉयज के लेग स्पिन मांत्रिक चम्मू अरिमला, अंडरआर्म क्रिकेट के जाने माने ये नाम कासरगोड परिसर ही नहीं बल्कि मैंगलोर परिसर पर भी चम्मू अरिमला के नाम काफी खिलाड़ियां जानते हैं, काफी दर्शक जानते हैं। जिस तरीके से चम्मू अरिमला अपने क्रिकेट के सफर दिखाए हैं, पिछले कई सालों से जिस तरह के क्रिकेट उन्होंने दिखाए हैं, बहुत ही बड़ी संख्या के अभिमानियों को रखते हैं चम्मू अरिमला। तो आप देखना है कि अपने लेग स्पिन की मांत्रिकता के साथ क्या कर पाते हैं पिच्चू बॉयज के लिए। चम्मू फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट और इस बार उल्टे हाथ गेंद को खेले रिवर्स स्वीप के साथ एक सिंगल रन यहां पर मिलेंगे। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद 26 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो अब बचे हुए 12 गेंद, 12 गेंदों पर 15 रन, 3 ओवर पर 21 रनों की जरूरत थे और पिछले ओवर पर केवल मात्र 6 रन बना पाए हैं। तो अब यहां पर देखना है कि 2 ओवर पर 15 रन की इस मांग को, इस दरार को क्या पूरा कर पाएंगे यहां पर एनी पोसोट, क्योंकि ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 के पहले दिन के मैच आप देख रहे हैं। यहां पर हर एक मैच होगा डू और डाई वाले मैच। जीतने के बाद अगले मैच के लिए मौका मिलेंगे, अगर हार जाते हैं तो निस्संदेह इस क्रिकेट श्रृंखला से जुड़े हुए हर एक सपना को अपने दिल से हटाकर निर्गमन लेने होंगे, अलविदा कहने होंगे इस क्रिकेट श्रृंखला को। और इस क्रिकेट श्रृंखला जो पुराने जितने भी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियां हैं आज इंतजार कर रहे थे इस क्रिकेट श्रृंखला को देखने के लिए, चाहे वो कर्नाटक के हो या केरला के। वो जानते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप की काबिलियत क्या है, उनकी शक्ति क्या है। पिछले बार ग्लैडिएटर ट्रॉफी बनाने के बाद जो उम्मीदें थे ग्लैडिएटर ट्रॉफी के ऊपर वो दुगने हो चुके हैं दर्शकों के। और इस बार भी देखिए बिल्कुल निरीक्षा की तरह 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के साथ चैंपियन बनने वाले टीम को मिलेंगे ग्लैडिएटर चैंपियन ट्रॉफी। दूसरे स्थानी को मिलेंगे 50,000 के साथ रनर्स ग्लैडिएटर ट्रॉफी। 12 गेंदों पर 15 रन। सुनील गेंदबाजी पर पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी। गिरी मध्यम क्रमांक के बेहतरीन खिलाड़ियों में माने जाते हैं। गिरी को समय के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं गिरी। और इस बार क्रीज पर झुकते हुए एक सिंगल रन चुराया और छोटी सी मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड के फायदा उठाकर दुगने रन भी समाप्त किए। यहां पर पहली रन समाप्त करने के बाद कार्तिक दूसरे रन के लिए तड़प रहे थे। जैसे ही फील्डर के हाथों से गेंद फिसले दूसरे रन के लिए तुरंत दौड़ पड़े। और इस बार इस 2 रन मिलने के साथों साथ रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 28 रन, 28। अब 13 रनों की जरूरत है 10 गेंदों पर। 10 बॉल 13 रन टू विन दिस मैच। क्या इस मैच भी पिछले मैच की तरह सुपर ओवर देखने के मौका दे पाएंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, संगठक तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि और एक सुपर ओवर हो जाए यहां पर, क्योंकि शुरुआत के उस सुपर ओवर पर ही समय की कमी महसूस कर रहे हैं यहां पर। और इस बार ये सिंगल रन गिरी की हाथ, गिरी की पल्ले से। और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या भी आगे बढ़ते हुए 29 रन, 29। 12 रन पीछे खड़े हैं 9 गेंदों पर। कार्तिक का शुरुआत से लेकर अब तक एक एक सिंगल रन के साथ चमकता हुआ नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी पर वाकई भविष्य के ये बल्लेबाज है कार्तिक। और इस बार भी सिंगल रन के साथ गिरी को स्ट्राइक सौंपे। ये अच्छी बात है जब कोई खिलाड़ी शुरुआत से लेकर आखिरी मौके तक हर गेंद के जवाब दे रहे हो, हर एक गेंदबाज के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी की जवाब बेहतरीन तरीके से निभा रहे हो, वो भी बल्ले के जरिए। ना ही कोई लेग बाय, ना ही कोई बाइसा, ऐसे बिल्कुल नहीं नजर आए हैं कार्तिक की बल्लेबाजी में। हर गेंद को गेंद के साथ संपर्क बना पाए हैं। और इस बार गिरी द्वारा शॉर्ट फाइंड लेग की दिशा पर खेलते हुए एक सिंगल रन चुराए। 7 गेंदों पर अब 10 रन की जरूरत। 31 बने हैं रनों की संख्या। 7 बॉल 10 रन टू विन दिस मैच। मैच आप देख रहे हैं एनी पोसोट और बिच्चू बॉयज के बीच। और इस बार
मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद को खेले, एक रन समाप्त हो चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़। कार्तिक के विकेट यहां पर दावे पर गिर सकते थे, लेकिन विकेट कीपर उस गेंद को पहली झटके पर उठाया होता तो निश्चित रूप से यहां पर खतरे बन जाते एनी पोसोट के लिए। दुगने रन प्राप्त हुए और इस दुगने रन के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 33 रन। 33 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, 6 गेंद बाकी, 8 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। 6 बॉल 8 रन टू विन दिस मैच। क्या होगा यहां पर? क्या बिच्छू बॉयज रोक पाएंगे इस 8 रन बनाने से, या एनी पोसोट पिछले साल की तरह इस बार भी जीत के ऊपर जीत हासिल करते हुए फाइनल पर विराजमान हो पाएंगे? यहां पर हरीश पटेल और मोहन येयाडी इस मैच के ऑन फील्ड अंपायरों के रूप पर, और उनके साथ है शेख मलली। वीक्षक विवरण पर मैं स्टार नवाज, हमारे साथ है सतीश मैंगलोर, उसी तरह अब्दुल रहमान बेकूर जी, नासिर कन्याना जैसे महारथियों के सम्मेलन देख सकते हैं आप ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर। और संगठकों ने जिस तरह की सुविधाएं यहां पर दिखाए हैं, जिस तरह की व्यवस्था यहां पर खड़े किए हैं, वाकई खूबसूरत, किसी ऊंचे दर्जा के क्रिकेट श्रृंखला से कम नहीं है बिल्कुल। मन्नंगुड़ी के ये मैदान बेद्रा मीडिया के सारथ्य पर, बेद्रा मीडिया इस मैच की हर एक कारनामा को अपने कैमरा पर कैद करते हुए यूट्यूब चैनल के जरिए दिखा रहे हैं। देश पर ही नहीं बल्कि विदेश पर भी जितने भी क्रिकेट खेलने वाले अंडरआर्म के छह गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। 6 बॉल 8 रन टू विन दिस मैच। गेंदबाजी पर अब देखना है कि किसे, फारूक को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। फारूक गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर खड़े हैं गिरी और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं कार्तिक। 6 गेंदों पर 8 रन। गिरी मध्यम क्रमांक के बेहतरीन खिलाड़ियों में माने जाते हैं गिरी को, और दूसरी तरफ कार्तिक मिले हुए मौके को भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेहतरीन दिखाए हैं कार्तिक इस मैच में। फारूक तैयार, झुकते हुए बार बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर
अपने ही अंदाज में खड़े रुकते हैं। ये पहली गेंद और इस बार लक्ष्मण की दिशा पर थे गेंद। कार्तिक दौड़कर स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं और हरीश पटेल ने कहा कि ये वाइड बॉल है। लक्ष्मण से बाहर गेंद। अब तो हर गेंद पर एक सिंगल रन बनाने की जरूरत है और मैं कार्तिक की बात पे कह दूं कि अगर बाकी बचे 6 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है तो अब स्ट्राइक लेना ये अवश्य बनते हैं कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को, क्योंकि अब तक हर एक गेंद पर एक एक सिंगल रन के साथ अपनी बल्लेबाजी दिखाए है कार्तिक। और ये देखिए ये चमत्कारी क्रिकेट। यहां पर फील्डरों के सामने गेंद रखते हुए उनको सवाल फेंकते हुए रन दौड़ रहे हैं कार्तिक। यहां पर उनकी स्ट्राइक रेट 100% स्ट्राइक रेट के साथ वाकई जबरदस्त। दूसरी तरफ गिरी उपड़ा कासरगोड परिसर के बलाढ्य खिलाड़ियों में माने जाते हैं। गिरी को पिछले 3-4 सालों से इनफॉर्म वाले खिलाड़ी माने जाते हैं गिरी को। तो यहां पर 5 गेंदों पर 5 रन और इस बार भी केवल मात्र 1 रन के इरादे के साथ बल्ला घुमाए। यहां पर ऊंचे शॉट या दुगने रन के बिल्कुल कोई सोच नहीं नजर आए उनकी शारीरिक भाषा पर, क्योंकि जरूरत भी इसी तरह के है एन्नी पोसोट को। अब बचे हुए 4 गेंदों पर 4 रन, 4 गेंदों पर 4 रन। अब तो एन्नी पोसोट के जितने भी दर्शक हैं कार्तिक के ऊपर विश्वास बिल्कुल कम नहीं होंगे, क्योंकि अब तक की हर एक गेंद को सही तरीके से निभाया है कार्तिक ने। तो देखना है कि बचे हुए 4 गेंदों पर कार्तिक क्या कर पाते हैं। और इस बार भी अपने ही अंदाज में एक सिंगल रन तो अपने हक की तरह वापस मांग कर ले रहे हैं कार्तिक द्वारा। हर गेंद पर एक एक रन कितने सुंदर तरीके से चुरा रहे हैं कार्तिक। 3 गेंदों पर अब जरूरत है 3 रन की। बिच्छू बॉयज 2 ओवर पर 15 की जरूरत थी विपक्षीय टीम को, 3 ओवर पर 21 की जरूरत थे, आखिरी ओवर पर 8 रन की जरूरत। लेकिन फारूक पहली गेंद पर ही वाइड दिखाते हुए इस मैच के पूरे जो रौनक थे उस रौनक को कम कर दिए हैं शुरुआत की गेंद पर। 3 गेंदों पर 3 रन और इस बार हवा में खेले और ये बेहतरीन कैच ऑफ द डे। आज के सुंदर कैचों में माने जाएंगे ये कैच, क्योंकि उल्टे भाग रहे थे विरुद्ध दिशा पर भागते हुए जाबिर शुरुआत के मैच के हीरो थे बिच्छू बॉयज के। जाबिर पहले मैच के हीरो बिच्छू बॉयज के जीत के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पाए थे जाबिर। और इस बार भी देखिए सही मौके पर मौके पर गिरी जैसे खिलाड़ी के विकेट पाए हैं यहां पर। और उस कैच पकड़ने के समय थोड़ी सी जख्मी वहां पर हुए हैं, तो उनके हालचाल देख रहे हैं बाकी बचे सदस्य भी। तो हम आशा करते हैं कि वो सुरक्षित होंगे। अपने पैरों पर थोड़ी सी चोट पाए हैं यहां पर जाबिर द्वारा। तो पिछली गेंद पर विकेट गिरने के बाद अब तो थोड़े से और रौनक बढ़ गए हैं इस मैच के। 2 गेंदों पर 3 रन। तो संगठक यहां पर चिंता पर पड़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मैच भी सुपर ओवर पर न बदल जाए। पिछले मैच न्यू स्टार कुंजतूर और एनएनसी के बीच सुपर ओवर के रूप पर हमने देखे थे। क्या इस बार भी 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत है? विकेटों की संख्या तो अभी भी 7 विकेट अभी भी सुरक्षित बचे हैं एन्नी पोसोट की बल्लेबाजी में। कार्तिक अभी भी सुरक्षित केस पर। तो गिरी के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी जुड़े हैं कार्तिक के साथ। इम्तियाज एन्नी पोसोट के भरोसेमंद ऑलराउंडर, विश्वास भरे खिलाड़ी। तो अब 2 गेंदों पर 3 रन। कार्तिक जी
आपके ऊपर कैमरामैन हो या दर्शकों की नजर आपके ऊपर केंद्रीकृत हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से लेकर आप अब तक जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी निभाए हैं, तो आखिरी मौके पर अगर आप इस मैच को जिताते हुए एन्नी पोसोट को इस मैच को जिताते हुए बाहर जाएंगे मैदान के, तो निश्चित रूप से आपकी फोटो तो जरूर खींचेंगे, लेकिन उसके साथों साथ वीक्षक विवरणकार की जुबान पर अगर आप एक बार गिर जाए तो बार बार आपके नाम गूंज जाएंगे मैदान में। 2 गेंदों पर 3 रन, 2 बॉल 3 रन टू विन दिस मैच। फारूक गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर खड़े हैं द चॉकलेट बॉय ऑफ कासरगोड एरिया कार्तिक, और इस बार चुके यहां पर कार्तिक फिसले यहां पर स्टंप आउट करने पर सफल बने हैं बिच्छू बॉयज। क्या इस बार इस अनिरीक्षित विजयी के हकदार बनेंगे इस मैच में? एन्नी पोसोट, पिछली बार फाइनलिस्ट बने थे आप, आखिरी वाली 3 गेंदों पर 3 रन की जरूरत थे, अब आखिरी गेंद पर 3 रन की जरूरत, इसे कहते हैं मैच। इसलिए हम क्रिकेट पर कहते हैं कि आप क्रिकेट पर आखिरी गेंद तक क्रिकेट के फलितांश को नजरअंदाज मत कीजिए। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी गेंदबाज को आप इतने छोटे मत समझिएगा। शुरुआत पर जब फारूक के हाथों से वाइड निकल आए तो कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शक आप मन ही मन में गालियां दिया होंगे फारूक को कि कौन से मौके पर आपने वाइड दिखाए हैं, लेकिन आखिरी मौके पर देखिए किस तरह से उन्होंने इस मैच को बरकरार रखे हैं। 3 रनों की जरूरत है आखिरी गेंद पर। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त करने के बाद यह हैट्रिक के मौका भी प्राप्त हो रहे हैं फारूक को। इस श्रृंखला में किसी भी गेंदबाज हैट्रिक के हकदार नहीं बने हैं। यह पहली मौका फारूक के लिए हैट्रिक विकेट के। अगर आप हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अपनी टीम को जीत दिलाने के साथों साथ एक हैट्रिक के ताज भी आपके सर पर लग जाएंगे और इस श्रृंखला में अच्छे गेंदबाजों के नाम पर आपके नाम जुड़ जाएंगे। 3 रन फ्रॉम लास्ट बॉल। तो बाएं हाथ के खिलाड़ी लत्तू कड़े हैं स्ट्राइक पर। 3 रन आखिरी गेंद पर। क्या लत्तू अपनी बल्ले से एक शानदार चौका लगा पाएंगे आखिरी गेंद पर? विनिंग शॉट के साथ अपनी टीम को जिस तरह से पिछली बार फाइनलिस्ट बने थे, क्या इस बार भी वो साबित कर पाएंगे कि हां हमारी टीम के पास वो काबिलियत है कि हम फाइनल तक पहुंच जाए। आखिरी गेंद पर 3 रन। देखने वाले दर्शकों के साथों साथ टीम के खिलाड़ियों के दिल की धड़कनें तेज होने लगे हैं, धक धक करने लगे हैं कि क्या होगा आखिरी गेंद पर। 3 रनों की जरूरत आखिरी गेंद पर। फारूक, और इस बार गेंद को खेले फील्डर के हाथ पर गेंद, और इस बार केवल मात्र 1 रन और इसी के साथ बिच्छू बॉयज पिछले बार के फाइनलिस्ट को हरा चुके हैं। एन्नी पोसोट को हराकर अगले राउंड पर प्रवेश कर चुके हैं बिच्छू बॉयज। कंग्रेचुलेशन इस शानदार मैच दिखाने के लिए एन्नी पोसोट को और बिच्छू बॉयज के लिए धन्यवाद।
famously known as Preetu, is off the mark with a single, and Unni Krishnan will going to take the strike for the next delivery of Nasaf. Nasaf, the fourth time in this over. So far he bowled 3 deliveries considered as just a single run, and he bowling right arm over the wicket past umpire. Unni Krishnan drives that on powerfully down to extra coverage and chance of run out in the non-striker's end. Off stop by the fielder. There is not neat collection from extra cover. If it is a neat collection, just certain chance of run out, which is really Unni Krishnan struggling hard to get that single in the negation, but because of that pummel from that fielder, and Unni Krishnan completed it single, 2 without loss of any wicket. Nasaf right arm over the wicket to Pritham. Pritham once again checking the stroke for the last moment. He was looking for the square cut, but just seeing the line of delivery, very difficult to play the cut shot. Then he just went with the stroke and picked up a single down to short mid off, and the scoreboard was down to 3 without loss of any wicket. Unni Krishnan, and this time appeal for leg before wicket is given him. He just tried to play across the line of the delivery. Ball pitched in the line. Ball pitched in the middle stump. Look at it, Unni Krishnan. He just tried to play across the line of delivery, swinging his bat. Once he missed the ball from the bat, and certainly that ball going to hit the middle stump. Fantastic decision coming from umpire Harish Patel. We can see in the replay as well. The front foot of Unni Krishnan right in front of a middle stump. And what a fantastic first over there from Nasaf. That's kind of over which is required here for Team Kumla. They won the toss, elected to field first. They wanted to restrict the opposition for low score, and they really started well with a fantastic over from Nasaf. 3 for the loss of 1 wicket. A shackling start here for NNC Kasaragod. And let's wait and see how SNNC will going to come out from shackling start. The first over belongs to fielding team Kumla. And Nasaf is producing that very, very important over. So Manju is got a ball in his hand. We are talking about Manju. The last match as well, is a very well talented bowler for the side. He's got a great future. Not an easy job to come and bowl in the power play overs when the batters are looking for big strokes. It's not an easy job, but so far he's handling the pressure very well. Right arm over the wicket balls. The starts with a wide delivery. This time he tried to bowl outside the run of off time. By doing that, that ball is going further away. Wide call by umpire. 1 more addition to total 4 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd. And last over of the power play is going on. Deep mid wicket, deep extra cover. The fielders are in the deep. And here is Manju, right arm over the wicket, beautifully ball, fantastic flighted delivery, ball just deviating, moving from the good land spot across the line again. He wanted to play his favourite shot, Pritham, but again not quite able to reach the pitch of the delivery. The extra bounce as well for Manju, and batter completely beaten. Again, Manju. Right arm over the wicket, balls to Preetu drives that one down to mid on, deep long on, try to get past that mid on, but mid on fielder coming across towards mid off fielder coming across towards mid on, run across towards mid on, and fields the ball, and they got ample time to complete the single. 5 for the loss of 1 wicket. Manju back to his bowling mark with a short run up. Pass umpire Sheikh Malali. Balls. It's going to be a big wide. Chance of run out, and he's gone. No need to ask for the third umpire because Pritham almost struggling to reach his home. And good throw coming from, I think, Satish there in the short third man region. Picks the ball, and one action he released the ball. The very good throw coming from the fielder. And wicketkeeper behind the stump, Pradeep, just complete the formalities of removing the bail. And the wicket number 2 is back into pavilion of SNNC. SNNC lost their 2 big wickets here at the score of 6. 6 for the loss of 2 wickets. 2 big wickets, I must say. The wicket of Preetu and Unni Krishnan, tremendous striker of the ball. Both the batter are really, it's going to be a very good achievement here for Team Kumla, dismissing both the aggressive batters for cheaply. Now up to these 2 batters, how to settle, how to find the partnership, how to increase the run rate as well. Jojo and Aju, 2 experienced campaigner for the side, have to build the partnership, how to consolidate. And Manju now bowling right arm over the wicket. Pass umpire outside the run of off time, going for the off drive. Again misses the line completely. Fantastic stuff there from Manju. And so far both the opening bowlers of Team Kumla are really
enjoying the condition, bowling very good line and length, and there is no possibility of any run the previous delivery. This time Ajud got that one right from the middle of the bat towards extra coverage, and good piece of fielding by the fielder. They're looking for the two. Excellent piece of collection there from bowler Manju. Athletic work in the occasion, seeing that his ball is not coming straight to his hand. He have to dive to his right to take that throw from coming from extra cover fielder, and batter settled for the single. 7 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Manju bowling with a short run off from the player's dugout end. Pass umpire right arm over the wicket. Oh, lovely delivery, lovely incoming delivery. Little bit encouragement here for Manju, especially in the evening. He's getting some help from the direction of the wind as well, getting some extra pace as well. So all we can see that he's just enjoying his bowling performance. 7 for the loss of 2 wicket. Manju again. Right arm over wicket, the top edge. Pradeep is underneath it. It's going to be one more wicket. Sheikh Malali raising his finger, but batter knows that he got a top edge. Try to play the reverse sweep again. Look at that one. Ball is ballooning up in the air, and wicketkeeper Pradeep just takes his good position to take the catch. And wicket number 3 is back into pavilion. Disaster continues. Wickets are falling like house of cards here. 7 for the loss of 3 wickets. Yes, NNC really struggling. They got a shackling start after completion of over number 2. They got only 7 on the board. So news from UCG ground. Second semi-final is going on. KFC Kodikal set a target of 88 to win the match for Friends Kuttar. They have to get 88. The similar kind of target in the first semi-final also. Young Friends who has got a 89 target. Now Friends Kuttar has got a target of 88 to win the match in a stipulated 30 overs. It's going to be one more good match is coming up. Young Friends Ruwa. They are the defending champion of Gladiator Trophy 2021, which played at Panchayat Mini Stadium, Manjeshwar. They will go into Young Friends, they will go into play their match in coming Saturday, day after tomorrow. And it's very interesting to see that we will going to become the champion of this Gladiator Season 2. Lovely shot, good placement down to cow point region. Long chase here for the backward point fielder to run across towards his right to field the ball. And the batter has got a couple of runs here. Very good placement there from the batter Savi. He got a couple of runs, 9 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. So far, it's a very quiet cricket is going on here. Right arm over the wicket bounce. Nicely whipped that one down to deep square leg region for an easy single, not more than a single in the relegation. So with that single, scoreboard moves on to double figure 10. Very hard combined 10 runs in front of disciplined bowling performance by the bowlers of Team Kumbla. So far they are really in upper hand. Again swept that one quite nicely down to short defined leg region by Savi. One more addition to total. With that single, scoreboard moves on to 11 for the loss of 3 wicket. Ajju and Savi are the two batters are in the middle. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 3 wickets. Over number 3 in progress. Very slow cricket is going on here. The batters are dealing with the single, rightly so, because they lost 3 wickets. And they have to this time bowl him, clean him up. At last he just lost his patience, seeing that his run is very hard to combine. He wanted to break the shackle, but he's choosing the wrong delivery, I must say. The ball, we can look at that one, absolutely, that was jagging back into the batter. The fantastic delivery there from Nasaf. He's knowing for that. Sometimes he's bowling big off-cutter in the negation. But because of that, the deviation too much in that delivery, the bowler, batter left the gap between bat and pad, and Ajju is back into pavilion. 12 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. So you can see that 12 for the loss of 4 wicket, over number 3 in progress.
We're talking about the projected score 24 in the similar run rate, current run rate of 4.24. They able to continue that. They will get only 24. But yes, NNC Kasaragod doesn't want to follow that run rate. They want to accelerate the run rate. For that, they have to bat really very well. Again, a good placement down to deep extra coverage, and they're running and looking for the second. In comes the throw from the deep. Little bit misunderstanding, yes and no. And at last they managed to go against that second run, and they managed to get a single. With that single, scoreboard moves on to 13 on the board. Over completed. 13 for the loss of 4 wicket. Over number 3 completed. Now 3 over remaining in the innings of SNNC, and wait and see how SNNC will going to get some good score here. So far, Team Kumla are looking in a commanding position, as they were all 3 bowlers introduced by the bowlers are done a great job here to restrict the opposition for just 12 runs in 3 overs. 13 runs will be correction for the loss of 4 wicket. So 4th over is going to start from the players dugout. Looks like Sunil has been introduced. Sanath introduced. He will going to bowl round the wicket, right arm. Improvisation quite nicely down to deep third man, deep backward man region. Looking for the second mix-up once again. Chance of run out and easily done. The wickets are tumbling here of SNNC. Once again, total misunderstanding between the wicket. After picking up the first run, they're looking for the second, and good piece of fielding there by the fielder in the short third man region. Shavi picks the ball, release the ball, and Pradeep once again athletic work. Looks like Pradeep is away from the stump, diving to his front, removes the bails, and Savi is out of the crease in that occasion. So wicket number 5 is back into pavilion. Yes, NNC are deep in trouble. 14 for the loss of 5 wicket. A very interesting news coming from UCG cricket ground. Chasing 88 to win the match. Friends Kuttar are deep in trouble. They are 18 for the loss of 4 wicket. 15 for the loss of 4 wicket. It's a very interesting game of cricket is going on at UCG. Friends Kuttar, and the last 3 years they came into semi-final but fails to enter into the final. And here is they got a golden chance to defeat KFC Kodikal, but they got a shackling start. 16 for the loss of 4 wickets. Still long way to go for Friends Kuttar to win this match. Now Guru, new batter, facing Sanath, top edge, but out of the reach of fieldsman. Fieldsman then the deep backward square leg, so that he managed to get the single quite easily. With that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 5 wicket. In the over number 4 in progress. Very slow progress here for SNNC. Understandable. Wickets are tumbling in each and every over of SNNC. Partnership is very hard to combine. Even runs are very hard to combine against disciplined bowling performance of Kumbla. This time what a pick up and throw. And here is a chance of run out. Now Arish Padil wanted to take help from third umpire Mohan Iyadi. So Mohan here, they have to see the television replay here. What a good piece of fielding there by Sanath. Single hand pick up and throw towards wicket keeper. Pradeep almost drags that one to collect that ball. A little bit out, and I think the batter is out of the crease, is given out. Disaster continues. Disappointment continues here for SNNC. The wicket number 6 is back into pavilion. The scoreboard is just a 15 on the board. Very disappointment batting performance, and more than I think disappointment batting performance, the understanding is not there. The communication is not there. And that was really lacking in the batting department of SNNC. And the wickets are tumbling here. The second run out taken place.
So next match is going to be a one more big match is coming up. Bichu Boys takes on John Boys, and two boys, the Bichu, the Scorpio takes on John Boys, and Scorpio want to take John of John Boys, and John Boys wanted to take the poison of Bichu. It's going to be a very interesting match. Bichu Boys takes on John Boys for the next match. Outside run of off time, going to be a wide gifted run here for SNNC. They will going to enjoy that runs because very hard to combine runs from the bat. Then opposition bowler conceding some extras here. 16 for the loss of 6 wicket. Sanath. Right arm round the wicket. This time nice looking drive there from Abhi picked up a single down to deep long on. With the addition of that single, scoreboard moves on to 17 for the loss of 6 wickets. Is over number 4 in progress. Sanath. Right arm around the wicket to Chami. Chami reverse sweep comes into play. Little bit pumble, but recovered very quickly by that fielder. One more addition to total. The addition of that single, scoreboard is 18 for the loss of 6 wicket. And SNNC, after they lost the toss, asked by the opposition to bat first. Everything is going in favor of fielding team. Team Kumla so far they are looking pretty good down the leg stump. Second wide of this over, and that was the run really required here for SNNC. They're not really bothered about how the runs are coming. And they will definitely going to enjoy these extra runs, extra deliveries. 19 for the loss of 6 wicket. So far it's 11 boundaries and 8 sixes in the tournament. And reaching for the delivery this time, right placement as well. Labi looking for the second, in comes a throw, but not quick enough to stop the couple of runs there for Mabi. 2 more to the total. With the addition of that 2, scoreboard moves on to 21 for the loss of 6 wickets. And the over number 4 in progress. Over completed. Over completed. Now 2 hours remaining, and wait and see what will going to happen in remaining 2 hours, and before the next over will going to commence. I would like to invite once again Abdul Rahman Bekur sir for the further explanation of a match in our national language. Very popular voice, the golden voice of Kasargod, Abdul Rahman Bekur sir, and will going to take over the microphone in remaining overs of the innings of SNNC. Please welcome sir. धन्यवाद सतीश। मंगलूर चार ओवर की समाप्ति पर टीम कुंबला के सामना करते हुए नमना नुसरत चौकी 21 यानी कि 21 रन बनाए गए 6 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल परितापी स्थिति को सामना करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला गया है स्क्वायर लेग इलाके पर। वहां पर फील्डर इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से इसको संख्या बढ़ते हुए 22 यानी कि 22 रन मशहूद गेंदबाज के रूप में और फतेह विकेट गेंदबाजी कर रही है बायर कई गंभीर उड़ान से। स्ट्राइक पर अभी बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर प्रदीप कुंबला के ग्लव्स पर सुरक्षित है गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। इस बीच में इन्होंने बेल्स को भी गिराए थे जो मौका दिख रही थी, जो बैट्समैन अगर हरे थोड़े से भी हिल जाएं तो इनको मौका मिल जाएंगे आउट करने के लिए, इस वजह से इन्होंने बेल्स को गिराए। फिर एक बार बहुत खूबसूरत गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद जो अंपायर ने अपने जगह से हटकर कह रही कि वाइड और बाई 2 रन, और 2 रन की मदद से इसको उस खाते पर 24
24 रन। मशहूद फिर एक बार स्ट्राइक पर चमी कासरगोड मशहूद को सामना करते हुए ओवर द विकेट। और इस गेंद को भी स्वीप किया गया है। वाइड स्मिथ विकेट पर गेंद जाते हुए फिर तेजी के साथ आए, हल्के से मिसफील्ड लिए और मिसफील्ड की वजह से दूसरी रन भी यहां पर आसानी के साथ दूसरे रन के लिए अवसर मिले हैं बल्लेबाज चमी को। और इस 2 रन की मदद से इसको संख्या बढ़ते हुए 26, लॉस ऑफ 6 विकेट। 5 ओवर की मुकाम मिल जा रही है। और इस मैच जीतने वाले को जो सेमीफाइनल पर मौका मिल जाएंगे, छोटे मोटे जो खेल नहीं है, जो ग्लैडिएटर ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल में पहुंचना। और इसी के साथ अब विकेट पतन हो चुके हैं। चमी कासरगोड डिपार्ट्स। जीतने वाले को मौका मिल जाएंगे ग्लैडिएटर ट्रॉफी की पहली सेमीफाइनल पर खेलने के लिए। यहां पर क्वार्टर फाइनल मैच के लिए इंतजार है। अगले मैच जान बॉयज और बिच्छू बॉयज के बीच में, 2 बॉयसों के बीच में जो हस्ताक्षर जारी है। शुरुआत हुए हैं, हस्ताक्षर की पुस्तक यहां पर खुले रखी है। आ जाइए दोनों टीम, जान बॉयज और बिच्छू बॉयज के बीच में मैच होगा। अब 7वें विकेट पतन हुए चमी कासरगोड के रूप में। बहुत बढ़िया विकेट यहां पर मशहूर ने प्राप्त किए हैं। अभी भी स्कोर खाते पर 26 रन, यानी कि परितापी स्थिति कहना होगा। 5 ओवर जारी है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं सकते। मशहूर फिर एक बार मशहूद ओवर द विकेट बाहर के कंबरोडन से। नए बल्लेबाज आगमन हुए हैं धर्मा, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, इनको योगदान मिले हैं 7 विकेट पतन होने के बाद। और इस गेंद को इन्होंने खेला है हवा पर कुछ क्षण तक थे, जो शॉर्ट मिड विकेट में कोई फील्डर तैनात नहीं थी, उस वजह से इनको 1 रन के लिए अवसर मिले हैं आसानी के साथ। और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 27, यानी कि 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत स्थिति पर है टीम कुंबला। लाजवाब टीम बनाई गई है ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए। फिर एक बार ओवर द विकेट अभी के लिए, अभी तैयार है स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के हाथ खुल गए। वाइड के इजाफा, और इस वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ रही है 28 पर, यानी कि 28 पर जाकर रुके। फिर एक बार मशहूद टू अभी ओवर द विकेट। इस ओवर के दूसरी वाइड फेंकने के बाद ओवर द विकेट। अच्छी गेंद उठा करके ला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है। इन्होंने गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, उठाए, थ्रो किए, तब तक 1 ही रन, दूसरी के लिए कोई मौका नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, और इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन। अगले मैच की हस्ताक्षर की पुस्तक यहां पर खुले रखी है 200। बिच्छू बॉयज और जान बॉयज दोनों टीम के खिलाड़ियों ने आकर अपनी हस्ताक्षर किया जाए। दोनों बॉयज के बीच में ऐसा मैच जारी है। हमजा पंजतोटी जो टीम मैनेजर हैं जान बॉयज की, यहां पर तैयारी की है जान बॉयज के लिए। हमजा पंजतोटी भी तैयार है। खिलाड़ियों जल्दी से जल्द आ जाइए। बिच्छू बॉयज और जान बॉयज के बीच में मैच है। इस मैच के विश्लेषता है कि पहली क्षेत्र रक्षक कर रही है टीम कुंबला, और 5 ओवर फेंक चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी की है नसा पचलंबारा और मंचू नाइक आप, और इसी तरह हर खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे जो गेंदबाजी की। 5 ओवर में 29, यानी कि 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर के रूप में। अच्छी गेंद उठा करके ला, बल्ले की अंतरुणी किनारा लगकर 3rd मैन पर गेंद गई, 1 रन। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ते हुए 30 रन पर पहुंच चुके हैं। ऑन द बोर्ड 7 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, अब चमके बिल्कुल बाहर थे, खेलने की प्रयास में पूरी तरफ डॉट हुए। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 4 गेंदे बचे हैं। अगर इस 4 गेंद के अंदर एक बड़े शॉट मिल जाते तो इस मैच में बहुत बड़े संघर्ष डाल सकते हैं साई नमना कासरगोड, नुसरत कासरगोड को। ओहो बढ़िया गेंद, और इस बार विकेट कीपर ने गेंद को उठाते और थ्रो किए, तब तक आउट हुए हैं बल्लेबाज धर्मा आउट हुए। डॉट बोलते जो दौड़ना चाहते थे, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, तब तक धर्मा आउट होकर पॉलिन को पास लौटना पड़ा।
अभी स्ट्राइक पर मौजूद हैं। कुछ समयों से इन्होंने जो अपनी योगदान बहुत अच्छी तरह निभाते हुए बिल्कुल टॉप ऑर्डर पूरी तरह पराजित हुए, मिडिल ऑर्डर पराजित हुए। उस समय आखिरी ओवर के जो 3 गेंदे बचे हैं, छिजू है नए बल्लेबाज, गेंदबाज हैं शिवा कुंबले गेंदबाज के रूप में अभी के लिए अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। अभी भी तैयार, बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, यहां पर खतरा को सामना किए लेकिन बाल बच गए। छिजू बाल बचते हुए 1 रन खाते पर जोड़ा जाएंगे और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन, 31 रन। 2 गेंदे बचे हैं, अभी भी मौका है बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि बड़े शॉट एक लगाए, छक्के चौके लगाए तो इस मैच में कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, संघर्ष डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाजों से भरी हुई टीम है साई नमना नुसरत कासरगोड। साई नमना नुसरत कासरगोड बहुत गेंदबाजों से भरी हुई टीम है। अब शिवा कुंबले गेंद लेकर तैयार है अराउंड द विकेट और इस गेंद को सिर्फ किया गया है। गेंद को बहुत खूबसूरत फील्डिंग सतीश मुजिगांव ने फील्ड किए, तब तक अंपायर ने कह रही कि बाई विकेट कीपर ने छोड़ते हुए इसे रन आए हैं और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 32 रन। आखिरी गेंद बचे अभी स्ट्राइक पर मौजूद है। अब तक बड़े शॉट यहां पर नमना को नहीं मिले हैं, फिर एक बार कोशिश करते हुए, ओ बहुत अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाते हुए तेज रफ्तार से रहीम कुंबला वहां पर थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, थ्रो के तब तक 2 रन और 2 रन के मदद से इनिंग समाप्त हो चुके हैं। 35 इज द विक्ट्री टारगेट। ന്യൂ ബോയ്സ് മഞ്ചേശ്വരം ടീമിന്റെ ജാബി മഞ്ചേശ്വരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബിച്ചു ബോയ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ജാബി മഞ്ചേശ്വരം ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ജാബി മഞ്ചേശ്വരം. മത്സരാർത്ഥികളോട് ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടുക. ഇനി ഈ മത്സരം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം 2 മത്സരങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി. और इस प्रतियोगिता देखने के लिए कहीं लोग यहां पर आकर बैठे हुए हैं। सुबह से हम देख रही है बहुत बड़े दर्शक यहां पर भरे हुए हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए, बहुत बड़े बड़े दर्शक यहां पर भरे हुए हैं। सभी दर्शकों को ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए स्वागत करना चाहता हूं। लंबे लंबे से बहुत कुछ लोग आए हैं। अंडरआर्म दुनिया के कोने कोने से कहीं लोग आए हैं, दक्षिण कर्नाटक से और केरला से बहुत कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं। सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहता हूं। 35 इज द विक्ट्री टारगेट, यानी कि 35 रन के लक्ष्य को यहां पर खड़े किए। बहुत बड़े प्रतियोगिता ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 मनगु जी इस मैदान पर इस बार दूसरी सीजन यहां पर शुरुआत हुए हैं और तीसरी सीजन की तैयारी भी की है। जो कुंबला जो पुलिस स्टेशन के बगल में जो रहते हुए मैदान स्कूल ग्राउंड पर जो तीसरी सीजन ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 3 डे नाइट के रूप में यहां पर खेला जाएंगे। और इस टूर्नामेंट के जब पहली बार इस टूर्नामेंट के बारे में जो बातचीत हुए थे हारिस वाईएफसी कन्नूर, और इस आखिरी दिन के लिए इन्होंने हारिस वाईएफसी आने वाले हैं इस मैदान पर, जो दुबई में बैठकर जो लाइव बेद्रा मीडिया में जो इस टूर्नामेंट की आंखों की हाल हर मैच को देख रही है, उनको भी इस प्रतियोगिता के लिए आज के दिन के लिए स्वागत करना चाहता हूं। और पहली बार जो इस टूर्नामेंट के बारे में जो ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए योजना किए थे फिरोज मंजेश्वर और वाईएफसी कन्नूर के हारिस, 2 महत्व व्यक्ति क्रिकेट के लेजेंड फिरोज मंजेश्वर मेरे बगल में बैठे हैं,
जो सभी को स्वागत करना चाहता हूं। और इस गेंद बहुत खूबसूरत है, जब विकेट कीपर छोड़ते हुए अंपायर ने वाइड के इजाफा दिया। वाइड के साथ शुरुआत की यहां पर 35 रन। और इस मैच में अंतिम क्षण तक जो संघर्ष पर रखने के लिए जो गेंदबाजों ने जो अच्छी गेंदबाजी करना होगा, वाइड को छोड़ना होगा, जो एक्स्ट्रा को छोड़ना होगा, शुरुआत में वाइड। और इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट पर, गेंद जारी है पावर प्ले में खेलते हुए, दूसरे रन के लिए दौड़ा गई है, 2 रन भी पूरा किए। बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत दिया गया यहां पर। और इस गेंद बहुत अच्छे थे, यहां पर खतरा, लेकिन बाल बच गई, बाल बच गई बल्लेबाज। डायरेक्ट हिट होते तो यहां पर गिरी को वापस लौटना पड़ती थी मैदान से बाहर, ऐसे नहीं हुए। 1 रन भी ज्यादा मिले यहां पर। 2 गेंदें फेंक चुके हैं, सिर्फ 2 गेंद में 6 रन। यहां पर 35 रन को लक्ष्य को पीछा कर रही है, तब आसानी से रन भी जो सामने वाले टीम से मिल रही है। फिर एक बार अराउंड द विकेट, ओहो हो अच्छी गेंद। अब चमके बिल्कुल बाहर थे, खेलना चाहते थे, जो पराजित हुए यहां पर गिरी। 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 रन। बहुत अच्छे वापसी करते हुए गेंदबाज ने अराउंड द विकेट धर्मा। और इस गेंद को खेला गया है, फील्डर तैनात और इसी के साथ आउट। गिरी कुंबला डिपार्ट्स। दो गेंद में यहां पर 5 रन यहां पर बटोर लिया गए थे, 6 रन बटोर लिया गया था। और उसके बाद डॉट बॉल और विकेट यहां पर तो बहुत अच्छी बात है, जो नमना कासरगोड के लिए बहुत अच्छी विकेट यहां पर प्राप्त की है गिरी कुंबला के रूप में। गिरी कुंबला आउट होने की जगह पर नए बल्लेबाज आए। पांच रन, क्षमा कीजिए, पांच रन यहां पर खाते पर दिख रही है। फिर एक बार धर्मा प्रदीप कुंबला के लिए गेंद लेकर राउंड द विकेट। और इस गेंद को हल्के से पुश किए हैं, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे, अच्छी गेंद थी। प्रदीप कुंबला ने सोचा है कि जो इस गेंद को सही संभाल कर खेलूं, रन भी बनाऊं। यहां पर तो बना लिया गया है 1 रन। रन संख्या बढ़ते हुए 6 रन, 6 ऑन द बोर्ड। धर्मा अपनी ओवर के 5वें गेंद लेकर अराउंड द विकेट। और इस गेंद को स्वीप किया गया है, फील्डर काफी सामने खड़े हुए थे। यहां पर तो 2 रन के लिए दौड़ रही है, 2 रन भी पूरा किए, तीसरी रन के लिए दौड़ा जा रही है, 3 रन भी पूरा किए। बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। रन मशीन और रनिंग मशीन दोनों मौजूद है मैदान पर। प्रदीप कुंबला और शिवा कुंबले दोनों मौजूद है मैदान पर। ओवर संपन्न हो चुके हैं, पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन। अब चाहिए 26 रन और भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 30 गेंद में। बहुत अच्छे अच्छे मैच आज के दिन में देखने को मिले हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 में। केरला पुल की 10 टीम यहां पर खेला जा रही है। अब तो इस मैच जीतने वाले को सेमीफाइनल पर टिकट मिल जाएंगे, सेमीफाइनल खेलने के लिए टिकट मिल जाएंगे। आने वाली मैच है क्वार्टर फाइनल मैच जान बॉयज और बिच्छू बॉयज के बीच में। यहां पर हस्ताक्षर जारी है। अब तो धर्मा की पहली ओवर महंगी साबित हुए, लेकिन एक विकेट, बेहतरीन विकेट यहां पर प्राप्त की है गिरी कुंबला की विकेट। अब नए गेंदबाज के रूप में उन्नी कृष्णन कुंबला की आगमन दिख रही है। उन्नी कृष्णन लाजवाब ऑलराउंडर, अंडरआर्म क्रिकेट में बहुत सालों से खेलने वाले खिलाड़ी है। बिच्छू बॉयज के अगर हस्ताक्षर करने के लिए कोई बाकी है तो जल्दी हस्ताक्षर किया जाए। यहां पर अपील और इसी के साथ ओहो उन्नी कृष्णन कुंबला ने आकर विकेट छटका लिया। यहां पर बढ़िया ब्रेक थ्रो दिया गया है, विकेट नंबर 2। यहां पर अंपायर का इशारा जो भी हो मानना चाहिए और बच जाना चाहिए। बहुत बढ़िया डिसीजन जो
यहाँ पर लिए अंपायर ने। बहुत अच्छे अंपायरिंग पैनल बनाए गए हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए। हरीश पड़ील और मोहन अय्याडी और उसी तरह शेख मलाली, 2-3 अनुभवी अंपायरों को यहां पर खड़े किए। बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता कहीं भी हो, इन 3-4 अंपायरों को जो कुछ देखने को मिल रही है। नियाज बीरी कहीं भी हो, हस्ताक्षर के लिए आना चाहिए। इस ओवर के अंत तक मौका है हस्ताक्षर के लिए। सिर्फ 5 गेंदे बचे हैं इस ओवर में, हस्ताक्षर के लिए सिर्फ 5 गेंदे बचे हैं। नियाज बीरी जल्दी आ जाइए। अब उन्नीकृष्ण कुंबला गेंद लेकर तैयार है। नए बल्लेबाज है मंजू नायक उन्नीकृष्णन के सामने। ओ बहुत अच्छी गेंद थी, कट कर दिया गया है। जो हल्के से जो कट कर दिए गए और मंजू ने अपनी खाता खोलते हुए स्कोर खाते पर 10 रन, 10 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर की शुरुआत हुई। उन्नीकृष्णन और इस गेंद को खेला है मिड विकेट पर। फिर तैनात इन्होंने तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, उठाए, थ्रो किए। तब तक 1 रन पर संतुष्ट हुए बल्लेबाज प्रदीप कुंबला ने। फिर एक बार उन्नीकृष्णन मंचू के लिए। बहुत बड़े सीनियर खिलाड़ी के सामने सबसे जूनियर खिलाड़ी यानी कि नौजवान खिलाड़ी मंचू नायक आप खेलते हुए। अब तो सीनियर टू सीनियर यानी कि प्रदीप कुंबला, उन्नीकृष्णन कुंबला दोनों सालों से अंडरआर्म क्रिकेट में मौजूद है। बहुत बड़े खिलाड़ी है दोनों, बहुत बड़े मजा आती है ऐसे खिलाड़ियों के बीच में जो टक्कर होती है, तब अच्छे लगते हैं। ओहो बढ़िया गेंद, अपील हुए लेकिन अंपायर ने इंकार किए। क्योंकि जो पहले इन्होंने स्टंप को गिराए थे, बेल्स को गिराए थे, तब सुरक्षित थे और उसके बाद बाहर गए ये प्रदीप कुंबला ने। बहुत अच्छी गेंद। स्कोर खाते पर अभी भी 12 ऑन द बोर्ड यानी कि 12 रन। ध्यान दीजिए जो अपनी जो शेड्यूल का टाइम अब तो 20 मिनट शॉर्ट है अभी ऑलरेडी। जो ध्यान दीजिए जल्द से जल्द मैच को खत्म करना चाहिए, साथ देना चाहिए सारे खिलाड़ियों और बारी बारी। आखिरी ओवर उन्नीकृष्णन के गेंदबाजी, बहुत अच्छे गेंदबाजी किए थे इन्होंने। अभी भी स्कोर खाते पर 12 रन यानी कि 3 रन कर चुकी है उन्नीकृष्णन ने। बहुत खूबसूरत विकेट भी चटका ले आ गए थे। अब प्रीतम कासरगोड को योगदान मिले हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छे गेंदबाज है, ऑलराउंडर है नमना नुसरत चौकी कासरगोड के। स्ट्राइक पर नौजवान खिलाड़ी
अपनी नौजवानी की जवानी की रोशनी कैसे दिखाएंगे ये वक्त ही बताएंगे। फिर एक बार बहुत खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंद थी। इस गेंद को तालमेल के साथ बिल्कुल क्षमता के साथ इन्होंने खेला है। गली पर दखल कर एक रन हासिल किए। उससे बढ़िया यह है कि जो सीनियर खिलाड़ी को स्ट्राइक रोटेट किए इस समय पर बेहतरीन है ऐसे जो योगदान देना। फिर एक बार प्रीतम प्रदीप के लिए हो, बहुत अच्छी गेंद थी। कुछ क्षण तक हवा पर थे लेकिन स्लिप मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। उस वजह से एक रन आसानी के साथ अपने खाते पर लिखवा दिया गया। स्कोर खाते पर 14 रन। प्रीतम का असर गोल ओवर द विकेट बाहर के कंबर रोड से। ओ इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ स्वीप किए। तेज रफ्तार से गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के करीब इन गेंद को रोका गया। तब तक 2 रन। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस गेंद के सामने इन्होंने बिल्कुल अपनी दिमाग की बत्ती को चालू की। इन्होंने सोचा है कि बढ़िया शॉट के लिए कोशिश ना करूं, जो हल्के बल्ले से मोड़ा है इन्होंने फाइन लेग पर। फिर एक बार प्रीतम ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। अच्छी गेंद यहां पर मंजू ने हल्के बल्ले से मुंह खोला है, जो मिड ऑफ में खेलकर अपने खाते पर 1 रन जोड़ा गया है और इससे बढ़िया बेहतरीन महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए जोड़ा गया है। स्कोर संख्या बढ़ते हुए 17 रन। चार गेंदें फेंकने के बाद 5वीं गेंद लेकर प्रदीप इस गेंद को खेला गया। मिड विकेट पर फील्डर तैनात है लेकिन फील्डिंग अच्छे थे, थ्रो उतनी परफेक्ट नहीं थी। उस वजह से 1 रन आसानी के साथ यहां पर अवसर मिले और इस 1 रन के मदद से स्कोर संख्या बढ़ते हुए 18 पर पहुंच चुके हैं। 18 ऑन द बोर्ड। 35 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए अब तो प्रीतम का असर गोड़ के आखिरी गेंद है इनके खोटे की पहली ओवर है। स्ट्राइक पर मंजू बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी बहुत खूबसूरत साथ दे रही है अपनी कप्तान को, यानी कि प्रदीप कुंबला को बहुत बड़े मदद देते हुए इन्होंने खेल रही है। इन्होंने जानता है कि जो 35 रन लक्ष्य कोई बढ़िया लक्ष्य नहीं, चौके छक्के की कोई जरूरत नहीं। यहां पर जो सिंगल डबल के साथ आसानी के साथ खेलूं तो मैच को आसानी के साथ जिता सकते हैं। फिर एक बार प्रीतम का असर गोल ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। इस गेंद को स्वीप किया गया है, बहुत अच्छी स्वीप। यहां पर 1 ही रन मिल पाएंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बिल्कुल 19 पर दिख रही है। पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको टाले।
Unikrishnan, but might be that ball is going to miss the off stamp while trying for the reverse paper. Again, looking for the big shot. They're going for the run. Chance of run out in a no striker's end, but the throw is not good enough in that occasion. And they taken a single here. Now 2 required from 4 balls. Hero of the previous match, birthday boy, Satish, will going to take the strike. Got opportunity to get the winning run from his bat. This time going for the stroke, chance of run out, and his given name is gone. Match is still alive. Match is still alive, match is not yet over. And bowler trying this level best chummy in that occasion. And look at the Satish going for the big drive, mistimed it, and good piece of fielding there by the short extra cover fielder, short cover point fielder. Returns the ball quickly to the hands of the bowler, and he completes the job. Now 2 to get from 3 balls. Great fight back. That was a kind of energy is required when you are defending a small total, but you are not given up. It's a good comeback by SNNC against Team Kumla. They're defending that small total very well. Now they have to bowl another 3 good deliveries if they wanted to win the match. And 2 little runs required here for Team Kumla to win the match. Pradeep has got a strike here. The news came from there for the next match. Captain of John Boys won the toss. The decision is pending. One more dotted delivery. Can you believe this? What an outstanding last over. 2 balls and 2 runs required now. Now a little bit under pressure situation. Pradeep being there in the middle for a long time, but he's just feeling a little bit pressure. This is the beauty of cricket. That's why the underarm cricket has got a lot of fans. Why not? The kind of match we are watching here. Definitely some more interesting. This time reverse sweep comes into play. Chance of run out in the no strikers and throw good, not good enough in that occasion there from the fielder. And scores are level. Now 1 required from 1 ball. Will it going to be a second super over? Everyone on their feet. Yes, and NC desperately they wanted to make this match a tie. Team Kumla desperately they wanted to get a single run. They doesn't want to go for the super over. Even organizer doesn't want to go for the super over. Here is the next one. Stop that one. Set his hands of fielder. Chance of run on no striker. And my goodness, can you believe this? Oh my goodness. One more tie here. What a fantastic start for the day number 1 of this Gladiator Trophy. Second tie and run out taken place and super over is comes into play. Looks like yes, NNC has got a habit of playing a super over. The previous match also against New Star Kunjaturu, they tied the match and they won the match in the super over. Now also they tie the match and they're going for the super over. What a fantastic game of cricket we are having here. One more example of a thrilling finish. One more example of the battle and battle for the place in the next round. Now it's going to be very interesting to see who will going to win this match in the super over, because the batting team will going to continue they're going to bat first. What a game of cricket we are having. What a great day for cricket here. Gladiators Trophy 2022.
Unbelievable bounce back there by the bowlers of Yes NNC. Nowhere, from the nowhere they bounce back. Everybody thought that when they're chasing a small total, it looks like Team Kumla will going to win the match quite easily. But afterwards, SNNC, the bowler, really doing a fantastic job and takes the match till the tie and takes the match in. They makes the match tie and takes the match into super over. Outstanding performance, unbelievable performance by the bowlers of Yes NNC. Now all after the super over, and wait and see who will go into bat here. No change in opening pair. Pradeep walking towards the middle along with the Manju and Pradeep are the two batters are in the middle, walking towards the middle. So here comes all details of the batters. Manju, Pradeep and Satish are the two batters for Team Kumla, and for SNNC, Unnikrishnan, Pritu and Jojo are the three batters. The bowlers, Unnikrishnan will go into ball super over, and on behalf of Team Kumla, Nasaf will go into be the bowler. That was the real details of the super over. Everything set now for the first over. And Unnikrishnan will go into ball the first delivery of the super over. Right arm over the wicket, went for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket, plumb in front of wicket. That was a Yorker length delivery. Look at the celebration here, Unnikrishnan. He knows that, he realized that picking up a 1 wicket means they are at almost winning the half of the stage, because only 2 wickets in super over. If they are able to pick 1 wicket here onwards, the opposition team will going to become an all-out Team Kumla. They lost their first wicket in the first delivery. Now little bit under pressure situation for incoming batsmen, because if they're going to lose their wicket quickly, then I think it's all we can say that the fielding team little bit upper hand. Satish coming to the middle here. 5 balls remaining in the super over. 1 wicket remaining. That's very important in super over. And once you lose the wicket, first wicket, it's always going to be under pressure situation for incoming batsman. Satish, the birthday boy, is walking towards the middle. Unnikrishnan, what a start from his bowling. First delivery itself, he picked a wicket off Pradeep. Satish will go into face. Unnikrishnan, right arm over the wicket, beautifully bowled. Bowler's back drive, misfielded by Unnikrishnan, but no need to worry about, because batters are not really interested for the run. 2 dotted deliveries, 1 dotted, 1 wicket taking. That means 2 quiet deliveries. 0 for 1. Third time in this over. Unnikrishnan bows. This time Satish went for the reverse sweep, but got that one right from the middle of the bat. 1 bounce over the row for 4 runs. The birthday boy once again is celebrating his birthday in his own way, throwing his bat. Look at the pick from Satish, picking up the line and length very quickly, changing his position, played that reverse stroke quite brilliantly, and he got a very important boundary for his team. 4 for the loss of 1 wicket. Unnikrishnan again, right arm over the wicket. This time everyone is going up, celebrating. They're appealing for caught behind. Umpire is unmoved, and now is raising his finger. Yes, he's gone. Satish is caught behind. Satish is caught behind. I think it's the right decision, because just looking at the body language, you can see that the wicketkeeper behind the stump, immediately after he picking up that catch behind the wicket, he is very confident. Yes, it is. That was a really outside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump. Unnikrishnan knows that he got the wicket here, and even wicketkeeper knows that, and umpire have to clarify, and they clarify and gave the decision, even though a little bit late, but all out. 5 runs and 6 is going to be a target. Five target, 4 runs, only boundary scored in that over.
5 runs going to be a target for yes NNC. The umpire decision going to be a final. Please cooperate with the umpires. So the 5 will going to be a target. Once again, thank you very much, Team Kumla. The Pradeep really showing their true spirit of cricket, because we have to respect the decision of umpires. There's a part of cricket. And 5 is a target now for yes NNC. It's going to be a more interesting game of cricket. Wait and see how well yes NNC will going to get 5 runs in 6 balls to win the match. Now, very interesting to see, because if the match is tied here, the number of boundaries will go into comes into play. And just looking at the number of boundaries, only 1 boundary scored. That is that was scored in the super over in the previous innings, which is scored by Satish. That only 1 boundary. That means, if in this match, it's very difficult to say, because in this particular innings, if the chasing team is going to hit the 1 boundary, the boundary will becomes the level. Then will going to be very interesting to see what kind of decision to be taken. So I think it's a fight to get from 6 balls. Unni Krishnan just came into middle along with his partner Preetu, and Nasaf is a magical bowler, the man with the golden hand. And wait and see how Nasak will going to survive. How well he managed to restrict the batsman not to get the 5 runs in 6 balls. For Unni Krishnan, one at deep cover point, one at deep extra cover, long off inside the ring, mid off, mid wicket, going back to deep mid wicket. Wideish long on is that, deep backward square leg is that. That means 5 fielders outside the circle. For Unni Krishnan, he is a very strong player, the powerful striker of the ball in front of the wicket. Now deep mid wicket coming inside, mid off going back to deep long off. And the Pradeep doesn't want to take any risk to keeping a fielder inside the ring in the long off region. Now Nasaf have to bowl economical over, have to restrict 5 runs in this over. Unni Krishnan straight away off the mark with a single down to deep long off region. Manju the fieldsman there in the deep running across fields the ball. And 4 required now, 5 balls remaining. Preetu back on strike. Nasaf. Right above the wicket, set lands the field, a chance of run out and direct it. And he is short of his crease. I think the bowler might be a little bit lazy. He can make the run out very quickly, but he's just, I don't know for what he's waiting for. Look at that, collect the ball. The batter is not in the picture. Once he thought that he will run and remove the bails, but last moment is just really underarm throw comes into play. And fortunately, batter is just short of his crease. Otherwise it's going to be a disaster. Now, interesting. 4 balls remaining, 4 runs required for the victory. 4 balls remaining, 4 runs required for the victory. If the match is tied here, the number of boundaries will be counted. And both the innings, only 1 boundary is scored, which is boundary scored by Satish of Team Kumla. 4 required. 4 balls remaining. Unni Krishnan back on strike. New batter comes into middle. Jojo. He's in non-strike. Oh, this is not a good thinking. This is not good bowling, I must say. 3 required now. 4 balls. The pressure is immediately coming down now for Unni Krishnan because of that wide delivery. Flicks that one, he got a bat onto that, luckily down to final leg region, he picked up a single, now 2 to get from 3 balls. The new batter came in to strike Jojo, and now Nafaz, I think Nasaf is the kind of bowler who can bowl some fantastic deliveries. Jojo is an experienced batter for the side of yes NNC.
Both the teams has got opportunity to win and qualify for the next round of this prestigious Gladiator trophy. Now we can see that the fielders are coming very close here to the batsman to prevent the single. Deep cover point coming inside the ring. Mid-off coming very close to the batter. Short mid-wicket very close to the batter as well. They wanted to restrict to 2 runs from 3 balls. Reverse sweeps comes into play. One more dotted delivery. 2 required from 2 balls. Oh, what a fantastic game of cricket. They doesn't want to lose the wicket here because if 1 wicket fell, it's all over. And that's why they doesn't want to take any risk to take the single, risky single. 2 to get from 2 balls. What a fantastic game of cricket we are having here. The match is inching towards a nail batting finish. Nasa balls. Reverse sweep. Dotted delivery. Appeal for stump. Umpire unmoved. One ball remaining. 2 runs required. Just like I mentioned, Nasaf is the kind of bowler who can test the temperament of the batter. If the match will go into tie, Team Kumla will go into be the winner because they got 1 boundary. This has been a really a fantastic game of cricket. They desperately required 2 runs. 1 run will not going to help NNC to win the match. This is the speciality of Gladiators trophy. This is the level of competition from each and every team. They desperately wanted to become the champion. That's why we're watching that kind of competition, that kind of close finish for this Gladiators trophy. 2 badly required. 1 tie the match will not going to help SNNC win the match, but Team Kumla will going to win the match if the batter will going to get a single. That means Georgia have to hit 2 runs. 2 badly required. Nasaf, job is not yet over. 1 ball, 2 runs required for the victory. Field placement, backup point, short cover point, short extra cover, deep long off, deep mid wicket, short mid wicket, square leg. So now the captain of Team Kumla just looking at the field set where he doesn't want to concede a couple of runs. That means they doesn't want to keep the batsmen fielders in the deep. Once the ball is running towards outside the circle, opportunity for the batter to come back for the second. 2 required from 1 ball. Nasaf, final time in this over. Everybody on their feet. Reverse sweep comes into play. Placement is fantastic. Good piece of fielding by the fielder. They're looking for the second. In comes the throw. NNC won the match. What a thrilling finish for this match. Jojo played a magnificent reverse sweep. What a good piece of fielding there by the fielder. But still, they are ending in a losing side. Team Kumla have lost the match. NNC, the winning the thriller. Absolutely very disappointment end here for Team Kumla. NNC, what a day they're having. The luck is a fundamental ingredient in a success. This is a great saying in English. You should have a little bit luck, and NNC, they got already, they're playing their second super over, and both super over they won the match, and they're really dealing with some fantastic luck in this particular tournament, defeating Team Kumla in a thrilling finish. And now time to announce a man of the match. The man of the match, which is sponsored by Hayan Furniture Kunjaturu. So thank you very much Hayan Furniture for your cooperation and your sponsorship for the man of the match. The man of the match which goes to Chammi of SNNC for his outstanding bowling performance. Man who responsible for the tie, and he is deserved this man of the match award. And proprietor of Iron Furniture, Irshad, will going to present this man of the match for Chammi for his wonderful performance from the bowling. Man who responsible for the tie
and takes the match into super over, and they won the match in a thrilling finish for this excellent match. So before the next over will going to commence, it's time to change in commentary box as well. It's over to star Abdul Rahman Bekur sir for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. थैंक यू सतीश मैंगलोर। आज के दिन के शायद आखिरी मैच होगा मेरे ख्याल में। जी हाँ, जो सेमीफाइनल मैच पर पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल खेलने के लिए योगदान मिले हैं जो नमना कासरगोड को, साई नमना नुसरत कासरगोड को जो सेमीफाइनल के लिए मौका मिले। ध्यान दीजिए, नमना कासरगोड खेलने के लिए जो परसों के दिन सुबह 7:15 बजे यहां पर रिपोर्ट करना होगा। 7:15 साइन अप, 7:30 मैच स्टार्ट। कैप्टन आ जाइए नमना कासरगोड की। परसों के दिन आफ्टर टुमारो पहली मैच होगा, यानी कि 7:15 को साइन अप, 7:30 को मैच शार्प, 7:30 को मैच स्टार्ट होगा यहां पर। वो भी एक इतिहास है जो मनगुजी मैदान की, जो 7:15 बजे मैच शुरू होना। यहां पर तो बिच्छू बॉयज और जान बॉयज के बीच में जो दो टीम खेल रही है आज के दिन के आखिरी मैच, यानी कि क्वार्टर फाइनल नंबर 2 क्षमा कीजिए, जो ग्लैडिएटर ट्रॉफी। यहां पर तो 7:15 बजे मैच शुरुआत हो गए यहां पर। तो याद दिलाना चाहिए कि जो पुत्तूर मैदान पर जो 22 साल पहले एक मैच खेले थे, जो 7:15 बजे ठीक समय पर पहुंच चुके थे, एमसीसी उपला और बीएससी बेकूर दोनों टीम वहां पर पहुंच चुके थे 7:15 बजे पुत्तूर मैदान पर। अब परसों के दिन पहली मैच होगा 7:15 बजे, साइन अप 7:30 बजे मैच शुरुआत होंगे। पहली ओवर के पहली गेंद लेकर तैयार है जान बॉयज। टॉस जीते पश्चात पहली क्षेत्र रक्षक करना चाहते हैं। पहली ओवर के रूप में सिद्दीक खिलापू पहली ओवर की पहली गेंद पर चेम्मू वारीमल आते हैं। इन्होंने जो उनके शैली पर जो उठाकर खेला है, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं लगे। जो बारी हिस्सा लगकर जो मिड विकेट की तरफ गए, 1 रन अपने खाता खोल चुके हैं। बिच्छू बॉयज के लिए आरंभिक बल्लेबाज है नियाज बीरी और चेम्मू वारीमल। नियाज बीरी और चेम्मू वारीमल दो मशहूर बल्लेबाजों को भेजा गया है। पूरी तरह जो चेम्मू वारीमल अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे स्पोर्टिव खिलाड़ियों से एक है, और इसी तरह क्लासिकल बल्लेबाज नियाज बीरी एचएन फ्रेंड्स हिदायतनगर की योगदान है। सिद्दीक लापू न्यू स्टार अडका के खिलाड़ी दूसरी बार, और इस गेंद को स्वीप किया गया है। फील्डर तैनात है वहां पर, इन्होंने गेंद को रोका गया। पहली बार लत्तू कईयार थे वहां पर फील्डर के रूप में, जान बॉयज के लिए खेलने वाले खिलाड़ी। इन्होंने गेंद को रोका, थ्रो किया, तब तक 1 रन। दोनों खिलाड़ी अपने खाता खोल चुके हैं। सिद्दीक लापू अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर बायर के कंपर उड़न से गेंद लेकर तैयार है। हिंदुस्तानी स्कूलन से जो बल्लेबाजी कर रही है, स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज चेम्मू वारीमल के लिए सिद्दीक लापू अराउंड द विकेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर तैनात है, उसी फील्डर के तरफ इस शॉट को खेला गया है। 1 रन पर संतुष्ट है, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। यहां पर फील्डर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। यहां पर स्ट्राइक एंड पर देना थी, वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर देने थे, स्ट्राइक एंड पर थ्रो किए। तब तक 1 रन ज्यादा भी मिले, 2 रन की जगह पर 3 रन मिले। यहां पर 3 रन के सहारे के साथ स्कोर संख्या बढ़ते हुए 5 रन। 4 रन बनाकर चेम्मू वारीमल, 1 रन बनाकर नियाज बीरी खेलते हुए। सिद्दीक लापू फिर एक बार अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर पहली सिंगल, दूसरी सिंगल, तीसरी ट्रिपल रन यहां पर मिले हैं। यादगारी जो प्रतियोगिता है, टूर्नामेंट है। बिच्छू बॉयज के कोई भी बल्लेबाज छक्के लगाए, उनको 500 रुपये इनाम मिल जाएंगे।
हसन पेरला की तरफ से। हसन पेरला बहुत बड़े अनुभवी क्रिकेटर है अंडरआर्म क्रिकेट के, जो न्यू स्टार कुंजतूर के सदस्य है। उन्होंने कह रही कि कोई भी बिच्छू बॉयज के खिलाड़ी छक्के लगाए उनको 500 रुपए इनाम मिल जाएंगे। दोनों छक्के लगाने वाले खिलाड़ी मैदान पर मौजूद है। एक शम्मू अरिमला, दूसरी नियाज बीरी है। सिद्दीक कल्लापू अपनी ओवर के चौथी गेंद लेकर तैयार है। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए नियाज बीरी के लिए। और इस गेंद को शांत स्वभाव से इन्होंने बल्ला उल्टा घुमाए, जो जोरदार शॉट के लिए कोशिश नहीं की। इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे। इन्होंने जानता है कि शम्मू अरिमला को ज्यादा से ज्यादा जो योगदान दो स्ट्राइकर पर। 4 गेंद पर 6 रन, बहुत अच्छी शुरुआत है दोनों तरफ से, गेंदबाज की तरफ से, बल्लेबाजों की तरफ से। 5वें गेंद लेकर तैयार है सिद्दीक कल्लापू, नौजवान खिलाड़ी है, न्यू स्टार अड्डा के लिए खेलने वाले खिलाड़ी। इन्होंने फिर एक बार अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार शम्मू अरिमला के लिए। शम्मू, इस गेंद को खेला गया है स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीचों बीच में गेंद गई हवा पर। कुशन देखते 1 ही रन मिल पाएंगे दूसरे रन के लिए। यहां पर आउट, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट हुए थे लेकिन नॉट आउट। पहले ही जो स्टंप गिरे हुए थे, बेल्स नीचे गिरे थे, उस वजह से इनको योगदान मिले हैं जो सुरक्षित है मैदान पर। यह भी क्रिकेट है, यह भी ग्लैडिएटर ट्रॉफी है। देखा है दोस्तों, सुबह से 2 सुपर ओवर मैच खेलने वाली जो क्रिकेट टूर्नामेंट ग्लैडिएटर ट्रॉफी, यहां पर तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट हुए थे। दोनों खिलाड़ी एक तरफ जाकर खड़े हुए थे, लेकिन सिद्दीक कल्लापू ने जो बेल्स को नीचे भले गिराए थे, उस वजह से इनको मौका नहीं थे। अगर स्टंप को तीनों साथ में मिलाकर उठाते तो यहां पर मौका थे, ऐसे नहीं किए इन्होंने। ये गलती के परिणाम क्या होगा अंत तक देखना होगा। जो मौका मिले हैं यहां पर नियाज बीरी को, शम्मू अरिमला स्ट्राइक पर मौजूद है। स्कोर खाते पर 8 रन। फिर एक बार सिद्दीक कल्लापू 5 गेंद फेंकने के बाद शम्मू, इस गेंद को खेला गया है, फाइन लेग पर गेंद गई। तब तक 1 रन के लिए अवसर मिले हैं और इस 1 रन की मदद से स्कोर संख्या बढ़ते हुए 9 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। और इस प्रतियोगिता की बारे में कह रहे थे कि ग्लैडिएटर ट्रॉफी सीजन 2 आज सुबह शुरुआत हुए 10 टीम के बीच में मैच में दूसरी क्वार्टर फाइनल मैच जारी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बार जो एक ही टीम जो सुपर ओवर के 7 मैच जीत गई, दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सेमीफाइनल के लिए योगदान मिले हैं साई नमना नुसरत कासरगोड के लिए। നിയാസ് ബീരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഓഫർ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അസൻ പെർല 6 നേടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കളിക്കാർക്കും 500 രൂപ നൽകാമെന്നേറ്റിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു ഓഫർ കൂടി വരികയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ 1ാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത വ്യക്തിത്വം ഷമീം കൽപ്പാറ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിയാസ് ബീരി 6 നേടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് 2000 രൂപ ഇവിടെ कैश अवार्ड लभिकुम। दोस्तों दूसरी ओवर की शुरुआत यहां पर कर रही है सफवान बेकुर को योगदान मिले, नौजवान खिलाड़ी है, इनको योगदान मिले हैं दूसरी ओवर के रूप में हिंदुस्तानी स्कूल एंड से। शम्मू अरिमला स्ट्राइक पर मौजूद है। शम्मू अरिमला के लिए जो गेंदबाजी करने के लिए योगदान मिले हैं हिंदुस्तानी स्कूल एंड से। शफवान नाम के आपू इस गेंद को उठा करके ला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में गेंद को रोका गया है। तब तक गेंद गए सीमा रेखे के बाहर, बहुत खूबसूरत चौका। यह है शम्मू अरिमला, इनके बल्ले बोलने लगे हैं। बड़े शॉट खेलने में बहुत बड़ा माहिर है इस खिलाड़ी, बहुत खूबसूरत खिलाड़ी है शम्मू अरिमला। इन्होंने दूसरी ओवर के शुरुआती में बहुत बड़े शॉट लगाए। जो लॉन्ग ऑन के फील्डर 30 दायरे के अंदर आकर खड़े हुए थे, उनके सिर के ऊपर से गेंद को खेला गया है। रन संख्या बढ़ते हुए 13 रन।
फिर एक बार सफवान नाम के अप्पू, बीएससी बेकुर के योगदान है इस खिलाड़ी, बीएससी बेकुर के संभावन है। अराउंड द विकेट, ओहो ये तू ये के 47 से निकलता हुआ गोली की तरह गेंद सिमारे के को पार किए। यह है चेमू हरिमला, 2 गेंद में लगातार 2 चौका लगाए। अच्छे किए हसन पेरला ने, छक्के के लिए इनाम लगाए। चौके के लिए अगर इनाम रखते तो यहां पर 1000 रुपया नुकसान हो सकती थी। हैट्रिक लगाए तो इनाम जरूर देना चाहिए हसन पेरला। यहां पर बैठकर खेल के आनंद उठा रही है हसन पेरला। कहीं भी खेल हो वहां पर मौजूद होती है, कभी कभी आती है यूएसी जो इंडिया आती है तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अंडरआर्म क्रिकेट के मैदान पर होती है। बहुत बढ़िया क्रिकेटर है हसन पेरला। अब सफवान 2 गेंद में 8 रन खर्च किए। चमू हरिमला ने लगातार 2 चौका लगाकर फिर एक बार, और इस गेंद को खेला गया है थर्ड मैन पर। गेंद जाते हुए वहां पर फील्डर तैनात, इन्होंने गेंद को रोका है, तब तक 1 रन। अब नियाज की पारी है, नियाज को योगदान मिले हैं, स्कोर संख्या बढ़ते हुए 18 पर पहुंच चुके हैं। नियाज के लिए 2000 रुपया इनाम पुरस्कार रखे हैं शमीम कलपारा। इन्होंने बाहर गांव में बैठकर जो बेदरा मीडिया में लाइव देखता होगा उनको इस प्रतियोगिता के आज के दिन के आखिरी मैच के लिए स्वागत करना चाहता हूं। इन्होंने कह रही है कि 2000 रुपया नियाज बीरी को दिया जाएंगे। सफवान फिर एक बार, चौथी बार अच्छी गेंद उठाकर खेला है, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 बाउंस, 2 बाउंस, तीसरे बाउंस के बाहर गेंद गए सीमा रेखे के बाहर। चौका, इस ओवर के तीसरी चौका, इस ओवर के तीसरी चौका लगाए। आज के दिन में बहुत कम चौका देखने को मिले हैं, लेकिन आखिरी मैच में तो पहली जो इनिंग्स के दूसरी ओवर के अंदर 3 चौका लगा दिए गए बिच्छू बॉयज और जान बॉयज के बीच में। पूरा दिन के मिलाकर जो इस मैच में जो दिख रही है चौके के बारिश। फिर एक बार सफवान, अच्छी गेंद, हो बढ़िया गेंद। इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर थे गेंद, जो मिड ऑफ में जो जगह बनाना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुई। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। दूसरी ओवर के 5 गेंदे फेंक चुके हैं। आखिरी गेंद सफवान टू नियाज, बहुत खूबसूरत शॉट, उल्टा बल्ले में इन्होंने झाड़ू बल्ला उपयोग की है, तब तक 1 रन। और इस 1 रन के मदद से स्कोर संख्या बढ़ते हुए 23 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, यानी कि आज के दिन के ग्लैडिएटर ट्रॉफी के सबसे अच्छी स्कोर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, यानी कि 23 यहां पर बना लिया गया है। सबसे बड़े स्कोर यहां पर बना लिया गए थे न्यू स्टार कुंजतूर और साई नमना कासरगोड दोनों टीम, यानी कि पहली बल्लेबाजी की न्यू स्टार कुंजतूर ने 47 रन बनाए और दूसरी पारी के लिए साई नमना कासरगोड 47 रन बनाए। मैच टाई हो चुके थे। अभी भी उस 2 टीम के संख्या है जो अधिक संख्या यहां पर बनाने वाली टीम न्यू स्टार और साई नमना नुसरत कासरगोड। यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बनाए। तीसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी की, गेंदबाज के रूप में गेंदबाज आए हैं सिद्दीक कल्लापू को वापस बुलाया गया है। एकमात्र खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलती है, इस मौका सिद्दीक कल्लापू को दिया गया है। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है, तब तक नियाज बीरी भी तैयार है। सिद्दीक कल्लापू बायर के कमरोलक से अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर, यानी कि अपनी खोटे की दूसरी ओवर की पहली गेंद। नियाज बीरी मौजूद है मैदान पर बिना किसी नुकसान के साथ 23 रन। सबसे अच्छे जो आरंभिक बल्लेबाजों के बीच में जो पार्टनरशिप दिख रही है, साझेदारी दिख रही है 3 चौका लगाने के बाद। अराउंड द विकेट, और इस गेंद को हल्के से स्वीप करना चाहते थे, यहां पर पार्टनरशिप को तोड़ने की एक मौका मिले थे विकेट कीपर को, इन्होंने गवा दिया गया। दूसरी बार, एक बार तो बाल बच गई थी जो नियाज बीरी रनआउट से, इस बार तो स्टंप आउट से बच गई। विकेट कीपर रजाक मुट्टम, इनके हाथ से बचना अफसोस की बात है। बहुत अच्छे विकेट कीपर माना जाती है इनको। फिर एक बार अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए सिद्दीक कल्लापू टू नियाज बीरी। अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को रोका गया है, डाइव लगाकर
अच्छू अटकाते वहां पर फील्डर के रूप में। एक रन के लिए अवसर मिले हैं नियाज बेरी को। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक रन के सहारे के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 24 रन, 24 ऑन द बोर्ड। अब सिद्दीक लापू अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है बायर के कंबर रोडन से। लंबे रनअप के सहारे लेते हैं इन्होंने गेंद फेंकने के लिए। अब तो खतरनाक बल्लेबाज चम्मू अरिमला के सामने 2 चौका लगाकर खेल रही है चम्मू अरिमला। दूसरी ओवर में सफवान के गेंद में 2 लगातार चौका लगा दिया गए थे और इस गेंद को भी खेला है वाइड मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, उनके पास खेले हैं। तब तक एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। ये तो तीसरी बार यहां पर मौका दिया जा रही है बल्लेबाजों के लिए। इस बार चम्मू अरिमला को मौका मिले हैं, जीवन दान मिले हैं। बाल बाल बच गए, यानी कि विकेट कीपर के हाथ से बच गई है, फील्डर के हाथ से बच गई यहां पर। 26 ऑन द बोर्ड। 3 गेंदे फेंक चुके हैं सिद्दीक लापू। सामने खड़े हैं चम्मू अरिमला। अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है सिद्दीक लापू टू चम्मू अरिमला। लाजवाब बल्लेबाज है चम्मू अरिमला। अराउंड द विकेट सिद्दीक लापू। अच्छी गेंद उठाकर खेला है, इस बार स्क्वायर लगा अंपायर के सर के ऊपर से। एक रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन भी पूरा किए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चम्मू अरिमला और नियाज बीरी के बीच में पार्टनरशिप देखिए दोस्तों, 28 रन की। खरीबी मामला थी यहां पर, खरीबी मामला थी, बाल बाल बच गई। 2 जीवन दान तो चम्मू को मिला है, 2 जीवन दान तो नियाज बीरी को मिला है। 3 रन आउट, 1 स्टंप आउट के बीच में रूप में 28 ऑन द बोर्ड, यानी कि 28 रन। 2 गेंदे बचे हैं तीसरी ओवर की 5वें गेंद लेकर सिद्दीक लापू टू चम्मू अरिमला। अगर चम्मू अरिमला इनिंग्स के अंतिम तक रहते हैं तो बहुत बड़े स्कोर बना सकते हैं ऐसे बल्लेबाज है चम्मू अरिमला। अराउंड द विकेट सिद्दीक के सामने। अच्छी गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट पर, इस बार फील्डर तैनात हैं और चम्मू को वापस लौटने की जो टिकट दिया गया है यहां पर। बहुत बड़े विकेट, 28 for 1। चम्मू अरिमला आउट हुए हैं। इस मैच के विनर्स जो साई नमना नुसरत कासरगोड के साथ में जो सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए तैयारी होना होगा। परसों के दिन, यानी कि शनिवार के दिन 7:15 बजे साइन अप हो जाएंगे, हस्ताक्षर किया जाएंगे। 7:30 बजे मैच शुरुआत होंगी। यह तो पक्का बात है। जो ग्लैडिएटर ट्रॉफी की, ग्लैडिएटर ट्रॉफी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो नियम है कि जो आज के जो बचे हुए मैच जो शनिवार के दिन पहले मैच के रूप में, यानी कि 7:15 बजे शुरुआत होना होगा। उस दिन कर्नाटक के पूल के मैच शुरुआत होंगे 8:45 को, यानी कि 8:45 बजे शुरुआत होंगी। उस दिन जो मनगुजी इस मैदान पूरी तरह जलजला होंगे मेरे ख्याल में। जी हाँ, 8 मैच, 8 टीम, एक से बढ़कर एक टीम है। बड़े बड़े रेस के घोड़े लोग आ रही है यहां पर। बहुत खूबसूरत दिन होगा जो आखिरी दिन ग्लैडिएटर ट्रॉफी की। इसलिए कहते हैं कि बारी बारी में जो यादगारी टूर्नामेंट, हिस्टोरिकल टूर्नामेंट। सिद्दीक लापू अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर नियाज बीरी जा भी रहे हैं, कप्तान 9 सेकंड पर खड़े हुए हैं। अराउंड द विकेट आखिरी गेंद, और इस गेंद को खेला गया है हल्के बल्ले से। 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए, तब तक ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्त हो चुके हैं। स्कोर खाते पर सबसे अच्छे स्कोर बना लिया गया यहां पर 29 9.33 के हिसाब में यहां पर रन बना लिया गया। अब 29 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र विकेट गवा दिया गया है चम्मू अरिमला के। और आंखों की हाल सुनाने के लिए स्टार नवाज, बहुत प्यारी आवाज के साथ आपके सामने स्वागत करना चाहता हूं स्टार नवाज।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान बेकूर जी, जो अपने सुमधुर आवाज के साथ इस श्रृंखला के हर एक कारनामा की जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे और अनुभवी भी है। पिछले 3 दशकों से क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए अपनी आवाज दे रहे हैं। वाकई काफी कुछ सीखे हैं अब्दुल रहमान जी आपसे, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपसे कुछ सीखने को मिले हमें। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2022 सीजन 2 के आज के ये आखिरी मैच आप देख रहे हैं। ये क्वार्टर फाइनल मैच है दोस्त, ये क्वार्टर फाइनल मैच है। इस मैच के विजेता को मिलेंगे सेमीफाइनल के टिकट। एक तरफ साई नमना और नुसरत चौकी के समागम के साथ एसएनएनसी सेमीफाइनल के टिकट पा चुके हैं। वो भी मैं कहूंगा कि एक तरफ नसीब उनके साथ थे और दूसरी तरफ वो खेलने के तरीका जो थे, जिस तरह से वो अपने आप को प्रदर्शन दिए थे मैदान में, बहुत ही खूबसूरत। अपनी काबिलियत के अनुसार सेमीफाइनल के टिकट पा चुके हैं एसएनएनसी। तो अब यहां पर देखना है कि उनको सामना करने वाले टीम कौन से होंगे इन 2 टीमों में। एक तरफ जान बॉयज, दूसरी तरफ खड़े हैं बिच्छू बॉयज। तो ये दोनों टीमों में से कोई एक टीम होगा सेमीफाइनल प्रवेश करने वाली टीम। तो शुरुआत के 3 ओवर पर 29 रन बनाने के बाद चौथे ओवर पर भी ये अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए चम्मू आरी मलाक के निर्गमन के बाद नियाज के साथ जाबिर जुड़ते हुए, जो इस श्रृंखला में तो जाबिर अपने आप को बेहतरीन दिखाए हैं और पिछले कई महीनों से, कई सालों से इन फॉर्म वाले खिलाड़ी कहलाते हैं जाबिर। और इस बार नियाज अपने ही अंदाज में विकेट कीपर गेंद उठाने से पहले ये देखिए किस तरह से दोनों खिलाड़ी अपने क्षेत्र बदले हैं। तुरंत अपने क्षेत्र बदलते हुए रनों की संख्या जो है धीरे धीरे से अच्छे रनधारण के साथ कुल मिलाकर अब तक 33 रन पर अपनी टीम की स्कोर पहुंचाए हैं, केवल मात्र 1 विकेट के नुकसान के बाद। आउट होने वाले खिलाड़ी चम्मू अरीमला, दूसरे विकेट की साझेदारी जाबिर और नियाज के बीच। तो अब स्ट्राइक लेंगे जाबिर। पिछले मैच पर जैन बॉयज की जीत पर अहम भूमिका निभाए थे, अच्छे किरदार निभाए थे और इस बार कलात्मक शैली के साथ अपने ही अंदाज में गेंद को आखिरी मौके तक इंतजार करने के बाद फील्डर काफी दूर नजर आ रहे थे, तो उनकी फील्डर और बल्लेबाज के बीचों बीच जो जगह है वहां पर गेंद को रोकते हुए, जहां पर कोई झिझक ना हो एक सिंगल रन के लिए। हर बार हर एक गेंद पर भी एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए दोनों खिलाड़ियां। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा पर गेंद को मोड़े, 1 रन तो अवश्य प्राप्त होंगे नियाज के लिए, दूसरी रन की मौका बिल्कुल नहीं। शुरुआत से ही जान बॉयज जो मौका यहां पर दिए हैं मिसफील्ड के जरिए, जीवदान जो रनआउट के रूप पर दिए थे, चम्मू अरीमला को 2 बार जीवदान प्राप्त हुए थे और उसी तरह नियाज को भी मिले हैं 2 जीवदान। तो इस जीवदान के भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी टीम की स्कोर बढ़ाए हैं बिच्छू बॉयज। तो आखिरी मौके पर अब देखना होगा कि क्या जान बॉयज वापस जान डाल पाएंगे इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी के साथ जान डालना होगा यहां पर जान बॉयज को। और इस बार ये देखिए ये वापस आती, अब तो थोड़ी सी जान डाल चुके हैं यहां पर गेंदबाजी पर। गेंदबाज बाला गेंदबाजी पर और जाबिर के विकेट यहां पर सफलता के रूप पर पाए हैं। गिल्लियां गिरा चुके हैं यहां पर बाला द्वारा। पहले मैच पर अपनी 2 ओवर के स्पेल पर इतने बेहतरीन गेंदबाजी दिखाए थे बाला ने, शुरुआत की ओवर पर भी अच्छे निभाए और जब शुरुआत की ओवर के बाद टीम के कप्तान ने जितने विश्वास के साथ दूसरी ओवर सौंपे थे बाला के हाथ पर, उस दूसरी ओवर पर भी अपने उनके कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरने पर सफल बने थे। और इस मैच पर भी देखिए शुरुआत के 3 ओवर पर 29 बने थे, चौथी ओवर पर जाबिर जैसे खिलाड़ी को टगआउट की रास्ता दिखा चुके हैं। तो ऐसे में ये दूसरी विकेट खोने के बाद 35 रन कुल मिलाकर बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। हर ओवर पर तकरीबन 9 रन के आसपास पर रन धारण प्राप्त करते हुए तो गेंदबाजी पर परिवर्तन मुश्ताक को लाए हैं 5वीं ओवर के लिए। देखना है कि मुश्ताक आखिरी मौके पर, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है, दोबारा मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर। 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ चैंपियन ट्रॉफी मिलेंगे जीतने वाले को। मुश्ताक
और इस बार पहली गेंद को सीधे खेले हवा में और गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर सुरक्षित कैद हो चुके हैं। बिल्कुल कोई गलती नहीं। शुरुआत पर जो गलतियां दर्शकों को देखने को मिले थे जान बॉयज की फील्डिंग पर, अब तो थोड़ी सी सुधार नजर आ रहे हैं पिछली ओवर के बाद। वाकई ही शुरुआत पर जो कमजोरीपन जो दिखाए थे फील्डिंग पर, वही कमजोरीपन यहां पर महंगी बने जान बॉयज के लिए। अब तो आखिरी वाली 2 ओवर संभालने होंगे, ठीक तरीके से योजना के साथ खेलने होंगे, गेंदबाजी दिवाने होंगे यहां पर जान बॉयज को, क्योंकि बिच्छू बॉयज, आप जानते हैं बिच्छू के मतलब क्या है। बिच्छू अगर प्यार से उन्हें पोला पोसा जाए तो निश्चित रूप से वो अपने जो मालिक है उनके साथ काफी प्यार से वो पेश आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो निश्चित रूप से बिच्छू अपने शरीर के अंदर छुपे हुए जहरीलेपन को बाहर निकालते हैं। विपक्षी आदमी के ऊपर या टीम के ऊपर वो जहर छोड़ते हुए उन्हें हराने पर मजबूर करते हैं बिच्छू। तो यहां पर देखना है कि जान बॉयज और बिच्छू बॉयज के बीच चल रहा है इस मैच पर आखिरकार जीत किसके पास होंगे। यहां पर रन संख्या तो रन धारण बेहतरीन इकट्ठा कर चुके हैं शुरुआत के ओवरों पर, और इस बार गेंद हाथ पर, और लेकिन काफी एक्शन पर रुक चुके हैं यहां पर, थ्रो नहीं कर पाए। तो एक सिंगल रन के लिए कोई झिझक नहीं बने दोनों खिलाड़ियों को, और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या पहुंचे हैं 36 पर। तो 36 3 विकेटों के नुकसान के बाद ये 5वीं ओवर की प्रगति। मुश्ताक लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं मुश्ताक, बाएं हाथ के अच्छी गेंदबाज, और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, लेग स्टंप से बाहर गेंद। शेख मलली अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कमेंट्री बॉक्स की तरफ अपने चेहरा दिखाकर कहा कि यह गलत गेंद है मुश्ताक के, यहां पर कोई मान्यता नहीं होंगे इस गेंद को, और सजा के रूप पर 1 रन भी मिलेंगे वाइड के रूप पर। 1+1 2 रन के जवाब, कुल मिलाकर 38 बने रनों की संख्या। ये 5वीं ओवर की प्रगति। रोकना होगा यहां पर जान बॉयज को, वापस आती लाना होगा अपनी लाइन और लेंथ पर, और इस बार अच्छी स्ट्रोक, दोनों फील्डरों के बीचों बीच जगह बनाने पर सफल बने, गैप ढूंढने पर सफल बने। यहां पर हमेशा जब कोई बल्लेबाज गैप ढूंढते हैं, दोनों फील्डरों के बीचों बीच बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके विश्वास बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं बल्लेबाजी में, खतरे से दूर रुकते हुए वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से कार्तिक ने बल्लेबाजी किए थे पिछले मैच पर। और इस बार अच्छी गेंद बल्ले के नीचे से गुजरते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों पर सुरक्षित कैद हो चुके हैं। रजाक मुट्टम विकेट कीपर के रूप पर, जो इस परिसर के कासरगोड परिसर के बेहतरीन विकेट कीपरों में माने जाते हैं। और इस बार भी अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद को खेलते हुए 1 रन तो आसानी से प्राप्त होंगे। रनों की संख्या पर कोई कमी नहीं महसूस कर रहे हैं यहां पर बिच्छू बॉयज। विकेटों की संख्या भी 7 विकेट अभी भी सुरक्षित हाथ पर खड़े हैं। 5वीं ओवर की ये आखिरी गेंद मुश्ताक, 40 रन कुल मिलाकर, अब तक तो 8 से भी बढ़कर रन धारण प्राप्त किए हैं। और इस बार अच्छी थी गेंद, कोई खराबी नहीं, बेहतरीन गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन के आधार पर कुल मिलाकर 40 रन इकट्ठा कर चुके हैं, और आखिरी वाली 6 गेंद बाकी। अगर इस आखिरी ओवर पर 3 से 4 रन के साथ अपनी गेंदबाजी अगर यहां पर दिखाते हैं, जिस तरह से नमित ने गेंदबाजी दिखाए थे, जिस तरह से नसाफ ने गेंदबाजी किए थे, तो यहां पर देखना होगा कि जान बॉयज किसके हाथ पर गेंद सौंपेंगे आखिरी ओवर की जिम्मेदारी के लिए। आखिरी ओवर के नाम सुनते ही बल्लेबाजों के ऊपर उम्मीद रखा जाते हैं, बड़े शॉट, बड़े रनों की उम्मीद किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी गेंदबाज अपनी चालाकीपन दिखाकर, अपने हुनर के साथ, अपनी काबिलियत के साथ, गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए, लाइन और लेंथ बरकरार रखते हुए विफल करते हैं विपक्षी बल्लेबाजों को। तो यहां पर देखना होगा कि आखिरी ओवर पर गुरु क्या कर पाते हैं। यहां पर गुरु प्लेयर्स टगआउट और चोट से गेंदबाजी निभाएंगे। गुरु दाहिने हाथ राउंड द विकेट से खड़े रुके गेंदबाजी करते हैं, केवल 1 कदम के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाते हैं गुरु द्वारा। रफीक और अम्मी की जोड़ी
स्ट्राइक पर खड़े हैं रफीक, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं अम्मी। 6 गेंद बाकी। गुरु तैयार, झुकते हुए बार बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर थोड़ी सी पीछे हटने के बाद गेंदबाजी करते हैं। और यहां पर देखिए कितनी खूबसूरत यहां पर विकेट कीपिंग। पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी बनाते ही विकेट कीपर रजाक मुट्टम गेंद को तुरंत उठाकर बेल्स पर लगा दिए और शेख मलली अपनी उंगली को आसमान की तरफ दिखाते हुए कहा कि ये आउट है। बेल्स को गिराते समय आपकी बल्ला क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए थे, तो इस वजह से आउट के करार देते हुए वापस जा रहे हैं रफीक चौथे विकेट के ऊपर। तो अगर बचे हुए 5 गेंद जो है यहां पर गुरु के, तो एक से बढ़कर अगर एक डॉटेड डिलीवरी यहां पर दिखाते हैं तो निश्चित रूप से इस क्वार्टर फाइनल मैच पर जीतने की उम्मीद के साथ अपनी बल्लेबाजी शुरुआत कर सकते हैं अगली इनिंग्स पर। यहां पर जान बॉयज। गुरु फिर तैयार, नए खिलाड़ी स्ट्राइक पर नासिर, और इस बार ऑप्शन से बाहर। पहली गेंद डॉटेड बनाने के बाद दूसरी गेंद वाइड बॉल के इशारा पर मोहन यानी और इस बार ऑन साइड की दिशा पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे जाकर पैरों पर टकराए बल्लेबाज के, तो ऐसे में लेग बाई के जरिए एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। तो इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 42 रन, 42। 4 विकेटों के नुकसान के बाद ये आखिरी ओवर की प्रगति। 4 गेंद बाकी, आखिरी ओवर के 4 गेंद अभी भी बाकी। गुरु फिर तैयार, अम्मी खड़े हैं स्ट्राइक पर, और इस बार सुंदर तरीके से गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा पर पुश कर दिए। 1 रन तो आसानी से दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन शुरुआत की तरह इस बार भी फील्डिंग की कमजोरी पर ना और एक बार नजर आते हुए, तो इस बात के फायदा उठाकर दुगने रन चुरा चुके हैं और रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 44 पर पहुंचे, 44। गुरु अपने ओवर की चौथी गेंद को लेकर फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और इस बार गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर हवा में खेले, लेकिन जगह नहीं बना पाए अम्मी द्वारा। पिछले मैच पर शानदार छक्का लगाए थे, लेकिन इस बार मौका नहीं बना पाए, गैप नहीं ढूंढ पाए। यहां पर सीधे फील्डर के हाथ पर सुरक्षित यहां पर खुलकर मौका देते हुए गेंद को खेले, और फील्डर बिल्कुल कोई गलती नहीं यहां पर किए, आसानी के साथ इस कैच को लपक चुके। और इसी के साथों साथ यह रहा 5वें विकेट। बिच्छू बॉयज के 5वें विकेट यहां पर गिर चुके हैं। अम्मी के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी नासिर के साथ जुड़ रहे हैं मूसा। अंडरआर्म क्रिकेट के महारथियों में माने जाते हैं केरला परिसर पर मूसा। गुरु की ये अगली गेंद, मूसा के लिए गेंद को सीधे मोड़े स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर यहां पर सुरक्षित तैनात है, यहां पर एकमात्र रन प्राप्त होंगे, और इस बार इस 1 रन के साथ 45 पर पहुंचे रनों की संख्या 45। इनिंग्स के आखिरी गेंद बाकी, लास्ट बॉल। गुरु आखिरी ओवर की जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से बेहतरीन निभाए हैं, अच्छे खासे निभाए हैं, क्योंकि पिछले ओवर की समाप्ति पर 40 रन स्कोर बोर्ड पर देखने को मिले थे, और इस ओवर के 5 गेंदों पर केवल 5 रन खर्च करते हुए गुरु अपने ऊपर रखे हुए जो विश्वास है, उस विश्वास पर जरूर खड़े उतर पाए हैं अपने गेंदबाजी में। और इस बार भी गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर खेले, फील्डर दौड़ते हुए, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन। जिस तरीके से उन्होंने गेंद उठाए, वो ये बहुत ही कठिन वाली बात बनते हैं फील्डर के लिए। जिस तरीके से वो गेंद की टिप्पा को अंदाज बनाते हैं, उस अंदाज के साथ गेंद को उठाकर वापस कर दिए। केवल 1 रन प्राप्त होंगे, दूसरी रन भागने की कोशिश पर रन आउट हो चुके हैं, तो 46 रन बनाकर 47 रन के लक्ष्य। 47 इज द टारगेट फ्रॉम 36 बॉल्स। क्वार्टर फाइनल मैच है बिच्छू बॉयज। देखना है कि बल्लेबाजी पर 46 रन बनाकर 47 रन के लक्ष्य यहां पर पेश किए हैं जान बॉयज के लिए। तो क्या जान बॉयज 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल पर प्रवेश कर पाएंगे यहां पर? क्योंकि ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है दोस्त,
ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी है, कर्नाटक और केरला परिसर के सभी दर्शकों के इंतजार वाले मैच है ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी। पिछली बार कामयाब होने के बाद, ग्रैंड सक्सेस मिलने के बाद ग्लैडिएटर ट्रॉफी को ये दूसरी सीजन पर केरला परिसर के 10 टीम आज मुकाबला लड़े हैं। तो यहां पर इस 10 टीमों में एक टीम सेमीफाइनल के टिकट अभी पा चुके हैं। एसएनएनसी नुसरत चौकी और साई नमना के समागम के साथ एसएनएनसी सेमीफाइनल पर प्रवेश किए हैं। और खास बात यह है कि एसएनएनसी लगातार दोनों मैचों पर सुपर ओवर पर जीत हासिल की है एसएनएनसी ने। और दूसरी सेमीफाइनलिस्ट तय हो जाएंगे इस मैच के बाद, जान बॉयज या बिच्चू बॉयज, ये तो इस मैच के बाद पता चलेंगे। और इस श्रृंखला के पीछे, इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए जो शक्तियां खड़े हैं, निश्चित रूप से हम नाम लेना चाहेंगे। हारिस वाईएफसी कन्नूर पिछली बार सीजन 1 पर भी ग्लैडिएटर ट्रॉफी के कामयाबी के लिए उनके तन मन धन से प्रोत्साहन दिए थे हारिस वाईएफसी कन्नूर ने। और उसी तरह फिरोज मंजेश्वरा जो अंडरआर्म क्रिकेट के मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है, केरला परिसर हो या कर्नाटक के परिसर, कर्नाटक के अग्र क्रमांकित टीम जो है यंग फ्रेंड्स सुरवा, एनएम जप्पू, मैंगलोर जैसे टीमों पर अपने योगदान निभा पर दोनों राज्यों के दर्शकों के दिल जीत चुके थे फिरोज मंजेश्वर, जो इस क्रिकेट श्रृंखला के पीछे अपने दिन रात के मेहनत से जा रहे हैं। हम उन्हें भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। उसी तरह हमजा पंजा, निश्चित रूप से उनकी चेहरा देखते ही तरस खा रहे हैं हम, क्योंकि पिछली बार हमने देखे थे थोड़े से गोरे गोरे नजर आ रहे थे हमजा पंजा, लेकिन इस बार धूप पर गिरने के बावजूद इस श्रृंखला के पीछे अपनी मेहनत सजाकर अपनी चेहरे को काले करते हुए दिखाए हैं हमजा पंजा। इतने मेहनत इस श्रृंखला के पीछे एफर्ट डाले हैं हमजा पंजा ने। उसी तरह रियाज इरशाद जी, वाकई इस श्रृंखला के पीछे, इस श्रृंखला के हर एक योजना के पीछे अपने दिल और दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं इरशाद जी, रियाज, इस्माइल जी, जासिर और उसी तरह हबीब जी जैसे महारथियां इस श्रृंखला के पीछे अपने जो परिश्रम यहां पर निभा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सलाम करते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला सजाना कोई मामूली सी बात बिल्कुल नहीं है। जो बनाते हैं वही जानते हैं इस श्रृंखला के पीछे परिश्रम क्या है। तो निश्चित रूप से आपके प्रोत्साहन के निरीक्षा पर है इन सारे तमाम व्यक्तियां। तो सारे दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं, सारे टीमों के खिलाड़ियों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोगों के प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी को। मैच की दूसरी इनिंग शुरुआत होने से पहले माइक्रोफोन पर भी हम बदलाव करते हैं। सतीश मैंगलोर वापस आएंगे अपने आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरण के साथ। धन्यवाद। Thank you, Star Nawaz. The 47 target for John Boys to win this match, and just like Star Nawaz just mentioning about, they have to put their all effort in the sense full. They have to put 100% effort from the bat if they wanted to win the match, because batting in the last session is not that much of easy for anyone. It's time again, nicely turns that one down to square leg region. Long chase here for the fielder in the short square leg region. Before he run back to collect that one, batter has got ample time to complete that couple of runs. And with that couple of runs, Abhi is off the mark with a couple of runs, and they started their journey. John Boys have to bat really very well if they wanted to win the match. Sensible batting is required. And Zabir once again from the goal post and right arm over the wicket bounce. This time lovely shot, no need to run for that. Ball is just went like a stray bullet. This is not a good line to ball when you are not having enough fielder behind the square and fine leg. Not really having ample pace in the bowling, and not having adequate field for that. And he pays the penalty for that. Once that ball left the bat of Avi, that was really went like a stray bullet. That kind of positive frame of mind is required here for the opening batters of John Boys if they wanted to win the match, have the place in the big semi-final. Here is the next one. Right arm over the wicket. Balls. This is a lovely shot. Once again up and over. Toss down to deep long of region. I don't think the fielder will go to win the race. The ball winning racing against the fieldsman. Back-to-back boundary.
coming from the blade of Abhi. The intention is very clear from the batter. He need to take advantage of that fielding restriction in the power play. Two magnificent stroke coming from the blade of Abhi. What a quality stroke that one from Abhi. You know exactly where the fielder is. And long off inside the ring, down at mid off. So that is just going over the top. And it was very difficult for that wideish long on fielder to run across towards a straight long off region to stop the boundary. Just ball winning the race against the fieldsman. The 10 runs already came from the 4 deliveries. Abhi got 2 back-to-back boundaries here. And certainly they wanted to win the matches, looking at the body language of the batter. Again down the leg stamp, this time wide outside the line of leg stamp. One more addition to total prestation and the pressure straight away for the bowler. Zabir not impressed with the addition of umpire. He thought that it might be a dotted delivery, but umpire seeing the line of the delivery, that ball a little bit going down the leg stamp. And Abhi tried to sweep that one. Well, if he able to hit the ball, might be one more chances of getting a hat-trick boundary. But that was a dotted, but that was a wide delivery. 11 without loss of any wicket in the over number first in progress. They're chasing 47 to win the match, 47 to have the place in the semi-final. Here is Zabir again, beautifully bowled, excellent line in the relegation. Good comeback there by Zabir, quicker one. Straighter one, and line is so impressive in that occasion outside the line of off stamp, and there is no possibility of any run. 11 without loss of any wicket. This time reverse sweep comes into play, but lack of placement straight to the hands of the backward point region. Nothing wrong with the reverse stroke, but something wrong with the placement, I must say. Look at that one. Ball is just when the ball is hit the bat right middle of the bat of the batter. Looks like it's going to be the ball will going to defeat that infield, but good judgment there from the backward point fielder. Just running little bit left to him, moving left to him, takes a very good catch and danger man departs. Excellent comeback there from Zabir. He desperately wanted to send Abhi back into pavilion, but I think he's played a small cameo here. Abhi scored a valuable 10 runs in just 5 deliveries and 11 for the loss of 1 wicket after completion of 1 hour. Just coming back to the equation straight away. The 5 overs remaining, 30 balls remaining, and they have to get another 36 runs to win the match. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. After that, the very good first over for John Boys, and then the match looks like it's going to be one more fantastic finish for the match. What a day of cricket here. The first day of Gladiator Trophy, the day of a lot of entertainment. Thrilling finish. 2 matches ended in a tie. Super over taken place to get the result. And this match, the final match of the day 1, is very interesting as well. Nice looking drive there from the new batsman, left hand Mustafa is off the mark straight away with the single. And confident looking off drive. Chip that one quite deliberately down to deeper long off region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Over number 2 in progress. This is the last over of the power play. Achu is a so experienced campaigner for the side of John Boys, and wait and see how Achu will go into bat here. Technically very sound player, very risky player, and now wait and see how he will go into contribute. This time a nice change of line, good thinking by the bowler's point of view. Chammi seeing that Achu is went for the reverse sweep, premeditated, just changing the line, bowled down the leg stump and beats the batsman with a clever piece of line and length. This time lovely shot. Achu got that right from the middle of the bat. Will it go into a cut it off? No. Once again that ball is winning the race. Achu, look at that. He has played that one. Reverse strokes comes into play and switch it right from the middle of the bat. And once you play that one in the power play, very difficult to set a field for that. If one fielder in the outside the ring in the offside region, that is a deep extra cover. Very difficult for him to run across towards a deep backward point to cut that boundary. The intention is very clear here from Achu as well. They desperately wanted to get some runs in the power play over.
needed to be when you're chasing a big total like 47 to win the match. They need to capitalize this 2 over of the power play. And so far, the batsmen are doing a fantastic job here of the Chan boys. Beautifully bowled, excellent delivery. Wicketkeeper behind the stump, not really getting any support, giving any support behind the stump. Missed it completely. By call by umpire. One more addition to total. 17 for the loss of 1 wicket. 30 more runs required for the victory. What a game of cricket we're having here. 26 balls remaining. They have to get another 30 runs to win the match. The great match is going on here. Lovely shot. Down to middle long off. Good piece of fielding there by the fieldsman there in Chammu Arimala, the very popular figure there out in the short extra cover. Moving to his left and fields the ball quite beautifully and denying extra run from the batters. 18 for the loss of 1 wicket. Chammi. Right arm over the wicket to Achu. Achu flicks that one off his legs down to short fine leg region. Very difficult to go for the big shot, that kind of line. So he retained the strike for the next over, chasing 47 to win the match. I think is really a very good chasing here from the batsmen of Jan boys. Giving for 100% Jan in this match. That needed to be if they wanted to win the match. They have to give their 100% if they want to win the match. And so far, I think the first 2 overs, which belongs to Jan boys, they scored 19 runs by losing only 1 wicket. The great battle is going on between 2 boys. And wait and see, will it going to be a Jan or will it going to be a Bichu? The 2 boys are battling hard for the victory in the place in the most prestigious Gladiator Trophy season 2 of this in this most beautiful venue. So third over going to start. We can see that the fielding restriction is off. The fielding really spreading out here in this third over. And I want to see the field set here for Achu. Achu has got 1 deep long on, 1 deep mid wicket. There is no protection has been given in the fine leg inside the ring, but there is a deep backward square leg in the offside region. Deep cover point fielder going back to deep extra cover region. And there is no fielder deep in the backward point region. Short third man. I request make it fast because looks like it's dark will going to take place very quickly. And we have to finish the 4 overs very quickly. I request the fielding team, please don't waste the time. It's already 6:20, and we need to have a fair cricket. And only 15 minutes left to take the dark in this cricket ground. The first delivery down the leg side going to be a wide. 1 more addition to total. Scoreboard moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. 27 more runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. Right arm over the wicket. Chammu appeal for leg for wicket. Plum in front of wicket. Across the line of the delivery. Ball pitched in the line. Ball pitched in the line and Achu might be a little bit shuffled across. Look at that one in replay. As his initial movement. And because of his shuffled across the line of the delivery, so that umpire raising his finger, and Achu is back into pavilion. Right time they got a wicket, and bowler Sunil is got a very, very important breakthrough for his team. Still they have to get another 27 runs in remaining 23 deliveries. Firoz, the new batter, is walking towards the middle. And lot of responsibilities required. After that, a very good partnership between Achu and then Abhi. Abhi is scored valuable 10 runs before back into pavilion. Now all of these 2 experienced batter, Mustafa and Firoz, to anchor the innings is very important. Sunil. Right arm over the wicket, nicely driven down to deep long off region for a walkable single, not more than a single. Protection there in the deep with the addition of that single. Scoreboard moves on to 21 for the loss of 2 wickets. 26 required from 22 balls. What a fantastic game of cricket you're having here. The final match of the day number 1, the last match of the day number 1. And we are watching the first semi-final of this most prestigious Gladiator Trophy 2021. First quarter final, correction. This time chance of run on in now seconds and done very easily
completed there by the bowler on his follow through. So back to back 2 wickets, back into pavilion. John Boyce slowly losing their grip over this match. And look at that one, there is no chance at all for the run. The short mid-on fielder is very close to the batter. And he completed his job by releasing the ball very quickly to the hands of bowler. And Sunil making no mistake at all. 21 for the loss of 3 wickets, all in sudden. Slowly the match is turning around. After that power play, we can see that very hard to get some big shots. Even very difficult to get runs in front of disciplined bowling performance there from Sunil. Razak. The new batter came into middle. That quick session, they lost 2 big wickets. Especially the wicket of Achu. Might be that was a huge wicket here for the opposition, Bichu boys. Again pushing and running. This time opportunity is created to make the run out. Bowler on his follow through. Sunil tried to pick the ball and hit the stumps, but he missed the ball completely from his hand on his follow through. So just a single here for Fairoz. 22 for the loss of 3 wickets. Last 2 deliveries remaining. The over number 3 in progress. So far, this over belongs to Bichu boys. Beautifully played that one. Beautifully played that one. Whip that one down to square leg. Running hard, looking for the second. In comes the throw. Chance of run out. And umpire Mohan Iyadi rightly said this is a not out. A very good running bit in the wicket after completing that single very quickly. Little bit under pressure situation for the fielder in the deep. And he fields well, returns well, but not quick enough to stop the couple of runs from these 2 batters. Razak in the negation nicely turns that on. Wrist work comes into play to get a couple of runs. And they're running hard in the middle as well. 24 for the loss of 3 wickets. 23 more runs required for the victory. Over number 3 in progress. Last delivery remaining. That means 19 balls remaining. They have to get 23 runs to win this match. The difference between run and ball exactly the 4. One big shot will going to release the pressure from the batter. Sensible batting required here from the batters of John Boyce. And good bowling performance required here for Bichu boys. Again, beautifully played. Technically very sound in the negation. Razak looking very sound in the middle. Hitting the ball very nice. Middling the ball very nicely. So he retains the strike for the next over. 25 for the loss of 3 wickets. Match is even the boys. Now last 3 over remaining. 18 balls remaining. They have to get another 22 runs to win this match. It's going to be anybody's game. So that very important 3 overs. It's going to be a very exciting game of cricket is going on here. And for that 3 overs, I would like to once again call upon Star Nawaz to take over the microphone in our national language. And Star Nawaz, it's an equal battle is on. 2 boys are battling hard. And it's going to be a question raising. Will it going to be a Bichu boys? Will it going to be a John boys? It's going to be one more interesting game is progressing here. जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जैसे कि आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पर 2 बॉयज जो है, जॉन बॉयज हो या बिचू बॉयज, आखिरकार किसके होंगे जीत। यहाँ पर 3 ओवर पर 18 गेंदों पर 22 रन की जरूरत है। अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल वाले बात बनेंगे, क्योंकि ये मैदान कई बार ये दिखा चुके हैं दर्शकों को कि आखिरी मौके पर 3 ओवर पर 30-32 रन भी आसानी के साथ पूरा हो चुके हैं पिछले दिनों में, और कभी कभी 3 ओवर पर 10 से 12 रन भी मुश्किल है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहां पर क्या कर पाते हैं जॉन बॉयज। और इस बार रजाक मुट्ठम बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्ला घुमाते हुए, पिछले ओवर के बल्लेबाजी भी हमने देखे कितनी सुंदरता के साथ, गेंद के ऊपर जो टाइमिंग है इनके, गेंद को जिस तरह से वो आंख मिलाते हैं गेंद के साथ, ये बहुत ही बेहतर बात है। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियां गेंद के साथ अपनी आंख जिस तरह से मिलाते हैं, आंग्ल भाषा पर आई कॉन्सेंट्रेशन जिसे कहते हैं, निश्चित रूप से ये क्रिकेट पर बहुत ही मायने रखते हैं बल्लेबाजों को कि वो गेंद के साथ अच्छे संपर्क बनाए। और इस बार ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल के इशारा अंपायर मोहन येयाडी से। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं शेख मलली, तीसरी अंपायर की जिम्मेदारी निभाते हुए हरीश पटेल। ये त्रिमूर्तियां
क्रिकेट के मेधावी कहलाते हैं रेफरी की बात पर। और इस बार अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद, यहां पर डॉटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलते हुए नजर आए थे बल्लेबाज को और उन्होंने छोटी सी नजरअंदाज लगाए, काश ये वाइड हो सकते हैं, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, गेंदबाज अपनी गेंद सही मात्रा पर किए हैं, सही लाइन के साथ किए हैं, ये मानना है अंपायर के। गेंदबाज फिर तैयार, फारूक हल्के हाथ से गेंद को छेड़ते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा पर गेंद को खेलने की कोशिश बनाए, लेकिन गेंद सीधे पैरों पर टकराकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा पर गए और वहां से गेंद उठाने से पहले एक सिंगल रन प्राप्त होते ही रनों की संख्या पहुंचे 28 पर। 28 47 इज द टारगेट। फारूक फिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से, बाएं हाथ के खिलाड़ी रजाक मुट्टम के लिए और इस बार स्वीप कर दिए गेंद को। यहां पर एक सिंगल रन अवश्य प्राप्त होंगे। 47 रन तक लेके जाने हैं अपनी बल्लेबाजी की सफर को। देखना है कि यहां पर जॉन बॉयस और बिच्चू बॉयस के बीच चल रहा है इस मुकाबले में आखिरकार जीत किसके पास होंगे, किसके गले लग जाएंगे जीत। यहां पर इसके विजेता सीधे सेमीफाइनल पर प्रवेश करेंगे ग्लैडिएटर ट्रॉफी के। फारूक बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को ऑफ साइड की दिशा पर पुश करते हुए फैरोज और रजाक की जोड़ी धीरे धीरे से ये विश्वास जरूर जगा रहे हैं जॉन बॉयस के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम क्रीज पर रहेंगे तब तक के लिए तो जीतने की कोशिश हम जी जान लगाकर देखेंगे। उनके नाम है जॉन बॉयस और अब देखना है कि कितने जान लगाएंगे इस मैच को जीतने के लिए। वाइड बॉल के इशारा विपक्षी टीम के परिश्रम को यहां पर कम कर रहे हैं गेंदबाज अपनी इस कमजोरीपन के साथ। फारूक फिर एक बार तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से रजा के लिए और इस बार भी दिमाग के इस्तेमाल, मंतोस वाले क्रिकेट यहां पर दिमाग की बत्ती जलाए यहां पर। और इस बार ये काफी दुविधा वाली बात है क्योंकि जब छलांग लगा रहे थे यहां पर छलांग लगा रहे थे फायरोज, तो अब देखना होगा कि क्या गेंद बेल्स तक पहुंचने से पहले उनकी बल्ला जमीन पर स्पर्श कर चुके हैं या नहीं। यहां पर खतरा हो सकते हैं बल्लेबाज के लिए। तो देखना है कि तीसरी अंपायर अपनी निर्धार क्या सुनाते हैं हरीश पटेल। कोशिश बेहतरीन किए हैं बल्लेबाज पहुंचने की, लेकिन विकेट कीपर तुरंत उस गेंद को उठाकर बेल तक पहुंचा दिए थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनकी बल्ला लैंड होने से पहले बेल्स उड़ चुके हैं या नहीं। टीवी स्क्रीन पर रिप्ले देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि खतरे में होगा बल्लेबाज। बार बार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस रिप्ले को रिवाइंड करते हुए क्योंकि कहीं चूक ना हो जाए किसी निर्धार लेने पर। तो काफी करीबी के साथ देखने के बाद सुरक्षित रहे हैं बल्लेबाज यहां पर। नॉट आउट की करार अंपायर से, नॉट आउट की करार अंपायर से। बहुत ही बेहतरीन छलांग लगाते हुए बल्लेबाज अपने स्थान पर वापस आ चुके हैं। गेंदबाज फिर तैयार और इस बार गेंद को खेले ऑफसाइड की दिशा पर। रजाक मुट्टम एक रन तो आसानी से छुड़ाइए, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए और इस बार नहीं बच पाए, सीधे निशाने विकेट पर। पिछले उस रनआउट के बदले यहां पर लिए हैं यहां पर बिच्चू बॉयस। रजाक मुट्टम की विकेट, ये बहुत ही बड़ी मछली अपनी जाल पर फंसाए हैं क्योंकि रजाक शुरुआत से लेकर जब से क्रीज को आक्रमण किए थे रजाक, उसके बाद रनों की संख्या जो है रन धारण पर अच्छे खासे रन धारण बरकरार रखे थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये विकेट कितने परिणामकारी होगा यहां पर बिच्चू बॉयज के लिए,
क्योंकि रजाक मुट्टम अगर आखिरी मौके तक क्रीज पर टिके होते तो निश्चित रूप से जीत के विश्वास मजबूत होता यहां पर जान बॉयज के। अब तो 31 रन पर 3 विकेट खो चुके हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन है अंपायर, जो पिछली बार जो रनआउट के अपील आपने किए थे थर्ड अंपायर के लिए, अंपायर जी 1 मिनट सुनिएगा। पिछली बार रनआउट की जो कोशिश किए थे वहां पर 1 रन भागे थे या 2 रन, इस बात की थोड़ी सी दुविधा है। शुरुआत के रन तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 41 रन, 41 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 6 गेंदों पर अब जरूरत है 6 रन की। 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत।
पिछले ओवर पर 8 रन बने हैं, तो ऐसे में 7 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर खड़े हैं चम्मू अरिमला गेंदबाजी पर। 6 गेंदों पर 7 रन। दोनों टीमों के कप्तान से यह विनती है कि बेवजह वक्त की बर्बादी न करें। जैसे कि आप जानते हैं अंधेरा छाने लगे हैं मैदान में। 6 गेंदों पर 7 रन। 6 balls 7 runs to win this match. 40 is the total. गेंदबाज तैयार। चम्मू अरिमला स्ट्राइक पर खड़े हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी लतीफ। पहली गेंद और सीधे गेंद फील्डर के हाथ पर सुरक्षित। एक शानदार कैच के साथ बहुत ही बड़ी झटका यहां पर दिए हैं बिच्छू बॉयज अब तो अपनी शरीर की जहरीली को कड़क तरीके से दिखाने लगे हैं मैदान में, और दिखाने की मजबूरी भी है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है दोस्त। ये देखिए उनकी एक्सप्रेशन देखिए, जिस तरह से वो कैच पकड़ने के बाद अपने आप को दिखाए हैं, क्योंकि वो दर्शकों को चौंकाना चाहते हैं कि गेंद मेरे हाथ पर सुरक्षित है, आप गेंद को मत ढूंढिए, कहीं मत गए हैं गेंद। 5 गेंदों पर 7 रन। 4 विकेट अब तक हो चुके हैं जान बॉयज। 5 गेंदों पर 7 रन की जरूरत। तुरंत आ जाएगा बल्लेबाज चम्मू अरिमला। बल्लेबाजी पर तो कमाल की बल्लेबाजी दिखाते हैं, और हम ग्लैडिएटर के अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों से हम विनती करते हैं बाउंड्री लाइन के करीब लाइन अंपायर को खड़े करें, किसी भी तरह की समस्या ना खड़ी हो जाए, और जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं वो सीमा रेखा को छोड़ते हुए इस मैच को देखें। 4 गेंदों पर अब जरूरत है 6 रन की। 4 गेंदों पर 6 रन। मुश्ताक और दूसरी तरफ आप स्ट्राइक ले रहे हैं फायरोज। क्या फायरोज जी इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा पाएंगे आप अपनी बल्लेबाजी में? 4 गेंदों पर जरूरत है आपकी टीम को 6 रनों के। 6 runs to win this match from 4 balls. चम्मू अरिमला तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और इस बार गेंद को मोड़े सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में लंबी दौड़ के साथ गेंद निकलते हुए सीमा रेखे की तरफ, और ये रहा फायरोज के चमकता हुआ ग्लैडिएटर चौका। आज शाम के रौनक वाले चौका कहा तो भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है दोस्त, तो ऐसे में सही मौके पर सही जगह को ढूंढते हुए चौका चुराए हैं यहां पर फायरोज ने। वाकई जबरदस्त। बेद्रा मीडिया के लिए आज के ये चौका जो है फायरोज जी वाकई वायरल हो जाएंगे, क्योंकि आपने लगाए हैं मौके पे चौका। मौके पे चौका लगाए हैं आपने। अब 3 गेंदों पर केवल 2 रन की जरूरत है आप अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए। 3 बॉल 2 रन। फायरोज फिर तैयार, विश्वास दुगने होते हुए फायरोज के, और इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर गेंद को छोड़ चुके हैं। गेंद सीधे निकलते हुए सीमा रेखे की तरफ, और इसी के साथ जान बॉयज सेमीफाइनल पर प्रवेश कर चुके हैं। अभिनंदन करते हैं जान बॉयज को। और आज के ये सेमीफाइनल मैच जो है, ध्यान दीजिएगा दोनों टीम, सेमीफाइनल मैच होगा शनिवार के दिन सुबह 7:30 बजे। 7:15 को यहां पर हस्ताक्षर प्रक्रिया होगा। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:15ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ। 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್। तो ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:15ಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫೈರೋಜ್। ಈ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈರೋಜ್ ರವರು। ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯೋಚಿತ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ಫೈರೋಜ್ ರವರಿಗೆ ರಕೀಬ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಫೈರೋಜ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ